So for the latecomers and those who are late tuned to the live telecast of this cricket tournament through V4 24/7 channel, you are watching day number 1 of this most prestigious cricket tournament, BK Champions Trophy, proudly organized by Biruver Kudla Ashok Nagar Women's Wing in this most beautiful venue, UCG Urva Cricket Ground, and you are watching the match number 1, the inaugural match between Friends Qatar versus SNBC Mangalore. First over completed, 12 without losing any wicket. That means a promising start from both the opening batter. Left and right combination has got a very good positive start from both the opener. From the far end, it looks like a very young talented bowler for the side of SNBC has been introduced. Sajjad. Sajjad is a useful bowler actually. The bowling, sometimes he represents Kudroli boys as well. And now is bowling even they represented Bandar 11. Good experience, 3 to 4 years experience in underarm cricket. So now he's representing for SNBC Mangalore. Wait and see how we will going to produce a good over, economical over can he able to produce for SNBC. So Nikhil will going to take the strike. He's got one deep mid wicket, one at deep long off. The fielders are in that long, in the deep to prevent the boundary. And Nikhil facing his first delivery of the over number 2nd. This time a little bit down the leg side appeal for the leg before wicket. More than the confidence, it's just like excitement there from the bowler, because ball pitching outside the line of leg stumps. Even that ball is going to miss the leg stump for a long way. No question of leg before wicket, but certainly the question of leg before leg by. Leg by signal by umpire Roland Pinto. Scoreboard moves on to 13 on the board without loss of any wicket in the over number 2nd in progress. From the Urban Homes Infotrex Private Limited advertising banner end, Sajjad bowling to Tyagaraja, one of the very good clinical striker of the ball, will facing his delivery. This time it's going to be a chance here for the fielder, but mid-wicket fielder I think too far, and that ball is went towards a deeper mid-wicket region before the fielder from wideish long on to run across to field the ball. Ample time for Tyagaraja to get a couple of couldn't get hold of that one properly, and he got not an full face of the bat in the occasion, not really having a sweet spot of the bat. Tyagaraja, luckily that ball didn't carry to that fielder at mid wicket, but he got a couple of runs and scoreboard moves on to 15 on the board without loss of any wicket. Sajjad bowls. Wow, beautifully bowled. That was a delivery. That was a peach of the delivery there from Sajjad to pick the wicket off. Danger man Tyagaraja departs. Going for the big drive, but ball is not really coming to the bat, especially in the morning session. Everybody knows that UCG cricket ground pitch will react better for the bowler rather than the batter. He's just early into the strokes, going for the big shot, missed the line completely, and Sajjad just strikes the very important breakthrough here for SNBC. They needed such wicket. They needed that wicket of Tyagaraja, who's really going to be very dangerous for any situation, for any opposition. That was really a vital breakthrough here for SNBC. They got a very important wicket, 15 for the loss of 1 wicket. Today morning, the tournament is inaugurated by the corporate, our beloved corporator Ganesh Kulal, along with Deepak of challenge bowler, the proprietor of City Marine, Sunil Kumar Biruver Kudla, the inaugurated, along with Charan SK1, who really man behind this cricket tournament, working hard to make this success. Even Trishant of done a lot of hard work to make this possible, and a perfect condition for the cricket. From the far end, right arm over the wicket, bowls, drives that one, not quite get hold of that one, but he managed to beat the infield. That was unlucky. I must say, the batter wanted to play that one in the offside region, but the fact that he put a lot of power behind the stroke, C1 not quite intended, but is able to beat the infield. Once it beats the infield, it's quick outfield and shortest spot of the ground here in UCG cricket ground. And the straight away Pradeep has got a boundary from his first delivery, not quite intended. He wanted to play that one in the offside region. The fact that he's got enough bat onto that ball went towards a deep long on,
and score jumped into 19 for the loss of 1 wicket. In the over number 2 in progress from the Urban Homes end, right arm over wicket, pass on by Rowan Pinto, going for the drive, missed it completely. That was the line he needed to bowl. Little bit outside the line of off stump as Pradeep wanted to play the extra cover drive. That ball is not really coming to the batting again. That was a slower one, change of pace, and batsman completely beaten in that occasion. Score remains on 19 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Ball clean him up. This is the 2nd wicket for Sajjad. I already mentioned he's a very talented bowler for the side of SNBC, and he once again justifying the decision of his captain to come and bowl in this 2nd over of the power play. Look at that in a replay. The bowler bowled that a slower one. Look at that batter Pradeep, little bit early into the stroke, looking for the big shot, missed the line completely, and that ball hits the middle stump of Pradeep. The 2nd wicket is back into pavilion of Friends Kutar. Everybody knows that the Biruver Kudla, one of the very reputed organization, Biruver Kudla, born and brought up in and for uplifting Tulu coastal culture and tradition. As a non-profit organization, Biruver Kudla prime focus is to stand out tall as the Tulunadu religion, helping hand for the people in need without any caste, creed, religion basis. And Biruver Kudla started the journey as the team dedicated to all the die-hard fans of one of the biggest Pilinalike tiger dance groups of over the bale. Suddenly it's a chance of run out. Is Navin quickly realizing that the fielder a little bit lazy to react to collect the ball, and he's asking his partner for a 2nd run. He is the one, he's running towards a danger end, that's why he want to run very quickly towards the danger end, and he made it quite easily in the end. 24 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Again Asgar bowling right arm around the wicket to Navin. Navin, this time again misfield by wicketkeeper behind the stand. The short finally fielder has missed out, and that will go into be one more boundary, lucky boundary. Wide signal by umpire, 1+4. That was a 5 gifted runs here for Friends Kutar. This is not a good cricket from SNBC. Not a good cricket and not a good keeping as well from a wicketkeeper behind the stump. He can't stop that one, but even the short fine leg fielder is not quick enough. He's not a quick mover. When you are having a fielders inside the ring, you need to keep one good fielder who can move very quickly inside the ring, and that fielder, the short fine leg fielder, not really moving very quickly to the right, and that's why that got a boundary here. 29 for the loss of 2 wicket. Lovely improvisation by playing the switch it in the negation there by Navin. One of the regular strokes in the present cricket by each and every batter. Loves to play that reverse sweep. Picked up a single down to deep 3rd man region. With that single scoreboard moves on to 30 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. The runs are really coming very freely for Friends Kutar against the bowling of SNBC. Drives that one, but straight to the hands of short mid, and I once again mentioned that the fielding is not up to the mark. The fielding is one of the unique part of cricket. We should have a very good fielding department if we wanted to win the match against a big team like Friends Kutar. So 3 overs completed after completion of 3 overs even. They lost the toss. Friends Kutar are looking pretty good in the middle. They got a 31 for the loss of 2 wicket at the exact run rate of 10.33 runs per over. It's good going here for Friends Kutar. Wait and see how well they will going to continue in remaining 3 overs. They are inching towards, they are cruising towards a big score against SNBC. And if the SNBC wanted to restrict the restrict from big score, they have to bowl really very well. Wait and see the strategy from both the teams. And it's time to invite my close friend Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. And Gopi, good morning and welcome for this most prestigious BK Champions Trophy 2022. And first 3 overs I think it belongs to Friends Kutar. And as per the reputation what Friends Kutar has got, I think the batters are really performed very well in the first 3 overs. And now 3 overs, I think it's going to be a testing time for the bowlers of SNBC, because both the batters are batting really very well and they're cruising towards a 50 plus on the board.
एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो 31 रन बच चुके और जैसा कि आपने फरमाया, द फर्स्ट 3 ओवर्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बैट्समैन ऑफ फ्रेंड्स कुत्तार। और जहाँ तक सवाल है धनुष और इस वक्त क्रीज पर मौजूद नवीन, जो कि काफ़ी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए, और मैं समझता हूँ यहाँ पर यह साझेदारी अगर अगले चंद ओवर तक टिकती है तो एक बेहतरीन स्कोर यहाँ पर खड़ा करने में सफल हो सकता है फ्रेंड्स कुत्तार। और इस वक्त चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, हमसे दूर वाले छोर से यह गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, मिड विकेट पर गेंद पहुंची और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। और जहां तक सवाल है अर्बन होम्स एंड की ओर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, मेरे ख्याल से गेंदबाज हैं सज्जद, इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी अशोक नगर वुमेन्स विंग द्वारा ये श्रृंखला इस वक्त प्रायोजित की गई है। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला के मैच का, तो पहला मैच इस श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर एक बेहतरीन प्रगति करता हुआ दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद स्वीप किया, इस वक्त पैडल स्वीप शॉट फाइनल की दिशा में रन के लिए दौड़ पर, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते फिर सुरक्षित देखा कि गेंद शॉट फाइनल पर पहुंच चुकी है और इस बीच कोई क्षति नहीं। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 32 रन। निखिल और नवीन इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज सज्जद की गेंद, ये गेंद उछाला इस वक्त नॉट क्वाइट मिडविकेट द लास्ट मोमेंट, और गेंद इससे पहले कि पहुंचे लंगोन की दिशा में बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन न प्राप्त करने का। तो इस वक्त 33 रन बन चुके हैं और 33 रन बन चुके हैं। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो सज्जद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा अंतिम क्षण में, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई उनके पहुंच से बाहर, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता विकेट कीपर द्वारा विकेटों के पीछे। 1 रन इस वक्त घोषित कर चुके अंपायर वाइड के रूप में, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। B424x7 चैनल पर यह श्रृंखला इस वक्त लाइव टेलीकास्ट की जा रही है, एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट। ये गेंद इस बार अंदर की ओर आती हुई, गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त निकाला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। रन इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए फ्रेंड्स कुत्तार के लिए, और निस्संदेह क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज एक बेहतर साझेदार यहाँ पर निभाते हुए। नवीन इस वक्त सामना करते हुए सज्जद की गेंदों का दाहिना तो ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई शॉट फाइनल की दिशा में, गेंद पहुंची तेजी के साथ फील्डर पहुंचे, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए। 1+1 2 runs now added to the total, and with that couple of runs the scoreboard is now moving up to 37 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress। निस्संदेह एसएनबीसी के कप्तान के लिए इस वक्त चिंता का विषय जरूर बन चुका है कि फ्रेंड्स कुत्तार के रन के बहाव को किस तरह यहां पर रोका जाए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, गेंद को छोड़ दिया अंतिम क्षण में, गेंद की लाइन से बल्ले को हटाते हुए विकेट कीपर के हाथों में। और जहां तक रनों का सवाल है तो रन से इस वक्त नहीं मिलेंगे, 37 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिना तो ऊपर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ वर्क बिहाइंड द स्टंप्स मेड बाय विकेट कीपर। गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में क्रीज से जैसे ही बाहर निकले, विकेट कीपर ने अपना काम तमाम किया विकेटों के पीछे काफी तेज रफ्तार के साथ, और इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है, और निखिल की बेहतरीन पारी पर यहां पर पर्दा गिर चुका है। 11 रन निखिल ने बनाई, स्कोर्ड 11 runs into his credit, and after being playing a good knock for their side, he is backing to pavilion. 11 runs scored including 1 boundary, and friends Kuttar are now losing their 3rd wicket, 37 for the loss of 3 wicket। और तीनों विकेटें जो गिरे हैं वो तीनों विकेटों के हकदार इस वक्त सज्जद हैं। तीनों विकेटें उनके खाते में गए हुए एक सबसे सफल गेंदबाज साबित होते हुए यहाँ पर एसएनबीसी के लिए। और यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है धनुष, और इस वक्त धनुष नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 ओवर की समाप्ति, 37 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स after the completion of 4 overs. Just 2 overs now remaining in their innings. The bowler wearing number 99 jersey is now brought into the attack. Ritesh the bowler, और रितेश इस वक्त गेंदबाजी करेंगे
दाहिने हाथ के बल्लेबाज नवीन के लिए फील्डिंग में इस वक्त जमावट चलती हुई 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। इस श्रृंखला के नियमानुसार शॉट थर्ड मैन एक्स्ट्रा कवर मिड विकेट और शॉट फाइन लेग का। और जहां तक सवाल है 20 गज के बाहर के फील्डिंग के नजरिए का, तो डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग काफी स्क्वायर मौजूद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। रिवर्स शॉट इस वक्त खूबसूरती के साथ निकाला, लेकिन शॉट थर्ड मैन फील्डर को बीट नहीं कर पाया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 38 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। और जहां तक सवाल है अगले गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में जमावट करते हुए इस वक्त डीप थर्ड मैन के फील्डर को इस वक्त कुछ हद तक आगे बुलाया जा रहा है। 20 गज के दायरे के अंदर शॉट थर्ड मैन फील्डर इस वक्त भेजा जा रहा है शॉट स्क्वायर लेग पर कहना पड़ेगा, ठीक अंपायर के बगल में। और गेंदबाज रितेश एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए 38 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज अपने ओर के अगली गेंद लेकर तैयार रितेश, ये गेंद ऑन साइड पर ऑफ द टॉस, गेंद को फ्लिक किया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची। फील्डर दौड़ कर आए, एक टिप्पे के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 in progress for Friends Kuttar after being losing the toss and put it to bat first by SNBC Bangalore in the inaugural match of BK Champions Trophy 2022। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो रितेश इस वक्त एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट करते हैं। इस बार डीप मिड विकेट फील्डर को आगे बुला लिया गया है 20 गज के दायरे के अंदर इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल इन फैक्ट। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, रितेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त, लेकिन रक्षणा मौजूद डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर फील्डर ठीक सीमा रेखा के पास गेंद को उन्होंने फील्ड किया और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। और बेहतरीन तरीके से फील्डिंग में सेटिंग इस वक्त की थी गेंदबाज रितेश ने। डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के पास ठीक फील्डर को उन्होंने तैनात किया था और इस बीच सिर्फ एकमात्र रन मिला। चतुर सोच गेंदबाज द्वारा एक बार फिर से तैयार दाहिना तो ऊपर विकेट। रिवर्स शॉट एक बार फिर से शॉट थर्ड मैन पर गली पर कहना पड़ेगा, इस बार गेंद फील्ड करते हुए फील्डर हर गेंद पर रिवर्स शॉट इस वक्त अपनाते हुए बल्लेबाज क्रॉस बैटेड ट्विस्टेड बैट स्ट्रोक जिसे कहते हैं इस वक्त खेलते हुए। और जहां तक सवाल है रनों का, तो 1 रन उन्हें जरूर मिलेगा। इट्स 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। रितेश कम्स फॉर द नेक्स्ट डिलीवरी दाहिना तो ऊपर विकेट। ये क्या, ओह दिस टाइम pretty slower and beaten completely by that slowness। गेंद को उछालना चाहता, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी गेंद पर चूके और जब तक शॉट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने के। It's 42 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress। Good progressing here now for फ्रेंड्स कुत्तार। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ते हुए रितेश रिवर्स शॉट इस वक्त खेला बैकवर्ड थर्ड मैन पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, डीप कवर पॉइंट से फील्डर दौड़ कर आए, कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे। इससे पहले कि थ्रो पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। नाउ इट्स 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 5 overs had been bowled। लास्ट ओवर नाउ रिमाइनिंग इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। SFC Sankolige will takes over team Rooftech in the next match, and that match is now coming up live exclusively right after this match. And because of that, I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. SFC Sankolige ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ರೂಫ್ಟೆಕ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ. So back to this game, last over remaining, it's 44 for the loss of 3 wicket। अंतिम ओवर अर्बन होम्स एंड की ओर से इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज 18 नंबर की जर्सी पहने हुए इस वक्त गेंदबाज अश्वित गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ फ्रेंड्स कुत्तार की पारी में काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहां पर दिखाई देता हुआ। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त 07 नंबर की जर्सी पहने हुए बल्लेबाज नवीन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अर्बन होम्स एंड की ओर से ओवर की पहली गेंद, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाला जा चुके हैं, नॉट स्ट्राइक पर खतरा, एक्यूरेट थ्रो, लेकिन मैं समझता हूं गेंद
इससे पहले कि विकेट चटकाए जाए बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके हैं और इस बीच वाइड का इशारा 1+1 2 runs now added to the total and now it's 46 for the loss of 3 wicket at the start of the sixth and the final over in fact और गेंदबाजी में एक बार फिर से गेंदबाज अश्वित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए B424x7 चैनल पर यह श्रृंखला लाइव टेलीकास्ट इस वक्त की जा रही है यूट्यूब के जरिए और इस श्रृंखला का कुल मिलाकर पहला मैच यहां पर प्रगति पर दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाज अश्वित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा नॉट क्वाइट मिडलिंग इट ही गेट्स एन सिंगल फॉर दैट और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 47 रनों पर इट्स 47 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और सिर्फ 5 गेंदें यहां पर बाकी उनकी पारी में और स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं नवीन सामना करने के लिए इस वक्त तैयार है दाहिने हाथ के गेंदबाज अश्वित की अगली गेंद का यह गेंद उछाला लंगोल पर फील्डर वहां पर मौजूद और गेंद को बेहतरीन तरीके से फील्ड कर लिया गया है लेकिन इससे पहले कि बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन पूर्ण करने का स्ट्रेट ऑफ द ग्राउंड गेंद को उछाला था इस वक्त और बड़ी मुश्किल के साथ जब तक गेंद को फील्ड करे लॉन्ग ऑन फील्डर बल्लेबाज के पास समय अवकाश 2 रन हासिल करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 49 रनों पर इट्स 49 इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स अगली गेंद के लिए तैयार रिवर्स शॉट खूब चोटते के साथ गेंद को निकाला गेंद जाती हुई कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर काफी लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर मैं समझता गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद जब तक फील्ड की जाए डीप कवर पॉइंट पर शायद रितेश थे वहां पर फील्डर इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का 3 रन प्राप्त करने का इनफैक्ट इट्स 3 एडेड टू द टोटल और इन 3 रनों के साथ द 50 कम्स अप फॉर फ्रेंड्स कुत्तार और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर बन चुके हैं 52 रन 52 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट विद जस्ट 3 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज अश्वित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेला नॉट क्वाइट मिडलिंग इट 1 रन मिलेगा डीप कवर पॉइंट से फील्डर दौड़कर आए रितेश थोड़ी सी मिसफील्ड और इस बार रन आउट हो चुका है जैसे ही गेंद रितेश के हाथों से चूकी थी बल्लेबाज ने दूसरा रन लेने की हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाया और आखिरकार आसान सा रन आउट होता 1 ऑन स्ट्राइक एंड पर 4th विकेट डाउन इट्स 52 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट जस्ट अ कपल ऑफ बॉल्स नाउ लेफ्ट इन देयर 2 गेंदें सिर्फ बाकी अब उनकी पारी में तो 2 गेंदें इस वक्त बाकी नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है नॉन स्ट्राइक रन पर और अश्वित इस बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा बल्ले के बीचों बीच कनेक्टेड नहीं 1 रन मिलेगा 1 रन का इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 53 रनों पर इट्स 53 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज अश्वित तैयार अर्बन होम्स एंड की ओर से दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अंतिम क्षण में गेंद को वो लपकने में सफल और इसी के साथ पारी के अंतिम गेंद पर गोल्डन डक के रूप में नंबर 30 जर्सी पहने हुए बल्लेबाज का विकेट का पतन यहां पर हो चुका है और इसी के साथ निर्धारित ओवर्स भी समाप्त हो चुके हैं एंड so the innings is up for friends Kutta they finished well with 53 for the loss of 5 wicket after being a fine start 54 53 for the loss of 5 wicket and they finished with the 53 for the loss of 5 wicket in the stipulated 6 overs and now they set a victory target of 54 now for SNBC Mangalore and as far as they have to score 54 runs in the stipulated 6 overs and as far as the required run rate is concerned exactly 9 runs per over they have to score for victory the present required run rate for them with the help of 10 wickets the present equation shows for them और देखते हैं वो यहाँ पर इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं In fact, it's 55 the target, just over 9 runs they have to score for victory. In exactly calculation, it's going to be 9.17 runs per over. They have to score for victory. 55 the target for them in 6 overs, and their inning starts with a short while. और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब SNBC मैंगलोर की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी धन्यवाद थैंक यू नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक थैंक यू
So thank you very much, Gopi. So before coming to that chasing, we're going to start here. I once again would like to call SFC Sankolige as well as Team Roof Tech players. Please report to the registration office to sign the official chart. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ SFC ಸಂಕುಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So all set now for the chasing. 54 is the total score at the rate of exactly 9 runs per over. They scored that runs in stipulated 6 overs, friends Qatar, and they set a target of 55 to win the match and require run rate 9.17 runs per over. 9.17 runs per over in the beginning for SNBC if they wanted to win the match. And the opening batters came into middle, just in number 07. Rizwan is in on-strikers and strikers jersey number please. Striker, please show your jersey number. Striker, please show your jersey number. 28. Thank you. Asif will go into face a first delivery from the commentary box, and jersey number 10 will go into start the proceedings from commentary box, and Vishwas first delivery, little bit down the leg stump, going for the big shot in the irrigation. Ball missed the bat completely, deflected from the leg of Asif, so that first run comes up here for SNBC in the form of leg by. One more first run comes up. They're chasing 55 to win the match. 9.17 runs per hour is the required run rate, so that's very important for SNBC to get some good start, positive start they need to get if they wanted to win the match. From the commentary box, and Vishwas right arm over the wicket, bounce this time across the line of the delivery, swinging his bat, chance of run out in the non-strikers. Strikers, in fact, even though that ball is a little bit going down the leg stump, even might be ball is got an inside edge of the bat as well, and but there the batsman, without seeing his captain, without seeing his partner, wanted a run here, and he pays the penalty for that. It's not a good judgment of run in the occasion. There is no chance at all for any run, because after that ball is hits the legs. That appeal, loud appeal coming from the bowler for the leg before wicket, but umpire not interested to give. But meanwhile, that one the fielder from short fine leg region quickly complete the job of returning the ball into the hands of wicket keeper, and Santosh making no mistake at all. First wicket back into pavilion of SNBC. They are one for the loss of 1 wicket. So new batsman just came into middle. I request the batter, please show your jersey number, the new batsman. 18. Ashwet is the new batter. Will going to face his first delivery, the second delivery of the innings of SNBC. Third delivery, in fact. Right arm over the wicket, which was balls. Oh, that might be the chance of run out there in the non-strikers end. And wait for the umpire signal. Umpire asking that the striker to go back, because the deliberating padding. That was a deliberate padding, so that no run is given as per the rules and regulation. And Asif, the new batter, is thought that Ashwit thought that the ball is going down the leg stump. Misjudgment, ball hitting his legs. No strokes is offered, so that rightly umpire Arish Padil asking that the batter to go back. It's a no run, deliberate padding, one for the loss of 1 wicket. Vishwas. Right arm over the wicket, away from us. This time top edge, ball is in there. The fielder Naveen takes a comfortable catch. The wicket number 2 is back on the pavilion of SNBC. They got a shackling start here, chasing a big total of 55 to win the match. But the wickets are tumbling here in the first over itself. They lost the wicket number 2 at the score of 1. 1 for the loss of 2 wicket.
So 1 for the loss of 2 wicket. Wicket number 2 is back in the pavilion. Lakan is a new batter as he came into middle as a new batter. Drives that one outside the run of off tempo. One more single is in the over number second in progress. Vishwas bowling away from us. Right arm over the wicket. So far it's been a very good over from Vishwas. Fantastic over. Lovely shot. Beautifully driven there by Lakan. Right in the gap. That was a deep cover point division. They're running for the second. And they made it quite easily in the end. Excellent placement there from Lakan. Just got that one in the off volley. Outside the line of off stump. And he just went with the strokes. Picked up a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 4 for the loss of 2 wicket. Four for the loss of 2 wickets. Rakshit brought into attack from the far end. Right arm over the wicket. Went for the off drive. Missed it completely. 4 for the loss of 2 wickets. From the far end. Drives that one down to mid-off region. Tyagras, the fieldsman there in the short mid-off, fields the ball, but in between the batter has got enough time to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 5 for the loss of 2 wicket. They're really struggling to get some runs here. SNBC, they have to get some big shot in the power play overs if they wanted to chase the big total of 55 to win the match. From the far end. Rakshit, right arm over the wicket to Lakan. Lakan went for the big shot, straight to the hands of shotman. You get chance of run out, but the throw is not quick enough and good enough. In fact, that throw came in a off volley. Very difficult when the ball is coming in a off volley to the bowler to collect that one. Ball completely missed out by the wicket about the bowler, so that the quick run taken there by Lakan. It's a very risky one, in fact. And scoreboard 6 on the board for the loss of 2 wicket. Rakshit again from the far end, from the urban Ohms end. Right arm over the wicket to the right under the batsman. Ashwin drives that one powerfully, beautifully driven right in the gap. No chance at all for the field, and the deep long off. Just a spectator watching the ball going towards a deeper straight long on boundary for 4 runs. Beautifully driven there by the batter in the negation. Asif just picked up the line and length. The placement is perfection in the negation. Even the deep long on is there, deep long off is there. Both are a little bit wide-ish, long on and long off. And once you get past that, the infield, it's going to be a boundary. 10 for the loss of 2 wicket. Roland Pinto asking the batter to not run in the middle of the pitch, the protected zone. Rakshit, now the long on is coming a little bit straighter, and not long on, it's in fact that mid on is coming a little bit straighter, and long on going a little bit squarer, and long off is in orthodox position, deep long off. And from the far end, Rakshit right arm over the wicket. Asif lofted that one. That is a high hand handsome. What a shot! This is the first sixer of this BK Champions Trophy 2022. Came from the bat of Asif. What a glorious shot that one from Asif. Really fantastic. I want to see it in the replay. Look at that one. Picking up the line and then so quickly. Look at the flow of the bat. That was really the instrumental sound you can hear
The moment that ball has got a contact with the bat of Asif, just clearing this cricket ground. Not an easy, especially in the morning. There's no wind at all in the ground. You need to have some kind of power. You need to have some kind of proper timing behind the lofty strokes. Both are involved in that strokes, so that ball travels out of the park for a maximum. The first sixer of this BK Champions Trophy came from the bat of Asif in the right time when this team is required some big shots. 16 for the loss of 2 wicket. All in sudden, the runs have started to flow here for SNBC. Rakshit from the far end. Right arm over the wicket to Asif. Asif went for the biggest big shot once again. Wicket fails to collect the ball. Chance of run out in the strikers and in the relegation. Lakan little bit struggling to get his home in the relegation. If the direct it might be a chance of run out here. But anyhow, it is a productive over for SNBC. The much required productive over in that over. They got one boundary, 1-6, and altogether 17 runs in just 2 overs. The run rate what they required is 9.17 runs per over. Almost there looks like they're in a right way. But the consistency in getting that run rate in remaining 4 overs is so important here for SNBC to win this match. 17 for the loss of 2 wickets. Straight away, we're coming back to the equation. If you deduct 17 from 55, need to get another 38 runs required in remaining 24 deliveries. That means the match looks to be very interesting. It's possible. If Asif and Lakan will going to contribute, if you build the partnership, and of course if they try to catch the run rate in remaining overs, it's possible. From the commentary box, and left arm bowler has been introduced. The first delivery going to be that delivery little bit shuffled across the line of the delivery by Asif. Might be looking for the reverse stroke in the negation. That's why he couldn't manage to make any contact. But not a bad idea. There's no protection has been given in the third man and deep backward point. Once he got a bat, it certainly is a chance to get some bounce runs for his team. Ooh, that was the Asif going hard for that one in the negation. But that was a slower one. Tried to yoke the batter in the negation by the bowler Pradeep, and he just missed out by Asif in the negation. Looking for the big shot, but missed it completely. Good bowling there from Pradeep. Bowling left arm over the wicket, round the wicket in fact. Beautifully driven by Lakan. Lakan is doing a great job here. You know exactly the kind of cricket is required in this situation. The technique of rotating the strikes. Try to give as much as possible to his partner Asif, who is looking pretty good. Again, not quite getting hold of that one properly. Asif in this over. Asif is really not getting that much of timing he's looking for. Once again, he tried to hit the ball, try to post the ball in that occasion, but he mistimed that one. 20 for the loss of 2 wicket. 35 more runs required for the victory. Pradeep balls to Lakan. Lakan drives that one down to square leg, mid-wicket region. Right off a square leg umpire in between mid-wicket and square leg. One more addition to total, so that the scoreboard now moves on to 21 for the loss of 2 wickets. So far, it's a tidy over there from Pradeep. Considered just 4 runs in remain in the 5 deliveries, and he's bowling last time in this over. This time, oh my goodness, how far? It's not too far from the off stump, I must say. Just an inches that ball missed the stumps of Asif, and great over there from Pradeep. Much required. Good over for Friends Kutar from Pradeep. Just 4 runs is conceded in that over, and the captain of Friends Kutar must be pleased with this performance. So 3 overs completed. After completion of 3 overs, chasing 55 to win the match. At 21 for the loss of 2 wicket, and in remaining 3 overs, they have to get another 35 runs to win this match. 18 ball 35. Almost each and every ball required 2 runs here onwards if they wanted to win the match. Wait and see how SNBC will go into get this 35 runs in 18 balls. So before the next over will go to commence, it's time for Gopi to take over the microphone. Gopi, the first over belongs to the fielding team. Second over which belongs to the batting team. And again the third over which belongs to Friends Kutar. Now because of that great over there from Pradeep, they consider only 4 runs. Now the target is much tougher and stiffer now for SNBC, isn't it? बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, दूसरे ओवर में जब छक्का जड़ा था बल्लेबाज ने, तब दूसरा ओवर समाप्त होने के बाद बनाने थे 24 गेंदों पर 38 रन। लेकिन उसके बाद ये बेहतर ओवर जो कि तीसरा ओवर यहाँ पर अभी समाप्त हो चुका है गेंदबाज प्रदीप का, जिसमें सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किया, और इस ओवर की बदौलत एक बार फिर से फ्रेंड्स कुतार का पलड़ा भारी हो चुका। अब जैसा कि आपने फरमाया 55 रनों का लक्ष्य था और 21 रन बन चुके हैं, यानी 34 रन और चाहिए 3 ओवर में, और रास्टिंग रन रेट अब जा पहुंचा है
10.33 रन प्रति ओवर और चौथे ओवर के पहले गेंद को इस वक्त मोड़ दिया डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंचे और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था एक रन न प्राप्त करने का और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 का पहला मैच यहां पर प्रगति पर और अर्बन होम्स एंड की ओर से गेंदबाज जगदीश इस वक्त गेंदबाजी बढ़ाते हुए। और जहां तक सवाल है एसएनबीसी मैंगलोर का तो इस वक्त उन्हें चाहिए चंद करारे स्ट्रोक चौके और छक्के के रूप में इस मैच में वापस आने के लिए। 33 टू गेट नाउ फ्रॉम 17 डिलीवरीज। अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में फीडर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद को दबोचने में असफल। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद तक सीधे पहुंच गए थे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को अपने दोनों हाथों में वो पकड़ने में असफल और गेंद उनके हाथों से चूकती हुई और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज एक रन न प्राप्त करते हुए 23 रन बच चुके 2 विकेट के नुकसान। इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। जगदीश एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद जबकि इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर गेंद को वहां पर फील्ड करते हुए लॉन्ग ऑन पर एक टिप्पा खाने के बाद और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए एसएनबीसी मैंगलोर के बल्लेबाज और ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए फ्रेंच कुत्तार के बल्लेबाज, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, फ्रेंच कुत्तार इस श्रृंखला के खिताब के प्रबल दावेदार टीमों में से एक जानी जाती है। यहां पर अपना पहला मैच खेलती हुई और निस्संदेह यहां पर एसएनबीसी को इस वक्त बंधनों को तोड़ना है और देखना यह है कि वो किस तरह भारी पड़ते हैं गेंदबाजों के ऊपर। ये गेंद बोल्ड आउट होने से बच चुके हैं और प्लम्ब इन फ्रंट यहां पर घोषित। उछालना चाहता, गेंद उनके बैक लेग पर टकराए, उनका लेग उनका पिछला पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। और इसी के साथ एक बेहतरीन गेंद के जरिए फ्लाइटेड गेंद के जरिए विकेट यहां पर बल्लेबाज प्राप्त कर चुके और तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 24 रनों के ऊपर। आउट होने वाले बल्लेबाज आसिफ आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और विकेट नंबर 3 यहां पर गिर चुका। जहां तक आसिफ का सवाल है बेहतर पारी उन्होंने खेली थी, 16 रन उन्होंने बनाए। ही स्कोर्ड 16 runs into his credit and after being playing a good knock for their side he is backing to pavilion. It's 24 for 3 and with this dismissal SNBC Mangalore now once again looking deep in trouble. और जहां तक अगले मैच का सवाल है एसएफसी संकोलिगे का सामना होगा टीम रूफटेक के साथ अगले मैच में और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार है, प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। और इस मैच में गेंदबाज फ्रेंड्स कुत्तार के अपना प्राबल्य धीरे धीरे स्थापित करते हुए और रनों के लिए खड़ा संघर्ष करते हुए एसएनबीसी मैंगलोर के बल्लेबाज एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त रिवर्स शॉट के जरिए गली की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्ड, इस वक्त दूसरा रन लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा लेकिन बच नहीं पाएंगे यहां पर लखन और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है। पहला रन पूर्ण करने के बाद जैसा ही देखा कि गेंद छूट चुकी है गली फीडर के हाथों से, दूसरा रन चुराने की जोखिम उन्होंने उठाई और आखिरकार यहां पर भुगतान उन्हें करना पड़ा और आउट होकर इस वक्त पेविलियन वापस लौटते हुए निखिल और चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और निस्संदेह अब 13 गेंदें बाकी हैं, रन 13 गेंदों में चाहिए 29 more runs now they have to score for victory in remaining just 13 deliveries and the asking rate is now creeping for them। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला के लाइव टेलीकास्ट का तो बिफोर 24/7 चैनल पर यह श्रृंखला इस वक्त लाइव टेलीकास्ट की जा रही है यूट्यूब के जरिए। और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है तो इस श्रृंखला का पहला मैच यहां पर प्रगति पर, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद, मिड ऑफ गली शॉर्ट फाइन लेग और मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान एक फील्डर 20 गज के दायरे के कुछ अंदर इस वक्त तैनात। अगली गेंद के लिए तैयार, बॉल आउट, बेहतर गेंद थी, परफेक्ट लेग कटर एंड ही गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। तो चौथा विकेट, 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है, चौथा ओवर समाप्त हो चुका है और एक बेहतर ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है इस वक्त जगदीश का। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद द प्रॉब्लम्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग फॉर द बैट्समैन ऑफ एसएनबीसी मैंगलोर। 29 more runs now they have to score for victory. In fact, it's 25 for 5 now, and that means 30 more runs now they have to score for victory in remaining 12 balls with a requirement rate of exactly 15 runs per over. And
the target seems to be stiffer and stiffer now for SNBC Mangalore. तो फ्रेंड्स बल्लारबाग बीरवर कुडला रजिस्टर्ड अशोक नगर वुमेन्स विंग ने इस श्रृंखला का आयोजन यहाँ पर किया है बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 के नाम पर। और निस्संदेह आज सुबह एक भव्य उद्घाटन समारोह के बाद ये श्रृंखला यहाँ पर शुरू हुई और ये श्रृंखला यहाँ पर एक बेहतरीन प्रगति करती हुई। तस्वीर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, 5वां ओवर यहां पर शुरू होता हुआ और इस वक्त काफी विश्वास के साथ नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए और 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ एसएनबीसी मैंगलोर की पारी में। निस्संदेह चौके और छक्के ही अब ऐसा कहना पड़ेगा एसएनबीसी को इस मैच में वापस ला सकते हैं। दाहिना तो पर विकेट, बेहतर गेंद थी इस वक्त, बल्ले का भीतरी किनारा, जूतों पर गेंद टकराई लखन की और गेंद को शॉर्ट कवर पर जब तक फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन न प्राप्त करने का। इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और जहां तक सवाल है चौके और छक्कों का तो कोशिश जरूर जारी है इस वक्त बल्लेबाजों द्वारा एसएनबीसी के, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज फ्रेंड्स कुत्तार के। और एक बार फिर से गेंदबाज किया, गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, नॉट क्वाइट मिड लेके 1 रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर सिर्फ और सिर्फ 10 गेंदें यहां पर बाकी हैं और 28 रन चाहिए विजय के लिए। 28 रन मोर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग इन जस्ट 10 बॉल्स। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद गेंदबाज की गेंद, अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर मिड और लेग स्टंप पर लखन ठीक से गेंद को खेल नहीं पाए, लेकिन 1 रन जरूर मिला। इससे पहले कि स्वयं गेंदबाज अपने बाईं और गेंद को जाकर शॉर्ट कवर तक जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर 9 गेंदें बाकी हैं और 27 रन चाहिए विजय के लिए। और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार ना, दाहिना हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूके और गेंद पहुंची इस वक्त लगभग उनके जूतों पर टकराने के बाद शॉर्ट फाइन लेग पर और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। हर गेंद के साथ इस वक्त रिकॉर्ड रन रेट बढ़ता हुआ एसएनबीसी मैंगलोर के लिए और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका चौके और छक्के ही अब उन्हें इस मैच में वापस ला सकते हैं। गेंदबाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं, विश्वास लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, निशाना टकराया और इसी के साथ लखन का विकेट यहां पर गिर चुका है। कुछ हद तक धीमे दौड़े थे और अंतिम क्षण में इससे पहले कि नॉन स्ट्राइकर रन पर पहुंचे सीधा थ्रो विकेट कीपर का फेंका गया, वस्टम्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ। काफी देर से लखन बल्लेबाजी कर रहे थे, काफी थके मांदे नजर आते हुए और यहां पर अपना विकेट रनआउट के रूप में खोने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए 29 रनों पर 6वां विकेट गिर चुका है। 29 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट और वाइड का भी इशारा हुआ था पिछली गेंद पर, यानी 8 गेंदें अभी भी बाकी हैं और 26 रन और चाहिए विजय के लिए। 26 टू गेट नाउ फ्रॉम 8 बॉल्स। सुबह का वक्त 10:35 यहां पर बच चुके और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप का कहर यहां पर बढ़ता हुआ, सूरज अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैला चुका है। धीरे धीरे सूरज अपनी आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहां पर बढ़ती नजर आते हुए और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, विश्वास दाहिना हाथ ऊपर द विकेट स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, फाइन गेंद निकलते हुए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। अंतिम क्षण में जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकले, गेंद पर अपना बल्ला उड़ाया था, हल्के से गेंद को इस वक्त बल्ले के मुंह को खोलते हुए गेंद को इस वक्त स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ गली फील्डर की बाईं ओर से और गेंद सीधे डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त तस्वीर के बल्ले से और इस चौके के साथ 33 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका। 33 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। ऐसे ही चंद और करारे स्ट्रोक की जरूरत इस वक्त एसएनबीसी को इस मैच में वापस आने के लिए। 22 रन टू गेट एंड द बॉल रिमेनिंग इज 7 और गेंदबाज विश्वास तस्वीर के लिए एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तस्वीर सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद नीचे रहती हुई गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए, विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंचे और एक बेहतर गेंद के साथ इस ओवर का समापन यहां पर कर चुके हैं विश्वास। तो 5 ओवर की समाप्ति 34 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट
after completion of 5 overs scored by SNBC, and now still 21 more runs. Now they have to score for victory in remaining last over. In last over, in fact, and as far as the boundary and sixes are concerned, the situation for the batsmen of SNBC, they badly required a couple of big strokes in this stage in this last over to get back into this match. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, अर्बन होम्स इनकी ओर से इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज हमसे दूर वाले छोर से, और 19 नंबर के जर्सी पहने हुए हैं, और चेतन इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 21 रनों की दरकार बचे हुए 6 गेंदों पर, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए चेतन पहली गेंद लेकर तैयार। अर्बन होम्स हैंड की ओर से दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, ऑफ साइड में गेंद गई, ऑन साइड पर बल्ले का भीतर किनारा। हालांकि यहाँ पर एक रन जरूर मिला, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 35 रनों पर। 20 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी, 5 चौकों की जरूरत इस वक्त अंतिम 5 गेंदों में विजय के लिए एसएनबीसी को। और गेंदबाज चेतन एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और तस्वीर सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद तस्वीर के लिए नॉट क्वाइट मिडलिंग गेट, गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इसके साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 36 रनों पर। 36 for 6 नाउ, द लास्ट चांस नाउ इन फ्रंट ऑफ एसएनबीसी, 19 टू गेट फ्रॉम 4 डिलीवरीज। और गेंदबाज की ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग गेट, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी लास्ट चांस। 3 sixes रिक्वायर्ड इन द लास्ट 3 डिलीवरीज। 3 छक्कों की जरूरत है अंतिम 3 गेंदों में, और अंतिम अवकाश इस वक्त एसएनबीसी के बल्लेबाजों के सामने। और चेतन इस बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद उछालना चाहा, चूंकि शॉर्ट फाइन लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। 38 नाउ, वाइड इन फैक्ट 39 नाउ, स्टिल द लास्ट चांस रिमाइनिंग। 16 टू गेट फ्रॉम 3 डिलीवरीज। 2 sixes and a boundary required in the last 3 deliveries for victory for the batsmen of SNBC Bangalore. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। चेतन दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद टिप किया, गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन लॉन्ग ऑन फील्डर को बीट नहीं कर पाए, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा काफी उम्दा, काफी ऊंचा उछाला था, लेकिन लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची, और उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की। 39 रनों पर 7वां विकेट गिर चुका है। 39 for 7 and it looks like almost all over now for SNBC. If the bowler cannot bowl no ball or wides in the remaining last 2 deliveries. और चेतन विकेट प्राप्त कर चुके हैं। अब 16 रन चाहिए सिर्फ 2 गेंदों पर। 16 टू गेट फ्रॉम 2 डिलीवरीज। और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। 08 नंबर की जर्सी यहां पर पहने हुए सफवान नए बल्लेबाज। और गेंदबाज की गेंद बल्ले का भीतरी किनारा, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। 40 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। 15 टू गेट फ्रॉम लास्ट बॉल। 40 for the loss of 7 wickets. Now the present score for SNBC. The last ball of the innings is now coming up. दाहिना हाथ ओवर द विकेट, चेतन की गेंद। ये गेंद ऑफ द टोज खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिला, और 41 for the loss of 7 wickets finished by SNBC. And that's it for this match. 13 runs comprehensive victory for Friends Kuttar against SNBC in the inaugural match of BK Champions Trophy 2022, and with that victory they are through to the next round of this competition. So first match of this tournament ended just short while ago, and the second match starts within just short while between SFC Sankolige versus Team Roof Tech, and that match starts within just short while. Till then we are taking a short break, और एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Non-striker, jersey number, please. Please rotate. Non-striker. 77. Thank you. So welcome back for the match number 2 of this most prestigious BK Champions Trophy 2022. So Salma will going to start. We are talking about the BK Champions Trophy 2022 and proudly organized by Ashok Nagar Women's Wings Biruver Kudla in this most beautiful venue, UCG Cricket Ground, and all set now for the first over from the far end. Salman to Irshad. Irshad drives it unofficially but quite safely down to deep cow point region before the feeder from the deep extra run across to come back for the second chance of run out. Total misunderstanding between the wicket, costing a big wicket here. There is no understanding at all. That's why it's so important. The communication is very important. There is no loud calling between these two players. And that's why that run out has been taken place. Not a good start in the occasion for SFC. Sankuliga has lost their first wicket. Tried to steal the second run in the occasion, but probably there is a second run. There is no doubt at all. But partner is not responding. Now Irshad, little bit correction. Irshad is not responding for the second run and costing a big wicket of Sankuliga. The loss their first wicket at the score of 1. 1 for the loss of 1 wicket. After winning the toss, Rooftech captain elected to field first. And I think it's going to be a very good toss to win in a UCG cricket ground, especially when you're playing the small formidable game like 6 overs. I think each and every team, they're feeling comfortable rather than batting first. I think every team loves to chase the runs. Meanwhile, from the far end, Salman, very talented bowler for the side of Rooftech, bowling right arm over the wicket. Chip that one. Officially again, the ball is landed very safely between back point and cow point region. And straight away is off the mark. Prajwal is off the mark with a single. Scoreboard now 2 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Salman is a well reputed bowler in the region of Suratkal, Krishnapura, Chocobetu. Is a very talented young bowler, can produce a good overs, economical overs, line and length with some very good face. He can bowl, and that's why he's been chosen as a opening bowler. It's not an easy for any bowler to come and bowl in the power play overs. And Salman from the far end, Urban Omsand right arm over the wicket, balls the bowling. What we are talking about, the talent of this man. Once again beaten by the face as a batter tried to play improvising cricketing stroke, shoved across the line of the delivery, exposing his leg stump, and Salman quickly realizing this is the right time to pitch the ball on midline leg stump and beats the bat off the batter, and wicket number 2 of Sankuliga is back into pavilion. They are really deep in trouble now. Lost 2 wickets in the first over itself and needed some very good partnership. Some sensible batting is badly required here for SFC Sankuliga if they wanted to win the match. 2 wickets fallen for just 2 runs in the over number first in progress. For the latecomers, you are watching match number 2 of day number 1 of this most prestigious BK Champions Trophy 2022. The day number which is belongs to local teams, non-ranking teams, and 12 teams are participating in this day number 1. And wait and see which team will going to qualify for the final of this PK Champions Trophy 2022. Meanwhile, Naushad came into middle from the far end, Urban Omsand. Bowler Salman bowls one more good delivery outside the run of off time. Of course, the width is offered, but the fact that Salman is getting some pace in his bowling, so that the batter could not get any timing behind that stroke. Missed it, back to bowler, and Salman bowls. This time just got over the top in that occasion. The mid-off fielder looks like once they were running back, he can able to take the catch, but ball landed between mid-off and long off, so that the batter has got the opportunity to cross off for a single. 3 for the loss of 2 wicket in the over number first in progress. From the Urban Ohms end, right arm over the wicket,
Again, sensible batting here from Naushad. Just push it Prajwal this time. Pushes that one down to mid-off region to rotate the strike. Good strategy when you lost the wicket. You have to look for some runs by rotating the strike, by saving the wickets. And now 4 for the loss of 2 wickets. Wonderful over is completed there by Salman. Just on 4 runs he conceded and just two wickets he picked up. That means he's just justifying the captain of captain of Roof Tech that he is a very suitable bowler to bowl the power play overs. Wait and see how many runs the big 5 runs SFC will going to get in the remaining 5 overs. The partnership is much required here for SFC. If they wanted to win the match, at least they have to get 45 to 50 runs. Safwan. So from the commentary box, and Safwan brought into attack. Safwan with the short run up as umpire Roland Pinto. Short mid-off, short extra cover, backup point. There is a gully, short third man, short square leg. In fact, it's no fine. It's a little bit square between square leg and fine leg. And beautifully bowled. Excellent, right on the money. And right on the money in the delegation there from Safwan. Needed such kind of bowler when you were bowling in the power play overs. You need to have picked the bowler who can bowl with the good line and length along with the carpet. That ball is coming into the batter, and Prajwal giving full respect to that one, played that one copybook style of defensive stroke, and there is no chance of any run at all. Right arm over the wicket. Quite unorthodox kind of cricketing stroke. Maybe the Prajwal is thinking about to play that one down to third man region, but seeing that ball very difficult to play that such kind of cricketing strokes. But just he went with the stroke, so just pushes that one down to short cover point region for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 5 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd in progress. Now fielder from a deep extra cover, just coming inside the ring. Very interested to see that the 2 fielders outside the circle here. One at deep backward square leg and deep mid wicket. There is no fielder in front of a wicket in the deep. What long? There is no long off. There is no long off. So again the batter back Naushad having some conversation with umpire Roland Pinto. Then he's back to his position facing Safwan. Right arm over the wicket, third time in this over with a short run up. Naushad. Beautifully bowled, excellent delivery. Change of pace, change of line in the negation. Again, extra pace, ball by extra pace. With the extra pace, Safwan ball that outside the line of off stump. Again, a batter away from his body, tried to cut that one. Missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run. So far, it's outstanding bowling performance by the 2 opening bowlers of Roof Tech. This time, appeal for leg before wicket. Flum, no doubt at all. It's absolutely Flum in front of wicket. Naushad tried to play the reverse whip, but the line is so good in that occasion. Ball is nipped back, jagging back into the batsman, and back leg of the right-handed batsman right in front of a middle stump. No hesitation at all. Flum in front of wicket, and Roof Tech once again strikes. The Safwan bowls a beautiful delivery in the occasion. The 5 for the loss of 3 wicket. SFC Sankolige. SFC Sankolige. Of course, maybe they are. It looks like the first time they are playing here in UCG cricket ground. Lack of experience. We can see straight away in the players of Sankolige. Just the beginning here
for SFC Sankulige. They got some good players in the side. The youngsters are talented, but experience is so important, and hopefully they will going to take a lot of positive things in this particular Champions Trophy. Even though they first time they are trying their level best to give some positive start here, but so far Rooftech bowlers dominating in this particular match, especially the two opening bowlers are really going after the batters of SFC Sankulige. 5 for the loss of 3 wicket in the over numbers, second in progress. Salman bowls the first over, the tidy first over, 4 runs and 2 wickets. Then after getting some inspiration from Salman, Safwan will really got start from the second over as well. So new batter Niaz bowling away from us. Right arm over the wicket balls, going for the cut shot again, away from the body. Again the Safwan getting a lot of pace in his bowling. And both very young talented bowlers of Rooftech are really giving some problem here for the batter of SFC Sankulige. The runs are very hard to combine, wickets are tumbling. Altogether Rooftech really going after the batters of SFC Sankulige. Oh my goodness, bat handle in the hands of the batter at the same time. He has to go back to pavilion in the form of run out. It's a, if instead of hitting the ball very hard, he hits the ball and he on the ground in simultaneously same time, and the broken bat double blow in one delivery. The one is a wicket is back into pavilion. At the same time he lost his bat as well. The double blow in one delivery. Frustration for any batters when they're really the broken handle try to hit the ball pretty hard on the offside region, and unfortunately is back into pavilion along with this broken bat. 5 for the loss of 4 wicket. And look at that one in replay, just like I'm mentioning about how hard that batter tried to hit the ball, and while you're hitting the ball pretty hard, if you miss the ball, then all the chances that the ball hitting the bat hitting the ground and just handle in the hands of the batsman, and is back into pavilion in the form of run out as well. So disaster start here for SFC Sankulige. 5 for the loss of 4 wicket after winning the toss, selected to field first. I think the captain of Rooftech, Nakis, must be pleased with the performance of his boys. The first 2 overs they bowled very well. The 5 for the loss of 4 wicket. Owner come captain of Rooftech, Nakis, try to build up some talents from the areas of Krishnapura, Suratkal, giving a lot of support for the cricket. A very fascinating man. He's very passionate as far as cricket is concerned. He's following the cricket there a lot, and try to give bring the talent, try to bring the talent from that area, and especially in playing in a UCG cricket ground with the tournaments like this. They're looking for the second once again. No understanding at all. One more wicket is back into pavilion. What really going on here? It's a competition between run and wicket here in the scoreboard. They got only 6 runs and they lost 5 wickets back into pavilion. That means so wicket number 5 is back into pavilion. That shows the inexperience. That's what I'm mentioning about. The first time appearing in UCG cricket ground. The first time they're taking part in this big tournament. And lack of experience we can see in the face and in the performance as well of the batters. The jersey number 19 came into middle after the dismissal of wicket number 5. The Prajwal is still there in the middle, came as a number 3 batsman. He's batting on 4, but just is a spectator watching from other end. The wickets are tumbling. This time chance here for the fielder, but just short of that fielder, short third man. Prajwal tried to give the direction towards a deep third man division by playing the switch it, but unfortunately for that fielder, his ball little bit is standing in the edge of the circle, not really very close to that catch. After one bounce he collected, and ample time for the batter to complete the single. 7 for the loss of 5 wicket. Salman, very successful bowler, got 2 wickets in the previous over.
One run out taken place in this over as well from the urban homes end. Right arm over the wicket, he bounce. This time lofted that one quite beautifully towards the deep long, but not enough power in that shot. Just a single for Farooq. Is off the mark with the single. With that single, scoreboard now moves on to 8 on the board for the loss of a 5 wicket in the over number 3 in progress. So far, it's a very quiet cricket is going on here. The wickets are tumbling, runs are not coming as Salman bowls. Right above the wicket. That was a good cricket there from Prajwal that swept that one by closing the face of his bat and picked up a single down the deep square region. With that single, scoreboard moves on to 8 on the board, 9 on the board for the loss of 5 wicket in the over number 3 in progress. Very bright and sunny morning out here in UCG cricket ground. Perfect condition for the cricket as Salman bowls. Beautifully bowled. And that ball's really hurried down to the batsman in that occasion. He tried to play that one in the offside and tried to cut that one away from his body. Luckily got a bat onto that. And one more addition to total. Very hard combined 10 runs here for SFC. 10 for the loss of 5 wickets. Salman from the far end. Bowls down the leg stump, going to be a wide. One more addition to total in the form of extra. The match number 3 of the day number 1 will be played between Kudroli Young Boys, led by correction, New Star Kunjatur versus Sarvagni Urva. So that I request both the teams captain and the players, please get ready for the next match. This time direct, it's going to be one more wicket here. It's a 4th run out taken place out of that 6 wickets. That's the 4th run out. That shows the SFC Sankoliga, the batters, as really not having any understanding between the wicket. And they lost the wicket number 6 at the score of 12. And it's really a disaster for SFC Sankoliga. They lost wicket number 6 as well. The new batter is slowly walking towards middle is Samir, the very experienced player. Samir, he represented Hanuman cricketers for 5 to 10 years. Even he represented Hanuman cricketers Masters Trophy in UFC. Masters Trophy is a very experienced camp and can contribute from the bat as well. But position is not good here, so that Samir have to perform from his bat, and he's representing his home team. 11 for the loss of 6 wicket. Wait and see how well they will go and come out from the trouble. Needed some brave batting here for Sankolik if they wanted to get some good scores. So before the next over will go into commence, it's time to ask Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. धन्यवाद सतीश. So it's 11 for the loss of 6 wicket after completion of 3 overs. The disaster continuing here for the batsmen of SFC Sankoliga. और जहां तक सवाल है एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का, तो कम से कम 30 से 35 रन इन बचे हुए 3 ओवर में बटोरने होंगे SFC Sankoliga को, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो. लेकिन यहां पर द क्वेश्चन स्टैंड्स नाउ इन फ्रंट ऑफ देम. सवाल यह उठता है कि वहां पर विकेटें बाकी हैं सिर्फ 4, और देखना यह है कि इन बचे हुए 4 विकेटों की मदद से वो किस तरीके की रणनीति के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हैं. और जुनैद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से, और चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता है. स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार प्रज्वल, जो कि नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर उतरे थे, यहां पर अभी भी डटे हुए. हालांकि वो गवा रहे हैं, उनके सामने 4 विकेटें जो गिरे हैं, और यहां पर एक छोड़ पर वो डटे हुए पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद को इस वक्त खेलना चाहता ऑफ साइड पर, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. ऑफ कटर गेंद, पैरों पर टकराई गेंद, कुछ हद तक लाइन के बाहर टिप्पा खाती हुई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची. आई थिंक इसी को पैड ऑन दैट, बल्ले का भीतरी किनारा यहां पर टकराया था, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 12 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर. 12 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. गेंदबाज जुनैद एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. नए बल्लेबाज द नंबर 8 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. समीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद ऑफ कटर गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे आ चुके थे, लेकिन अपने दोनों हाथों से गेंद को दबोचने में असफल, और गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई, और यहां पर इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज 1 रन प्राप्त करते हुए 13 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर. देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन गेंद को लपकने में असफल. गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े
और यशस्वी तम्मा 1 रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रन 6 विकेट के नुकसान पर। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए। और जहां तक सवाल है करारे स्ट्रोक्स का, तो मैं कहूंगा इस वक्त करारे स्ट्रोक्स की जरूर है, कोशिश जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन यहां पर सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई और ऐसा कहना पड़ेगा। कुल मिलाकर एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज टीम रूफटेक के और गेंदबाज जुनैद एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ये गेंद चेप किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, क्लीन कलेक्शन लॉन्ग ऑफ पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 14 प्रोग्रेस। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, टॉप एज, मौका, एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। विकेट नंबर 7 गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा कि just wanted to play that one with a twisted bat and he paid the penalty for that. One more wicket fallen. It's 15 for the loss of 7 wickets and fourth over has been came to an end. 4 ओवर की समाप्ति 15 रन 7 विकेट के नुकसान पर। प्रेजेंट रन रेट के बारे में अगर कहा जाए तो exactly 3.75 the present run rate is now going on here for them. Still they got 3 wickets kept intact, 3 wickets they got in their hand. And in overall calculation it's going to be 2 overs in fact remaining in their innings. Or just talking about the next match, New Star Kunjatur will take over V4NEWS in the next match. The match number 3 of this tournament is now coming up live exclusively right after this match. In this tournament, that means in BK Champions Trophy 2022. और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो बल्लेबाज नंबर 2 जर्सी इस वक्त पहने हुए नजीर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज खादर जो कि ओपन होम्स की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। सुबह का वक्त धीरे धीरे वक्त गुजरते हुए दोपहर की ओर बढ़ता हुआ 11:05 बज चुके हैं और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप का कहर भी यहां पर बढ़ता नजर आता हुआ। सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छूता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैला चुका है और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक यहां पर इस मैदान पर करते हुए। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर टकराई, एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। समीर ने गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहा था लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे जा टकराई लेग स्टंप पर और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। नजीर की पारी समाप्त और 8वां विकेट गिर चुका है 15 रनों पर। सो डिजास्टर कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ एसएफसी संकोलिगे एंड नाउ इट्स 15 for 8 in the over number 5. So number 10 batsman is now coming out to the middle for SFC संकोलिगे। तो 2 विकेट इस वक्त सुरक्षित और पुनीत नंबर 10 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर मौजूद और वो इस वक्त सामना करेंगे खादर की गेंदों का और सिर्फ 2 विकेट इस वक्त बाकी और कुल मिलाकर 11 गेंदें अभी भी उनकी पारी में फेंके जाने और बाकी। V424/7 चैनल पर यह श्रृंखला लाइव टेलीकास्ट इस वक्त की जा रही है यूट्यूब के जरिए और अगली गेंद लेकर इस वक्त खादर बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद अंदर की ओर आती हुई प्लम्ब इन फ्रंट और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद लाइन पर टिप्पा करने के बाद एक्स्ट्रा क्विकर होती हुई अपने रफ्तार को वृद्धि करते हुए आई थी और इससे पहले की गेंद पर अपना बल्ला अड़ाया, गेंद उनके पैर पर टकराई और अंपायर विवेक को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। प्लम्ब इन फ्रंट पगबाधा लेग बिफोर विकेट के रूप में 9वां विकेट यहां पर गिर चुका है 15 रनों के ऊपर। इट्स 15 for 9 एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 11 बैट्समैन। तो यहां पर 2 विकेट गिर चुके हैं 2 गेंदों पर और खादर के लिए यहां पर हैट्रिक का मौका जरूर है और देखना यह है कि नंबर 11 जो बल्लेबाज अशरफ यहां पर उतर रहे हैं मैदान पर, क्या वो खादर का हैट्रिक रोक पाते हैं या नहीं। तो ताश के पत्तों की तरह यहां पर विकेट गिरते हुए एसएफसी संकोलिगे के लिए और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए रूफटेक के गेंदबाज। So the hat-trick ball comes from Khader to Ashraf और अशरफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अंपायर से गार्ड लेते हुए। 10 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में। Still 10 balls remaining in their innings.
और कादर इस वक्त तैयार हैट्रिक गेंद लेकर बाएं हाथ राउंड द विकेट स्वीप करना चाहा प्लम्ब इन फ्रंट एंड ही गॉट द हैट्रिक, ही गॉट द हैट्रिक। और इसी के साथ इस श्रृंखला का पहला हैट्रिक मेरे ख्याल से वो लेने में सफल है। और एसएफसी संकोली की पारी सिमट गई सिर्फ 15 रनों पर उनके पारी के निर्धारित 9 गेंद पहले यानी 4.3 ओवर में। अब एक आसान सा लक्ष्य इस वक्त टीम रूफटेक के सामने 16 रनों का। जहां तक सवाल है रिक्वायर्ड रन रेट का तो एग्जैक्टली 2.66 runs per over they have to score for victory in their stipulated 6 overs. That means in 36 delivery is 16 runs, only 16 runs they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them and let's see can they reach the target or not. तो सब कुछ इस वक्त टीम रूफटेक के पक्ष में चलता हुआ और परिस्थिति को अगर अपने पक्ष में करना है तो ऐसा कहना पड़ेगा एसएफसी संकोली को एक घातक गेंदबाजी ही अब इस मैच में वापस ला सकती है। सिर्फ 16 रन बनाने टीम रूफटेक को और देखते हैं उनकी पारी में यहाँ पर क्या होता है। तो उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और राइट आफ्टर दी शॉर्ट ब्रेक एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ अंग्रेजी में जब टीम रूफटेक की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So welcome back once again with myself, in fact, and just 16 runs they have to score for victory in the stipulated 6 overs with a required run rate of exactly 2.66 runs per over with the help of 10 wickets, and their innings now going to start. और दोनों आरंभिक बल्लेबाज नकीज और इकबाल इस वक्त क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज इस वक्त हर्षित गेंदबाजी शुरू करते हुए। सिर्फ 16 रन बनाने हैं इस वक्त टीम रूफटेक को। देखते हैं उनकी पारी में क्या होता है। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिना तो ऊपर विकेट ड्राइव किया स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड इनटू द गैप, लेकिन मैं समझता हूं वहां पर प्रोटेक्शन रक्षणा मौजूद है और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। तो नकीज का खाता इस 1 रन के साथ खुल चुका है और रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है टीम रूफटेक के लिए। और जहां तक सवाल है एसएफसी संकोली का, जो जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, एक घातक गेंदबाजी ही मैजिकल बॉलिंग जिसे कहते हैं ही उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है। और उस
मैजिकल बॉलिंग की तलाश में गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हर्षित, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहता लेकिन गेंद गई बैक टू द बॉलर की दिशा में और रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 1 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर गेंदबाज एक बार फिर से हर्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इकबाल के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर ऑफ कटर गेंद अंदर की ओर आती हुई कुछ ज्यादा घुमाव लेती हुई बल्लेबाज ने जितना एक्सपेक्टेशन पूर्वानुमान लगाया था उससे गेंद ज्यादा अंदर की ओर आई और गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए। बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची, रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और एक बार फिर से हर्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार चिप किया, एनफील्ड क्लियर करते हुए कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त हो गए। शायद चौका भी मिल सकता है, नहीं मिलेगा, 2 रन मिलेंगे और गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद जब तक फील्ड हो, चंद टिप्पों बाद डीप कवर पॉइंट फील्डर द्वारा एक लंबा दौड़ लगाने के बाद बल्लेबाज को 2 रन यहाँ पर मिल चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और हर्षित इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इकबाल इस वक्त सामना करते हुए गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता, गेंद ऑफ कटर गेंद थी, घुमाव लेकर अंदर की ओर आई और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। दाहिने हाथ ओवर द विकेट हर्षित एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, स्पेक्ट्रा वाइड और वाइड की इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 4 विदाउट लॉस। फैंटास्टिक विकेट टूर्नामेंट बिग चैंपियंस ट्रॉफी 2022 का दूसरा मैच का द्वितीयार्ध यहाँ पर प्रगति पर और टीम रूफटेक का पलड़ा यहाँ पर भारी लगता हुआ दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बीच हर्षित गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा हद तक बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट बैन पर और इसी के साथ द फर्स्ट ओवर इन Team Rooftek's innings came to an end. After first over, they made a steady start. In fact, they scored just 4 runs on the board after completion of first over. और सिर्फ 12 रन अब चाहिए उन्हें विजय के लिए और ओवर्स बाकी है इस वक्त 5। रिक्वायर्ड रन रेट अब उतर कर आ पहुंचा है 2.40 रन प्रति ओवर। सर्व 10 विकेट सुरक्षित और लक्ष्य काफी आसान इस वक्त नजर आता हुआ। तो अर्बन होम्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए वेरी गुड 25 नंबर जर्सी, 25 नंबर के जर्सी पहने हुए गेंदबाज अशरफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और दूसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ उनकी पारी में। दूसरा पावर प्ले ओवर, केवल 2 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, 7 फील्डर 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट, शॉर्ट थर्ड बैट, शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ये गेंद उछालना चाहा, फ्लाइटेड गेंद थी, लगभग बल्ले के अति निकट गेंद टिप्पा खाई और गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 4 रन बिना किसी नुकसान के। नकीज सामना करने के लिए तैयार इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और ये गेंद अच्छी गेंद थी, शॉर्ट थर्ड बैन पर रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके इस वक्त नकीज है जो कि खुद कप्तान है रूफ टेक के, इस वक्त क्रीज पर मौजूद और एक बार फिर से वो गेंद का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ तो ऊपर द विकेट, अंपायर विवेक वहां पर इशारा करते हुए डीप फाइन लेग की दिशा में, शायद कोई मैदान के अंदर दाखिल हुआ है, उन्हें बाहर भेजने को कहते हुए और खेल एक बार फिर से आगे यहां पर बढ़ता हुआ अर्बन होम सेट की ओर से गेंदबाज की गेंद फुल टॉस, गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए नकीज है लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला। गेंद अपने हाथों से विकेट इस वक्त उखाड़े थे गेंदबाज ने। अगर निशाना सही बैठता, डायरेक्ट हिट बैठता तो निश्चित रूप से यहां पर खतरा हो सकता था बल्लेबाज के लिए, लेकिन कोई क्षति नहीं। 1 रन का इजाफा, 5 एक ओवर की समाप्ति होने के बाद दूसरे ओवर की प्रगति पर इस वक्त स्कोर बोर्ड है टीम रूफटेक का। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है। अगर क्रीज पर टिके रहते हैं अगले चंद ओवर में तो आसानी के साथ लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं अगर स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं तो। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर टिकने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए और अंपायर विकेटों को सही करने के बाद एक बार फिर से तैयार अशरफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट ऑफ स्टंप से काफी बाहर नहीं, गेंद को रोका गया 20 गज के दायरे के अंदर।
1+1 2 रन एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के 7 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। सिर्फ 9 रनों की और दरकार और उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। तख्ता काफी हद तक भारी लगता हुआ टीम रूफटेक का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट अशरफ की गेंद। ये गेंद फ्लाइट एंड उछाला लंबॉन की दिशा में लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। इसी रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 8 रनों पर माफ कीजिए बिना किसी नुकसान के। इट्स 8 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। दर्शक कुछ ज्यादा यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं मैदान के इर्द गिर्द, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसे जैसा वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। पैरों पर टकराई और कुछ हद तक ऑफसाइड से बाहर की ओर निकलती हुई और अपील को नकार दिया सही तरीके से अंपायर विवेक ने। और इसी के साथ स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर। 8 रन बन चुके हैं, 8 रन और चाहिए और 4 ओवर का खेल इस ओवर के बाद और खेला जाना बाकी उनकी पारी में। गेंदबाज अशरफ एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इकबाल इस वक्त सामना करते हैं। फुल टॉस, बल्ले का बाहरी किनारा, फाइन गेंद निकल चुकी है। गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, कम से कम 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे और बल्लेबाज काफी तेज और डेंजर एंड की ओर पहुंचते हुए इससे पहले कि थ्रो पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर। इट्स 10 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। इनफैक्ट इट्स 2 ओवर्स कंप्लीटेड। 2 ओवर की समाप्ति और 10 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। ऐसा कहना पड़ेगा दे आर लुकिंग इन ए कमांडिंग सिचुएशन। और next match will be the third match of this tournament is now coming up live and exclusively right in front of you right after this match between New Star Kunjatur versus Sarvagni Urva, and because of that I request once again to the both teams players to please get ready for the next match। कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहें। तो तीसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ और धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर अग्रसर होता हुआ टीम रूफटेक। 6 रन सिर्फ चाहिए विजय के। जस्ट 6 टू गेट इन रिमेनिंग 4 overs and the asking run rate is now coming down to 1.5 runs per over। फारूक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार नकीज और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी 5 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात कर चुके हैं कप्तान एसएफसी संकोलिगे के। और ओवर की पहली गेंद लेकर फारूक इस वक्त तैयार। 24 गेंदें बाकी हैं, 6 रन चाहिए सिर्फ विजय के लिए। और दाहिने हाथ ओवर द विकेट फारूक की ओवर की पहली गेंद। अच्छी गेंद, गेंद ऑन साइड पर झाड़ पोंछ कर मोड़ना चाहता, गेंद पहुंची इस वक्त लगभग बल्ले के निचले किनारे पर टकराने के बाद लंगोन पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इट्स 11 विदाउट लॉस इन द एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। इनफैक्ट 5 रन सिर्फ चाहिए विजय के लिए। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए फील्डर गेंदबाज कहना पड़ेगा और अपनी ओर के अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। हवा का रुख काफी धीमा, मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त हवा गुजरते हुए और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद तक पहुंचे, गेंद पर बल्ला आया हवे में जरूर, लेकिन मिड ऑफ फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद इस वक्त निकल चुकी है और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। इट्स 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। जस्ट 4 टू गेट नाउ। और फारूक इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद स्विंग किया मिड विकेट पर और इस कैच को वहां पर लपक लिया गया है। ऐसा कहना पड़ेगा द प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी। और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा के पास खड़े हुए फील्डर को। हालांकि उन्हें 3-4 कदम दौड़ जरूर लगानी पड़ी थी आगे की ओर, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और गेंद को एक बेहतर जजमेंट के साथ लपक लिया और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। नकीज की पारी समाप्त, 12 रनों पर पहला विकेट
7 wickets comprehensive victory for Team Rooftech defeating SFC Sankolige, and with that victory they are through to the next round of this competition. So the next match will be played between New Star Kunjatur versus Sarvagni Urva, and that match starts with just a while. Till then we are taking a short break. एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू.
Over the wicket to Nazir. Nazir is on left, went for the big shot, got a top edge. Pradeep is underneath it. He takes a catch, comfortable catch. Little bit catching practice here for the short extra court fielder. Nazir looking for some expansive drive on the offside region. Didn't got timing in that stroke. He played that one away from his body, and he pays the penalty for that. The wicket number first is back into pavilion of Kunjaturu. New star Kunjaturu lost their the big wicket, the wicket of Nazir. Nazir Tirugoli is back into pavilion. 6 for the loss of 1 wicket. So coming back to this tournament, of course, for the latecomers, you're watching a match number 3 of this day, number 1 of this prestigious BK Champions Trophy 2022, and a lot of cricketing action. Actually, this really the festival of underarm cricket this month and next month. Lot of busy schedules, lot of big tournaments will be played, not only in UCG cricket but outside the ground as well. Now, just the number 46 came into middle. Zabir is one of the best striker of the ball as far as in Kasaragod district is concerned. Is a well reputed name, Zagir, in underarm cricket. A very good striker of the ball as came into middle. It's a very good over there from Sistan. It's bowled very well, as he bowled a very quiet over. Not an easy job to come and bowl in this condition when the power play is on. The fielding restriction is on. When you're bowling against the potential of Pradeep and Nazir Chergoli, I think they bowled very well. Six for the loss of 1 wicket. We are talking about cricketing action. Lot of cricketing action is coming up after this. The 3rd, 4th and 6th, there will be a Yuvaratna Trophy coming up in this UCG cricket ground. And even JD Boys Bantwal organizing one more big tournament at Bantwal SVS cricket ground. That the 5th and 6th, and there's a day and night match will be organized by JD Boys Bantwal. And a lot more cricketing action will coming back, that the upcoming cricket tournaments after the break, after the little bit after this over. So from the far end, it's going to be Ajay brought into attack from Urban Homes and bowls a right arm over the wicket past umpire Arish Padilla. Oh, beautiful delivery. That was a perfect one. Excellent leg cutter there from Ajay there, just forcing the batsman to come forward to try to reach the pitch of the delivery. Missed it completely. The wicketkeeper behind the stump did the rest, and there's no chance of any run. Ajay from the far end, right arm over the wicket bowls. Beautiful leg cutter in the engagement across the line. Swing is bad. Good piece of fielding there by the fielder, but not quite able to stop the single from these two batters. Pradeep this time is very quick between the wicket, and they complete that quick single. 7 for the loss of 1 wicket. Sarvagnirwa, they got a very good fielding unit as well. Very young talented players in the side. Some players of Hanuman cricketers representing Sarvagni cricketers. Ajay is the one who represent Hanuman cricketers in 30 overs format of games. Even Vijay at backward point. One more player from Hanuman cricketers. The 7 for the loss of 1 wicket. From the far end, Ajay. Right arm over the wicket to Pradeep. Beautifully bowled. Quicker one compared to the previous one, which is offered, but Pradeep a little bit late to react to that extra cover drive and mistiming that one, and there's no chance of any run at all. 7 for the loss of 1 wicket. Pradeep, who represent Sai Namana Kasaragod, usually his home team, as Sai Namana is not representing for this tournament. He is representing New star Kunjaturu, just strengthening the batting department. There's the beautifully bowled, excellent delivery, beaten by the face. A slow leg cutter again there from Ajay there. Got an inside edge of the bat in the occasion. Pradeep right across the line of the delivery, tried to swing that one, but he had to wait for the ball. Just looks like that was a fantastic leg cutter again from Ajay. The defeats the bat of Pradeep. 8 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Ajay again. From the urban and appeal for leg before wicket. Now umpire Arish Patel already given 1 or 2 times warning for Ajay that is coming right in front of him. So very difficult to give the leg before wicket. But this is a fantastic delivery, I must say. That ball is really coming into the batsman. As the batsman tried to play the reverse strokes, missed it completely, and umpire says I can't see anything.
so that the position is going in favor of the batter. Beautifully bowled. Excellent change of phase and line. That was a clever piece of bowling and excellent over from Ajay. It's not an easy job to come and bowl in this condition. The power play is on, and Ajay did a great job here. The 2 overs completed, completion of 2 overs, searching for the right track. And the new star Kunjatur still struggling to get run rate here. 9 on the board, 4.5 runs per over. The run rate progressing for Kunjaturu. 6 over format of game. Now 4 overs remaining. After that, 2 over of the power play. Fielding restriction is off. And third over, the one more talented bowler Vijay came into ball from the commentary box, and Vijay will go into ball right arm over the wicket to the right-hander batsman Zabir. Zabir has got a nickname of McCallum, as he is famously known as the McCallum of Kasaragod district for his very hard-hitting cricketing strokes, Zabir. But so far, the bowlers of 2 opening bowlers are really bowled very well for Sarvagni cricketer Surva. Now fielding set, short fine leg. There is no field in the deep fine leg, but one fielder at deep backward square leg. There is a deep mid wicket. There is a mid short mid wicket. Deep long on, deep long off, deep extra cover. There is short extra cover, backward point, and that's the field set here for the bowling of Vijay. Vijay bowling away from us. Right arm over the wicket bounce. That's went for the reverse stroke. This it completely. Wicket keeper fails to collect the ball, and a lucky run here for Kunjaturu. They got a single in the form of a by single by Vivek and Harish Padil, the field umpires here for this match. 10 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Now deep cow point fielder coming inside the ring. One fielder from the short gully region going back to deep gully. Only because of Pradeep is a very good striker of the ball as far as the reverse stroke is concerned. So he's got a protection in the deep, in the third man. Vijay balls outside run off stump and too far. So wide call by umpire, rightly so. 11 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Pradeep also is a very good striker of the ball, very good opening batsman. Going to face Vijay. Right arm over the wicket. Vijay balls again. That ball outside the line of off stump, and it's come the bat. It's got inside edge of the bat. I think so. Yes, it is. So that no signal coming from umpire. 12 for the loss of 1 wicket. Vijay with a short run up. Bowls again. He's struggling today as the line and length is concerned. He tried to bowl away from the bat of the batter. So by doing that, he's not really able to control his line and length. That was a line. That was a really great line to bowl. But this time Zabir tried to play across the line of the delivery, swinging his bat, missed it completely, and there is no possibility of any run. The protection is there in the deep backward square and mid wicket and deep long on for Vijay. Oh, beautifully ball, change of phase, a slower one, negotiated very well by Zabir, picked that slower one very well. They're going for the second as well. Chance of run out, it's a suicider. This is absolutely a suicider because there is no chance of second run at all. Pradeep is running towards danger end. Throw is not good enough, but it's good enough to make the run out in the striker's end. So wicket number 2 is back into pavilion of Kunjaturu. They are 14 for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. So far, it's a very good toss to win here for the captain of Sarvagni cricketer Surva. They really put some pressure onto the batters. Not only they contained the runs, but even they picked up wickets. Shamshid is the new batter
He's a very good striker of the ball. The left-hand batsman is came into middle here. A lot of responsibility. He's a very good striker of the ball, I must say. He's got a variety of strokes. And now I think he has to build the innings along with Pradeep. Two very, very experienced campaigner for the side. Have to play as for the condition required. The 14 for the loss of 2 wickets. Sarvagni cricketers looking pretty good after winning the toss. Elected to field first. Everything is going in their favour. Vijay now changing angle, coming round the wicket, down the leg stump, going for the big shot. I think it's the problem whenever the left and right combination. It's a very good line for the right-hander batter, but the fact that Shamshid is a left-hander batsman, the bowler has to change his line. That's the problem when you're having a left and right combination. And now 1 + 1, 2 more to the total scoreboard, moves on to 16 for the loss of 2 wicket. That brings Pradeep into strike now. Facing Vijay. Away from us. Right arm over the wicket and loose strokes. This time he couldn't manage to control that stroke. In the Pradeep tried to go for the big shot on the offside. Lofted drive. Didn't control over that one. Got a top edge. Landed very safely between a deep extra cover and extra cover region. And ample time for the batters to complete the single. 17 for the loss of 2 wicket. Slower one there from Vijay. That's why the batter couldn't manage to get the timing behind that lofted stroke. Shamshid back on strike now. Facing Vijay. Just slashing that one outside and on a off stump. Again, timing is not perfection in the occasion. Picked up a single down to backward point region. One more addition to total. So over number 3 completed. After completion of over number 3, it's 18 for the loss of 2 wicket. And the new star Kunjatur trying to get some good big score. But this is a better over compared to last 2 overs. In that over, they got some runs in the form of extras. And now run rate is exactly 6 runs per over. Wait and see, having 8 wickets in hand, 18 balls to spare. Wait and see new star Kunjatur, how well they manage to get some good score. Before the next show will going to commence, it's time to ask Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. And Gopi, it's a slow start. Sarvagni cricketers won the toss, elected to field first. And the 2 overs which really belongs to the fielding team. And even the last over, they got some extras. But still, I think Sarvagni cricketers are in top as far as the batting department of Kunjatur is concerned. They got a very good batting department. Against their batting department, this 18 runs, I think, are not a bad score for Sarvagni cricketers. They bowled very well, isn't it? बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, पहले 3 ओवर में हालांकि 18 रन इस वक्त ज़रूर बने हैं, लेकिन 3 ओवर में 3 गेंदबाज जिन्होंने जो अब तक इस्तेमाल किए गए हैं, सुल्तान, अजय और विजय, तीनों ने बेहतर गेंदबाजी की है। और खासकर जहां तक सवाल है, पिछले ओवर में अजय ने कुछ रन जरूर प्रदान किए, माफी कीजिए, विजय ने जरूर रन कुछ प्रदान किए, लेकिन अभी भी सर्वाग्नि उर्वा 3 ओवर में काफी हद तक बेहतर गेंदबाजी कर चुका है। ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को खेल दिया। और मैं समझता हूं जहां तक सवाल है इस वक्त न्यू स्टार कुंजतूर का, तो इस वक्त इन बचे हुए 3 ओवर में उन्हें यहां पर बंधनों को तोड़ना है। जस्ट ब्रेकिंग द शैकल, जस्ट दे हैव टू ब्रेक द शैकल। और कुछ करारे स्ट्रोक्स इस वक्त लगाने होंगे उनके बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है। तो देखते हैं बचे हुए ओवर्स में उनकी पारी में क्या क्या होता है। और इस बीच चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है। अजय अपने दूसरा ओवर इस वक्त शुरू कर चुके हैं कहना पड़ेगा। एक गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रदीप। और फील्डिंग में जमावट करने के बाद अर्बन होम्स एंड की ओर से अजय इस वक्त गेंदबाजी करते हुए प्रदीप के लिए। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहता, लेकिन गेंद उनके बैक लेग पर टकराई। और इससे पहले कि शॉट स्क्वायर लेग पर जब तक विकेट कीपर द्वारा स्वयं गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। प्रदीप और शमशीर इस वक्त पारी की भागदौड़ को यहां पर संभाले हुए अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करने की पूरी कोशिश करते हुए। अजय इस वक्त तैयार, ये गेंद जमीन के सहारे अलोंग द कार्पेट, बिल्कुल बेहतर गेंद थी, कुछ हद तक तेज रफ्तार के साथ आई और गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, विकेट कीपर को वंचित करती हुई 22 के रूप में यह रन यहां पर जुट चुका है। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए। और जहां तक सवाल है चौके और छक्कों का कोशिश तो जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज न्यू स्टार कुंजतूर के, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। फ्लाइटेड गेंद को चिप किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाते हुए, और इससे पहले कि वाइड लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन अंतिम क्षण में थ्रो को रिसीव करने में इस वक्त असफल गेंदबाज। हालांकि वो थ्रो को ठीक तरह से कलेक्ट कर लेते तो निश्चित रूप से यहां पर खतरा हो सकता था रनआउट का, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों से चूकी और बल्लेबाज लगभग पिच के बीच तक आ गए थे। उन्होंने अपना दूसरा रन
आसानी के साथ यहाँ पर पूर्ण कर लिए। तो 23 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अजय एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रनों पर। अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा द बैट्समैन ऑफ न्यू स्टार कुंजतूर सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक, अभी भी अपनी सही राह को यहाँ पर तलाशते हुए एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए सर्वाग्नि उर्वा के गेंदबाज अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद पहुंची शॉर्ट फाइनल की दिशा में, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा बाई के रूप में और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड 4 ओवर्स हैव बीन बाउल्ड, 4 ओवर की समाप्ति 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच which will be coming up live exclusively right after this match between Kudroli Young Boys versus NFC Urva, and that match is now coming up live and exclusively right after this match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। तो जहाँ तक इस मैच का सवाल है 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में NFC कुंजतूर के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। गेंदबाज प्रशांत इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए, शमशीर सामना करने के लिए तैयार, शमशीर के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद, डीप मिड विकेट तैनात, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ काफी वाइडर एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के दरमियान इस वक्त मौजूद, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन इस वक्त मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त प्रशांत तैयार शमशीर के लिए। फील्डिंग में अभी भी जमावट यहाँ पर चलती हुई और प्रशांत ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज शमशीर इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी की गई थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को इस बीच नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट B424/7 चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब के जरिए और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आई, गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, रनों का खतरा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को थ्रो को रिसीव करने में असफल इस वक्त गेंदबाज, वरना निश्चित रूप से यहाँ पर नॉन स्ट्राइक रेट पर खतरा हो सकता था। तो बाई का ये रन जुट चुका है, जोखिम भरा रन यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज, एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है बिरवेर कुडला फ्रेंड्स बल्लाल बाग अशोक नगर वुमेन्स विंग ने, और ये श्रृंखला यहाँ पर एक शानदार प्रगति करते हुए इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का तीसरा मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ ए ग्रुप का, ए पोल का, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त प्रदीप ने गेंद को खेलना चाहा बैक टू द बॉलर की दिशा में, इस बार प्रदीप नहीं बच पाएंगे, सीधे गेंद पहुंची गेंदबाज की दिशा में और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने के बाद विकेटों पर निशाना उन्होंने दागा और निशाना बिल्कुल उनका सही बैठता हुआ, गिल्लियां बेल्स डिस्टर्ब होते हुए स्टंप्सों पर टकराने के बाद, और इसी के साथ ये प्रदीप की पारी पर पर्दा यहां पर गिर चुका है। 26 रन 3 विकेट के नुकसान में, 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5। स्टिल द बैट्समैन ऑफ न्यू स्टार कुंजतूर सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। दोपहर के 12 यहां पर बजते हुए धूप का कहर और गहरा यहां पर हो चुका है, और जहां तक का सवाल है सूरज का, तो सूरज लगभग आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है और अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और इस भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक जो कि काफी मात्रा में इस मैदान के चारों ओर मौजूद हैं वो भी इस भीषण गर्मी का एहसास इस वक्त करते हुए, और इस भीषण गर्मी तले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत यहां पर एक शानदार प्रगति करता हुआ गेंदबाज की गेंद इस बार चिप किया, गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर जाती हुई स्ट्रेट इनटू द रूफ ऑफ आवर कमेंटेटर बॉक्स, स्टैंड फॉर अ ह्यूज वन, इट्स अ बिग
शमशीर के बल्ले से ये छक्का लग चुका है और ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट वॉचिंग द लाइन ऑफ द बॉल, मैं देखना चाहूंगा, जस्ट लुक एट दिस ऑन रिप्ले, और देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उन्होंने उछाला था और मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया और गेंद सीधे कमेंटेटर बॉक्स के छत पर यहां पर जाकर गिर चुकी है 6 रनों के लिए। लंबा छक्का शमशीर के बल्ले से। ये गेंद एक बार फिर से जस्ट ट्राइंग टू रिपीट द सेम थिंग, नॉट सक्सीडेड दिस टाइम, और इससे पहले की गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका। पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक न्यू स्टार कुंजतूर की पारी में पिछले गेंद पर लग चुका है शमशीर के बल्ले से, और यहां पर स्कोरबोर्ड कुछ हद तक रन की गति में एक्सेलरेशन होता हुआ 33 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर, 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, प्रशांत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सूरज इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, बेहतर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, विकेट कीपर पहुंचे, गेंद को उन्होंने थ्रो भी किया, फील्ड करने के बाद शायद धनराज थे, और यहां पर जब तक थ्रो पहुंचे बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके थे। 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। कुल मिलाकर इस ओवर में 9 रन बने और एक बेहतर ओवर समाप्त हो चुका है अगर न्यू स्टार कुंजतूर के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए। 9 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर एंड 5 gone, and after 5 overs they are recovered a little bit after being a shackling start. It's 34 for the loss of 3 wicket and just a last over remaining in overall calculation in their innings. और जहां तक अगले मैच के बारे में जिक्र किया जाए, कुद्रोली यंग बॉयज विल टेक्स ओवर एनएफसी उरुवा इन द नेक्स्ट मैच एंड दैट मैच इज नाउ कमिंग अप लाइव एक्सक्लूसिवली राइट आफ्टर दिस मैच, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स ऑफ दिस टू टीम्स वंस अगेन टू प्लीज रिपोर्ट टू द स्टेज immediately to make a sign in the official chart. So the last over starts in एनएफसी कुंजतूर innings. अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ और 27 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज अर्बन होम्स एंड की ओर से गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। तो इस वक्त सुस्तान इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद थी गेंदबाज की और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 34 द स्कोर बोर्ड स्टेज है, जस्ट 5 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज सुल्तान इस बार एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, फील्डर काफी पीछे, लॉन्ग ऑन पर 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और थ्रो पहुंच चुका है विकेट कीपर के हाथों में लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। शमशीर नाउ बैक ऑन स्ट्राइक, काफी आत्मविश्वास पर इस वक्त नजर आते हुए वो छक्का जो कि झड़ने के बाद, और देखना यह है कि इस अंतिम ओवर में वो अपने टीम के लिए और कितने रन बटोर पाते हैं। और सुल्तान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज शमशीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, डीप बैकवर्ड स्कोर लेग, ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी इस वक्त तैनात, ठीक सीमा रेखा के पास, ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर तैनात, कोई डीप एक्स्ट्रा कवर नहीं इस वक्त। कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर, गली, मिड ऑफ, मिड विकेट और शॉर्ट फाइन लेग इस वक्त मौजूद 20 गज के दायरे के अंदर। तो डीप कवर पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर पॉइंट के बीच इस वक्त एक फील्डर को अब तैनात किया गया है और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद शमशीर के लिए, गेंद को खेला मिड विकेट की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका लेकिन यहां पर 1 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। अगर निशाना शमशों पर सही टकराता तो यहां पर शमशीर की पारी पर पर्दा गिर सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 1 रन मिला निशाना चूकने की वजह से और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 36 for the loss of 3 wicket in the over number 6 and the last in progress in their innings. Still 3 balls remaining. और गेंदबाज सुस्तान इस वक्त सूरज के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर मोड़ा है 4 रनों के लिए और नहीं, फ्लैट वर्जन, इट्स अ 6। फ्लैट वर्जन पर गेंद को उछाला था, मिड विकेट पर जो खड़े फील्डर खड़े हुए थे उन्हें हिलने तक का मौका नहीं दिया, ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड जिस अंग्रेजी में कहते हैं। और इस फ्लैट छक्के की बदौलत स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 42 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड सूरज लुकिंग वेरी एक्सप्लोसिव नाउ। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ये गेंद एक बार फिर से उछालना चाहा, ओह फाइन, इट्स गॉन फाइन, बीट द थर्ड मैन फील्डर और गेंद इस वक्त डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। गेंद में इतनी तेजी थी कि न सिर्फ बल्लेबाज को बल्कि विकेट कीपर को और शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर को भी बीट कर गई इस वक्त डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 46
और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार सुस्तान और न्यू स्टार कुंजतूर की पारी का अंतिम गेंद इस वक्त गेंदबाजी करते हुए द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप सुस्तान दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सूरज के लिए बोल्ड आउट उछालना चाहा बेहतर कम बैक slower delivery and he got the rid of the right-handed batsman Suraj and the innings is up and they finished well for a New Star Kunjatur after being a shackling start. They scored 46 for the loss of 4 wickets in their stipulated 6 overs and they set a victory target of 47 for Sarvagni Urva. तो सर्वाग्नि उर्वा के लिए 47 रनों का लक्ष्य इस वक्त न्यू स्टार कुंजतुर ने रखा है और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है 8 रन से कुछ नीचे उन्हें रन बनाने दैट मींस एग्जैक्टली कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 7.8 3 runs per over they have to score for victory and they have to score 47 in their stipulated 6 overs. That means in their stipulated 36 deliveries with the help of 10 wickets they have to score for victory. The present equation shows for them and let's see can they reach and let's see can they reach the target or not. Meantime the inning starts with Rija Shotwal. उनके पारी की शुरुआत चंद लम्हों बाद यहाँ पर होगी तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे खुद मेरे साथ जब यहाँ पर सर्वाग्नि उर्वा की पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल के बाद. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. राइट, वेलकम बैक वंस अगेन. 47 द टारगेट, 47 रनों का लक्ष्य और सर्वाग्नि उर्वा की पारी की शुरुआत यहां पर होती है. इनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज सुजीत और जयंत इस वक्त मौजूद और जहां तक स्ट्राइक का सवाल है तो सुजीत के पास इस वक्त स्ट्राइक मौजूद, जयंत नॉन स्ट्राइक रेंज पर और पावर प्ले का पहला ओवर यहां पर शुरू होता हुआ. धर्मा इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए न्यू स्टार कुंजतूर की ओर से और सर्वाग्नि उर्वा की पारी का पहली गेंद यहां पर धर्मा के द्वारा सुजीत के लिए. 47 रनों का लक्ष्य और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर हो चुकी है. पहली गेंद हल्के से पुश किया, इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर काफी पीछे मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. इससे पहले कि डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर अपने आगे की ओर आकर जब तक गेंद को फील्ड करे 10 से 12 कदम दौड़ते हुए अपने बाईं ओर
बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। सर्वाग्नि उर्वा का 1 रन 90 रन से नुकसान के। जयंत इस वक्त सामना करते हुए गेंदबाज धर्मा, ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त डीप कवर पॉइंट गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट प्ले दैट वन विद अ ट्विस्टेड बैट एंड फाइंड्स द गैप एज वेल बिटवीन अ पॉइंट एंड अ कवर पॉइंट। और बल्लेबाज को दौड़ लगाने के बावजूद इस गेंद तक पहुंचने का कोई मौका इस गेंद पर प्रदान नहीं किया बल्लेबाज ने। और जहां तक का सवाल है चौके का, तो चौका यहां पर जुड़ चुका है 5 रन बिना किसी नुकसान के। ऐसे ही एक बेहतर शुरुआत की यहां पर जरूरत था अगर सर्वाग्नि उर्वा को 47 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचना है। तो धर्मा इस वक्त तैयार, गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट, एक बार फिर से गेंद को निकाला खूबसूरती के साथ, लेकिन इस बार कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे क्योंकि स्ट्रोक्स में उतना ज्यादा रफ्तार नहीं था। और लंबा दौड़ लगाने के बाद डीप कवर पॉइंट और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर जब तक गेंद को वो फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। 7 रन 90 रन के नुकसान के। पहला ओवर यहां पर प्रगति पर निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है सर्वाग्नि उर्वा को अगर उन्हें एक इस 47 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है। तो धर्मा अर्बन होम्स की ओर से गेंदबाजी इस वक्त करते हुए गेंद स्वीप किया इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में, रनआउट का खतरा, लेकिन गेंदबाज इस वक्त खड़े हुए थे स्टंप्सों के आगे। अगर नॉन स्ट्राइक रेंज पर स्टंप्सों के पीछे वो खड़े रहते तो शायद थ्रो को रिसीव करने के बाद रनआउट करने का उन्हें मौका जरूर था, लेकिन वो खड़े थे स्टंप्सों के आगे तो इस वजह से वो थ्रो को रिसीव नहीं कर पाए और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 8 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर। सुजीत सामना करने के लिए तैयार। धर्मा की गेंदों का यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई बेहतर गेंद थी, कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद घोषित, सही निर्णय अंपायर द्वारा। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और धर्मा एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि गेंद लगभग उनके पैरों पर टकराने के बाद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया फील्डर द्वारा। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। सर्वाग्नि उर्वा अपने पहले ओवर के समाप्ति के बाद 47 रन उन्हें बनाने थे जब उन्होंने पारी की शुरुआत की थी निर्धारित 6 ओवर में। अब पहला ओवर उनकी पारी का समाप्त हो चुका और पहले ओवर के समाप्ति के बाद अपने रिक्वायर्ड रन रेट के अनुसार 8 रन यहां पर जोड़ चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 8 रन स्कोर्ड फॉर सर्वाग्नि उर्वा as far as the required run rate is concerned for them after completion of their first over. And still 39 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs. And the asking run rate is now coming down a little bit at 7.80 runs per over. तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए शमशीर और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जयंत के लिए। जहाँ तक शमशीर का सवाल है, बल्लेबाजी में उन्होंने एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था और देखना यह है कि अब गेंदबाजी में वो क्या करते हैं। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। जयंत जो कि एक चौका पिछले ओवर में झड़ चुके हैं, रिवर्स शॉट के जरिए यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार शमशीर की गेंदों का। शमशीर ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। मैच नंबर 4 का द्वितीयार्ध यहाँ पर प्रगति पर। यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त शॉट एक्स्ट्रा कवर पर। मैच नंबर 3 का द्वितीयार्ध यहाँ पर प्रगति पर कहना पड़ेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और शमशीर इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुजीत के लिए और बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। गेंद चिपकी है इस वक्त, लेकिन मैं समझता हूं गेंद सीमा रेखा को नहीं पार करेगी। लॉन्ग पर इस कैच को लपक लिया गया है फील्डर द्वारा। स्ट्रोक्स को खेला था जरूर, लेकिन मैं समझता हूं अगेंस्ट द विंड, हवा के रुख के खिलाफ स्ट्रोक को खेला था और काफी ऊंचा उछाला था। और देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। हैव अ लुक एट दिस वन। और गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के पास जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका और इसी के साथ यह पहला विकेट यहां पर खो चुका है सर्वाग्नि उर्वा। सुजीत की पारी समाप्त। शमशीर की गेंद पर लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा लपक लिए गए। 1 रन उन्होंने बनाए, 4 गेंदों का सामना किया और पहला विकेट यहां पर सर्वाग्नि उर्वा खो चुका है 9 रनों पर। इट्स 9 for 1।
तो नए बल्लेबाज द नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर सवाग्नी उर्वा। 33 नंबर की जर्सी पहने हुए अजय जो कि नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार जयंत, और गेंदबाज शमशीर अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, 4 रन मिलेंगे निश्चित रूप से। रिवर्स शॉट खेलने में माहिर जाने जाते हैं जयंत, और इस बार गेंद कुछ ज्यादा तक ऑप्शन से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गेंद की लाइन को पहले ही पढ़ लिया था। विद ट्विस्टेड बैट बल्ले को तिरछे अड़ाते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया। गली फील्डर की बाईं ओर से शायद गली फील्डर इस गेंद को रोक सकते थे, लेकिन जब तक वो झुके गेंद उनके वंचित करती हुई सीधे निकल चुकी थी। डीप बैक थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 13 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, और जयंत काफी आत्मविश्वास भरे यहां पर नजर आते हुए अब तक 2 चौका वो झड़ चुके हैं। अब गली फील्डर को पीछे भेज दिया गया है डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के पास, और शमशीर एक बार फिर से तैयार जयंत के लिए। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद, ये गेंद इस बार स्वीप किया बेहतरीन तरीके से, चौका नंबर 3 इस वक्त लग चुका है जयंत के बल्ले से। इस बार गेंद की तेजी को उन्होंने पहले ही पहचान लिया था, देखा कि गेंद मिडल लेग स्टंप पर है, देखिए किस तरीके से गेंद को स्वीप किया था, और खाली क्षेत्र चुनते हुए स्क्वायर लेग फील्डर की दाईं ओर से गेंद को निकाला खूबसूरती के साथ, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पास कोई फील्डर तैनात नहीं, और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा की दीवार पर टकराती हुई 4 रनों के लिए, और कुल रन संख्या बढ़कर 17 रनों पर पहुंच चुका है। जयंत धीरे धीरे खतरा बनते हुए इस वक्त न्यू स्टार कुंजतूर के लिए, और एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन वो यहां पर देते हुए अपनी टीम के लिए, सर्वाग्नी उर्वा के लिए। एक बार फिर से तैयार शमशीर की गेंदों का, यह गेंद इस बार उछालना चाहा इस वक्त लंगोन के ऊपर से, नॉट सक्सीडेड, गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, अंतिम क्षण में कुछ उछाल लेते हुए बल्ले को वंचित करती हुई गेंद निकली सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंदबाजी, और एक बार फिर से शमशीर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहता, नॉट क्वाइट मिडल गेट, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन से नहीं मिलेंगे। एक और बेहतर ओवर अगर सर्वाग्नी उर्वा के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 9 रन बने, पहले ओवर में 8 रन बने थे, कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट स्कोर्ड बाय सर्वाग्नी उर्वा, चेसिंग द विकेट टारगेट ऑफ 47 in 6 overs. Still they have to score 30 runs in remaining 24 deliveries, and the asking run rate now once again coming down a little bit at 7.50 runs per over, the required run rate for them at this situation. तो नया ओवर यहां पर शुरू होता हुआ, रियाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अर्बन होम्स की ओर से। रियाज एक जमाने में यंग फ्रेंड्स उर्वा का प्रतिनिधित्व किया करते थे, अब इस श्रृंखला में वो न्यू स्टार कुंजतूर की ओर से यहां पर खेलते हुए, फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए, 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात, डीप एक्स्ट्रा कवर पर थोड़े से पीछे जाते हुए फील्डर, और जहां तक सवाल है नई ओवर की पहली गेंद का, तो रियाज इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजय के लिए। तो अजय अपना पहली गेंद है यहां पर वो खेलते हुए, और तैयार रियाज, नई ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद चिप किया, लोगों पर मौका, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक इस वक्त खेला अजय ने, और भुगतान उन्हें करना पड़ा। अपनी पहली गेंद पर गेंद को उछालना चाहा सीमा रेखा के ऊपर से, लेकिन लंगो फील्डर द्वारा लपक लिए गए, और पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में उनका विकेट गिर चुका है 0 पर, और 17 रनों पर दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है सर्वाग्नी उर्वा। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स नाउ, एंड अजय आउट फॉर अ गोल्डन डक इन हिज वेरी फर्स्ट डिलीवरी। धनराज का आगमन होता हुआ नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से, और वो इस वक्त
स्ट्राइक रन पर मौजूद। जयंत एक छोड़ पर इस वक्त अटल है और उन्हें जरूरत है इस वक्त एक साथी की जो साझेदारी निभा सके। और देखना यह है कि धनराज जो कमी इस वक्त नजर आ रही है उनके सामने, उस कमी को यहां पर पूर्ण कर पाते हैं या नहीं। जयंत के साथ मिलकर अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और रियाज तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद फुल टॉस खूबसूरती के साथ निकाला है, डीप पकड़ा, थर्ड मैन सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ते हुए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद को पहचानते हुए अंतिम क्षण में बल्ले को तिरछा उड़ाते हुए स्कूप किया, एनफील्ड क्लियर करते हुए गली फील्डर के सिर के ऊपर से डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से गेंद बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ पहली गेंद पर धनराज का खाता खुल चुका है और कुल स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। निस्संदेह जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त सर्वाग्नि उर्वा को जरूरत है एक साझेदारी की, पार्टनरशिप की, और उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश इस वक्त करते हुए क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज। रियाज एक बार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद स्वीप किया इस वक्त बेहतरीन तरीके से डीप बैट्समैन की दिशा में लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर गेंद को रोकने में सफल रहे हैं और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त कर रखा। इस बार गेंद को फाइन न खेला था, ऑफ स्टंप से जैसे ही गेंद बाहर की ओर निकल रही थी गेंद की लाइन पर बल्ले को तिरछा उड़ाते हुए गेंद को खेल दिया शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर की दाईं ओर से डीप थर्ड मैन पर और काफी लंबा दौड़ डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर को लगाना पड़ा डीप थर्ड मैन सीमा रेखा तक पहुंचने के लिए। गेंद को वो रोकने में सफल रहे और 2 रन इस बीच धनराज प्राप्त करते। एक बार फिर से रिवर्स शॉट, लेकिन इस बार नॉट क्वाइट पिटलिंग इट, इन फैक्ट इट गेट्स ओनली अ सिंगल फॉर दैट। और इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रन। हालांकि विकेटें 2 गिर चुके हैं जरूर, लेकिन रन इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए सर्वाग्नि उर्वा के लिए। और रियाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा जयंत ने, गेंद को बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट करने में असफल। लग गेंद पहुंची गली की दिशा में, 1 रन का इजाफा। It's 25 now for the loss of 2 wicket. Runs are coming quite easily now for Sarvagni Urva at this situation, except they lost their 2 wickets. और रियाज अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को अजीब और गरीब ढंग से खेला, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर। रियाज इस वक्त जैसे ही गेंद पर वो धीमे गति से पहुंचे, धनराज ने दूसरा रन लेना चाहा था, लेकिन अंतिम क्षण में वो अपने निर्धार को उन्होंने बदल लिया और यहां पर कुल मिलाकर तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। So 3 overs completed, 26 for the loss of 2 wicket and 3 overs remaining in overall calculation, and the asking run rate is now coming down to exactly 7 runs per over. 21 to get from remaining 18 balls and still they got 8 wickets kept intact. और तख्ता इस वक्त भारी जरूर लग रहा है सर्वाग्नि उर्वा का, लेकिन मौका जरूर है न्यू स्टार कुंजतुर के गेंदबाजों को बाउंस बैक करने का। देखते हैं क्या होता है इन बचे हुए 3 ओवर में। इन रिमेनिंग इन दिस 3 overs, 21 to get from 18 deliveries and next over is now going to start with Rija Shotwal. अगला ओवर यहां पर शुरू होता हुआ और इससे पहले कि अगला ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में सतीश को। सतीश 18 गेंदे 21 रन। द मैच इज नाउ इक्वली बैलेंस्ड और मैं समझता हूं इस वक्त तख्ता कुछ हद तक जरूर भारी लग रहा है सर्वाग्नि उर्वा का, लेकिन कमबैक करने का मौका जरूर है न्यू स्टार कुंजतुर के लिए। 1 या 2 कसे हुए ओवर्स अगर उनके गेंदबाज करते हैं तो निस्संदेह यहां पर कमबैक कर सकते हैं। देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में क्या होता है। माइक्रोफोन पर आइए सतीश। So thank you very much, Gopi. I already mentioned before the start of this match, the Sarvagni cricketers, they're playing with their home condition. When you're playing your home condition, they're always going to be a favorite of winning this match. So far, I think is both the batters are really batted well. Even they lost 2 quick wickets, but these 2 batters are really performing very well from the bat. Especially the Giant hitting 3 boundaries, and looks like he's a man in form in the middle. Look at Dhanraj. He's a very good runner between the wicket. He wanted a second, desperately wanted a second, but I think now it's time for umpire to judge whether it was a run out or not. Third umpire Roland Pinto will going to give the decision here by getting some help from the technicians of V4/24/7. Of course, we have got a lot of technicians and I think the cameraman from the square angle will going to give a perfect position, and umpire Roland Pinto will go into judge whether it's out or not out. So it's a very good fielding there from the fielder in the square leg. Actually, he wanted a second, desperately wanted a second, but couldn't manage to. I think his partner is not really
responding a call from Dhanraj, and Dhanraj might be a little bit in trouble. Wait and see. So all now is eye on the third umpire edition. Of course, the fielding team, New Star Kunjathur, desperately wanted a wicket here, because if they wanted to back into this game, they needed some wicket. At the same time, Sarvagini cricketers doesn't want to lose this man, who's really performed very well from the bat so far for his team. He's batting on 9, and Jayant is looking pretty good in the middle. He is really performed very well from the bat. Hits two magnificent boundaries, and he's in the other end. So a lot of angles we are watching here, because sometimes it's very touch and go. It's going to be very difficult for even the third umpires to decide. Of course, everybody knows that technology is having advanced technology here, but still sometimes it's very difficult. When the dust is coming out, it's not that much of easy to find the line as well. So umpires are doing a good job here, along with the technicians, to get some good result. And we can see here is also, while watching this, I want to see whether the bat is in the air or not. That's what umpire have to see. While Dhanraj is try to drag his bat, well, it's going to be a grounded or not. That's what umpire have to see here, and he's taking his own time, because the cricket is talking about the gentleman's game, and it's a fair cricket. Have to give the fair edition as well. So far it's been outstanding cricket is going on here, and the first time in the history the women's are organizing the men's tournament. It's been outstanding, I must say. This is the first time in the history, especially in the UCC cricket ground. The first time they organize women's was organized cricket tournament for the men. So not out this edition coming from third umpire, and having a lot of angles, and seeing the angles, it looks like Dhanraj is home. The big relax here for the supporters of Sarvagini cricketers. They doesn't want to lose him, because he is the one who is a very good useful cricketer in this situation when it's a rotation of strike is required, and he's been a very busy customer along with Jayant. These two are really batting very well so far. 27 for the loss of 2 wicket. Dharma is a very good bowler. Dharma, one of the top bowler as far as in Kasaragod district is concerned. He's a very good performer from the ball, and now he has to justify why he's a number top bowler in the Kasaragod district. And Jayant will going to face Dharma. Right arm round the wicket. This time improvisation straight to the answer fields, but again look at the Dhanraj here. He is so quick. He is very quick indeed. Even the ball is went very quickly to the fielder at backward point region, but still he managed to complete the single. He is so very quick indeed. The little master running hard in the middle and completed that very quick single in the occasion. 28 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Dharma bowling away from us. Right arm round the wicket. This time improvisation, the protection there in the deep fine leg region, so have to settle for the single. Both the batters are really sensible batting in the middle. They're not really wasting a single delivery. They just wanted to rotate the strike, and they're playing as per the condition required. 29 for the loss of 2 wicket, and 47 is going to be a target. That means 18 more runs required for the victory. Here is next delivery, going to be wide. 1+1, it's going to be a bonus, absolutely bonus, and this is a big mistake. Under this condition, in this condition, if you allow the batter to get some extra runs, it's allow the opposition to come back strongly. 31 now for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. So looks like that both the batters are run very well between the wicket. Looks like a little bit tired in the middle as well. Not an easy afternoon, I must say. It's a very bright and sunny afternoon. Here is again Dharma bowls, improvisation by playing the reverse hip. Again, look at the running between the wicket. Both the batters has got a fantastic understanding between the wicket, so that no hesitation at all in the mind.
So they are crossing off for the single. So with that single, scoreboard moves on to 32 now for the loss of 2 wicket. 15 more runs required for the victory, and this is over number 4 in progress. Looks like the 14 balls remaining, they have to get 15 runs to win this match. The equation is looks to be favoring the chasing team, but cricket is, everybody knows, it's unpredictable game. This time, lovely shot there from Jayant, right in the gap, long chance here for the fielder. I don't think one fielder will going to cut it off. Yes, it does. The before, I think in between you can see the running between the wicket. The Giant crossed over for 3 valuable runs. Big round of applause coming from the dugout of Sarwag cricketers. Know exactly how important to get the 3 valuable runs. But umpire have to see whether it's a boundary or not. I think just inside the fence they're able to stop that one. They got 3 valuable runs, rightly so. And scoreboard moves on to 35 for the loss of 2 wickets. Now 12 runs required for the victory. 13 balls remaining, and umpire I request to be I request Ali David near the lorry. One ball agli, one ball. It's a please complete 1 hour after over one. So 35 for the loss of 2 wicket. I think it's definitely it's a very good looking reverse stroke coming from the blade of Giant, and he got a valuable 3 runs. That ball went right in the gap between a deep backward point and deep cover point, which is that huge gap. But a very good chase by the fielder, and just inside the fence he is able to stop that ball. And meanwhile both the batters are completed 3 valuable runs here, and 12 more runs required from 13 balls. Dharma looking for a dotted delivery, but Dhanraj so far has been outstanding, rotating the strike very well. This time edging it down to short term division, wait for the umpire signal. They're going for the single. It's from the bat. 1 more addition to total runs, so that means 11 required now. 11 required from last 2 overs for Sarvagni cricketers to register victory here. What a great match is going on now. Absolutely fantastic the match in front of the spectators out here in UCG cricket ground. Not only the spectators out here in UCG cricket ground enjoying the game of cricket, but through live telecast of V4 24/7, absolutely they got a fantastic live coverage, and each and every the viewers of YouTube enjoying the game of cricket of this day number 1 of this prestigious BK Champions Trophy, the proudly organized by Ashok Nagar Women's Wings, Biruver Kudla, under the great leadership of Uday Pujari, the founder president of Biruver Kudla, and of course Charan, SK, Trishant, all are done a hard work to make it possible in this UCG cricket ground. And tomorrow will go into the biggest day of cricket in this tournament, and day number 2 belongs to well qualified even Sunil Kumar of Biruver Kudla has done a great job to make this possible. The cricket tournament looks to be the 2 days cricket tournament, but 2 months of hard work is required to make this possible. And tomorrow what we're talking about, the ranking teams will go into clash. That's why tomorrow will be going the biggest day of this tournament. Then 8 top ranking teams are clashing for the title. This time, bowled him, cleaned him up. That's the one thing that I want to see in this last over. They're losing this man, Dhanraj, tried to play reverse sweep against a slower one there from Riaz, a very experienced campaigner for the side. He's got a very important breakthrough now. Equation looks to be little bit possibility. You can see that even for New Star Kunjattur, if they bowl well, they can win the match. 11 balls remaining, and they have to get 11 runs to win this match, and Riaz strikes in his first over. First delivery of the over number 5. Now, equation, 11 balls remaining, 11 runs required for the victory. New batter just walking towards the middle for Sarvagni cricketers. Just number 31, Karthik came into middle. And just a sensible batting required here for both the batters. Giant looking pretty good on the other end. He's in a non-striker's end. Desperately wanted to be in the strike. And Riaz, you know exactly the kind of over required here.
in this condition, they have to bowl very well. Riaz from the Urban Homes end. Right arm over the wicket. Lovely shot. Beautiful played on right in the gap. Towards a deep fine leg region. Protection there in the deep. The deep square leg fielder quickly run across towards his right. And the batters have to settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 37 for the loss of 3 wicket. Now 10 balls remaining. 10 runs required for the victory. No ball called by umpire. The 3 fielders behind the popping crease. This is what really not allowed as per the rules and regulation of the cricket is concerned. So this is really going to be disaster for New Star Kunjattur. They need to have some kind of the presence of mind, especially the fielders. Is know that if you keep 3 fielders behind the popping crease, then it's going to be a no ball. And the fielder is yes, is telling that yes, I did the mistakes. So that's what the sportsman spirit I have to see from the fielders. He's just telling the umpire, yes, I am in that. Of course, I'm standing behind the popping crease. So that is no ball called by umpire. So it's been a really disaster because they got extra deliveries, they got extra run, and more than that, they will going to get free hit delivery. Now, Jayant is on strike. He will going to face the free hit delivery from Riaz. Right arm over the wicket to Jayant. Jayant went for the big shot. Good bowling there from Riaz. Not really settled the batsman for the big shot. Just a single for Jayant. One more addition to total scoreboard moves on to 39 for the loss of 3 wicket. 8 runs required for the victory and 9 balls remaining. Now the run rate required is just coming down from 6 to 5.88 runs per over. Oh, lovely shot. Look at that, the placement. Excellent there from Karthik. They're looking for the second. Even better fielding by the fielder in the deep. And I think the fielder from the deep, the McCallum of New Star Kunjattur is fielded very well in the deep cover point region. And batter have to settle for the single. 47 required. 8 balls remaining. This time Jayant just tapping the ball in front of a bowler and he gets a single here. Riaz tried to make the run out in irrigation. Not an easy to turn back very quickly to hit the stumps in the non-striker's end. The Giant once again very quick in the irrigation. 41. Now 6 required for the victory. 2 balls remaining. 8 balls remaining. Little bit correction. Umpire, little bit correction. 7 ball remaining. 2 balls remaining. Little bit correction. 41 for the loss of 3 wicket. 8 balls remaining. And they have to get 6 runs for the victory. So Riaz desperately wanted 1 wicket. Desperately wanted 2 dotted deliveries. But so far Sarvagni cricketers are in a driver's seat of winning this match. Riaz bowls. Beautifully bowled. Beautifully bowled. That's one delivery they wanted to bowl. Riaz is so experienced campaigner who represented young friends for a long time. You know exactly the kind of the bowling required in the condition. Now 7 balls remaining. 6 runs required for the victory. Beautifully driven there by Karthik. Down to deep cover point region. He's so good in particular cricketing strokes. Any ball outside the line of off stump, he's so good to coming into the line of the delivery, getting the placement right. Now last over remaining of the innings of Sarvagni cricketers, and they have to get 5 runs for the victory. The New Star Kunjattur now needed one good bowler who can restrict the opposition from the 5 runs. Will it going to be possible? Of course, we are getting a lot of example, especially in this particular cricket ground. If it goes into the past, the history of in this USG cricket ground, he won 3, he won 2 runs are really restricted in the last over. So anything is possible in cricket. And everybody knows that the cricket is an unpredictable game. You can't say anything in cricket until you are getting your last runs for the victory, until the opposition bowling that last delivery of the innings. Wait and see. Nazir Chirugoli is brought into attack from the commentary box and is so experienced campaigner for the side of New Star Kunjattur. And now he has to justify that he is the better bowler to bowl that last over to restrict the 5 runs for the opposition. So Karthik looking pretty good so far. He came into middle batting on 3.
Now Nazir bowling the last and final over. 5 runs required for the victory for Sarvagni cricketers. Nazir bowls. Nicely turns that one down to square leg region, looking for the second. Karthik second coming for the second. In comes the throw. What a good running between the wicket, but not a good fielding there by the fielder, I must say. The fielder is not quick actually. You need to see the body language of the batters. When they completed single, they desperately wanted to come back for the second. But still, that fielder is not quick in the deep square leg region. And Karthik completed that couple of runs here. Excellent running between the wicket. He won better placement. Just soft and comes into play. And he got a very valuable couple of runs. Now 3 runs required for the victory. Nazir bowls. Beautifully played by Karthik. This time chance of run out again. Throw is not good enough. From Riaz down at backward point region. One more addition to total 45 for the loss of 3 wicket. Now a Giant back on strike. He is a fantastic today. Playing a sheet ankle roll to get those 47 runs. Now job is not yet over. Still they have to get another 2 runs to win the match from 4 deliveries. Oh, watching the ball till the last moment, saying that they're going for the run. Is it going to be a winning run or not? Unnecessary. Giants desperately wanted to complete this match and wanted to go back unbeaten, but unfortunately just 1 run required for the victory. He's back into pebble in the form of run out because Karthik wanted a single for that wide delivery. Fumble from wicketkeeper behind the stump, but Karthik is, I think, Giant is played a match winning knock. He will definitely going to get a round of applause, even standing ovation from his teammates, because he scored a valuable 23 runs in just 14 deliveries. Outstanding batting performance from Giant. Pradeep is a new batter, but I think he is in a non-striker's end. Karthik has got a chance here to get the winning runs. Still, the 3 deliveries left in this over. Again, nicely turns that one down to fine leg. It's going to be a winning run. Ball running down to deep fine leg boundary for 4. Now boundary signal by umpire Vivek, rightly so. So victory here for Sarvagni cricketers. Excellent performance, I must say, from Sarvagni Ruva. They defeated New Star Kunjattur, very formidable team, I must say. The Kunjattur came from Kerala, Kasaragod district, but even though they got some formidable batting, bowling department and batting department as well, but still they are not enough to stop the victory from Sarvagni cricketers. Sarvagni cricketers are really played an excellent game of cricket from the bat, from the ball, even better in the field as well. So thank you very much New Star Kunjattur to coming here to take part in this cricket tournament, and on behalf of organizer we would like to give special thanks to New Star Kunjattur. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು BK ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಫಾರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ BK ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ Ashok Nagar Women's Wings Biruver Kudla. We would like to give a special thanks for your represent. Thank you very much.
Here is an announcement. One more good news here for the cricket lovers. Team Bellurians Kannur proudly presenting Bellurians Trophy 2022. That tournament will be organized in coming 27, 28 and 1st of March, and that tournament will go into organize in Mazda ground Kannur, and winners will going to get 70,000 cash prize along with the Bellurians Trophy 2022, and runners will going to get 50,000 cash prize along with the runners of trophy. The interested team can enroll their name by paying entry fees of rupees 8,000, and there will be other individual prizes for man of the match, man of the series, and best batsman and best bowler. 27 and 28 February will be the match for the local selected 10 teams, and 1st March the Mangalore top 8 teams will go into play for Bellurians Trophy 2022. So warm welcome on behalf of the organizers for organizers of Bellurians Trophy 2022 by Team Bellurians Kannur. So Kudroli young boys So Kudroli young boys captain winning the toss against the NFC Urva, and they elected to field first, and we are talking about a lot of cricketing action. One more cricketing action in this USAG cricket ground in coming March 3 and 4th and 5th of March. There will be a Yuvaratna Trophy 2022. Team Fortune Mangalore presenting in memories of late power star Punit Rajkumar. The Underarm Cricket Tournament will be organized in this venue, Urva Cricket Ground. The winners will going to get 1 lakh cash prize along with the Yuvaratna Trophy 2022, and runners will going to get 50,000 cash prize along with the Yuvaratna Trophy 2022. So that's all about the upcoming tournaments. Now we are back to this match. As the Champions Trophy is going on here, the day number 1, and this is the match number 4 is going between Kudroli Young Boys versus NFC Urva. So from the commentary box, and Riaz going to ball right arm over the wicket, and first ball nicely driven right in the gap towards the deep mid wicket region. Running hard looking for the 2, but they're going against because that ball is straight away into the hands of deep mid wicket, and Tilak is off the mark with a single, and NFC Urva they're off the mark. They're off the mark, one without loss of any wicket. Just like Sarvagni Urva, NFC Urva also, they're playing with their home condition. These two teams has got a lot of match practices. They're having a lot of experience playing in this particular cricket ground. Even Kudroli Young Boys are a very better, very good records they got in this particular cricket ground. This time lofted, chance away for the fielder to take the catch, and Cow Point fielder takes the catch. This is a huge wicket. The Prajwal is trying to go after in the negation, looking for the expansive lofted try towards extra cover, not getting hold of that one properly. He got the top edge, and Cow Point fielder making no mistake at all, and Kudroli Young Boys has got a big wicket. Riaz strikes for Kudroli Young Boys, 1 for the loss of 1 wicket.
So lost the first wicket. The Prajwal is a very promising opening batter for NF Sirwa. Certainly it's going to be a big blow for NF Sirwa because he's kind of batter who can be very effective in this format of a game, 6 overs, who can play some big shots, especially in the power play. He's a very powerful striker of the ball. Is back into pavilion. Now replacing him is just number 17, came into middle. Now Tilak will going to take the strike. Shashi is a new batter down the leg stump, going to be a delivery which is misjudged by the Tilak. He thought that it might be a wide, but his ball is just passing around his legs, well within the reach of the batter. But because of that misjudgment, that was a dotted delivery from Riaz. One for the loss of 1 wicket. Riaz bowling away from us, right arm over the wicket balls. Once again the misjudgment there by Tilak. He's shuffling across the line of the delivery. That's what the problem here for Tilak. He's moving his feet. He's have an initial movement before the bowler delivers the ball. He's just shuffled across the line of the delivery. That's why he's just misjudging when the ball is going around his legs. He thought it might be a wide. The second time Riaz able to beat the batter by bowling that intelligent line, right arm in the outside line of off time. Beautifully bowled. Look at the variation, look at the mixing of the delivery. The line and length is so good in irrigation term for Riaz. That's why he's a very experienced Riaz is a very key player for Kudroli young boys. Having a ball in his hand, bowling his first over and power play over, it's going in favor of Kudroli boys. Again, nicely bowled, little bit Tilak making room to play the shot, but didn't got that much of room to play the stroke with this bat. He got a little bit top edge and he got a single as well. So very good over there from Riaz. Once again he's been outstanding in the first over. After completion of over number 1, Kudroli young boys, after winning the toss, selected to field first, and then the first over really belongs to Kudroli young boys. 2 for the loss of 1 wicket. NF Sirwa have to bounce back in the second over of the power play, because 6 overs format of the games, it's very important that they have to take the advantage of the fielding restriction in the first 2 overs if they wanted to get some good score on the board. And so far Kudroli young boys are looking pretty good. They got some good players in the side. They are mixing up some good players. They borrowed from some good players. We got Izaz, we got so just number 7, bowler's name please. The 2 players having a Aziz is a bowler, will go into bowl a second over of the power play from the Urban Homes end. And just I want to see the fielding set here for Tilak. 1 fielder is standing at short tournament region, 1 at backward point. There is no cover point, there is extra cover, there is a mid off. There is no protection has been given in the offside in the deep, but the 2 protection has been given in the deep long on and deep mid wicket. And inside the ring in the onside region, there is short mid wicket, there is short square leg, there is a short fine leg. They are all set for saving the singles. From the far end, Aziz brought into attack. Second over of the power play, right arm over the wicket to Tilak. Tilak this time slashed that one, not quite getting hold of that one properly. Again the ball is in the air for a while, safely landed in front of that cow point region, so that before the fielder from cow point region to field the ball, ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard now moves on to 3 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Aziz from the Urban Homes end, just examining the field set. Of course he has to be very careful bowling the line and length, as Shashi is back on strike. He's a very good striker of the ball, Shashi, and a very useful number 3 batter for NF Sirwa. Usually he is representing Sneha Malemar. Sridevi Cricket has a little correction, and now he is facing next delivery. This time went for the big shot, not quite getting hold of that one properly. Timing is not proper. At the same time that ball went straight to the hands of a short mid-wicket region, and there is no possibility of any run. Again Aziz back to his bowling mark. He's got a run up and just 3-5 steps away from umpire Roland Pinto, seaming in from the far end, right arm over the wicket. Shashi obviously driven, but again that ball is went straight to the hands of deep long on after 1 bounce, and the ample time for Shashi to get his first run. He's off the mark with a single. Scoreboard moves on to 4 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. What a good game of cricket we're having today.
the day number 1 of this prestigious BK Champions Trophy. The fourth match is in progress as Aziz from the far end. Right arm over the wicket, bowls to Tilak. Tilak trying for the improvisation, but the line is very difficult outside the line of half stump. Tilak wanted to drag that one outside the line of half stump, but he got a single anyhow. And with that single, scoreboard moves on to 5 on the board for the loss of 1 wicket. So far, Kudla young boys, both the opening bowlers are bowling a very tidy line and length, and no opportunities been offered for the batter to freeze the arm. And so far, runs are coming in the form of singles in this 2 overs. Aziz, Shashi drives on the right in the gap. Again, the timing is not perfect, and Izaz, the fielder in the short cover region, quickly runs back, and enough time for the batter to complete the single. Then not quite getting hold of that one properly. If it is coming from the middle of the bat, it's definitely going to be a chance here for Shashi to get the boundary. There's no protection has been given in the deep. 6 for the loss of 1 wicket. That brings Tilak into strike now. Aziz, ball beautifully ball, excellent delivery, sharp incoming delivery, and at the last moment Tilak has got a bat onto that. Otherwise, that ball definitely will go into crash mid and leg stump. So one more good over is completed after completion of 2 overs, searching for the right track. NFC a little bit struggling as far as the run rate is concerned. They got only 7 at the rate of 3.5 runs per over. They lost 1 wicket, and what a good game of cricket is going on. A lot of cricketing action. We are talking about one more announcement here for the cricket. There will be a cricket tournament not here in South Kent district, but it's in Kasaragod district. 18th Eagle Trophy Andram Day Night Cricket Tournament will be organized. There was the interstate cricket matches at GHSS Paivilike Nagar, and that tournament will be organized in coming 19th and 20th of March. 10 Kerala team and 10 Karnataka team. That tournament will be started in the evening, Saturday evening at 4 o'clock, and then that match will going to continue till its end. Next day, Sunday morning, till morning, that tournament will be organized. It's definitely it's going to be a chance here for the cricket lovers to take part and enjoy the game of cricket between 10 Kerala team versus 10 Karnataka team. 18th Eagle Trophy, and proudly organized by Christians Arts Sports Club Paivilike in coming 19th and 20th. So it's a time to change in commentary box. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश. तो 2 ओवर एंड फर्स्ट ओवर बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ कुद्रोली यंग बॉयज, और रनों के लिए इस वक्त कड़ा संघर्ष करते हुए बल्लेबाज एनएफसी उरुवा के सिर्फ 8 रन जोड़ चुके हैं 2.1 ओवर में, और रियाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, जबकि सामना इस वक्त करने के लिए तैयार शशि, और रियाज अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर रुक चुका है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर. निस्संदेह एनएफसी उरुवा को चाहिए इस वक्त एक लंबी साझेदारी, उनको एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करने के लिए. तो जहां तक सवाल है इस जोड़ी का, तो यहां पर क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज तिलक और शशि इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर काफी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है एक लंबी साझेदारी निभाने की. और देखना यह है कि ये दोनों बल्लेबाज उस कमी को पूरा कर पाते हैं या नहीं. गेंदबाज इस बीच तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, गेंद इस बार छिप गया है लंगोर की दिशा में, लेकिन मैं समझता हूं वहां पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद, एकमात्र रन मिलेगा. काफी दमदार स्ट्रोक था, लेकिन प्लेसमेंट उतना कुछ खास सही नहीं, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. निस्संदेह यहां पर गेंदबाज कुद्रोली यंग बॉयज के एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त तिलक सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद को ड्राइव कर दिया. इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर. जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज रियाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, शशि जो कि एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं,
इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में डाइविंग जरूर लगाई गेंदबाज ने, लेकिन गेंद को रोकने में असफल। और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रियाज लगभग जमीन के सहारे इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को कोई रूम या विड्थ इस वक्त प्रदान नहीं कर रहे हैं कि बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक से खेल सके। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस ओवर में बांध कर रखने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर। तो इस बार रियाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तिलक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार आखिरी मौके पर अपना विकेट बचाने में सफल या नहीं देखना पड़ेगा। और इसी के साथ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। तो यहां पर जो कुछ भी हुआ आपने देखा, और देखते हैं मॉनिटर पर, टीवी मॉनिटर पर क्या हुआ था। देखिए गेंद को उछालना चाहा था, आगे बढ़े, गेंद वहीं पर थी और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड करने के बाद विकेट चटका दिए। और यहां पर सवाल यह उठता है, क्या विकेट कीपर जब विकेटों को चटका रहे थे गेंद के जरिए तब बल्लेबाज वापस अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे या नहीं? और द क्वेश्चन स्टैंड्स ऑन दिस सिचुएशन। और देखते हैं एक बार फिर से यहां पर थर्ड अंपायर उस डिसीजन का परामर्श यहां पर करते हुए देखिए किस तरीके से हुआ था। एंड काफी नजदीकी मामला। और एक बार फिर से अंपायर उस डिसीजन को देखते हुए, उस रनआउट को देखते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। और लगभग अंतिम क्षण में बल्लेबाज ने जाना था कि गेंद विकेटकीपर के हाथों में पहुंच रही है, झट से घूमकर वो उन्होंने बल्ला जरूर रखा था, लेकिन देखना यह है कि उससे पहले क्या विकेटकीपर ने विकेट चटकाए थे या नहीं। तो इस बीच और जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, 18th ईगल ट्रॉफी 11th संग्राम क्रिकेट टूर्नामेंट विच विल स्टार्ट्स एट 19th मार्च सैटरडे ऑन 4 PM इन द इवनिंग। और वो श्रृंखला शाम को, शनिवार शाम को 4 बजे शुरू होने के बाद पूरी रात चलेगी। और अगले दिन दोपहर यानी रविवार दोपहर को वहां पर इस श्रृंखला का मेगा फाइनल मैच खेला जाएगा। और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया क्रेसेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स क्लब पईवली के ने। और इंटरस्टेट क्रिकेट मैचेस जगह वेन्यू GHSS पईवली के नगर। 10 केरला की प्रतिष्ठित टीमें और 10 कर्नाटक की प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा लेंगी। और इस बार निर्धार आ चुका है, ही इज गॉन। जब विकेट कीपर ने विकेटों को चटकाया था तो मैं समझता हूं बल्लेबाज का बल्ला हवा में था, द बैट वॉज इन द एयर। जस्ट लुक एट दिस। जी हां, यहां पर ये रनआउट हो चुका है और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। यहां पर तिलक की पारी समाप्त और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। कुद्रोली, in fact it's NFC Urva now looking deep in trouble। तो तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और यहां पर तिलक दुर्भाग्यवशात आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौट चुके। उनका स्थान इस वक्त ग्रहण करते हुए नए बल्लेबाज के रूप में नंबर 4 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। और जैसा कि इस श्रृंखला के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022-2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया फ्रेंड्स बल्लाल बाग बिरवर कुडला रजिस्टर्ड अशोक नगर वुमेन्स विंग ने। ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು। ಇಟ್ಸ್ 45, द जर्सी नंबर इज 45 और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। हालांकि 3 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है, चौथा ओवर शुरू होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। पहली गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंचे, क्लीन कलेक्शन फील्डर द्वारा और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता और लौटाया जाता नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। पहली चेतावनी, द फर्स्ट वार्निंग गिवन टू द
given to bowler to entering into the danger zone after delivering a ball. और निस्संदेह पहली चेतावनी, पहली वार्निंग इस वक्त दी गई है डेंजर जोन पर प्रवेश करने के लिए गेंदबाज को। गेंदबाजी करने के बाद और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नए बल्लेबाज के लिए इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला, गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। गेंद को इस वक्त लौटा दिया गया है विकेट कीपर के हाथों में। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर रन्स सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और ऐसा कहना पड़ेगा रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए एनएफसी उरुआ के बल्लेबाज। और जहां तक एक साझेदारी का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, एक साझेदारी की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत। दाहिने हाथों पर द विकेट, गेंदबाज की गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली लॉन्ग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद को उछालना चाहा था, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को मिलेगा। तो इस बीच गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। और कुछ खास प्लेसमेंट सही नहीं था, लेकिन 2 रन उनको मिले जरूर इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑन पर। 14 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, शशि 15, इट्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 15 रन बन चुके हैं। शशि इस वक्त गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार, और नयाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, अजीज माफ कीजिए, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद इस बार शशि के लिए आक्रामक स्ट्रोक जरूर, लेकिन सीधे मिड विकेट फील्डर के हाथों में पहुंची, लेकिन उनके हाथों से गेंद छूटी, और इस छूट का फायदा उठाकर बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और यहां पर उनकी पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। गेंदबाज अर्बन होम्स एंड की ओर से अजीज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अंतिम गेंद लेकर तैयार। एक कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर वो जारी रखते हुए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर, लेकिन वहां पर फीडर मौजूद, बेहतरीन रिटर्न, बेहतरीन फील्डिंग, सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिला। अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए चंद टिप्पों बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया खूबसूरती के साथ सीमा रेखा के अंदर, और तुरंत अपने हाथों से गेंद को रिलीज किया उन्होंने, और इस बीच केवल एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। बेहतर फील्डिंग, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर ओवर नंबर 4 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 4 overs completed, and after 4 overs it's 17 for the loss of 2 wicket. Still the batsmen of NFC Urva searching for the right track. Meantime, just talking about the next match. Next match will be the first match of the second round of the Pool A, played between Torpedoes Khana versus Kuttar Friends, and that match is now coming up live exclusively right after this match. Torpedoes Khana will take over Kuttar Friends in the next encounter, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ Torpedoes Khana ಹಾಗೂ Kuttar Friends ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ. निजाम द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक, और रजित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। B424x7 चैनल के जरिए इस श्रृंखला का आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं YouTube पर, जो कि एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त होता हुआ। गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ निकाला, बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा, he just played that one with a twisted bat and got that one in the gap just over the gully fielder's head, and because of that he gets an boundary for that. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त रजित के बल्ले से। उन्होंने गेंद की लाइन को इस वक्त पहचान लिया था अंतिम क्षण में, और गेंद के लाइन पर बल्ले को तिरछे अड़ाते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ गली फील्डर के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए। 21 रन, 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। निस्संदेह ऐसे और करारे स्ट्रोक्स की जरूरत अगर एनएफसी उरुवा को अपने टीम के गति को बढ़ाना है,
और यहाँ पर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, स्ट्राइट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, लेग स्टंप से काफी बाहर की और गेंद पे की स्पेक्ट्रा वाइड और 2 रन उनके खाते में जुड़ेंगे एक्स्ट्राज अतिरिक्त के रूप में। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर, 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। ये दोनों बल्लेबाज शशि और रजित एक बेहतर साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए, और गेंदबाज एक बार फिर से निजाम गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई, लॉन्ग ऑफ फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है और निजाम एक लंबे रनअप के जरिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को उछाला शशि ने, नॉट क्वाइट मिडल गेट, सिली मिड ऑन फील्डर गेंद तक पहुंचे लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। हर गेंद पर रन बनाना जरूरी बन चुका है इस वक्त एनएफसी रुआ को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर खड़ा करना है तो, और हर गेंद पर रन रोकना जरूरी बन चुका है इस वक्त गेंदबाज और फील्डर को, अगर उन्हें कम से कम रनों के अंदर एनएफसी रुआ के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है तो। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा गेंद और बल्ले के बीच कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, प्लान में इन फ्रंट, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। लाइन पर गेंद टिप्पा गई थी और जहां तक सवाल है विकेट का, तो उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और गेंद सीधा टकराए उनके पैरों पर, और यहां पर अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। 3rd विकेट फॉल ऑन, इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। टीम फॉर्च्यून मैंगलोर के द्वारा आयोजन यहां पर किया जाएगा एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला अगले महीने के 3, 4 और 6 तारीख को युवरत्न ट्रॉफी 2022 के नाम पर दिवंगत पुनीत राजकुमार इनकी मधुर याद में, और इस श्रृंखला के विजेता को दिया जाएगा 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार और युवरत्न ट्रॉफी, जबकि रनर्स अप यानी द्वितीय स्थानी को दिया जाएगा 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार और युवरत्न ट्रॉफी। और इस श्रृंखला में लोकल विभाग में 16 टीमें और मैंगलोर टॉप सीडेड टीम्स के पूल विभाग में यानी विभाग में 8 टीम्स हिस्सा लेंगी, और यह श्रृंखला अगले महीने 3, 4 और 6 मार्च को इस उर्वा क्रिकेट मैदान पर यहां पर खेला जाएगा। तो यहां पर इस मैच पर लौटते हैं, अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडल गेट, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइट ओवर द स्टंप्स, थ्रो जरूर पहुंचा लेकिन बल्लेबाज के पास समय अवकाश था दूसरा रन प्राप्त करने का। जैसे ही गेंद फील्डर के हाथों से छिटकी, बल्लेबाज ने दूसरे रन के लिए अपने कदम बढ़ाए, खासकर शशि जो कि डेंजर एंड की ओर बढ़े थे, और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, और निजाम इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर से वैशाख फिन का आगमन इस वक्त हो चुका है नए बल्लेबाज के रूप में, अपने लंबे रनअप के जरिए निजाम दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए वैशाख के लिए गेंद अंदर की ओर आती हुई, बेहतर ऑफ कटर गेंद थी, उछालना चाहा, लगभग बल्ले का बाहरी किनारा टकराया, और जब तक गेंद शॉर्ट कवर पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए निजाम बल्लेबाज को खुलकर स्ट्रोक्स खेलने का कोई अवसर यहां पर वो प्रदान नहीं कर रहे। कुल मिलाकर इस ओवर में अब तक उन्होंने एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है। इस ओवर में अंतिम बार तैयार, फील्डिंग में एक बार फिर से थोड़ी सी जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए शशि इस वक्त सामना करते हुए, और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर के इस वक्त बुला लिया गया है गली क्षेत्र पर, और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार निजाम दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए शशि के लिए यह गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ निकाला, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा, he just watching the line of that ball and played that one with a twisted bat and it went fine just wide of the short third man fielder and it's crossed over the fence for a boundary at deep third man। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक शशि के बल्ले से लगता हुआ, 5 ओवर की समाप्ति, 31 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। It's 31 for the loss of 3 wicket after completion of 5 overs। और अब कुल मिलाकर अंतिम ओवर का खेल उनकी पारी में बाकी था। लास्ट ओवर नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स एंड मीन टाइम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच।
Uttar friends will takes over Torpedoes Kana in the next match, and because of that, I once again request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और अंतिम ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ अर्बन होम्स एंड की ओर से। गेंदबाज इस वक्त तैयार, अगला ओवर शुरू करते हुए 18 नंबर की जर्सी वो पहने हुए, और सामना इस वक्त करेंगे वैशाख। नियाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान कुदरुल यंग बॉयज के, और नई ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। नाइस गेंदबाज, और वैशाख इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सिर्फ 6 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, और ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस, गेंद को चिप कर दिया, फील्ड क्लियर करते हुए डीप मिड विकेट पर गेंद जाती हुई, लंबा दौड़ लगाने के बाद फील्डर ने गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, जब तक स्ट्राइकर एंड की ओर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त चिप कर दिया था, स्कूप कर दिया था मिड विकेट फील्डर के सिर के ऊपर से डीप मिड विकेट पर, और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 33 रन 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को रिसीव करने में असफल गेंदबाज, और इस बीच वाइड का इशारा हो चुका है। सो 1 + 1 2 रन एडेड टू द टोटल। जैसे ही गेंद विकेट कीपर के हाथों से चूकी, बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े, और यशस्वी तब दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। और इस बार गेंद शायद मैं समझता हूं अंपायर से टकराई थी, स्टंप्सों को टकराई थी, तो वहां पर स्टंप्सों को टकराई थी गेंद, और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। इट्स 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 4 गेंदें अब बाकी है उनकी पारी में, जस्ट 4 बॉल्स नाउ रिमेनिंग। ये गेंद शायद छोड़ते तो वाइड हो सकता था, लेकिन गेंद पर उन्होंने बल्ला उड़ाया, और इस बीच दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, लेकिन इस बार बल्लेबाज बच नहीं पाएंगे। विकेट यहां पर गिर चुका है। 38 फॉर 3 बॉल्स नाउ रिमेनिंग in their innings. तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 प्रिंसिपल लालबाग बिरवेर कुडला रजिस्टर्ड अशोक नगर वुमेन्स विंग ने इस बेहतरीन श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, महिलाओं ने इस श्रृंखला का आयोजन किया है पुरुष खिलाड़ियों के लिए। निस्संदेह ये जहां तक मेरी याददाश्त है, शायद ये उरुआ क्रिकेट के इतिहास में ही पहली श्रृंखला है जिसे महिलाओं ने आयोजन किया है पुरुषों के लिए। और यहां पर ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति करती हुई, जहां तक गेंद को उछालने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन चूके और बाई के रूप में 1 रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके हैं, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, और नाइस गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जमीन के सहारे उछाला लॉन्ग ऑन पर 1 रन, बेहतर फील्डिंग, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और दूसरा रन इस बीच पूर्ण कर चुके हैं या नहीं देखना पड़ेगा। और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त स्क्वायर लेग अंपायर हरीश पटेल ने मांग की है, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। और सवाल यह है कि दूसरे रन जब पूर्ण कर रहे थे बल्लेबाज, जब थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में, और थ्रो विकेट जब उखाड़े गए विकेट कीपर द्वारा, तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था या नहीं, यह देखने वाली बात है। तो यहां पर तीसरे अंपायर उस रनआउट का परामर्श यहां पर करते हुए, देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था। खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है, अंतिम गेंद अभी भी बाकी उनकी पारी में। स्टिल अ लास्ट बॉल लेफ्ट इन देयर इनिंग्स।
इट्स नॉट आउट। तो दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं, अब स्कोर पहुंच चुका है 42 रनों पर, 42 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, नई दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, और इस वक्त नई गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में, विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर पहुंचे, एक रन का इजाफा लेग बाय के रूप में, शायद गेंद उनके जूतों पर टकराई थी बल्लेबाज के, एक रन का इजाफा और इस एक रन के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर NFC Urua and they finished well after being a slower start. 43 runs they scored for losing 4 wickets in their stipulated 6 overs, and now they set a victory target of 44 for Young Boys Kudroli. 44 they have to score for victory, and as far as the required run rate is concerned, exactly 7.33 runs per over they have to score for victory. 44 they have to score with the help of 10 wickets in their stipulated 30-60 leverage, that means in 6 overs, and their inning starts with just short while, और 44 रनों का लक्ष्य निर्धारित 6 ओवर में इस वक्त प्रदान कर चुके हैं NFC उर्वा कुद्रोली यंग बॉयज के लिए, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी एक चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब कुद्रोली यंग बॉयज की पारी की शुरुआत यहां पर होगी एक छोटे से अंतराल के बाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So thank you very much, Gopi. 44 is the target now for Kudroli Young Boys to win the match against NFC Urua. It's a very good recovery, I must say. One stage they're struggling to get the runs on the board. They got only 9 runs in 3 overs. Then afterwards they got almost 34 runs and 33 runs in remaining 3 overs, and they got a very good score. Kishore striker. He's as non-striker. Now Kishore will going to take the strike, and from the commentary box end, it's going to be just number 45. It's a very useful cricketer. Ranjit will going to start the proceedings. Ranjit is a very good starter, and who can contribute from the bowling, especially in the power play overs, been handy. And that's so important here. The two batters, left and right combination, have to lay the foundation for Kudroli Young Boys if they wanted to win the match. Here is a first delivery. Ranjit first delivery itself. Kishore wanted to play unorthodox cricketing. So what? Mix up, chance of run out there, and yes and no. And at last, both the batters managed to complete that very risky single. What could be a certain chance of run out, but a fielder in the short fine leg region, little bit of absence of mind. There is opportunity of run out when
Izaz is interested in a run. Kishore is not interested. When Kishore is interested, Izaz is not interested. But at last, they're seeing that opportunity. The fielder is not that much of quick enough. They completed that single and won without loss of any wicket in the over number first in progress. What a great recovery. And the highlight of the innings is Shashi has played a very patient innings of 14 runs in just 16 deliveries. Karthik Tilakipul played a very good innings of 11 runs. Altogether, a small contribution, and of course, some contribution from the extra as well from the bowlers of Kudroli young boys. Here is again away from us, right arm over the wicket, pushes that one quite right in the gap towards the deep extra cover region. Long chase here for the fielder in the extra cover before he run back and fields the ball down at deep extra cover region. Ample time for Izaz to complete that couple of runs. Izaz he's been outstanding in this season. He's been out of cricket for a long time. The last two seasons he's not really played a regular cricket, but once in this season I thought he might be the very handy cricketer now. He's just once again got into right rhythm, and is certainly going to be the batter we're looking for in this particular tournament. This time chip that one, not enough batter to that, but still the man is to clear the fence over the deep long on boundary. I think going to just inside the boundary line, just an inches, a couple of yards behind inside the boundary line. The fielder just in number 333, Aradhya able to cut it off, and cut it off, and the batter has got plenty of time to complete that 2 runs in fact, and scoreboard moves on to 5 on the board. Not quite able to get that one right from the middle of the bat, Izaz, but he able to clear the infield. That's very important in power play overs. Have to clear the infield, and he got 2 valuable runs. Again, right arm over the wicket, balls beautifully bowled there by Ranjit. One of the big weapon of his is bowling some quicker delivery. They get beaten by the pace in the negation, and completely beaten there by Izaz. Almost that ball came in the half volley outside the line of off stump, and wicketkeeper so quick, Shashi behind the stump gathers the ball back to bowler. Again now, Ranjit bowls slower one, beautifully bowled. One more weapon. This is the second one. That was a very intelligent bowling performance there from Ranjit. The previous one, that ball came in such a phase that almost 110 kilometers per hour. All in sudden we can see that the previous one, it's a very slower one indeed. Very slower indeed, and that ball is really defeating the defense of Izaz. He's just early into the stroke. Look at that one, the slower one. Izaz thought it might be one more quicker delivery, but it's a slower one. He has to wait for that ball, but he's just played that one very early, pays the penalty for that. That ball did the trick. Kudroli young boys has lost their first wicket at the score of exactly 5 on the board. And that's a huge wicket, I must say, for NFC. He is the man, Izaz, who got a potential of playing a big innings, and who can be the very handy, especially when you're playing against NFC, one of the best team as far as the local team is concerned. They are one of the best contender of coming into the finals, and that's why it's going to be a very important wicket here for NFC Urva. The wicket of Izaz is back into pavilion. The Kudroli young boys lost their big wicket. Izaz with the beauty of the delivery, a classical delivery I must say from Ranjit. Now new batter came into middle is Anwar, very experienced campaigner, very useful number 3 batter for Kudroli young boys, facing next delivery from Ranjit. Ranjit this time again, look at the delivery, the variation in the line, absolutely the fantastic first over, just like what Kudroli young boys has got start, the same start given there by Ranjit on his first over. He considered that 5 runs, and he picked up a 1 valuable wicket of very dangerous Izaz. 5 for the loss of 1 wicket. Match number 5 or 4. 5. BK Champions Trophy 2022, Ashok Nagar Women's Wings organizing this cricket tournament, the Biruver Kudla, and so far it's been outstanding cricket is going on here. Under the great leadership of Uday Pujari, the Biruver Kudla Ashok Nagar Women's Wings, in the history of the first time in the history of underarm cricket, organizing cricket tournament for the man, and the name of BK Champions Trophy 2022 under the great leadership of Uday Kumar. Of course, some great support coming from Charan SK of challenge bowler
then Trishant Ashok Nagar, and of course Sunil Kumar Biruver Kudla. Then a hard work to make this possible. The BK Champions Trophy 2022. Meanwhile, we are watching a match number 4 of this day number 1 as the second over started from the far end as Kishore went for the big shot high up in there. Chance here for Prajwal to take the catch. Lot of time for him to judge. Just 2-3 steps he's gone back and take a very good position. Kept the eye on the ball. The Kishore's wicket is back into pavilion now. Kudroli young boys are in a deep in trouble. The wicket number 2 is back into pavilion. Both the opener batter back into pavilion of Kudroli young boys as that ball almost came into the left-handed batters in off volley. Tried to loft it that one over the deep mid-wicket region, but he couldn't manage to get that one from middle of the bat. Mistiming it and ball is ballooning up in there, and mid-on fielder making no mistake at all. Shackling start here for Kudroli young boys. The same start what NFC Urva has got in the first 3 overs. They're really struggling to get the runs on the board, but then the partnership between Shashi and some 2 players are really contributed for the partnership along with the Shashi, and they got a fighting total of 43 runs and they set a target of 44 to win this match. Prajwit, one more young talented bowler, got a wicket in the first ball. Left arm round the wicket, he bowls Anwar across the line of the delivery swinging. Is that one another chance of run out? Ranjit is so quick in delegation, but not that much of quick enough to stop the single. If it is a direct, might be a little bit chance for the run out, but ball missed the stumps and Prajwit, led by correction, the batter completed a single. Just number 9, Sadiq is a new batter, came into middle, very experienced campaigner, one more useful cricketer for the side of Kudroli young boys. He has got a responsibility to build a partnership along with the Anwar. This time full toss delivery, but didn't got enough bat onto that. It is a bad miss, absolutely bad miss. It's a full toss delivery and Sadiq tried his level best to hit the ball, but as the fact that was a slow full toss from Prajwit, he didn't got enough timing in that strokes. One more addition to total. Scoreboard moves on to 7 for the loss of 2 wicket. Lot of change in field, different field set for a different kind of cricket batters. Anwar has got one a deep mid wicket and one at deep extra cover. The 2 fielders outside the circle. The mid off, mid on, and short extra cover. There is a backward point. Short third man. Again, this time outside the run of off time. Good bowling there from Prajwit, seeing that Anwar is every time trying for the shot on the onside region. This time he bowled outside the line of off time, and there is no possibility of any run at all. So far, it's a quiet cricket is going on here. It's just a 7 on the board for the loss of 2 wicket. Runs are very hard to combine here for Kudroli young boys. At the same time, they lost 2 valuable wickets, especially the wicket of Izaz. Definitely going to be a relax here for the captain of NFC Urva. This time lofted just over the infield, but not quite enough to get the boundary there. The Prajwal run across from the deep extra cover region towards the deep long off, and ample time for Anwar to come back for the second before Prajwal collect the ball after one bounce down at deep long off. With the addition of that couple of runs, scoreboard now moves on to 9 on the board for the loss of 2 wicket. Another 34 runs required for the victory for Kudroli young boys. This is just over number 2 in progress. So far Prajwit last time in this over he bowled right arm. This time again that ball just bossing around the legs of a batsman. Anwar shuffled across the line off the delivery, missed it completely. One more good over going in favour of NFC after completion of over number 2, chasing 44 to win the match. Still there searching for the right track. Kudroli young boys struggling in the middle. They got 1 in 9 at the rate of exactly 4.5 runs per over. And just coming back to the equation now. 2 overs completed, 9 on the board, 9 deducted from 44. That means 9, that means 35 runs required from 4 overs. That means 24 deliveries remaining, and they have to get 35 runs to win this match. Each and every economic over, the target is looking tougher and stiffer here for Kudroli young boys. They needed one big over in the middle. They needed one big over in the sense that the over of 10 to 15 runs badly required here for Kudroli young boys. They wanted to back into this game. But NFC Urva, everybody knows that they're believing in their
bowling strength rather than the batting strength. They got a fantastic bowling department. Leading from the front, Ranjit is always very economical, and he's a wicket-taking bowler as well. Prajwit is one more young talented bowler for the side. So they need to deal with all these aspects of the bowling department of NF Sirwa. They need to bat very well, Kudroli young boys. Not impossible. They can back into this game, and for that I think these two batters has to take a little bit a chance here. The risk is definitely going to be the part of cricket. Without taking a risk, winning the match is definitely going to be a dream. And wait and see. Out of these two batters, have to look for some big shot, have to look for some acceleration of run rate as Ranjit bowling right up over the wicket. First ball, this is a water delivery, that one. Absolutely perfect leg cutter, I must say. One of the very difficult delivery to play for right-hander batsman. But ball is just leaving the right-hander batsman, pitching in the good line spot and deviation. And batter completely missed out that delivery. Ranjit again, right arm over the wicket. This time almost that ball came in off volley, so that Shadi quite easily placed the ball down to short mid-off region for a easy single. With that single, scoreboard moves on to double figure 10 on the board for the loss of 2 wicket. 34 more runs required for the victory. 2 deliveries completed. That means now 22 deliveries remaining in their innings. And they have to get to 34 runs. That means the difference between run and ball exactly the 10. That difference, what they wanted to reduce very quickly, these two batters. If it's each and every economical over, that difference between run and ball is the gap is going bigger and bigger, then target will definitely becomes a very difficult here for Kudroli young boys. So Ranjit again back to his bowling mark with a short run up. Pass umpire Arish Padil. Right arm over the wicket. That time went for the reverse stroke. Good change of line there by Ranjit, seeing that Anwar is going for the reverse stroke, just cleverly changing his line, balled around the leg of the batter, so that very difficult for Anwar to hit the ball by playing the switch. It picked up a single anyhow. 11 for the loss of 2 wicket. That brings Sadiq into strike now. Again Ranjit away from us, bowls, beautifully bowled again. This time a ball is in the air, is gone. Sadiq is back into pavilion. This time, of course, I thought that the ball is after got a 1 bounce, but I think that was a full. And Sadiq tried to hit the ball over the head of that short cover point fielder, but didn't got that much of enough bat onto that. Got a top edge and backward point fielder making no mistake at all. The wicket number 3 is back into pavilion. Kudroli young boys are deep in trouble now. 11 for the loss of 3 wicket. Ranjit strikes. The 2 wickets here for Ranjit, and once again he's justifying how useful bowler he's been in the limited over matches. Again, what a kind of line and length he's bowled today. It's been outstanding, showing all his experience. Coming in a power play overs, bowled beautifully. Then in the 3rd over also, so far he's been looking pretty good. Shafiq as a new batter came into middle, jersey number 55. Shafiq is in non-strikers end, as Anwar will go to take the strike because strikes are rotated in the last delivery when catch taken down at backward point region. So 11 for the loss of 3 wicket. Ranjit now calling one fielder from deep backward square leg inside the ring. The 3 fielders inside the ring in the onside region, short fine leg, square leg and short mid wicket. And only 1 fielder in the offside, that is a short extra cover. Ranjit bowls, beautifully bowled again. Almost ball is hurried down to the batter, and Anwar has got a bat onto that in the last moment to try to hit the ball, but again he didn't got enough room to play the shot. Picked up a single down to deep mid wicket region. With the addition of that single, scoreboard was on to 12 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Now Shafiq is a very experienced campaigner for the side of Kudroli young boys, and Ranjit so far has been outstanding in this particular over and the previous over as well. Right arm over the wicket, he bowls. Oh, what a delivery! That was a delivery, little bit going down the leg stump, little bit shaving towards the leg stump. That's why umpire Arish Padil, seeing that last moment, is signaling that ball is just going down the leg stump. What a fantastic over there from Ranjit. Beautifully bowled. 2 overs completed. After completion of over number 3, in fact, scoreboard is 12 for the loss of 3 wicket. Now 3 over remaining.
and in 3 overs they have to get another 32 runs to win the match. Almost 10.33 runs for 13 on the board. That means 31 more runs required for the victory. In remaining 3 overs, 10.33 runs per over is the required run rate, and it's going to be now tough year for Kudla Young Boys. They have to take a little bit risky to get some improve in their run rate. They have to look for some big shot, otherwise it's difficult for Kudla Young Boys to win the match against the formidable bowling department of NFC Urva. And it's time to ask Gopi to take over the microphone in remaining 3 overs. धन्यवाद सतीश. तो टेस्टिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ कुदोल यंग बॉयज. पहली गेंद उछाला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन गेंद को रोका गया इस वक्त. लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर और मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का. तो 14 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर. चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है. 44 रनों का लक्ष्य और उनकी पारी का पहला ओवर यहां पर प्रगति पर. शैलेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अर्बन होम्स एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर और इससे पहले की गेंद को वहां पर फीड किया जाता. 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में जुड़ चुका है उनके खाते में और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर. कुछ करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त सख्त जरूरत चौके या छक्के के रूप में कुदरोली यंग बॉयज को इस मैच में वापस आने के लिए. निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज एनएफसी उर्वा के. इस बार खराब गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा और 1 रन का इजाफा. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर. चौथा ओवर प्रगति पर. 4th ओवर इन प्रोग्रेस और इस बार गेंद को पुल किया है खूबसूरती के साथ मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. शफीक के बल्ले से चौका लग चुका है. गेंद को इस वक्त स्विंग किया था, देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था. हैव अ लुक एट दिस. और गेंद इनटू द गैप मिड विकेट फीडर की बाईं ओर से इस वक्त पहुंच चुकी है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर. ऐसे ही चंद और करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त सख्त जरूरत है कुदरोली यंग बॉयज को इस मैच में वापस आने के लिए. और स्ट्रेट अवे दबाव इस वक्त कुछ हद तक गेंदबाज के ऊपर है. देखना है कि अगली गेंद में वो कौन सा अस्त्र यहां पर प्रयोग करते हैं. दाहिना हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, इंटेलिजेंटली प्लेड डाउन टू अ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग. इनफैक्ट इफ दैट वुड हैव बीन अ सर्टेन डिजास्टर देयर इफ दे गॉन थ्रू फॉर अ रन. लेकिन अंतिम क्षण में अपने कदमों को क्रीज पर उन्होंने खींच लिए. देखा कि थ्रो पहुंच रही है नॉन स्ट्राइकर एंड पर. एकमात्र रन उनके खाते में जुड़ चुका है. तो 21 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 3 विकेट के नुकसान पर. इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. इस बार ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा, मिड विकेट पर गेंद पहुंची. 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर. 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ. तो लॉन्ग ओवर प्रोग्रेसिंग हियर फ्रॉम शैलेश और अगली गेंद के लिए तैयार. दाहिना तो ऊपर द विकेट, पैरों पर टकराई गेंद इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में निकल चुकी है. बैकवर्ड थर्ड मैन से फील्डर दौड़ कर आए, पहले पहुंचे फाइन लेग के फील्डर और बेहतर फील्डिंग के जरिए उन्होंने गेंद को थ्रो किया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का. सो फर्स्ट प्रोडक्टिव ओवर केम इन द इनिंग्स ऑफ कुदरोली यंग बॉयज. सो 4 overs completed and after 4 overs they are still now fighting back. 23 runs they scored, 10 runs scored in this over. और जहां तक का सवाल है बचे हुए 2 ओवर का, तो 2 ओवर में इस वक्त और उन्हें चाहिए 21 रन विजय के लिए. 21 to get now in remaining 2 overs with a required run rate of exactly 10.5 runs per over. Still they got 7 wickets kept intact. 7 wickets they got in their hand and let's see can they reach the target or not. Meantime टोर्पेडोज काना का मुकाबला होगा अगले मैच में फ्रेंड्स कुत्तार के साथ. दूसरे दौर का पहला मैच और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे. प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच फॉर द प्लेयर्स ऑफ टोर्पेडोज काना एंड फ्रेंड्स कुत्तार. So 12 balls and 21 runs they have to score for victory.
और तख्ता इस वक्त भारी जरूर लगता हुआ एनएफसी उर्वा का, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त तक कुदोली यंग बॉयज के बल्लेबाजों के लिए। इस ओवर में कम से कम अगर 12 से 15 रन कुदोली यंग बॉयज के बल्लेबाज बटोरते हैं तो निस्संदेह इस मैच में वापस आ सकते हैं। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर प्रारंभ करते हुए दक्षित इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए, और रनों की सख्त दरकार इस वक्त कुदोली यंग बॉयज को इस मैच में वापस आने के लिए, तबकि बेहतर गेंदबाजी की जरूरत है इस वक्त एनएफसी उर्वा को इस मैच में अपना शिकंजा और कसने के लिए। 21 to get from 12 balls. First ball of fresh over from Dakshit comes. Right arm over the wicket bowls. Again full toss. पुल किया है लॉन्ग ऑफ पर, और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। निस्संदेह मैं इस स्ट्रोक को देखना चाहूंगा किस तरीके से ये स्ट्रोक उन्होंने खेला था। अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंचे, देखिए शायद एक हाथ से उनका बल्ला फिसल भी गया, लेकिन न गेंद तक पहुंचे और गेंद को इस वक्त उछाला स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, स्ट्रेट हिट एरिया पर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान 4 रनों के लिए। और अनवर के बल्ले से ये चौका लग चुका है। अब शफीक के बल्ले से चौका लग चुका है। अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 17 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी। एक और चौका या छक्का इस वक्त मैं समझता हूं पूरी तरह कुदरोली यंग बॉयज को इस मैच में वापस ला सकता है। और शफीक अपना दूसरा चौका यहां पर जड़ चुके हैं, अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के गेंदबाज दक्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई, और दक्षित अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार, अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, नीची रहते हुए ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, बल्ला ऊपर चढ़ा गया, गेंद नीची रहते हुए और बल्ले को वंचित करने के बाद गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए 17 रन चाहिए, 10 गेंदें बाकी। और अगली गेंद, ये गेंद इस बार उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, कंसेक्यूटिव 2 डॉट बॉल्स। इस बार कुछ हद तक फ्लाइटेड गेंद थी, बल्लेबाज को टॉस किया था कि वो स्ट्रोक्स खेलें, आक्रामक स्ट्रोक्स खेले, और इस बार स्ट्रोक्स खेलने में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 2 बेहतर गेंदें गेंदबाज फेंक चुके हैं। ये गेंद इस बार बेहतरीन, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, 3 डॉट बॉल्स इन अ रो आफ्टर कंसीडिंग अ बाउंड्री इन हिज वेरी फर्स्ट डिलीवरी ऑफ दिस ओवर। तो 1 रन का इजाफा, इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 16 टू गेट नाउ from remaining 8 balls, and the target seems to be a much stiffer now for Kudroli young boys. और इस वक्त दक्षित एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। अनवर इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहा, एक बार फिर से चूके, बेहतरीन गेंदबाजी, 1 रन मिलेगा। आई थिंक इट्स गॉट अ बैड ऑन दैट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन कमबैक इस वक्त कर चुके हैं इस ओवर में, पहली गेंद पर चौका प्रदान करने के बाद गेंदबाज दक्षित। और इस ओवर में अंतिम बार ये गेंद, इस बार गेंद को उछाला है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को सफलतम लपकने में सफल, और इसी के साथ शफीक का विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछाला था, लेकिन काफी उम्दा, काफी ऊंचा उछाला, और डीप मिड विकेट पर फील्डर को थोड़ा सा दौड़ जरूर लगाना पड़ा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद के नीचे आते हुए दोनों हाथों से इस कैच को उन्होंने दबोचा, और इसी के साथ ये चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है। और ओवर नंबर 5 की भी समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 overs completed, 29 for the loss of 4 wicket, and now the target seems to be stiffer and stiffer now for Kudroli young boys. 15 to get from last over. तो इस वक्त प्रज्वलित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अर्बन होम्स एंड की ओर से, और 15 रन चाहिए। अब ऐसा कहना पड़ेगा चौके या छक्के ही इस मैच में कुदरोली यंग बॉयज का भविष्य बदल सकते हैं। तो इस वक्त
So 15 to get from last over, and the last over in their innings is now going to begin from Urban Homes and और प्रज्वित ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड फुल टॉस पुल किया इस वक्त मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त मुजम्मिल के बल्ले से लगता हुआ, और इस छक्के के साथ मैं कहूंगा संघर्ष अभी भी बरकरार रख चुका है कुद्रोली यंग बॉयज। एंड नाउ 9 to get from 5 deliveries. Straight away the pressure on the bowler. फुल टॉस गेंद फेंकी थी और इस गेंद को खूबसूरती के साथ कबूल करते हुए भेज दिया, डिस्पैच कर दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए बल्लेबाज मुजम्मिल ने। 35 for the loss of 4 wicket. 9 to get now from 5 balls. बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास। इस बार चूंकि गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, स्वयं अपने आप से नाखुश बल्लेबाज और एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद मुजम्मिल के लिए उछालना चाहा, जस्ट चेंज ऑफ पेस, पेस का क्षेत्र परिवर्तन, धीमी गेंद उन्होंने फेंकी थी, धीमी ऑफ कटर गेंद, और इस बीच बल्लेबाज को रन नहीं मिला। अब गेंदे बाकी है 3, रन चाहिए 9, और प्रज्वित की गेंद फुल टॉस, लेकिन इस बार बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेने में असफल। एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 8 टू गेट फ्रॉम 2 डिलीवरीज। 2 बाउंड्रीज रिक्वायर्ड इन द लास्ट 2 डिलीवरीज। इस गेंद पर अगर कोई छक्का या चौका लगता है तो निस्संदेह इस मैच में वापस आ सकता है कुद्रोली यंग बॉयज। ये गेंद लेग स्टंप पर चिप किया, बैकवर्ड, ओह ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एंड ही टेकन इन फैक्ट, सो दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच दैट वाज इन अ सर्टेन 6। और यहां पर देखिए किस तरीके से ये हुआ था, गेंद को उछाला था ऑन साइड पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और निश्चित रूप से ये छक्का था, लेकिन अंतिम क्षण में ना सिर्फ गेंद को उन्होंने ढकेला अंदर की ओर, बल्कि दूसरे प्रयत्न में इस कैच को वो लपकने में सफल है, और इस बेहतरीन कैच की बदौलत यहां पर यह विकेट गिर चुका है। अगर यह स्ट्रोक छक्के में परिवर्तित होता तो निस्संदेह पूरी तरह कुद्रोली यंग बॉयज इस मैच में वापस आ सकता था। तिलक फील्डर थे, देखिए एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, दिस इज एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट एफर्ट, और तिलक का यह बेहतरीन कैच जो कि कप्तान है एनएफसी उरुआ के, बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता यहां पर दिखा चुका है। अंतिम गेंद बाकी और रन चाहिए 8 इस बचे हुए अंतिम गेंद पर। रियली दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग कैच, और निश्चित रूप से उस छक्के को न सिर्फ बचाया बल्कि दूसरे प्रयत्न में उन्होंने इस कैच को भी लपक लिया, और यहां पर इस बेहतरीन कैच की बदौलत अब लक्ष्य काफी दूर नजर आता हुआ। इस बार उछाला और एक रन नहीं मिलेगा, विकेट गिर चुका है, और इसी के साथ 7 runs थ्रिलिंग विक्ट्री रजिस्टर्ड बाय एनएफसी उरुआ अगेंस्ट कुद्रोली यंग बॉयज, एंड विद दैट 7 runs thrilling victory, they are through to the next round of this competition. The complete credit of their victory now gone to the fielder who saved a certain 6 and grabbed the victory for NFC Urua, Tilak the man. और अब 7 रन से इस मैच में एनएफसी उरुआ विजय रहा। अगला मैच Torpedoes Khana, one more good match is now coming up. Torpedoes Khana will take over Friends Kutar, the first match of the second round, and that match starts within a short while. So in this match, news is here from the center that the skipper of Torpedoes Khana, after won the toss, he elected to field first, and now the match is now coming up live exclusively right in front of you within just short while, and we'll be back right after the short break with the next match will going to begin. Thank you. Dhanyavad.
Right. One more good match is now going to start. Torpedoes Khana will take over Friends Kutar. And two top-seeded teams in Pool A will clash each other in the first match of the second round. और जहाँ तक सवाल है इस मैच के टॉस का, तो टॉर्पेडोस खाना ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय है जो कि उन्होंने लिया है, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई तो पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई, और इससे पहले कि उनकी पारी की शुरुआत हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में सतीश को. धन्यवाद. थैंक यू. So thank you very much, Gopi. Good afternoon, cricket lovers, and one more good match. The two very good teams are clashing in the second round of this prestigious BK Champions Trophy 2022. And Friends Kutar takes Torpedoes Khana, and both the teams has got a potential of winning the titles. And that means the competition is going to be very, very interesting between these two teams. So after winning the toss, captain of Torpedoes Khana elected to field first, so that Friends Kutar, the opener batsmen, are in the middle, and straight away Tyagaraja is off the mark with the first delivery of the power play over, and that brings Nikhil into strike now. Left-hander batter facing next delivery. Oh, that was the delivery which is pitching outside the line of leg stump. That ball is in the strongest zone of that score again fine, like it's certainly the strongest zone of Nikhil, and he just missed the delivery of Rilwan, and there is no possibility of any run. From the Urban Homes and bowls, this time it's going to be a wide. This time ball is further going away from the outside the line of leg stump. It might be the red one is coming a little bit round the wicket and angling across so that he can bring the ball from outside the line of off stump, but he couldn't manage to control his line and going down the leg stump so far, too far, and wide call by umpire Vivek. Two without loss of any wicket. Red one bowls. This time Nikhil tries that one powerfully down to deep long off region. Of course, he's looking for some big shot, but didn't got that much of enough room to play the stroke on the extra cover region. But he got that one towards the deep long off for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Rilwan from the far end. Right arm round the wicket from the Urban Homes hand. Get it to bowling to Tyagaraja. Tyagaraja, of course, everybody knows is a very good striker of the ball, and facing Rilwan. Just beautifully bowled that Rilwan. Rilwan thought that he got a wicket here. That ball just misses. Just an inches that ball missed off stump of Tyagaraja. And that was a very good one there from Rilwan. He's been outstanding. The line and length is concerned, as he was really today looking pretty good. This time Tyagaraja, a little bit SNO, but Karthik behind the stump couldn't manage to go back very quickly. But meanwhile Nikhil very confident to in that single to react to that call from his partner. He is running towards the danger, and he completed single. Scoreboard now moves on to 4 on the board without loss of any wicket. Rilwan. Right number on the wicket, he bowls. This time again the quicker one. Chance of run out in the strikers end, but the throw is not quick enough again. Sadaqatullah, one more experienced campaigner for the side of Torpedoes Khana. He's down at short extra cover region, charging in, try to return the ball into the hands of wicketkeeper, but it is after one bounce collected by wicketkeeper that gave a lot of time for the batter to come back to save his wicket. 4 without loss of any wicket after completion of first over. They got a skiddy start here. Slow start from the opening batters of Friends Kutar, and Rilwan once again has been outstanding today. He's got experience behind him, representing one of the top teams of South Kent District, NM Cricketers Mangalore. Now he is representing his home team Torpedoes Khana, and captain must be pleased with this performance. The first over, it's a quiet over, not an easy job I must say, keeping the batters like Tyagaraja and Nikhil, the promising two opening batters, and for just 4 runs in the first over of the power play. I think Rilwan did a great job in this first over. Now, from the commentary box, and it looks like just number 14 is brought into attack, and Taif, one more talented, experienced cricketer for the side
of Torpedoes Khana will go into ball. A second over of the power play. Tagraj in front of him. This time, first ball itself, right on the money in the occasion. Again, this time Tagraj looking for the expansive drive towards offside region. Whenever you're going for the expansive drive, there is a possibility of the gap between bat and pad. And that's what's really happening is the Tagraj is looking for the expansive drive towards extra cover region. Really let the gap between bat and pad. And Toif in the negation almost brings the ball from a little bit outside the line of off time, coming into the batsman. And that ball just missed the bat of Tagraj and hits the leg stump. So wicket number first is back into pavilion of Friends Kutar. This is a result of frustration, isn't it? When you didn't got enough runs on the first over, all in a sudden something is going in your mind. And even it was a little bit of butterfly in your stomach. Definitely the batter tried to look for some big shot to break the shackle. By doing that, this kind of dismissal we can see in cricket, that going for the expansive drive against turning deliveries is asking for trouble. So Pradeep is a new batter, it just came into middle. Now facing Toif. Right arm over the wicket balls. This time drive straight to the hands of fielder, but he drops it. Can you believe this? It's not that much hard enough, I must say. Of course, might be that the fielder I have to little bit jump a little bit, but that ball definitely going to be a chance here for the batter. Pradeep has got a life, and the short fielder couldn't manage to. The timing of the jump is not proper, I must say. That ball is just came in a right height, but while ball is passing, he's a little bit late to react and to that jump, so that ball just slipped out of his hands. And he got a life here. Now, Nikhil went for the big shot. Again, they say to the hands of fielder. Chance of run out in the non-strikers. And again, the same fielder in the picture. Jersey number 7 couldn't manage to stop the single in that again. This is a little bit tougher, I would say. The wrong hand had to throw the ball. For the right hand, it's always going to be difficult to return the ball when you are standing in the extra cover region. And he had to turn back quickly to release the ball. That gave plenty of time for Nikhil to complete that quick single. 6 for the loss of 1 wicket. So far, the bowler is doing a fantastic job of Torpedoes Khana, not really letting the batsman go for the big shot. This time tries that on right in the gap, the whitish long on region, that the fieldsman there in the deep whitish long on, he had to run across towards his right. Before the fielder to stop that one down to deep long on, whitish long on region, the ample time for the batters to complete that couple of runs. And with that couple of runs scoreboard now moving towards 8 now for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Toif. Right arm over the wicket balls. This time, one-handed shot. Can you believe that? That was a really ball traveling to deep mid-wicket region. But because of that stroke is played against the direction of the wind, ball is not really traveling here. And quite unusual cricketing stroke there from Pradeep there. He lost his grip while he's making a stroke towards the mid-wicket region. And he got a couple of runs. How the runs are coming, it's not important in limited over matches. But they need to get some runs in the power play overs. That's why Pradeep is throwing his bat each and every delivery. He wanted to get some runs here. 10 without loss of any wicket. 5 balls right over the wicket again. The ball is in there. And this time Kudla making no mistake at all. At cow point, just moving to his right. Taking the catch. The wicket number 2 of Friends Kutar are back into pavilion. They are 10 for the loss of 2 wicket. So 10 for the loss of 2 wicket. The wicket number, of course, 2 going in to the account of Toif. So Friends Kutar, just like what they had a start in their first match against SNBC Mangalore, the same start here also for Friends Kutar. They did not runs in the first 3 overs, but afterwards they accelerate the run rate. Now all of these 2 batters are in the middle. Kiran, little bit correction, Naveen as well as in the strikers, and Nikhil have to play a shit ankle role if they wanted to get some big score. Warm welcome to our friend Mr. Kiran as a scorer, replacing the Girish.
Rilwan in his second over. Kishan, little bit correction. Now scorer Kishan G. And Kiran replacing Kishan. And here is Rilwan. Balls, drives straight to the hands of fielder. No chance of any run. Little bit bumble, but still the Nikhil is not interested. Even Navin is not interested. And there is no chance of any run at all. 10 for the loss of 2 wicket. Rilwan has been outstanding in the first over. 5 runs and bowled a very quiet over. And he's bowling his second. Right arm round the wicket. He bowls this time. A quick work there from Karthik. He's given him. He's gone. Roland Pinto at square leg, seeing that Nikhil is almost lifting his back foot. What a fantastic work there from Karthik. Electrifying work, I must say. Look at that in a replay. Nikhil little bit looking for the big drive. Look at that one. Oh, what a work there from Karthik behind the stump. Absolutely perfect one. Just seeing that Nikhil just lifting his leg. He's just waiting for the batsman to make a mistake. This is what you call presence of mind from that very little master, Karthik behind the stump. It's been outstanding. Just in a blink of eyes, he just completed his job. Look at that one. The first attempt, if he able to make the stump, the batsman definitely is in the crease. He's just waiting for the batter to lift his leg, and afterwards he did the job. And that's what you call the presence of mind. And the most of the wicket keepers are so good behind the wicket. And Karthik in that occasion done a great job. Of course, Karthik, who represents SN Sai Namana Cricketers Kasaragod, but today is representing for Torpedoes Khana. The fact that SNC are not representing in this particular cricket tournament is a very useful cricketer, very busy customer. Usually is a outfielder, but quite surprisingly today I'm watching is behind the wicket. He's been a fantastic. He's all-rounder. He can do the job in any place. And from the far end, Rilwan, right arm over the wicket to Mahesh. Mahesh this time there a quick piece of work there by the fielder there in the short third man region, and there is a possibility of one run there. With that single, scoreboard now moves on to 11 for the loss of 3 wickets. So really deep in trouble now. Friends Qatar have to get some runs. This is a small format of the game, 6 over format of the game, so they have to come back very quickly. Each and every dot ball, each and every economical over is going to be difficult for Friends Qatar to depend. The 40 plus runs desperately required against Torpedoes Khana, one of the best team, I must say, in the Suratkal region. One of the top performer, has got a history of more than 25 to 30 years. And still, it's been an outstanding team, I must say. As far as the discipline is concerned, we are finding this team is in a top, Torpedoes Khana. Here is from the far end, Rilwan. Bowls this time again. Navin tried to get that one down to third man region, but didn't got enough batter to that what he wanted to do. But still he managed to get the single. That's very important. Navin is off the mark with the single. Scoreboard now moving very slowly. Scoreboard moving now to 12 on the board for the loss of 3 wicket. Very bright afternoon out here in UCG cricket ground. Still there is a good satisfaction here to see that number of crowds enjoying the game of cricket. They know that today is a local pool match. Still, we are having a lot of excitement in this local pool as well. What a delivery, the pitch of the delivery. Cleaned him up. The batter has got no time to react that delivery. That was what the speciality of Rilwan sometime. He surprised the batter with his face. Almost that ball came in a Yorker length delivery. But this time I think Mahesh did wrong is that instead of playing with a straight bat, he tried to roll his wrist in that occasion. Try to flick that one off his legs. But once the ball is almost in a Yorker length delivery, it's better to play in the straight bat rather than across he wanted. Just closing the face of his bat. That's why that ball missed his bat. And beauty of the delivery there from Rilwan to pick the wicket of Mahesh. And Friends Qatar are now, looks like they're in a deep trouble. They lost 4 wickets. Top order batsman back into pavilion for just 12 runs. And now all up to this man. Now Santosh came into middle. He's a very experienced campaigner for the side of Friends Qatar, who represents even Mangaladevi cricketers as well. One more player of Mangaladevi cricketers, very top all-rounder Kiran, left of me, is wanted to see his partner Santosh how well he going to bat here under this condition. I think he's one of the very perfect player who can handle the pressure at any situation. And last time in this over, Rilwan, right arm over the wicket. Santosh straight away, one of his favourite, swept the ball down to short
square-leg region. Tausif's the fieldsman and the deeper fields the ball. And Rilwan completes a fantastic over. I want to see his bowling figure. It's been outstanding today. 2 overs, no maiden. He conceded just 5 runs. Five runs, and he picked up 2 valuable wicket. And valuable in the sense, I think, the wicket of Nikhil and then a wicket of Mahesh certainly is a valuable wicket for Rilwan. So fantastic bowling figure here for Rilwan. So friends Kutar, still they're struggling in the middle. 13 for the loss of 4 wicket, and wait and see how many runs they will going to score. And I think it's definitely going to be a very, very difficult time here for friends Kutar. They have to get another 20 to 25 runs badly in remaining 3 overs if they wanted to give some competitive total. So before the next over going to commence, it's time for Gopi to take over the microphone. And Gopi, two fantastic teams clashing here in the second round of this BK Champions Trophy. And so far, I think Tarpados Khan, after winning, was elected to ball bust. And all we can see that Rilwan and one more bowler, Taif, have done a fantastic job. And because of that, I think they're struggling, 13 for the loss of 4 wickets. Now, I think at least 20 to 25 runs badly required here for Franz Kutar if they wanted to give some challenge for Torpedoes now. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया कम से कम 20 से 25 रन इस वक्त बनाने होंगे फ्रेंड्स कुत्तर को, अगर उन्हें टोरपेडोस काना के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर दबाव डालना है। फिलहाल इस वक्त टोरपेडोस काना के गेंदबाज एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, खासकर तोइफ और उसके बाद जो गेंदबाजी की थी उन्होंने रिलवान, ये दोनों गेंदबाजों ने मिलकर बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर दिया है पहले 3 ओवर में। देखते हैं फ्रेंड्स कुत्तार कौन सा लक्ष्य यहां पर प्रदान कर पाएगा टोरपेडोस काना के लिए। फिलहाल 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। गेंदबाज अनीश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिना तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, सर्टेनली पिच्ड आउटसाइड द लाइन, लाइन के बाहर गेंद टिप गई थी और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर 16 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज एक बार फिर से अनीश गेंदबाजी करते हुए, संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि नॉन स्ट्राइकर रन पर नवीन, ये गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, रन के लिए 2 कदम जरूर आगे बढ़ाए लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंदबाज द्वारा फील्ड की जा रही है, फॉलो थ्रू में रन से बल्लेबाज को नहीं मिले। एक बार फिर से अनीश दाहिना तो ऊपर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद संतोष के लिए खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त बैकवर्ड थर्डमैन सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई और लंबा दौड़ लगाने के बाद जब तक गेंद को वहां पर वो फील्ड करे, बल्लेबाज तीसरे रन के लिए यहां पर दौड़ पड़े और सफलतम तीसरा रन पूर्ण करते हुए, गेंद की लाइन को पहचानते हुए, गेंद की रफ्तार को पहचानते हुए विद ट्विस्टेड बैट गेंद को खेला था खूबसूरती के साथ संतोष ने डीप बैकवर्ड थर्डमैन और डीप कवर पॉइंट के बीच, और इस बीच 3 रन बल्लेबाज यहां पर बटोर चुके हैं। 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। रन इस वक्त चाहिए फ्रेंड्स कुत्तार को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद अनीश की इस बार एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास इस बार नवीन द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, स्कोर रुक चुका है 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज की गेंद अनीश की गेंद और इस बार मैं समझता हूं इज गोना टॉप एज ऑन दैट, लेकिन अंतिम क्षण में विकेट कीपर के पहुंच से बाहर गेंद और आखिरकार गेंद सीधे पहुंची। शॉर्ट थर्डमैन फील्डर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से अनीश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद बेहतर गेंद थी, लेग कटर गेंद, परिवर्तन के तौर पर गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद, और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। स्ट्रगलिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ फ्रेंड्स कुत्तार। They managed to score only 19 runs on the board in their first 4 overs, and a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Torpedoes Kana. Still 2 overs left in their innings. देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। फिलहाल अगला मैच टीम रूफटेक और कलबावी फ्रेंड्स कोटारा के बीच में खेला जाएगा। The next match will be played between Team Rooftech versus Kalbavi Friends Kotara, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart.
और जहां तक इस मैच का सवाल है 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए तौसीफ और सामना इस वक्त करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष और नवीन जानते हैं इस वक्त क्रीज पर उनकी उपस्थिति उनके टीम के लिए बेहद ज़रूरी है बचे हुए ओवर्स में और ओवर की पहली गेंद सामना करने के लिए तैयार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद पहुंच से बाहर वाइड का इशारा 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 20 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, दोपहर के 2:20 यहाँ पर बच चुके हैं और यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए गेंद इस बार गेंद को चिप किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला का 5वां मैच का प्रथमार्ध यहाँ पर प्रगति पर और इस बीच गेंदबाज तैयार तौसीफ ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा था, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर जहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया सिली मिड ऑन पर कहना पड़ेगा और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। रन्स अभी भी ज़्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए करारे स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है और कुल मिलाकर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप गेंद जाते हुए और डीप मिड विकेट पर काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्डर रोकते और दूसरे फील्डर उसको उठाकर थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। गेंद के लाइन पर पहुंचते हुए फ्रंट फुट पर जाने के बाद गेंद को इस वक्त स्विंग कर दिया था डीप मिड विकेट पर वाइड इज लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच और 2 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए संतोष एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार लगभग जमीन के सहारे अलोंग द कार्पेट आई थी और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर बल्लेबाज के जूते पर टकराने के बाद 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए तौसीफ एक बार फिर से तैयार अर्बन होमसेन की ओर से ये गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे बिना देखे रन लेने का प्रयास और विकेट कीपर ने अपना काम विकेटों के पीछे तमाम किया। परिवर्तन के तौर पर पिछले गेंद के मुकाबले धीमी गेंद थी, लॉन्ग द कार्पेट बिल्कुल जमीन के सहारे आई थी और आखिरकार गेंद को खेलना चाहा था। चूंकि जैसे ही गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से से होकर निकली विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज ने रन लेने की हड़बड़ाहट दिखाई, क्रीज से आगे निकल आए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया और इसी के साथ ये 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है 25 for 5। स्टिल द स्ट्रगलिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ फ्रेंड्स कुत्तार एंड good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of torpedoes Kana और नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ इस वक्त क्रीज पर वो पधारते हुए और 30 नंबर की जर्सी यहाँ पर पहने हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो तौसीफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज निशान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में, नहीं एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को रोक लिया गया है इससे पहले और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 overs completed 26 for the loss of 5 wickets. Still the batsmen of Friends Kuttar are now searching for the right track. Just a last over now remaining in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखना यह है कि इस बचे हुए अंतिम ओवर में फ्रेंड्स कुत्तार के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। अगला मैच जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कलबावी फ्रेंड्स कुत्तार और टीम रूफटेक के बीच अगला मैच खेला जाएगा, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और अंतिम ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ फ्रेंड्स कुत्तार की पारी में गेंदबाज तौसीफ जिन्होंने अपना पहला ओवर बेहतर फेंका था, अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार रहा। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और दाहिने हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर निशान सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई एज यूजुअल 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और जहाँ तक सवाल है इस वक्त कवर पॉइंट के फील्डर को पीछे भेजा जा रहा है डीप कवर पॉइंट पर
और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन के फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है गले पर। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार तैनात ऊपर था विकेट। एक गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला। इस वक्त दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, 9 सेकंड पर थ्रो पहुंचा और बल्लेबाज यहां पर पहुंच नहीं पाए। तो दूसरा रन काफी जोखिम भरा साबित हो सकता था और हुआ भी। और यहां पर विकेट नंबर 6 गिर चुका है 27 रनों के ऊपर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 5 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। तो जिस तरह से मैं और मेरे काबिल दोस्त सतीश पहले भी फरमा चुके, एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियन ट्रॉफी 2022 टू 2022 इज प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रेंड्स बल्लाल बाग बिरवेर कुडला रजिस्टर्ड अशोक नगर वुमेन्स विंग। निस्संदेह यहाँ पर ये श्रृंखला एक उदाहरण है आने वाले दिनों में जो भी श्रृंखला होगी, क्योंकि महिलाओं ने इस श्रृंखला का आयोजन किया है पुरुषों के लिए अशोक नगर वुमेन्स विंग ने। और निस्संदेह यह एक काबिल तारीफ बात है कि महिलाओं ने पुरुषों के क्रिकेट के श्रृंखला को यहाँ पर इस उर्वा क्रिकेट मैदान के इतिहास में ही पहली बार यहाँ पर आयोजन किया है बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 के नाम पर। और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बल्लेबाज के लिए बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, थोड़ी सी मिसफील्ड, दूसरा रन नहीं मिलेगा। हालांकि 2-4 कदम आगे जरूर बढ़ाए थे लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया, देखा कि गेंद वहां पर ठीक तरह से दोबारा फील्ड की जा चुकी है। 1 रन का इजाफा, 28 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। तोइफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और नए बल्लेबाज विश्वास, देखना यह कि किस विश्वास के साथ इस वक्त तोइफ के गेंदों का सामना करते हैं। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, इस वक्त गेंद पहुंची वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर नहीं, बीच में पिच के बीच थ्रो पहुंच चुका है। भी 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है, स्कोर बढ़कर इन 2 रनों के साथ 30 रनों पर पहुंच चुका है 6 विकेट के नुकसान पर, 30 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। रन इस वक्त चाहिए फ्रेंड्स कुत्तार को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है। और इस बीच अंपायर कुछ कहते हुए, हालांकि टोरपेडोस काना के खिलाड़ी से कि शायद कुछ ना कुछ बात वहां पर ज़रूर हुई है। और इस बीच बल्लेबाज पिछले गेंद पर 2 रन बटोर चुके, एक बार फिर से गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार। कुल मिलाकर अब 3 गेंदें उनकी पारी में बाकी। गेंदबाज तोइफ दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड विकेट, 1 रन मिलेगा। क्लीन कलेक्शन, इनका थ्रो, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, पहला रन काफी तेजी के साथ पूर्ण किया और आखिरकार कोई दिक्कत ही उन्हें महसूस नहीं हुई दूसरा रन प्राप्त करने में। 32 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 32 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। सिर्फ 2 गेंदें बाकी, अपने जूतों के फीतों को इस वक्त बांधते हुए बल्लेबाज अगली गेंद का सामना यहां पर करने के लिए तैयार। और गेंदबाज तोइफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए विश्वास सामना करने के लिए तैयार। तौफ की गेंदों का यह गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा विकेट कीपर, चूंकि कार्तिक विकेट कीपर थे, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रन। और अंतिम गेंद उनकी पारी का यहाँ पर बाकी, 22 का इशारा और अंतिम गेंद उनकी पारी का। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। तोइफ गेंदबाजी करेंगे इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंद को उछालना चाह कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, शॉर्ट मिड विकेट पर फीडर मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और इस 1 रन के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर फ्रेंड्स कुत्ता। दे फिनिश्ड विद 34 for the loss of 6 wickets in the stipulated 6 overs, and now they set a victory target of 35 now for Torpedoes Khana. And as far as the required run rate is concerned, just under 6 runs per over they have to score for victory. That means in exactly calculation, it's going to be 5.83 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. 35 runs का लक्ष्य, 35 the target in 6 overs for Torpedoes Khana set by Friends Kuttar, and the innings now going to start within just short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब टोरपेडोस खाना की पारी की शुरुआत होगी यहां पर एक छोटे से अंतराल के बाद। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So thank you very much, Gopi. The 34 for the loss of 6 wicket and set a target of 35 to win the match for Torpedoes Khana. Looks like it's really the bowlers dominated that first 6 overs, but you cannot underestimate this total, especially when you're playing against a team like Friends Kuttar. They also got some very good bowling department. They definitely believe in their bowling strength, so that I think Torpedoes Khana have to work hard if they wanted to win the match. They have to work hard to get that 35 runs in 6 overs, and wait and see how well the Torpedoes Khana will going to give start here for their team. The opener batters are walking towards the middle. Karthik, the little master, along with the Rilwan. Quite surprisingly, Rilwan came into bat. Might be that little bit wanted to take the advantage of the power play overs, as like a pinch hitter is just coming into middle here along with Karthik. What a fantastic cricket tournament is going on here. Friends Balalbag, Biruver, Kudla, Ashok Nagar Women's Wing organizing this BK Champions Trophy 2022 under the great leadership of the founder president of Biruver Kudla, Uday Pujari, and lot of dignitaries really supported for this cricket tournament. We will never forget the name of our beloved MLA of South Constituency, Shidi Vedavas Kamath, one who is responsible for the floodlight for this cricket ground, UCG cricket ground. Definitely cricket lovers will going to remember him for a long time, because the way he is supported for the game of cricket and even for the sports as well. Once again, thank you very much on behalf of Biruver Kudla to our beloved Vedavas Kamath for supporting for the success of this cricket tournament as well. So lot of dignitary will going to represent tomorrow for the prize distribution ceremony as well. Tomorrow is a very good day for cricket, I must say. Once again, on behalf of organizer, I would like to invite the cricket lovers, please come with a big number to support this cricket tournament as well. Tomorrow, it's going to be the matches for the top seeded teams in this BK Champions Trophy. Meanwhile, Karthik will going to face a first delivery from the commentary box, and as jersey number 10 will going to start. Vishwas bowling will going to start first over. The straight away, Karthik is right on top of that delivery and played that reverse throw quite from the middle of the bat ball, raising towards the fence for 4 runs. It's been a very difficult, I must say, for the batters like Karthik, because he's so confident. Look at the level of confidence of that batter. Even though he's playing his first delivery, but he's so confident that he's believe with his strength. He knows that I can play that kind of cricketing stroke. Even I was playing my first delivery. This is an outstanding cricketing stroke there from little master Karthik. Just played that twisted bat quite beautifully. Got that right timing in that stroke as well. And look at the exquisite footwork from that little master Karthik. Got that one right from the middle of the bat by getting a position very quickly. Vishwas bowling from the commentary box and right arm over the wicket to Karthik. Oh, what a delivery! This is what you call the comeback. This is an outstanding comeback here from the bowler Vishwas. The name itself suggesting that the Vishwas means a confident. And he got a confident that after batsman hitting him, I will going to come back with the wicket. And that was the kind of comeback is required. This is a great strength of the bowler. That believeness is so important, even though the first delivery which is dispatched to the boundary, the very next delivery, he got a faith in himself. The believing with this strength and self-confidence. And he got that wicket by bowling a pitch of the delivery, and Karthik is back into pavilion. Altogether good cricket, I must say. Very good cricket from both the teams as Karthik is back into pavilion. Vishwas got the wicket of Karthik. Just look at the way the Karthik is dismissed, I think. Karthik wanted to disturb the concentration of the bowler by moving here and there. He wanted to play the reverse sweep again, but he's changing his mind. To try to play that one, push the ball into the point region, because he's the kind of batter, after getting the boundary, he wanted to rotate the strike. That's what happening here. He wanted to push the ball down to cover point region, but that ball, which was bowled in a Yorker length line, and dismissed Karthik back into pavilion. The new batsman, Akram came into middle. One more experienced campaigner for the side of Torpedoes Khana. Balls are beautifully bowled once again, Yorker length, but the line is little bit down the leg stamp, so negotiated very well by Akram in the last moment. Seeing the line of the ball, he got a little bit inside the depth of the bat to go down to fine leg region. So Rilwan back into strike now. He will going to face first time in this power play over, the over of Vishwas. Vishwas has got a wicket. Even they got considered a boundary. He's bounced back very strongly in this over. Vishwas.
bowling away from us. Right arm over the wicket to Rilwan. Rilwan this time opening the face of the bat quite deliberately, edging it down to short third man region. Naveen's the fieldsman there in the short, one of the short fine leg region, moving to his right. One of the best fielder behind the wicket. A very good fielder indeed. Naveen fields the ball, but not quite able to stop the single from this batter with that single scoreboard. Now moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Vishwas back to his bowling mark, short run up. Just 2-3 steps away from Roland Pinto. Right arm over the wicket, wide up the crease balls, and Akram right behind the line of the ball with the full face of the bat. Drives that one right between mid off and a short extra cover point region. Get the single down to wideish long off with that single. Scoreboard was on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. Already 7 runs came from that over. It's the last delivery remaining in this over. Particular over, I think. Tarpados Khana looking very, very comfortable because their run rate required is just under 6 runs per over. They got 7 runs already on the board, even they lost the wicket of Karthik. Vishwas pitching the ball so many times, taking his own time. Bowls right wide of the crease, bowls beautifully driven there, but even right in the gap. The chasing for the fielder in the short mid wicket region, long on region. Oh, good throw coming from the fielder, back and throw into the stump. But umpire Roland Pinto, I must say, is very confident the batter is inside the line or not. But he want to take the advantage. He take the help from a third umpire. Umpire Arish Padil will going to see will it going to be out or not out. It's a very good thinking there by bowler, I must say. The back and throw. The throw, look at that. The fielder collects the ball, returns the ball very quickly to the hands of Vishwas, and Vishwas. Before he collects the ball and undrum throw into the stumps, I think batsman safe. So not out is a call from umpire Arish Padil. By looking at the body language of Roland Pinto, he knows that 100% the batsman is in, but he doesn't want to take any chance here because seeing the appeal from Friends Kutar, all the players are up. They wanted to see will it go into a chance here for them to pick 1 wicket to give some trouble for the batters, but this time I think the batter is safe. And 9 for the loss of 1 wicket. The first over, it looks like the Tarpados Khana, they got what they wanted. Even they lost the wicket of Karthik, but they got the runs what they wanted in the first over. They got 9, and they're chasing 35 to win the match. And now 26 more runs required for the victory in 30 deliveries. The equation favoring chasing team Tarpados Khana, but everybody knows that the potential of Friends Kutar. They got some bowling department who can they can turn the match around by picking up wickets. I think the wicket is a very key here for Friends Kutar. If they wanted to back into this game, they have to pick the wickets. Once the new batsman coming into the middle, they can bowl some economical overs. Maybe that's strategy from the captain of Friends Kutar. That's why they brought their wicket-taking bowler from the far end, Rakshit from the far end, and wait and see how Rakshit will going to give the start here from the Urban Homes end. Second over of the power play, 9 for the loss of 1 wicket. Akram will going to face a first delivery of Rakshit. Right arm over the wicket, chip that one. That's what I'm talking about. Pradeep takes a comfortable catch at the cover point region. Loose stroke played by Akram. Maybe he's thinking of pushing the ball along the ground to get the single to rotate the strike. But by doing that, I think a little bit early into the stroke, and he directly loose strokes comes into play. And Pradeep making no mistake at cover point region, and Tarpados Khana lost their wicket number 2 at the score of 9. This is the right time for Friends Kutar to tighten up the screws here. I already mentioned the wicket taking delivery is much required for Friends Kutar if they wanted to back into this game, because each and every new batsman coming into middle, it's not easy to handle the pressure, tackle with some excellent bowling department of Friends Kutar. But still, I think Tarpados Khana, or maybe they lost 2 wickets, but still they are in upper hand. As far as the run required is concerned, as far as the run rate required is concerned, the sensible batting will take Tarpados Khana into their goal. Goal in the sense 35 they have to get, and over number 2 is in progress. A new batter, jersey number 18. Umpire, please note there is no jersey number 18. Please note 18 jersey numbers is not mentioned.
in their playing 11. They mentioned 17 here, but he got 18 number. Okay, the player is same. The number is different. No problem. 18 is a Nihal. He just came into middle. Left-hand batter. Looks like it's a new face, Nihal, for Torpedoes Khana, the left-hand batter. Then wait and see how Nihal will going to contribute here. And looks like he's a very young, talented player for the side. And wait and see how will he going to contribute from the bat. Rakshit from the far end. Urban Homes end. Searching for the wicket, searching for the dotted delivery. Pass umpire Vivek with the short run up. Right arm over the wicket. He bowls wide of the crease. Outside and out of half time. Going for the off drive. Misspelled by the fielder. Chance of run out in the low striker's end. And Nikhil's throw is not power enough. Not quick enough, and even is not having any power in the throw from Nikhil. What could be a certain chance of run out? The golden chance is missed out by Nikhil. Look at the throw from Nikhil. He returns the ball. Look at the throw. Not enough power. Is not using his arm and pays the penalty for that. Ball is coming very late to the bowler to complete his job. And at that time, Nikhil completes his run. I think Nikhil be really lucky here. Nihal very lucky here. Just he survived from that run out. So 10 for the loss of 2 wicket. All kind of drama we can see here in this particular match. Both the teams has got a potential of winning this match. Rakshit from the far end with a short run up. Right arm over the wicket to Rilwan. Came as an opener batter for the side. Facing Rakshit. Oh! That was a very close to the stump, I must say. That ball just an inches, fractionally. That ball just missed off stump. And Rilwan is lucky. Wicketkeeper thought that he got a wicket. Even bowler thought he got a wicket. But ball missed the stumps. A fantastic delivery there from Rakshit. Again, he's testing the temperament of the batter with this line and length. That was the kind of over is required for friends Kudla if they wanted to back into this game. So 10 for the loss of 2 wicket in the over number 3rd in progress. Second in progress, in fact. Rakshit again now. Bowling with the different bowling action. One step is going back, testing the patience of the batters, I must say. That's why Rilwan, they implementing the same strategy that when bowler is settled, he's just going back. He want to take a little bit relax. And that's what's happening. The mind game is going on here between batter and the bowler. Rakshit again bowling right arm over the wicket from the far end to Rilwan. Rilwan going for the off drive. Wicket keeper missed it completely. This is a bad miss, I must say, from Santosh behind the stump. What could be a certain dotted delivery because of wicket keeper missed it completely. The opposition has got chance to rotate the strike here. 11 for the loss of 2 wicket. By call by umpire. And just 2 runs, a couple of runs in that over. One in the form of bye. That means so far is Rakshit is bowling a very tidy line and length. 4 deliveries, just 2 runs conceded. And he picked a valuable wicket of Akram. So now Nihal will going to take the strike. Rakshit on his bowling mark. Going back 1 step and getting his run up. Ball chip that one, and oh, poor, absolutely poor piece of fielding there by the fielder, I must say. This is really looks like the fielder there in the short mid-off region, unorthodox, I must say. That was an unorthodox fielding position, not a long off, not a mid-off. In middle of that is station. When ball is coming into him, looks like he is just wake up from the dream. Just the reaction we can see that he's not really ready to take the catch in that occasion. He's surprised seeing the ball is going right to him. Late to react to that one and face the penalty for that. And Nihal got a valuable couple of runs. 13 for the loss of 2 wicket. Here from the far end. Rakshit bowls to Nihal. Nihal chipped that one down to mid-wicket, mid-square leg region. In fact, the fielder there in the deep have to run front from the deep and ample time for the batter Nihal to pick a couple of runs. So 2 and 2. Altogether 4 runs came from the last 2 deliveries. It I think is handy enough for Torpedoes Khana what they wanted to get in this particular over. Now 15 is on the board. They're chasing 45 to win the 35 to win this match. Now 20 to get
from 4 overs. 20 to get from 24 deliveries. Equation still showing that the Torpedoes Khana, they are in a top. And unless one good over, the wicket taking over, one or two good overs badly required here for Friends Kutla if they wanted to win the match. 20 runs required from 24 balls. And last two delivery, what we are talking about, if that fielder is able to take the catch, the Friends Kutla has got opportunity to back into this game. And because of that 4 runs, I think it's become a very costly for Friends Kutla, the last two deliveries. And Nihal has got an important 4 runs from his bat. Rilwan back on strike. Pradeep back on his bowling mark. Pradeep usually is bowled power play overs in the previous match, but now is after that fielding restriction is off. Is now bowling from the commentary box and having 1, 2, 3, 4, 5 fielders in the onside region and 4 in the offside. 1 at deep wide east long off mid off for short cover point, and fielder from short third man region going back to deep third man region. Maybe the reason that Rilwan is a very good very good reverse sweeper of the ball. And here is next one. This time, lofted at one. The fielder there in the deep extra cover. He will take the catch and he takes the catch. A wonderful running catch, I must say. Because we can't see anything here from the commentary box, and the angle we can very difficult for us to see. But we can see it in the action in replay. And I think, oh, good catch. Absolutely good catch. Once it looks like ball is sailing over and going over the head of that deep extra cover fielder, but a very good judgment taken there by the deep extra cover fielder to dismiss the wicket of Rilwan. 15 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Very vital breakthrough for Friends Kutla through Pradeep, as Rilwan looking for some expansive drive towards the deep extra cover region. He wanted to reduce the pressure by hitting one big shot. Definitely if it is a 6, the Friends Kutla very hard to bounce back, but because of that wicket, Friends Kutla now feeling that if he bowl another 1 or 2, 3 good overs, they can back into this game. So new batter Sadaqatullah, I think, is the right player in the right position. He's a very good rotator of the strike, very experienced campaigner for Torpedoes Khana, who can handle the pressure. And now umpire Roland Pinto saying, just observing the bat of Sadaqatullah. The width of the bat might be umpire wanted to see the 4.25 inches as per the rules, not more than that. And the batter have to use that. The width of the bat is under 4.25 inches. Now Sadaqatullah asking to change the bat here. Umpire Roland Pinto, after observing, examining the width of the bat, he's just asking Sadaqatullah to change your bat. So meanwhile, coming back to this match, will it going to be possible here for Friends Kutla? Why not? They got still 20 runs to depend and 23 deliveries to go. One good over can change the complexion of this match. It's so important here for the Friends Kutla to believe with their strength. At the same time, sensible batting for Torpedoes Khana required. No need to panic at all. Just the rotation of strike is very important for Torpedoes Khana if they wanted to take match away from the opposition. So far, little bit correction. Nihal is looking pretty good in the middle. This time, lovely shot right in the gap towards the deep mid wicket region. Long chase here for the fielder. Before the fielder run across to field the ball down at deep wicket region. The ample time for the batters to complete that couple of runs. Excellent placement there from Nihal. Nothing wrong with the line of the delivery, but he's so confident. Look at the stroke from Nihal. He just shuffled across the line of the delivery, just coming into the line of the delivery, taking that one in the off volley and make the placement officially played. But we know exactly he's playing very safely down to mid wicket, and he got a placement right to get a couple of runs. 17 for the loss of 3 wicket. Pradeep around the wicket. Oh, what a shot! That ball is a rocketing towards the fence down to deep pocket score like boundary for 4 runs. The moment that ball left the bat of Nihal, the ball went like a tracer bullet. This is the wrong line to ball to the left-hander batter, I must say. Each and every batters are very strong off their legs. You cannot ball that line, especially when the ball batsman having a very good time in the middle. He's hitting the ball very well. You're not having adequate field for that, as he was not having ample pace in that bowling. And the batter has to say thank you very much for that delivery, and dispatches that one down to deep score like boundary for 4 runs. 21 for the loss of 3 wicket.
Pratibha's beautiful square cut in the regulation off the back foot. Beautiful. That was a delightful stroke there from Nihal. He is a very talent. He's a very good talent he has got as far as just observing his each and every strokes in this particular matches. The footwork is exquisite. High-hand coordination is so good. And of course, we are talking about the footwork is very important in underarm cricket. You have to move your front foot towards the line of the delivery. Again, beautifully bowled there by Pradeep in that particular over. He managed to bowl only one dotted delivery. Otherwise, and one wicket. The first ball he got a wicket. Afterwards, some scoring deliveries he bowled. Last time in this over, Kudla play that one. Oh my goodness! Mahesh takes a wonderful catch, diving to his front, takes the catch, rolling and gymnastic work there from Mahesh there. And Sadakutullah is back into pavilion. I want to see it in the replay. Look at that one. Mahesh, the fielder like Mahesh, has got a heavy body weight and diving to his front and maintaining his body balance is so important here. Look at the way. Oh, when you are diving to his wrong hand, of course you can dive to his right hand, but when you are diving to his left hand, which is the wrong side for the right hander, I think Mahesh did a wonderful and a very fantastic catch taken there by Mahesh. So Sadakutullah is back into pavilion. 22 for the loss of 4 wicket. Now last 3 over remaining, 18 balls remaining. They have to get another 13 runs to win this match. The match looks very interesting, but still I think the match is 65% in the hands of Torpedoes Khana. If Friends Kutar wanted to convert that 35 into 100%, they have to give 100% in the bowling. They have to give 100% in their bowling department as well. And wait and see how the match is going to be turning out here in the 3 overs. Time to ask Gopi to take over the microphone. And Gopi, so far it's a very good cricket we are observing, isn't it? And but still, even they lost the wicket number 4 here. And as far as the run required is concerned, Torpedoes Khana looking in a commanding position, isn't it? What do you think? What kind of bowling now required in the remaining 3 overs if the Friends Kutar wanted to back into this game? निस्संदेह एक ऐसी गेंदबाजी सतीश जो बल्लेबाजों को पेविलियन का रास्ता दिखाया और यहाँ पर उनकी क्षमता, उनके गेंदबाजों में वो क्षमता एबिलिटी है कि वो इस तरीके की गेंदबाजी कर सकते हैं। फ्रेंड्स कुत्तार के गेंदबाज के बारे में अगर जिक्र किया जाए, और मैं समझता हूँ पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर तो बेहतरीन कैच महेश ने लिया था, उस कैच की बदौलत कुछ हद तक मानसिक आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ चुका है उनके खिलाड़ियों का। देखते हैं क्या होता है। 13 रन चाहिए 18 गेंदों पर और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में निकली। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 23 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह विकेटें ही इस वक्त उखाड़ने हैं या फिर कसे हुए ओवर्स इस वक्त फेंकने होंगे फ्रेंड्स कुत्तार के गेंदबाजों को, अगर उन्हें बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना है तो। और जहां तक टॉर्पेडोज खाना का सवाल है, इस वक्त हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी वो बटोरते हैं तो निस्संदेह अपने लक्ष्य तक वो पहुंच सकते हैं। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश, पूरी तरीके की कोशिश यहां पर करते हुए। जगदीश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, 12 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 17 और एक संघर्ष, एक बेहतर संघर्ष जो कि यहां पर जारी। अर्बन होमसन की ओर से गेंदबाज जगदीश फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए। कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त तैनात, सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में। दाहिना हाथ ओवर द विकेट, जगदीश की गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, प्लम्ब इन फ्रंट और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो एक गेंद पहले मैंने फरमाया था यहां पर विकेटें ही उखाड़ने होंगे या फिर डॉट गेंदें फेंकने होंगे इस मैच में कमबैक करने के लिए फ्रेंड्स कुत्तार के गेंदबाजों को। और यहां पर विकेट अगली गेंद पर उखाड़ने में सफल। आउट होने वाले बल्लेबाज तईफ आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए थोड़े से सफल होते, वन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा था, गेंद लाइन पर टिप्पा खाए, उनके मिडल स्टंप को केंद्रीकृत कर आती हुई और उनके पैर पर गेंद टकराई और अंपायर विवेक को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई, उन्हें आउट घोषित करने में। 5वां विकेट गिर चुका है। संघर्ष अभी भी बरकरार रखता हुआ फ्रेंड्स कुत्तार। और जहां तक सवाल है टॉर्पेडोज खाना का, इस वक्त न सिर्फ उन्हें रन्स बनाने हैं बल्कि विकेटों की सुरक्षितता पर भी अहम ध्यान उन्हें देना होगा अगर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचना है तो। और यहाँ पर सवाल है 12 रन इस वक्त चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी हैं 16 और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ शरीफ, नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त मौजूद बल्लेबाज निहाल और इस वक्त शरीफ सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज
इस वक्त गेंदबाजी करते हुए जगदीश, फील्डिंग में जमावट करने के बाद एक बराबर का संघर्ष हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त जगदीश गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शरीफ के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद, इस बार गेंद को स्वीप करना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंची बल्ले का लगभग भीतरी किनारा टकराने के बाद विकेट कीपर के हाथों में चंद टिप्पो बाद रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो 12 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 15। दाहिने हाथ ओवर द विकेट जगदीश एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई और गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह इस ओवर में एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक जगदीश ने दिया है और जहां तक सवाल है बचे हुए गेंदों का, तो इसी सफलता के सिलसिले को बचे हुए 2 गेंदों में भी इस ओवर के उन्हें बरकरार रखना है। 24 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर, 11 रन और चाहिए विजय के लिए। जगदीश एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज निहाल इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद जगदीश की गेंदों का, ये गेंद ड्राइव किया और गेंद सीधे पहुंची मिड विकेट फील्डर के हाथों में। ऑफ द टॉस गेंद को चिप करना चाहता एनफील्ड क्लियर करते हुए, लेकिन यहां पर ज्यादा ऊंचा गेंद को नहीं उछाल पाए और शॉर्ट मिड विकेट पर जो फील्डर थे उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की। एक और विकेट यहां पर गिर चुका है 24 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और सतीश, जैसा कि कहा, इस मैच में कशिश बाकी है और यहां पर विकेटें 2 गिर चुके हैं। मैं समझता हूं अंतिम 8 या 9 गेंदों में 3 विकेटें गिरे और इन 3 विकेटों की बदौलत फ्रेंड्स कुत्तार इस मैच में वापस आ चुका है। टॉर्पेडोज खाना का जहां तक सवाल है, गेंद से भी कम उन्हें रन बनाने हैं और यहां पर वो विकेटों को बरकरार रखने में असफल रहे पिछले चंद गेंदों में, और फ्रेंड्स कुत्तार को जो वापसी करनी चाहिए वो वापसी अंतिम चंद गेंदों में वो कर चुके हैं। सतीश, Exactly, Gopi, and they've lost the 6 wickets, in fact. And just I'm really surprised why Jagadish has been not introduced. He is a wicket-taking bowler in 30 over format of game as well. He is the one responsible for Friends Kutar in the semi-final. He is a wicket-taking bowler, and just like what he's knowing for, he got 2 valuable wickets in that particular over. And because of that 2 overs, that's big over from Jagadish, I think, Gopi, the match is evenly poised now. Under pressure situation now for the new incoming batsman, because it's not an easy job for any batter to tackle with the turning delivery of Jagadish. He's a master of bowling a leg cutter in that occasion, and wait and see how new batter will go in to face this man Jagadish. 1 wicket definitely, Gopi, takes the match away from the opposition. बिल्कुल, जगदीश कितने प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं इस ओवर में उन्होंने साबित किया है और यहां पर एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी है। 1 या 2 विकेटों का और पतन टॉर्पेडोज खाना को मुश्किलों के दलदल में यहां पर ढकेल सकता है और इस बार गेंदबाज जगदीश तैयार। इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया, शॉर्ट कवर पर गेंद पहुंची, थोड़ी सी मिसफील्ड यहां पर, लेकिन यहां पर 1 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। अगर पहले प्रयत्न में गेंद को वो लपक लेते, शायद कैच का भी मौका था वहां पर, मुश्किल से मौका, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो ठीक तरह से लपक नहीं पाए, लेकिन बेहतरीन तरीके से गेंद को उन्होंने वहां पर रोका। 1 रन का इजाफा 25 रन 6 विकेट के नुकसान पर। सो द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर, 10 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 12 बॉल्स और 12 गेंदों में 10 रन चाहिए, 4 विकेटें सुरक्षित। और देखना यह है कि कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से कौन से गेंदबाज को इस वक्त कप्तान फ्रेंड्स कुत्तार की गेंदबाजी पर उतारते हैं। तो 12 गेंदों में 10 रन और सतीश, मैं अभी भी समझता हूं इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। Exactly, Gopi. Just see that the 10 runs required from 12 balls. This over is definitely going to be very crucial for Friends Kutar, because in this particular, if the bowler able to restrict the opposition for just 4 to 5 runs, then in last over even 6 is very difficult, because Jagadish will go into bowl that last over. It's very important here for both the teams. They have some game plan. Game plan for Torpedoes Khana, that in this particular they have to rotate the strike badly. If they wanted to get for 7 to 8 runs in the first last over, if they keep, I think it's going to be very difficult for Torpedoes Khana to win the match. And wait and see how these two teams will go into fight for the victory. Whoever going to win, Gopi, but definitely this match is going to be one of the best match of the day number 1. बिल्कुल, आज का बेहतरीन मैच कहलाएगा। अगर इस मैच में कोई भी टीम अगर विजय दर्ज करता है तो दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बाएं हाथ राउंड द विकेट, स्कोर ऑफ द विकेट, गेंद को इस वक्त उछाला, गेंद पीछे, फील्डर थोड़ी सी मिसजजमेंट, और जब तक गेंद को वो फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे, पहले उन्होंने भापा की गेंद को
लपक लिया जाए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद टिप्पा खाने के बाद उनके आगे घुमाव लेती हुई, स्पिन लेती हुई अपनी उनकी बाईं ओर गई, और जब तक दोबारा सीमा रेखा के अंदर वो गेंद को रोकते बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 8 रन इस ओवर में, जैसा कि आपने फरमाया सतीश, कम से कम 6 से 7 रन जरूर बनाने हैं टॉर्पेडोज काना को, अगर अंतिम ओवर में लक्ष्य उनके लिए आसान होना है तो। यह गेंद इस बार स्वीप करना था, विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे तेजी के साथ, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए। लेग बाई का इशारा, 28 रन 6 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों में 3 रन इस वक्त ओवर में बन चुके हैं। और बाएं हाथ के गेंदबाज प्रदीप इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ते हुए, सिनन इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार शरीफ, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार प्रदीप, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शरीफ के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्वीप किया, इस वक्त शॉर्ट टर्न पर गेंद पहुंची, रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन बल्लेबाज काफी तेज, यहां पर जैसे ही गेंद विकेट कीपर से को चूक कर निकली, नॉन सेकंड बल्लेबाज ने दौड़ना शुरू किया और यशस्वीतम 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 29 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 29 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 6 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 9 बॉल्स। और अब ऐसा कहना पड़ेगा फ्रेंड्स कुत्तार को वापसी करने के लिए डॉट गेंदों की यहां पर सख्त जरूरत है। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, गेंदबाज की गेंद, बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली गुड वन, और गेंद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ लगभग जमीन के सहारे आई थी, रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में झुके, गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 29 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है, 6 विकेट के नुकसान पर, कांटे का टक्कर यहां पर जारी है। और मैच के जहां तक विजय का सवाल है, अभी भी मैं कहूंगा मैच बराबरी पर रुक चुका है, और इस ओवर में जितने कम रन देंगे उतना बेहतर होगा फ्रेंड्स कुत्तार के लिए, क्योंकि अंतिम ओवर में शायद जगदीश गेंदबाजी पर उतर सकते हैं, तो अगर वो गेंदबाजी पर उतरेंगे तो जितना ज्यादा रन बल्लेबाज को बनाने होंगे उनके उतना बेहतर फ्रेंड्स कुत्तार के लिए होगा। जहां तक टॉर्पेडोज काना का सवाल है, इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन उन्हें बटोरने हैं। ये गेंद फुल टॉस, फुल किया इस वक्त टॉप एज, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और अंतिम क्षण में कैच लेने में सफल, यहां पर यह विकेट गिर चुका है। मैं कहता हूं जस्ट वांटेड टू प्ले दैट, ही जस्ट प्लेड दैट वन टू अर्ली एट द लास्ट मोमेंट, और जैसे ही गेंद उनके बल्ले पर आने ही वाली थी उन्होंने बल्ला जोर से अड़ाया हवा में, और देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, और गेंद उनके बल्ले के शायद टॉप एज पर टकराने के बाद हवा में उछली और डीप मिड विकेट पर एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को उन्होंने रखा। 7वां विकेट गिर चुका है, अब गेंदे बाकी हैं 7 और गेंदे रन्स बनाने हैं 6 runs they have to score for victory in remaining 7 balls, just they got 3 wickets in hand। और मैं समझता हूं यहां पर अंतिम गेंद पर एक और विकेट अगर गिरता है तो निस्संदेह टॉर्पेडोज काना के लिए समस्याएं और बढ़ जाएगी, तो इस अंतिम गेंद को उनके बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा। और खासकर जहां तक फ्रेंड्स कुत्तार का सवाल है, इस अंतिम गेंद में उन्हें इस वक्त विकेट उखाड़ने ही होंगे या फिर डॉट गेंद यहां पर फेंकना होगा बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ाने के लिए। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, और इस बीच दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर आ चुके हैं। शरीफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है जलाल का, और यहां पर इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर प्रदीप तैयार। V4NEWS चैनल पर इस बेहतरीन मैच का एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं, और मैच इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इंचिंग टूवर्ड्स टू अ नेल बाइटिंग फिनिश, 6 टू गेट, 7 बॉल्स रिमाइनिंग, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट प्रदीप फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शरीफ इस वक्त सामना करने के लिए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद, और इस बीच ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूके और डॉट गेंद। अब 6 रन्स टू गेट फ्रॉम लास्ट 6 डिलीवरीज, और मैं समझता हूं इस ओवर में कुल मिलाकर 4 रन बने, और सतीश 12 गेंदों में 10 रन बनाने थे, एंड नाउ दे हैव टू स्कोर 6 of 6, और मैं समझता हूं इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन प्रदीप ने दिया है। Exactly, Gopi. It's a very good over in that particular. First delivery, it's a 2 runs, isn't it? Certain chance of catch actually there for Navin, but his side is level best. But after conceding 2 runs in first delivery, then remaining 5 deliveries, I think he managed to control the things in the favor of Friends Kuttar by bowling a very good line and length. Now, Gopi, very interesting to see that 6 runs to get from 6 ball, and question raising is how against Jagadish. It is a turning delivery, but left-hand batsman is on strike. Left and right combination definitely going to be not as much of easy for any turning ball, because they have to change the line and length for whenever the strikes are rotated, different line and length is required. That means the match is evenly poised. It's going to be anybody's game.
एग्जैक्टली सतीश, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और जहां तक सवाल है, अंतिम ओवर शुरू होता हुआ जगदीश, जिन्होंने अपना पहला ओवर शानदार फेंका है, और देखना यह है कि अपने दूसरे ओवर में उस सफलता के सिलसिले को वो बरकरार रख पाते हैं या नहीं। बाएं हाथ के बल्लेबाज जलाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता नजर आता हुआ, और ओवर की पहली गेंद लेकर जगदीश इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए जलाल के लिए गेंद को इस वक्त उछाला, कॉर्नर बॉल का मौका इस वक्त फॉलो थ्रू में हो। दिस इज एन स्लॉपी, एब्सोल्युटली डिजास्टर। फॉलो थ्रू में जगदीश पहुंच चुके थे, गेंद के नीचे भी आ गए, लेकिन अंतिम क्षण में क्या हुआ कि गेंद उनके हाथों से छूट गई। शायद गेंद स्पिन ली होगी और घुमाव की वजह से गेंद उनके हाथों से चिटक गई, और फॉलो थ्रू में आसान सा मौका यहां पर गवाते हुए ऑफ द स्ट्राइक जलाल हो चुके हैं। ऑन द स्ट्राइक इस वक्त आ चुके हैं शरीफ। अब चाहिए 5 रन, गेंदें बाकी हैं 5, और यहां पर देखना यह है कि शरीफ अगली गेंद पर क्या करते हैं। तो फील्डिंग में इस वक्त जमावट चलते हुए, और जगदीश पहले गेंद पर कैच छूटने के बाद सहज रूप से उनका कुछ हद तक आत्मविश्वास जरूर कम हुआ है, लेकिन आने वाले गेंदों में वो अपने खोए हुए आत्मविश्वास को प्राप्त कर सकते हैं एक बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए। और देखते हैं अपने अगली गेंद पर वो यहां पर क्या करते हैं। फील्डिंग में जमावट करने के बाद शरीफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ, द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। और जगदीश की गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला मिड विकेट के ऊपर से, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। और ऐसा कहना पड़ेगा, शरीफ फिनिश द मैच इन स्टाइल विद 6। तो जितना भी दबाव था वो पूरा दबाव सिर्फ एक गेंद में शरीफ ने हटा दिया छक्के के जरिए, और इस रोमांचक विजय के साथ टोरपेडोज का इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका है, फ्रेंड्स कुत्तार के खिलाफ विजय दर्ज करते हुए। लेकिन मैं समझता हूं सतीश, एक बेहतरीन फाइट बैक यहां पर कर चुके हैं फ्रेंड्स कुत्तार के खिलाड़ी। Exactly, Gopi, and more than anything else, I think the Sharif once again, what a fantastic game he's played now. Once again, he's a match finisher for Torpedoes Ghana. So many times he finished the match in the same way. Whenever this team is required some big shot, whenever the team is wanted to release the pressure, he's really leading from the front. He completed the job. Here also, under pressure situation, when 5 required from 5 balls, not an easy job against the bowler like Jagadish, but he's just played that one against the turn of the delivery, pick up the line and length, Gopi, and tremendous strike, and it just got that one right from the middle of the bat, and they got the victory here. And just like you mentioned, Gopi, Friends Gutta, really very good fight back, because not an easy job to defend a small total like 35, but they're taking that match into the final over, and everyone there in their feet to what could be the result of this match. But winning and losing is a part of cricket, but both the teams has got won the heart of cricket lovers by playing a magnificent game of cricket. Now next match, Kalbavi Friends Kotara takes on Team Matrix. For the next match, we'll take a short break, and after short break, we are back in front of you live and exclusively. Thank you. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಕಿರಣ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಿರಣ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
Welcome back for the match number 6 of the day number 1 of this prestigious BK Champions Trophy. After winning the toss, captain of Team Matrix selected to field first. So opening batter for the side of Roof Tech came into middle. Captain himself came into middle. Nakiz along with Iqbal. Nakiz will go into face a first delivery from the commentary box, and just number 2 Sagar is introduced. Right arm over the wicket. First ball went for the reverse sweep, and that was a fair delivery. Ball is almost within the reach of the batter, but he is trying for the reverse sweep. First delivery itself missed it completely. Then there is no possibility of any run. Sagar back to his bowling mark with a short run up. Pass umpire Vivek, right arm over the wicket, he bowls. Beautifully bowled. Wicket keeper behind the stump, missed the ball completely. Otherwise, the opportunity of making a stump out, and Naki is a little bit lucky there. He's still there in the middle. Try to use his feet in that previous delivery, but he missed the ball completely. This time again, looking for the big shot, not quite getting timing behind the strokes. Got that one down to mid-on region. And with that single Team Matrix of the mark, little bit correction, Roof Tech off the mark, one without loss of one wicket. That brings Iqbal into strike now. Sagar bowls, slashing that one. Not really got enough bat onto that outside edge of the bat. Short third man fielder fields the ball. One more addition to total. Both the opening batters off the mark with a single. Two without loss of any wicket. So far it's a quiet over from Sagar. 4 deliveries and he considered just 2 runs. Sagar bowls to Nakiz. Bowler's back drive. Again he got a chance here. Again this time the second attempt, I must say. The cotton ball opportunity missed out by Sagar. Quickly realizing there is opportunity to run out because Nakiz is really struggling to reach his home. And after he dropped the catch, look at that one. Quickly realizing there is a chance of run out in a non-Saiger's hand. Hits the stump. And Nakiz is out of the crease. The first wicket is back into pavilion of Roof Tech. Lost the first wicket at a score of 2. Isham is a new batter, came into middle. Isham, one more very talented all-rounder for the side of Roof Tech. The very good bowler as well, Isham. He representing KFC Kodikal as well as young friends. This time beautifully bowled, but I think the ball is a little bit going down the leg stump. Because the bowler bowling a little bit wide of the crease, shape the angle of the delivery, going to miss the leg stump, and the right call from umpire Vivek there. And first over completed. A very good over there from Sagar. The first over, the Team Matrix has really got a very good over through Sagar, and Roof Tech got only 3 runs by losing the wicket of Nakiz. 3 without loss, 3 for the loss of 1 wicket. BK Champions Trophy 2022 running very successfully in the day number 1, and a lot of cooperation coming from our beloved corporator Ganesh Kulal is giving all facilities to make this possible in a UCG ground. The water facilities, of course, they provided for the toilet as well, because that was for many times that toilet is no one can use that one, but today I think to see that in the UCG ground the toilet is open for the players. So thank you very much Ganesh Kulal, they're giving that much all provision provided to make this cricket tournament successful one. Outside the run of off stump, start with the delivery, which is a wide and 1+1. The batsman crossing over. So 2 gifted runs here for Roof Tech. 5 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Nagraj bowling from the urban home stand. Right arm over the wicket to Isam. Went for the big shot, not really coming into the line of the delivery, little bit away from his body. The encouragement here for batter is to see that there is no long off, there is no long on, so that he wanted to play that one over the infield. But by trying that, I think he just mistimed that one, and there is no possibility of any run. Nagraj again from the far end.
from the urban home stand. Right arm over the wicket. This time Isan got that one right from the middle of the bat. Just what he wanted to get there. But again, we can see that that ball travels not quickly. The reason that in afternoon, against the direction of the wind, he tried to hit the ball. It's very difficult to get the distance when you're going towards a big off drive in UCG cricket ground in the afternoon. You need to get some enough power behind the stroke if you wanted to get the distance right. Just a single for his arm. 6 for the loss of 1 wicket. Once again, Nagaraj back into his bowling mark with the short run up. Right arm over the wicket. Pass umpire Arish Padil. Beautifully bowled. Again, a lovely delivery there from Nagaraj. Nip back into the batter very quickly. And very little time for Iqbal to react. That stroke might be hit the bat hard into his boot. And he got inside edge of the leg by, little correction. He got a leg by. Umpire signal leg by. 7 for the loss of 1 wicket. Nagaraj. From the far end. Bowls to Isham. Went for the very big reverse stroke in that occasion. By doing that, Isham missed the ball completely. And some quick work is required. The bat speed is very important when you're going for the reverse stroke, and taking a position is very important. Very quick position you have to take when you play going for the reverse stroke. Exquisite footwork is required, and even bat speed is very important. This time again went for the big shot. Again that ball is landed safely out of the reach of Nagaraj on his follow through. Again Isam, he didn't got enough bat onto that. Trying and trying. You know exactly Isam. This is the last over of the power play. That's why he's trying his level best to get some big stroke in that particular over. But so far is Nagaraj winning a race against the mindset of the batter. Is just bowling that line and length. 8 for the loss of 1 wicket. Nagaraj. Bows to Iqbal. Iqbal again a little bit unorthodox kind of cricketing stroke actually. He wanted to play that one in the onside region. Quickly realizing that very difficult to play the sweep shot. So that he got a little bit bat onto that. Picked up a single. Then one more good over is completed there by Team Matrix. Nagaraj bowled a quiet over after completion of over number 2. And Roof Tech are looking not that much of a healthy run rate. But they got 9 runs at a rate of exactly 4.5 runs per over. And wait and see how well they're going to accelerate the remaining 4 overs. Having 9 wickets in hand, having Isam and Iqbal, 2 very good cricketers in the middle, I think they can accelerate the run rate. Team Matrix, little bit correction, they're playing their first match, and Team Roof Tech, they're playing their second match. They won the first match against SFC Sangolige, and they came into the second round of this cricket tournament, BK Champions Trophy 2022. So Sagar, no change in bowling from the commentary box end. Second time bowling his last and final over of his quota. Is bowled very well. The first over is a very quiet over, just 4 runs he conceded. And starts with the wide the second over. Not a good start for the second over. And 1 plus 2 more run added to total for Roof Tech, and scoreboard moves on to 11 for the loss of 1 wicket. Each and every run is going to be very crucial in this small format of a games. 6 overs games. The extras will definitely going to play the big role in the result of the match. Sagar to Isam, lovely shot, beautifully driven, sweet shot we can hear from the bat of Isam, that hit the ball pretty well from the middle of the bat. He got the placement right as well, and before the fielder from deep mid wicket to run across to field the ball, ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs scoreboard moves on to 13 now for the loss of 1 wicket. Good start for the over number 3 for Roof Tech. They got already 4 runs in one delivery of the over number 3. Little bit change in field, then backward point fielder coming down to square leg region, right off square leg umpire Arish Padil. And here is next one. This time lovely shot there from Isam, beautifully played that one down to deep extra cover boundary. The fielder tried to chase that one, but ball winning the race. What a great shot there from Isam. That was a really imperious, glorious extra cover right there from Isam. Just look at the stroke in replay. Of course the ball came in a half volley, but he had to deliver that one right in the gap. Looks like a little bit inside out cricketing stroke here from Isam, and the full face of the bat hit that one right in the gap, the huge gap between deep cover point and long off, and he got the placement perfection to get that boundary. Very welcome boundary here for Roof Tech, and score jumped into 17 on the board. Sagar bowls the frustration and the pressure straight away after that glorious hit coming from the blade of Isam. The bowler started to feel the pressure
That's the result of the pressure. Is bowled a wide down the leg stump, 18 for the loss of 1 wicket. Sagar. Away from us, this time is some lofted. I don't think he will get the distance here. Long on fielder. I think he couldn't manage to take the catch. Looks like he drops the catch. And once it looks like when Isam is taken that aerial route, looks like it was a comfortable catch here for the deep long on, and little bit misjudgment by the deep long on fielder. Tried to take the catch, ball just slipping out of his hand, and Isam got a life. Again, Isam going very strongly, growing his confidence after that boundary. He started to freeze his arm, picking up the runs for his team. Very important here. They didn't got a good start from the opening 2 overs, but now they got some runs. 21 for the loss of 1 wicket. Iqbal, sensible batting there from Iqbal. Soft end comes into play. The running hard. That was a fantastic wicket, I must say. Running hard and little bit pressure for the outfielder when you complete the first run very quickly. Then Isam is running towards the danger end. And that was sensible batting there from Iqbal. Just soft end comes into play to see that ball is not ready, really quickly going to the hands of long off fielder. And before the long off fielder to charging in, running forward, they got enough time to come back for the second. 23 on the board. Prolong over. 14 runs came from that over. This time, Iqbal hits that one down to mid-wicket region. Again, the couple of runs here. And this is a productive over. Absolutely productive over here for Roof Tech. They got runs what they wanted. 25 runs came from that over. One shot called by umpire. That means 24. 24 for the loss of 1 wicket. 3 overs completed, and before the next over going to commence, it's time to ask Gopi to take over the microphone. And good comeback, Gopi. The 2 overs which belongs to Team Matrix. Very slow start for Roof Tech. And this over, the ball by Sagar, I think Isam and Iqbal, both the batters are quickly realizing is that getting the runs in power play is not mandatory, but you can get runs even after the power play as well. They got 14 valuable runs in that last 15 valuable runs in that over, and because of that I think Roof Tech are strongly back into this game. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा, रन्स बटोरने के लिए सिर्फ पावर प्ले ओवर होना ही जरूरी नहीं होता. रन्स कभी भी बटोरा जा सकता है. आप की बल्लेबाजी अगर बेहतर हो तो मैच के किसी भी स्टेज पर आपको रन आप बटोर सकते हैं. और यहाँ पर हिसाम और इकबाल ने साबित कर दिखाया कि पावर प्ले ओवर्स के बगैर भी दूसरे ओवर्स पे रन बटोरा जा सकता है. और बिल्कुल सही बात आपने कहा सतीश. और 15 रन पिछले ओवर पे बने, और पिछले ओवर की बदौलत टीम रूफ टेक में समझता हूं दे आर बैक इन द गेम. वापस इस मैच में वापस आ चुके हैं. 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है. गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए हमसे दूर वाले छोर से, और इस वक्त तो नए इस वक्त नए गेंदबाजी पर उतरते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग फील्डिंग परफॉर्मेंस. जिस तरीके से गोली की रफ्तार में गेंद उनकी ओर आई, उसी तरीके से गेंद के उछाल को भापते हुए गेंद को इस वक्त उन्होंने फील्ड कर लिया. टिप्पे के बाद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर, और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को इस गेंद पर मिल पाया. और 1 रन के साथ इस वक्त स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. गेंदबाज ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा. धीमी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर फ्लाइटेड गेंद थी. चूंकि पूरी तरह स्ट्रोक्स नहीं खेल पाए, विकेट कीपर ने अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड कर लिया, और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो 25 रनों पर स्कोर बोर्ड यहां पर पहुंच चुका है. कम से कम 40 का आंकड़ा यहां पर टीम रूफ टेप को पार करना होगा अगर उन्हें एक चुनौती भरा लक्ष्य यहां पर प्रदान करना है. तो सामने वाले टीम के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच. मैं समझता हूं सतीश इस कैच को उन्होंने लपका नहीं था, गेंद उनके हाथों में बैठ गई थी. द बॉल वाज स्टिक्ड इन हिज हैंड, और इस बेहतरीन कैच की बदौलत यहां पर यह विकेट गिर चुका है. क्यों सतीश? Superman catch, Gopi. It doesn't look like it's the fielder is taking the catch. Just like the eagle is running across and plucking that ball. What a wonderful catch, Gopi. This is the catch of the day, number 1. Absolutely magnificent catch. I don't know what's the name of that player, jersey number 23. If you see that jersey number 23, definitely we're going to remember that catch for a long time.
The way he is run across, looks like he was nowhere near that ball, Gopi. And the timing of extending the hand, right hand, that was very important in that catch. And that was a fantastic. बिल्कुल ना सिर्फ दर्शक उस कैच को याद रखेंगे बल्कि खुद वो फील्डर भी याद रखेंगे कई सालों तक इस कैच को जिस तरीके से उन्होंने लिया है सतीश। और यहाँ पर इस कैच की बदौलत ये विकेट गिर चुका है, विकेट नंबर 2। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, नए बल्लेबाज इमरान का आगमन हो चुका है। ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया, इस बार सीधा कैच उनके हाथों में। इस बार कुछ ज्यादा उन्हें जीतोड़ मेहनत मुशक्कत करनी नहीं पड़ी, गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और अगली गेंद पर यहां पर यह विकेट गिर चुका है। विकेट नंबर 3, इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट वो यहां पर प्राप्त कर चुके हैं और 2 गेंदों पर 2 लगातार विकेट प्राप्त करने के बाद अब उनके सामने हैट्रिक का सुनहरा मौका। और देखना यह है कि वे अपना हैट्रिक यहां पर परिपूर्ण कर पाते हैं। नहीं, शरत थे गेंदबाज जिन्होंने 2 विकेट यहां पर लपके हैं और अब नए बल्लेबाज जुनैद का आगमन यहां पर होता हुआ। चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर समित जो फील्डर थे जिन्होंने उस बेहतरीन कैच को लपका था और यहां पर जुनैद का आगमन होता हुआ। और देखना यह है कि हैट्रिक गेंद में क्या शरत अपना हैट्रिक पूरा कर पाते हैं या नहीं। और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, हैट्रिक गेंद लेकर तैयार इस वक्त जुनैद अर्बन होम्स इनकी ओर से अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए 5 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर, गली, शॉर्ट फाइन लेग और मिड विकेट यहां पर मौजूद। और जुनैद इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार चिप किया, गेंद को लगातार तीसरी बार इस वक्त कुछ काम आ पड़ा है डीप मिड विकेट फील्डर को। जब तक वो दौड़कर गेंद को फील्ड करे, थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला इस ओवर में जारी रखते हुए शरत और सिर्फ इस ओवर में अब तक वो 3 रन प्रदान कर चुके हैं। एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुनैद के लिए ये गेंद इस बार ऑफ द क्रॉस गेंद को खेलना चाहा, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद गई, थ्रो पहुंचा, विकेट कीपर ने विकेट भी चटकाए थ्रो को रिसीव करने के बाद। लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे 1 रन पूरा करने के बाद। 28 रन 4 रन इस ओवर में बने, 2 विकेट प्राप्त किए गेंदबाज शरत ने। एक बेहतर ओवर और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर स्कोर्ड बाय टीम रूफटेक विद अ प्रेजेंट रन रेट ऑफ एग्जैक्टली 7 रन्स पर ओवर। और जहां तक अगले मैच का सवाल है तो अगला मैच यहां पर खेला जाएगा टीम मैट्रिक्स और सर्वाग्नि उरुआ के बीच में अगला मैच खेला जाएगा। जबकि टीम मैट्रिक्स के लिए पहले राउंड में बाई मिलने के बाद दूसरे राउंड में उनका सामना होगा सर्वाग्नि उरुआ के साथ। और सर्वाग्नि उरुआ ने अपने पहले मैच में न्यू स्टार कुंजतुर को उन्होंने पराभव किया था। अब उन दोनों का आमना सामना होगा अगले मैच में। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और चेतन गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। आज का कुल मिलाकर यह 6ठा मैच यहां पर प्रगति पर। बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया फ्रेंड्स बल्लाल बाग बिरुवर कुडला रजिस्टर्ड ने, अशोक नगर वुमेन्स विंग ने इस श्रृंखला का आयोजन किया है शानदार तरीके से। और नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज चेतन, दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुनैद के लिए। ये जैसा कि मेरे दोस्त सतीश ने कई बार पहले फरमाया कि उरुआ क्रिकेट मैदान के इतिहास में ही पहली बार महिलाओं ने पुरुषों के लिए इस श्रृंखला का आयोजन किया है। और निस्संदेह ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति करती हुई, गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ कुछ हद तक अंदर की ओर आती हुई और गेंद को आक्रामक दिशा देना चाहिए थी क्योंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। डॉट गेंद के साथ एक बेहतर शुरुआत कर चुके हैं चेतन। अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, रन आउट का खतरा इस बीच और इस बार यह विकेट यहां पर गिर चुका है। तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट करते हुए, थ्रो को कलेक्ट करते हुए विकेट चटका दिए और यहां पर विकेट नंबर 4 यहां पर गिर चुका है। इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट और जुनैद का विकेट यहां पर गिर चुका है रनआउट के रूप में। तो अंतिम 7 या 8 गेंदों में एक बेहतर कमबैक कर चुके हैं यहां पर गेंदबाज
कलबावी फ्रेंड्स कोट्टारा के 3 विकेटें लगभग वो प्राप्त कर चुके हैं, 2 विकेट कैच के रूप में जबकि 1 विकेट रनआउट के रूप में पिछले गेंद पर अभी अभी गिरा। और 5वें ओवर के शुरुआती पर इस वक्त स्कोर है 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। नए बल्लेबाज का आगमन मंसूर एज नंबर 6 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल फॉर टीम रूफटेक। और जहां तक सवाल है स्ट्राइकर एंड का, तो स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त मौजूद इमरान सामना करने के लिए तैयार चेतन की गेंदों का। चेतन दाहिना हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार इमरान के लिए, दैट इज एन क्लीन हिट, आई थिंक सो, इट्स गुड बी गॉन ऑल द वे, यस इट डज, इट्स अ बिग 6 runs into the account of Imran and 6 runs into the account of team Rooftech। और ये गेंद पर जिस तरीके से उन्होंने प्रहार किया था, देखिए किस तरीके से गेंद गई थी इस वक्त, ऐसा कहना पड़ेगा just caught that one right from the middle of the bat and dispatched it over in a style over the fence for 6 runs at long off। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद और अंतिम क्षण में गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया और रक्षात्मक तरीके से गेंद को बैक टू द बॉलर की दिशा में खेल दिया। रन से बल्लेबाज को इस बीच नहीं मिलेगा। एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए चेतन दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, थोड़े से सफल होते हुए गेंद पहुंची इस वक्त ऑफ साइड पर और लगभग कोई संपर्क नहीं उनके शरीर का या बल्ले का और 1 रन का इजाफा 22 के रूप में और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। इट्स 35 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। चेतन इस बार गेंदबाजी करेंगे, दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंसूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, लगभग ब्लॉक होल पर टिप्पा खाती हुई, गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए, गेंद के फ्लाइट को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर। और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 36 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर और 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 overs completed. It's 36 for the loss of 4 wicket for Team Rooftech with the present run rate of exactly 7.20 runs per over they scored in their first 5 overs for losing 4 wickets and now just a last over remaining in their innings। और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। एक बार फिर से मैं दावत देता हूं इस वक्त अगले मैच के लिए टीम मैट्रिक्स और सर्वाग्नि उर्वा को सर्व खिलाड़ियों से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर सही न दर्ज करने के लिए। अगला मैच इन दोनों टीमों के बीच यहां पर खेला जाएगा। अर्बन होम्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नागराज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं, धूप का कहर अभी भी मैदान पर कायम, गर्मी का एहसास ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक अभी भी करते हुए। और इस बीच नई ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर और 1 रन मिलेगा, निशाना टकराया लेकिन बल्लेबाज यहां पर 1 रन पूरा कर चुके हैं। 1+1 वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर। और निस्संदेह जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 जिसके मुख्य सूत्रधार है श्रीमान उदय पुजारी, बिरवेर कुडला के स्थापक अध्यक्ष और निस्संदेह इस श्रृंखला के इस वक्त आर्किटेक्ट कहा जा सकता है। इस बार गेंद को खेल दिया था बैकवर्ड स्कोर की दिशा में रिवर्स शॉट के जरिए। इस वक्त 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा और इस श्रृंखला का पूरा दारोमदार यहां पर संभाले हुए श्रीमान चरण और श्रीमान त्रिशांत और कुछ ऐसे नामी हस्ती जो कि इस श्रृंखला, श्रीमान सुनील कुमार का भी नाम लेना यहां पर जायज होगा क्योंकि ये सब इस श्रृंखला के मुख्य आर्किटेक्ट हैं और इस श्रृंखला की सफलता में इन सब का बड़ा योगदान रहा। यह गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉट सिली मिड ऑन पर और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 22 के रूप में। 22 रन के साथ 41 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। इट्स 41 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड अ लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और 4 गेंदें अब कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी। नागराज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार ऑफ कटर गेंद थी, गेंद पर खेलना चाहा स्ट्रोक को लेकिन खेल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर
आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद को खेला गेंदबाज की दाईं ओर से लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन के लिए, और मिसफील्ड, और इस बीच बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। थ्रो को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए थे गेंदबाज, और 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। 43-43 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। 2 गेंदें बाकी, और नागराज एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा विकेट, गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल दिया। हालांकि फील्डर थोड़े से अपने संतुलन को खो बैठे जरूर, लेकिन गेंद जिस तरीके से स्पिन होकर घुमाव लेकर उनकी दिशा में आई, तुरंत उस दिशा को पहचानते हुए गेंद को फील्ड कर लिया पॉइंट पर, और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज इस गेंद पर प्राप्त कर चुके हैं। अंतिम गेंद लेकर तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। नागराज गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कलेक्शन है, बैक टू द बॉलर की दिशा में। नागराज ने फॉलो थ्रू में गेंद को दाईं ओर जाकर फील्ड तो जरूर किया, लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए, और इस तरह से the innings is up for team Rooftop. They finished well with 45 for the loss of 4 wicket after being a slower start, and they set a victory target of 46 now for Kalbavi Friends Kotara. 46, and as far as the required run rate is concerned, just over 6.5 runs per over they have to score for victory. That means in exactly calculation, it's going to be 6.67 runs per over, 6.66 runs per over they have to score for victory. With the help of 10 wickets, the present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. 46 the target, 46 रनों का लक्ष्य। उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब कलबावी फ्रेंड्स कोटारे की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के बाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Welcome back. 46 is the target. The first ball, straight away the batter is off the mark with a single, and the positive start there from jersey number 18. The first delivery itself is off the mark with a single. Chetan is off the mark, and that brings Karthik into strike now. Salman from the Urban Homes end, right arm over the wicket, passes umpire Arish Patel. Oh, that ball is a little bit outside the line of off stamp. Little bit movement of the feet there from Karthik. Tried to push the ball onto the offside region, missed it completely. Then ball travels towards a short third man region. There is no possibility of any run. 46 is the target for Team Matrix to win the match. Down the leg stump, going to be a delivery wicket keeper behind the stump, fails to collect the ball. Chance of run out in the non-strikers, and direct it might be very close here. And a white call by umpire Arish Patel. That means 1+1, 2 gifted run here for Team Matrix. 3 without loss of any wicket in the over number first in progress. Salman bowled very well in the previous match against SNBC Mangalore. Now he's bowling right arm over the wicket. Oh, what a delivery that one. Absolutely. Look at the reaction of that batter. Chetan is not really having any time to react that delivery from Salman. He's a very talented young bowler for the side of Roof Tech. That ball is nipped back, and even that ball is taken a little bit deviation, but more than that, I think the face what is generated in that particular delivery, as batter has got no chance to react to that one, and ball hits off stump. Wicket number first is back into pavilion of Roof Tech. Little bit correction, Team Matrix chasing 46 to win this match. Little bit correction. So far I am announcing Team Matrix. Sorry for that. Kalbavi friends Kotara against Team Roof Tech. 3 for the loss of 1 wicket. This time excellent delivery indeed. Little bit down the leg stump, but batter wanted to play that one on the onside region. Missed it completely from his bat, and there is no chance of any run at all. So Kalbavi batters have to bat very well if they wanted to win the match. Kalbavi friends Kotara. Just like, of course, the even Roof Tech didn't got that much of good start in the first 2 overs. They got a very slow start, but they got run in the 3rd over, and they came back very strongly. So such kind of bounce back is very important here for Kalbavi friends Kotara if they wanted to win the match. Improvisation, looking for, but didn't got that much of enough bat in that occasion for the new batter Praveen. He picked up a single, with that single scoreboard now moves on to 4 for the loss of 1 wicket. So far, it's a very quiet over from Salman. Again, he's giving a very good start for his team. This time drives that one. Again, the placement is not enough in that occasion. The mid outfielder little bit run across and fields the ball, and they got a single then. So first over completed, and the first over belongs to Roof Tech, and chasing 46 to win this match. Kalbavi friends Kotara has got just 5 runs by losing 1 wicket. 46 is the target. That means another 41 more runs required for the victory in remaining 5 overs. That means 30 balls remaining. They have to get 41 runs to win this match. From the commentary box end, very experienced Isam brought into attack with the jersey number 55. Of course, everyone has got same jersey number. No need to mention about jersey number. The 55 is a jersey number, a lucky number for all 11 players of Roof Tech. All they got the same jersey number 55. Maybe the lucky number of Nakis, the owner of Roof Tech. So 5 for the loss of 1 wicket. Isam, right arm round the wicket, bowls. Starts with the big wide, Spectra wide, and a wide signal umpire Vivek. 1 more addition to total.
With the addition of that single scoreboard, now 6 on the board for the loss of 1 wicket. Again, right arm round the wicket. Again, leaning into the drive, reaching for the delivery and plays it down to deep long off for a easy single by the batter Karthik. And with that single, scoreboard now moves on to 7 for the loss of 1 wicket. Very bright afternoon out here in UCG cricket ground. The crowd's really enjoying the game of cricket. This time appeal for leg before wicket. The impact of the line little bit outside the line of off stump when the batter outside the line of leg stump when batters trying to hit the ball by playing a switch it, and luckily that ball got deflected from the legs and they got a single. 8 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Slow ball attempted by Isam in that occasion, seeing that the batter Praveen premeditated switch it is attempted, so he just bowled a slower one. Isam chip that one. Karthik down to mid off. They're going for the second. That was excellent running between the wicket. Especially the Praveen is running towards the danger end. Once they completed first run very quickly, the fielder have to run front from the deep long off to mid off to collect that one. Short mid off. So enough time for the batter to complete that couple of runs. And scoreboard moves on to 10 for the loss of 1 wicket. Isam coming around the wicket. Beautifully bowled. One more dotted delivery. Each and every dot ball is going to be a problem for Kalbavi friends Kotara to get that 46 runs to win the match. This time again, chip that one. Not enough for bat into that. And just in number 55, the very young cricketer Safwan takes a very good catch. In the previous match, he's opened the bowling from this end, but now is Isam. He's came into playing 11, so that he starts the power play over from the community box end. Now Safwan takes a very good catch down at deep long on. Half-hearted stroke coming from the bat of Karthik, and he pays the penalty for that. Wicket number 2 of Khalbavi friends are back into pavilion. 77 is a new batter, came into middle. Sachin. You have to play like a Sachin Tendulkar if they wanted to win the match. The 10 for the loss of 2 wickets. Sachin just came into middle. Just like Sachin is a little master. Last 1 ball remaining in this over of Isam. So over number 2 is in progress. Isam thought that he is complete this over, so that he is running to a deep third man region for this field facement. But he has to bowl 1 ball because he bowled 1 wide deliveries in this over. The Praveen back on strike now. 10 for the loss of 2 wicket. Right arm round the wicket is on bounce. This time top edge. Chance here for the square leg fielder. And he takes a very good catch. Salman once again have to run across his left to complete that catch. And most importantly, the ball is in the air for a while. And the Salman has got a time to judge that catch. But he has to keep the eye on the ball till the last moment. And he's just watching the ball till the last moment and collects that catch quite easily in the end. The wicket number 3 is back into pavilion of Kalbai friends Kotara. They're deep in trouble. 10 for the loss of 3 wicket after completion of over number 2, chasing 46 to win this match. Then another 36 more runs required for the victory. No change in bowling. Salman brought into attack. He's bowling his second and last over of his quota. He's been outstanding in his first over. Conceded just 3 runs and picked up a wicket. Now he's continuing from the far end. Salman from the urban Ohms end. Pass umpire Arish Padil. Going for the off drive. Got outside edge of the bat. Not enough timing. Just a single for the new batter Afiz. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 11 on the board for the loss of 3 wicket. Sachin facing his first delivery. Salman bowling his second delivery of the over number 2 of his quota. Went for the sweep shot. Ball missed wicket keeper's hand as well.
Excellent quick delivery there from Salman. Sachin missed it completely. The score remains on 11 for the loss of 3 wickets. He went for the reverse sweep. Again he missed it. Wicketkeeper off top. And white call by umpire. And one more addition to total score down was on to 12 for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. Salman. Balls again went for the reverse sweep. Again they wanted a single, but very difficult to get. Hafiz, of course, he got a heavy body weight, so not that much of easy for him to run quickly between the wicket. 12 for the loss of 3 wickets. Going for the off drive, straight to the hands of bowler, and Salman returns the ball very quickly to the hands of wicketkeeper. He completes the job, but umpire wanted to get help from a third umpire. Will it going to be out or not out? The third umpire will going to give the result. Wait and see. I have to take a little bit time to get the decision here, and in the middle of that I would like to give special thanks to the donors as well as the well-wishers for this BK Champions Trophy 2022, proudly organized by Ashok Nagar Women's Wings and Biruver Kudla Ashok Nagar Women's Wings organizing this cricket tournament in this most beautiful venue, UCG Cricket Ground. First time in the history the women's are organizing this cricket tournament for the men's. The still decisions are pending. Umpire just examining there, and decision out. Umpire decision is out. Umpire decision is out, so one more wicket is back into pavilion. 12 for the loss of 4 wickets. So far it's a very good day for cricket. This is the match number 6 is in progress. Altogether 12 teams participating in the Group A, the local teams, and the top teams will go into get the placement in the finals of this PK Champions Trophy. And tomorrow will go into be the day number 2, where you can see the 8 top ranking teams will go into clash for the place in the final. One more brought a delivery there from Salman. He's just enjoying his bowling performance with great line and length, with the pace, absolutely perfect line and length. So far he's really giving a problem for the batters. This time again a lovely delivery indeed. The new batter Sagar tried to post that one, missed it completely. Wicketkeeper did the rest. Over number 3 completed. After completion of over number 3, chasing 46 to win this match. Still they're struggling in the middle. And Kalbavi, friends Kothara struggling against the disciplined bowling performance by the bowlers of Team Rooftech. And now another 34 more runs required for the victory in 18 balls. And before the next over going to commence, once again I would like to invite Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. धन्यवाद सतीश. So a tidy bowling performance continuing here from the bowlers of Team Rooftech. और पहली गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ. चौथे ओवर की पहली गेंद को 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर. रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर करते हुए कलबावी फ्रेंड्स कोटारा के बल्लेबाज. और एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज गेंद को उछाला इस वक्त लंबा पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को बॉल लपकने में सफल. छक्का लगाने का प्रयास किया था और करनी भी चाहिए क्योंकि आस्किंग रन रेट 10 से ऊपर इस वक्त जा पहुंचा है. और यहां पर कोशिश जरूर की थी लेकिन स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके. और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है.
कलबावी फ्रेंड्स को टारा का 13 रन 5 विकेट के नुकसान पर 13 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल. और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ. अगला मैच एक और बेहतर मैच टीम मैट्रिक्स का सामना होगा सर्वाग्नि उर्वा के साथ अगले मैच में. तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे. प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच. अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार पैरों पर प्लम प्लम एब्सोल्युटली प्लम, नो डाउट अबाउट दैट. गेंद सीधे उनके पैर पर टकराई. थोड़े से शफल होते हुए गेंद कॉन्सर पर उछालना चाहता, मिडल स्टंप को कंसंट्रेट कर आते हुए फ्रंट लेग पर टकराई और अंपायर विवेक को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में. बिल्कुल सही निर्णय. और इसी के साथ छठा विकेट गिर चुका. 13 for 6 नाउ. तो दो गेंदों में लगातार 2 विकेटें यहां पर गेंदबाज प्राप्त कर चुके हैं. हैट्रिक का मौका इस वक्त उनके सामने और देखना ही है कि वे अपना हैट्रिक का पूरा कर पाते हैं या नहीं. सफान है गेंदबाज और हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त वो तैयार. अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट. हैट्रिक गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद आउट. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन. नेक्स्ट क्विकर अलोंग द कार्पेट. और गेंद को इस वक्त खेलने में चूके गेंद में इतनी तेजी थी कि गेंद सीधे बल्ले को वंचित करते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची इससे पहले कि बल्लेबाज उस गेंद पर कुछ करे. और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और शॉर्ट फाइनल की दिशा में रन मिलेंगे. और वाइड 1+1 2 runs now added to the total and the side total is now moving up to 15 for the loss of 6 wicket side total. और अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी और 31 रन और चाहिए. इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी. और गेंदबाज सफान. ये गेंद अच्छी गेंद एक्स्ट्रा कोई कर रहा. गेंद सीधे पहुंची जमीन के सहारे बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में और रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए सफान अपने अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. ये गेंद अच्छी गेंद परफेक्ट ऑफ कटर मिडल लेग स्टंप पर आते हुए जगह नहीं बना पाए. गेंद को ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे चूंकि बेहतरीन ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 6 विकेट के नुकसान पर कलबावी फ्रेंड्स को टारा. अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा स्टिल दे आर सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक का. अभी भी अपनी सही राह को तलाशता हुआ. और let's straight away coming back to the equation. 31 runs still they have to score for victory. 31 more runs in fact they have to score for victory in remaining 2 overs. The asking rate is now gone up to exactly 15.5 runs per over. तो 15.5 रन प्रति ओवर के औसत से 31 रन बनाने हैं बचे हुए 2 ओवर में. और निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा अब चौके या छक्के ही इस मैच में कलबावी फ्रेंड्स को टारा को वापस ला सकते हैं. खादर गेंदबाजी यहां पर संभालते हुए अर्बन होम्स एंड की ओर से नया ओवर शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट. यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा चूंकि मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी. विकेट कीपर के हाथों में रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. 11 गेंदें बाकी 31 रन चाहिए. 31 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 11 बॉल्स. खादर एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट. इस बार ड्राइव किया नॉन स्ट्राइकर एंड स्टंप्स पर गेंद टकराई. गिल्ली या बिल्स डिस्टर्ब होते हुए लेकिन बल्लेबाज का शरीर का कोई भी अंग उस गेंद पर नहीं टकराया था. तो इस वजह से गेंदबाज का शरीर का कोई अंग उस गेंद पर नहीं टकराया था. तो इस वजह से बल्लेबाज सुरक्षित और एक रन इस बीच पूरा करने में सफल. और एक बार फिर से गेंदबाज खादर बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. यह गेंद ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में. नॉट मोर देन अ सिंगल. स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है. 17 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स एंड द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. खादर एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. यह गेंद बेहतर गेंद थी. ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. हर डॉट गेंद के साथ दबाव बढ़ता हुआ इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर कलबावी फ्रेंड्स को टारा के. और कादर
एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद चूके स्टंप आउट का मौका, लेकिन गंवा चुके हैं विकेट कीपर और बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज खादर और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद चूके और स्टंप आउट के रूप में ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 7वां विकेट गिर चुका है। 17 for 7 and now 29 to get from last over। 29 रनों की दरकार अंतिम ओवर में। So 29 to get from last over and the last over of their innings is now going to start। इशाम गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए अंतिम ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ पहली गेंद लेकर तैयार। Quicker, good one, missing outside the off stump and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman। Last chance, 5 sixes required in the last 5 deliveries। इस बार गेंद पहुंची थर्ड मैन पर, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 18 रनों पर। 18 for the loss of 7 wickets in the over number 6 and the last in progress in their innings। 4 गेंदें बाकी हैं, 28 रन चाहिए। 28 to get now from remaining 4 deliveries। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त और बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 18 रनों पर। और एक बार फिर से ये गेंद, इस बार एक्स्ट्रा क्विकर और अब लग रहा है सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गई है, अगर कोई चमत्कारी घटना ना घटे तो। ये गेंद वाइड, सिंगल रन। 19 for 7 now, still couple of balls remaining in their innings। इशाम एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, बेहतर गेंद थर्ड मैन पर, जस्ट अ सिंगल। 20 for the loss of 7 wickets and the last ball of the match is now coming up। 26 to get from last ball। और गेंदबाज तैयार, मैच की अंतिम गेंद चूके। दैट्स इट, 25 runs comprehensive victory for team Rooftop against Kalbavi Friends Kottara, and with that 25 runs comprehensive victory they are through to the next round of this competition। So the next match will be the match number 7th of this tournament is now coming up between Team Matrix versus Sarvagni Urva, and that match starts within just a short while। और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ। अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अगले मैच की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल के बाद। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Welcome back. Thank you very much, Gopi. So back to this, the match number 7 of this day, number 1 of the prestigious BK Champions Trophy 2022, proudly organized by the Biruver Kudla registered Ashok Nagar Women's Wing. And so far, it's day number 1 is running very successfully, and we are into the 7th match. And Team Matrix now takes on Sarvagniruva. One more good match. Both the teams has got some good players in the side, so that it's going to be a very interesting match. Sarvagniruva, in the morning they defeated New Star Kunjatturu, and they defeated a very formidable team as the New Star Kunjatturu. So that level of confidence is really going to be very high here for Sarvagni cricketers, and they're facing Team Matrix. After winning the toss, selected to field first, and opener came into middle, and Saurav will go into face first delivery. First delivery, Saurav picked up a single down to short third man region, and Sustan bowling away from us. Right arm over the wicket bows, beautifully bowled. Again, he wants a single chance of not out in the strikers, and now umpire Roland Pinto says it's a not out. But he want to take the he want to take help from a third umpire. It's a little bit close call, but he doesn't want to take any kind of risk here. He wanted to take help from a third umpire with the technicians of V4 into 7. The technician will go in to give all. Then the wait for the third umpire will go in to give the decision. Wait and see what could be the decision. So coming back to this tournament, Ashok Nagar Women's Wings organizing this BK Champions Trophy 2022, and the fantastic game of cricket is going on here, and the all best wishes coming from all around the part of all on the part. Here is a not out is a call, not out is a call from third umpire, so that batter survived. The many fans and followers of Biruver Kudla wishing very best wishes for the success of this cricket tournament. Meanwhile, one more delivery which is outside the line of off stamp, got outside edge of the bat, got a single there down to short third man region. Rizwan got a single and score now moves on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Saurav, the very good cool player, technically very sound, who represents Adimaheshwar cricketers. Now, as a fact, the Adimaheshwar cricketers are not representing in this tournament, so he is representing for Team Matrix. Nicely turns that one down to mid-wicket revision. Off the toes, whipping it down to mid-wicket revision for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket. That brings Rizwan into strike now. Sustan, this time lofted that one handsomely down to deep extra cover boundary. That was the vacant area, and that was the maximum. What a shot! This has been outstanding cricketing stroke, I must say. That's effortlessly played. Just an effortless. Look at that stroke. That with the full flow of the bat, the timing is of perfection. Umpires are not sure whether it's a 6 or boundary. 6 it is. Yes, it is. The 6 signal by umpire. What a great shot that coming from the blade of Rizwan. Effortlessly, absolutely effortless lofted drive down to deep extra cover for a 6. Excellent stroke, excellent stroke. Just picking up the line and length, and with the very sheer timing coming from the blade. The umpire has to clarify whether it is 6 or not. Umpire have to see, because the third umpire is given only for the run out, but not for the addition of boundaries and sixes. That's why the field umpires along with Harish Padil, Roland Pinto, just wanted to clear there whether it is a boundary or 6. They wanted to see. So far this tournament is progressing very successfully. Morning it's very
good start for the tournament. Ganesh Kulal, the corporator, inaugurated this cricket tournament, and after that, even Deepak of a challenge bowler, proprietor of Shetty Marine, the presence in this tournament. Sunil Kumar of Biruver Kudla is the presence at the tournament and that inaugural ceremony, and Trishant and Charan, the three pillars of this cricket tournament. Because of the hard work, this tournament they able to organize in this UCG cricket ground. And definitely we doesn't want to forget the name of Vidivas Kamath, our respected MLA of South Constituency, and of course the founder president of Biruver Kudla, Uday Pujari, Ganesh Kulal, our respected corporator. Those are really, they done a fantastic job. What a shot, but straight to the hands of fielder Dhanraj, the local hero, takes a very good catch, running towards the front. He is a very athletic and a very gymnastic fielder in the deep long on. And once it looks like the ball is just falling short of him, but look at the way he is running forward and takes a wonderful catch. I want to see that one in the replay, because he's a very good fielder in the deep. It looks like a very simple catch, but he made that one very simple because of his excellent work. Look at that one in replay. He's running forward and taking very low down to him. It's not that much of easy for any fielder to take the catch, but he taken a wonderful catch, and the wicket number first is back into pavilion of Team Matrix. A big wicket. Rizwan, after hitting a six, couldn't manage to control his feelings, the emotion, I must say, that he wanted to hit one more big shot. That's all happening in cricket many times. Immediately after hitting a six, the batter every time wanted to hit one more. And that's a big problem, that they have to keep the now. They need to hold the now, and that's what really lacking in that Rizwan's after hitting big six down to deep extra cover. But he couldn't manage to hit one more. He tried to hit one more, but didn't got the distance what he's looking for. The new batter, just number 31, is came into middle. Ismail, and from the far end, Ajay brought into attack. Ajay bowled really very well in the previous match against New Star Kunjatur. He bowled two magnificent overs for Sarvagni cricketers. Now he's got a ball in his hand. Second over of the power play. Right arm over the wicket. This time excellent leg cutter in the relegation. Batter tried to reach the pitch of the delivery. Tried to push that one down to cover point region, but missed that one because of the fantastic leg cutter there from Ajay. Defeats the bat. This time he went for the reverse sweep again. One more dotted delivery. Jayant behind the stump with the safest pair of hands behind the wicket. Gathers the ball, and there is no chance of any run. Ajay again now. Right arm over the wicket. He bows. Oh, that is a quicker one. That was one of his weapon. Sometimes he bowled very quicker delivery. So surprise the batsman in the relegation, and the batter have to play that one back to bowler, and there is no chance of any run at all. Again, a fantastic leg cutter. This is a long way. The deviation of that delivery has been a really trouble for the batter to judge which kind of cricketing stroke he have to implement when this ball is coming around you. This time beautiful shot that down to deep cover point region. Long chase off for the fielder. Dhanavil once again is in the picture. He is running across towards his right to his left in the relegation to cover the lot of grounds to stop that boundary, and before he getting into the position, ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 11 for the loss of one wicket in the over number 2 in progress. This time top edge, Dhanraj given up. You know exactly, he couldn't manage to reach there because he wanted to run forward once he wanted to take the catch, and quickly realizing it's very difficult to reach the catch. Then he's waiting for the one bounce. Good over there from Ajay. One more good over is completed. So completion of over number 2, and Team Matrix are not that much of bad start, I must say, losing one wicket, but they got 12 runs at the rate of exactly 6 runs per over. But in this particular over, Ajay bowled very well. Considered just 3 runs in that over. Altogether 12 on the board.
Team Fortune Mangalore will going to organize Yuvaratna Trophy 2022 in coming 3rd and 4th and 6th of the March in same venue, UCG Cricket Ground. One more big tournament, the cash prize of rupees 1 lakh, the huge cash money, and that tournament is organized in the memory of late powerful power star Punit Rajkumar, and top 8 teams and then 10 local teams will go into participate in this cricket tournament. And first delivery of the over number 3 and starts with the wide delivery. Vijay is the bowler. It's bowled a wide outside the run of off stump, and one more run is added to total 13 for the loss of 1 wicket in the over number 3rd in progress. Looking for the reverse sweep, didn't got enough bat onto that. Luckily got a little bit bat, otherwise that ball is almost going to hit the midland off stump. One more addition to total with the addition of that single. Scoreboard now moves on to 14 on the board. Saurav back on strike, he's batting on 2, facing Vijay. Away from us, right arm over the wicket. Saurav once again nicely turns that one down to square leg region, but not more than a single. And rotation of strike is so important in limited over matches. Of course, even you're playing a small format of games like 6 overs, along with some big shot, they need to look for some rotation of strikes, and then one day you can get some good fighting total. Vijay again away from us. Right arm over the wicket. Ismail makes the placement quite nicely. The fielder at the backward point region running back. But before he is running back and fields the ball, ample time for the batter to complete that couple of runs. Ismail this time seeing that there is a huge gap between cover point and backward point, just played that one right off that fielder and got the placement right to pick the couple of runs. 17 for the loss of 1 wicket. Vijay, 4th time in this over. Bowling away from us, right arm over the wicket, he bowls. Just some drives that one straight to the hands of the fielder. Pradeep the fieldsman there, chance of run out, direct it, and no need to call for the 3rd umpire. No need to call for the 3rd umpire because it's a direct hit. When I'm told that no need for the 3rd umpire, and our technician thought that umpire called for the 3rd umpire, so he's already ready. And but he's been now relaxed, looking very relaxed. Not that much of hard work required now. Directly umpire call, that was out. 17 for the loss of 2 wicket. A good piece of fielding there from Pradeep, and against his fielding skill, going for the run, that means you are asking for trouble. And rightly that Saurav is sending his partner back because there is no run at all in that occasion. After Ismail pushed the ball down to extra cover region, it hits that one very hard, so that ball went very quickly to that fielder. And very, very late here for Rizwan to go back, and he's back into pavilion. So now the new batter, the very young, talented batter, is just came into middle, facing Vijay. Oh, good look at the field that one. Look at the field that. Absolutely fantastic. That was a wonderful walk, I must say, from Pradeep, diving to his right, stopping some runs for his team. That will definitely going to galvanize the level of confidence of other players. The kind of commitment from the fielders will lift the spirit of other players as well as the bowler. This time again turns that one quite beautifully down to square leg region for an easy single by the new batter, Mazil. And over number 3 completed of completion of over number 3. It's 18 for the loss of 2 wickets. The run rate is exactly 6 runs per over for Team Matrix, and certainly they will going to look for some acceleration of run rate in remaining 3 overs, having 8 wickets in hand. Now wait and see how well they will going to accelerate in the remaining 3 overs. So far, I think the bowlers of Sarvagni cricketers Urva are looking in a good position. So before the next over going to commence, time to ask Gopi to take over the microphone. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए सर्वाग्नि उरुवा के गेंदबाज, हालांकि पहले ओवर में छक्का जरूर प्रदान किया था गेंदबाज ने, लेकिन उसके बाद के 2 ओवर में बेहतरीन वापसी इस वक्त करने में सफल सर्वाग्नि उरुवा के गेंदबाज, खासकर अजय, जिन्होंने पिछले ओवर में बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था और इस बार एक बार फिर से तैयार अपना नया ओवर यहाँ पर प्रारंभ करते हुए। पहली गेंद, यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद निकली इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए सौरव, जबकि नॉन स्ट्राइक रेट पर माजिल, और इस बार सौरव ने गेंद को स्टेयर किया खूबसूरती के साथ 1 रन के लिए। हालांकि स्ट्रोक में ज्यादा दम नहीं था, लेकिन 1 रन दिलाने में पर्याप्त है स्ट्रोक का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर उनकी पारी का चौथा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। अजय एक बार फिर से तैयार, अच्छी गेंद थी, काफी ज्यादा टर्न लेते हुए रन के लिए दौड़ पड़े, और इस बीच यह विकेट गिर चुका है माजिल का। जैसे ही गेंद उनके पैरों पर टकराने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन पर निकली थी, गेंद को बिना देखे रन लेने की हड़बड़ाहट बल्लेबाज ने दिखाए, फलस्वरूप कोई मौका नहीं उन्हें वापस लौटने का, और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में, और शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर खुद गेंद के साथ दौड़ कर आए और गेंद को उन्होंने विकेटों पर लगा दिया, विकेटें चटका दिया, बिल्स उड़ा दिया, और इसी के साथ ये तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है टीम मैट्रिक्स का 20 रनों के ऊपर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और जहां तक अगले मैच का सवाल है, एनएफसी उरुवा का मुकाबला होगा विनायका कापिकाड के साथ अगले मैच में। मैच नंबर 8 इस श्रृंखला का खेला जाएगा। एनएफसी उरुवा विल टेक्स ओवर विनायका कापिकाड इन द नेक्स्ट मैच। द मैच नंबर 8 of this tournament is now coming up live exclusively right after this match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, परफेक्ट लेग कटर, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा चूंकि, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। गेंदबाज की ओर की गेंद इस बार चिप किया और गेंद हवा में जरूर, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर काफी पीछे, दूसरा रन मिल सकता है और मिलेगा। थ्रो पहुंचा जरूर, फुल टॉस विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन थ्रो में ज्यादा दम नहीं। थ्रो से पहले बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे। 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अजय एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट स्वीप करना चाहा, लेग कटर गेंद थी, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 4 overs completed, and after 4 overs still the batsmen of team matrix searching for the right track. 23 runs they scored for losing 3 wicket after completion of 4 overs. एनएफसी उरुवा का मुकाबला होगा विनायका कापिकाड के साथ अगले मैच में, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए प्रदीप, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार तिलक। ओवर की पहली गेंद लेकर प्रदीप तैयार, केवल 2 मात्र ओवर उनकी पारी में शेष। ये गेंद चिप किया, गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट दिस स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को स्विंग किया है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, सीधे उनके हाथों में गेंद पहुंची, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। सौरव आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और गेंद ऑन साइड पर शफल होते हुए स्विंग जरूर किया था, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत, और डीप मिड विकेट के फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की, और इसी के साथ चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है 24 रनों के ऊपर। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस।
तो पांचवा ओवर यहां पर प्रगति पर और सौरव का विकेट गिर चुका है। हालांकि आरंभिक बल्लेबाज के हैसियत से मैदान पर उतरे थे और चौथे बल्लेबाज के रूप में पेविलियन वापस लौट चुके हैं 5 रन बनाने के बाद, और नए बल्लेबाज रमीज का आगमन यहां पर हो चुका है। प्रदीप गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रमीज के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट पंच किया है, 1 रन मिलेगा। दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन थ्रो से पहले बल्लेबाज यहां पर पहुंच चुके हैं दूसरे रन के साथ, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 26 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और प्रदीप एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद अंदर की ओर आती हुई बल्ले का बाहरी किनारा गली की दिशा में गेंद पहुंची और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर टिकने की यहां पर कोशिश करते हुए, करारे स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश करते हुए, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद प्रदीप, ये गेंद चिप गया, इस बार क्लीन हिट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ अवर कमेंटेड बॉक्स स्टैंड, सीधे हमारे कमेंटेड बॉक्स के दीवार पर गेंद आकर टकरा चुकी है और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है बल्लेबाज के बल्ले से। रमीज छक्का लगाने वाले बल्लेबाज, देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था और गेंद, ऐसा कहना पड़ेगा गेंद की टर्न को पहले ही भांप लिया था, गेंद की उछाल को पहले ही भांप लिया था, मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए गेंद को उछाल दिया। एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा क्विकर गेंद प्रदीप की और बेहतरीन कमबैक कर चुके हैं। अगली गेंद पर यहां पर रमीज का विकेट गिर चुका है। ओवर नंबर 5 की समाप्ति 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 33 for 5 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 overs एंड रमीज डिपार्ट्स नाउ। तो इमरान का आगमन यहां पर हो चुका है, तिलक का सामना करने के लिए तैयार है और गेंदबाज अर्बन होम्स एंड की ओर से नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। ओवर की पहली गेंद, यह गेंद चिप गया, इस बार एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर धनराज थोड़ी सी सीधे तैनात, थोड़ा सा दौड़ लगानी पड़ी, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर हेड पर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था 2 रन प्राप्त करने का। 35 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। सुल्तान गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ कर चुके हैं और एक गेंद इस ओवर में वो फेंक चुके हैं और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, चूंकि ठीक तरह से खेल नहीं पाए, विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे, लेकिन 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 22 के रूप में। इट्स 36 for 5। 4 गेंदें अब कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी और B4 24/7 चैनल पर यह श्रृंखला लाइव टेलीकास्ट इस वक्त की जा रही है। फॉलो थ्रू में मिसफील्ड, गेंद पहुंचे लॉन्ग ऑन पर, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। रन अभी भी सिंगल्स और कपल्स में बनते हुए टीम मैट्रिक्स के लिए और गेंदबाज सुस्तान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड विकेट फील्डर, बेहतरीन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए एक हाथ से गेंद को फील्ड किया और तुरंत गेंद को रिलीज किया हाथों से विकेट कीपर के पास और इस बार सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम प्राप्त करता हुआ टीम मैट्रिक्स 38 रन बन चुके हैं। 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गेंदबाजी
आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट है। ये गेंद चूके इस बार गेंद टकरा चुकी है स्टंप्सों पर और इसी के साथ ये विकेट नंबर 6 यहां पर गिर चुका है। यूजिंग इज फीट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले थे, गेंद को खेलना चाहता, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आए अलोंग द कार्पेट और बल्ले को वंचित करते हुए सीधे जा टकराई लेग स्टंप पर। बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और छठा विकेट यहां पर गिर चुका है 38 रनों के ऊपर। इट्स 38 for 6। द लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग इन द इनिंग्स, अंतिम गेंद बाकी उनकी पारी में। मैच नंबर 7 बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 2022 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ 7वां मैच का प्रथमार्ध की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज सुस्तान नए बल्लेबाज के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद चिप किया लॉन्ग ऑफ पर, एक और विकेट हो सकता है धनराज गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल। तो पारी के अंतिम गेंद पर 7वां विकेट गिर चुका है और इसी के साथ निर्धारित ओवर टीम मैट्रिक्स के समाप्त हो चुके हैं। 38 रन उन्होंने बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, 39 रनों का लक्ष्य उन्होंने प्रदान किया है इस वक्त सर्वाग्नि उर्वा को। 38 रन फॉर लूजिंग 7 विकेट स्कोर्ड बाय टीम मैट्रिक्स and they set a victory target of 39 in 6 overs for Sarvagni Urva. And as far as the required run rate is concerned for Sarvagni Urva, exactly 6.5 runs per over, the present required run rate for them. With the help of 10 wickets, they have to score for victory. The present equation shows for them. And let's see can they reach the target or not. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने सतीश के साथ अंग्रेजी में यहाँ पर हाजिर होंगे। धन्यवाद, थैंक यू। So welcome back. Thank you very much, Gopi. And it's a very hard fought 38 runs scored by Team Matrix in their stipulated 6 overs by losing 7 wickets, and they set a target of 39 to win the match for Sarvagni Urva. And wait and see how Sarvagni Urva will go and get start here. Not a big total to chase down, but 36 ball, 38 runs. Of course, the Team Matrix, you cannot underestimate the bowling department and fielding department. They also got one the very good side, and wait and see how well these two opening batter, Jayant, the hero of the previous match, and along with him Sujit came into middle. Jayant and Sujit are the two opening batters for Sarvagni Urva. Looks like Sujit will going to take the strike. Lot of excitement game remaining in this cricket tournament. Tomorrow will be the most excitement day of cricket, I must say, as the top 9 teams of the South Canara districts are clashing in the Group B. The morning itself, it's going to be a good match. The morning first match, challenge bowler will takes on Sri Mangaladevi cricketers in the first match of the day number 2, final day. The second match, one more good match, the big match, the Gori Young Boys takes on KCCR Kadri in the second match. And the third match, one more very interesting match, Young Friends Urva takes on KFC Urva. The finalist of UFC trophy, RRPI Memorial Trophy, will going to clash in the first round itself. Young Friends Urva takes on KFC Kodikal. And
the fourth match, the one more good match. The NM Cricketers Jaipur takes on Sneha Malemar. So that is the schedules of the tomorrow. The Group B of the day number 2, and we hope that day number 2 will going to be one more very interesting day of cricket, an excitement day of cricket for the cricket lovers. And so far it's been a really good going in the day number 1. This is we are watching the match number 7 of the day number 1. Team Matrix versus Sarvagna Cricketers. Now Sarvagna Cricketers have to get 39 runs in their stipulated 6 overs. 36 deliveries, 38 runs, 9 runs required. In fact, 39 required. 38 is the total score. And wait and see how well Sarvagna Cricketers will going to chase this total. Now from the far end, the first ball, and straight away Sujit is off the mark with the single by pushing the ball down to short mid on. Taslim, the bowler from the far end, Urban Ohm's end, brought into attack. The first ball, he bowled almost on the midland off stump, and Sujit quickly off the mark with the single. So Jayant, what innings is played? 23 valuable runs in 14 deliveries in the previous match against new star Kunjaturu, and he is the one responsible for his team in the second round of this prestigious BK Champions Trophy. Taslim, right arm over the wickety bounce. This time he went for the reverse sweep, but ball missed the bat of Jayant. By call by umpire rightly, so wicketkeeper fails to collect the ball. Ball just passing under the bat of Jayant, so that no question of calling that wide. Umpire Roland Pinto is very experienced, 37 years of experience in both Andhram and Oram cricket, and in that squad like one more experience, Arish Padil, 25 plus years of experience in both Oram and Andhram cricket. So we have got a very good umpiring panel for this cricket tournament, BK Champions Trophy. Arish Padil, Roland Pinto, and then Vivek Challenge Bowler, the emerging future umpire for Andhram cricket. So far he's been outstanding. He's learning each and every tournaments, and getting some maturity in the field of umpiring. It's a good news for Andhram cricket. Again, went for the reverse save. Ball is in the air. Interesting to see that umpire's decision. There's no bat involved. Leg by call by umpire. Rightly so. With the addition of that leg by, scoreboard now moves on to 4 on the board without loss of any wicket. Jayant tried to get some runs by playing unorthodox reverse sweep. The second time he's attempting that stroke, but he really fails to make a contact with the bat. Maybe the Taslims as Taslim is bowling the line, which is very difficult for Jayant to get that one from his bat. So far it's a 4 runs came from that 4 deliveries. And again from the far end, Urban Ohm's hand, right arm over the wicket. Taslim bowls, went for the big shot. Sujit away from his body. He is a good striker of the ball, no question at all. When hitting the ball is concerned, Sujit is a very good striker of the ball. But sometimes it's very difficult when you are having a line which is outside the run of off stump. When you are standing and try to play that one away from his body, it's very difficult to get the contact with the bat. A clever piece of bowling there from Taslim. Right arm over the wickety bounce. This time again, look at that one. That's what I'm mentioning about. The bowler know exactly what the strong point of the batter. You know exactly what batter will going to do here. So he just wanted to beat the batter. So he wanted to bowl that one outside the line of off stump. Again, Sujit is not really learning from the previous mistake. He's not really moving his feet. Where he was standing, he wanted to hit the ball, and he just missed that 2 deliveries of the first over. So first over completed, chasing 39 to win the match. Sarvagna Cricketers 34 without loss of any wicket. Good bowling there from Taslim. He's just justifying the decision of his captain to bowl that power play over, and is giving his 100% in that over, and bowled a very economical over of just 4 runs. Now equation, 39 is the target. That means 35 to get from remaining 5 overs. 30 balls remaining, 35 runs required for the victory for Sarvagna Cricketers.
Now from the commentary box end. Sagir brought into attack and starts with the wide, and next ball as Giant went for the big shot, not really getting the timing because that ball is outside the line of off stamp, and he tried to hit the ball, tried to force the ball, didn't got that much of timing, and one run taken there by Giant. The warning has been given to Sagir as he was coming right in front of umpire. That is a protected zone as far as the pitch is concerned. After completing your run up and on follow through, you need not come that into that line. This on top edge. Sujit went for the big shot, missed time that one, and mid wicket fielder making no mistake at all. Sujit tried to break the shackle in the negation as he was trying for the big shot in the previous over as well. This time I think a little bit short pitch delivery, hittable one, but as the fact that he's missed time that one, he got a top edge and the ball is ballooning up in there, and plenty of time for the mid wicket fielder to just catch, and he takes a catch very easily in the end. The first wicket is back into pavilion of Sarvagni Urva. 6 for the loss of 1 wicket. The new batter Ajay slowly walking towards the middle. One more very good striker of the ball, Ajay. So lot of responsibility on the shoulder of Ajay, being the experienced campaigner for the side. You know exactly the kind of support you want to give to the Giant. Is another end. One more experienced campaigner there in the middle. And Sagir, the successful bowler, got a wicket. Now bowling right arm around the wicket to Giant. Giant this time, look at that one. Absolutely fantastic delivery. And Giant wanted to hit the ball towards a deep long on region. And because of that, ball is a little bit extra bounce in the negation, defeating the bat of Giant, and wicketkeeper behind the stump did the rest, and there's no chance of any run. Sagir right up around the wicket, bowler's back drive, chance here, hard chance here for Sagir to take the catch, caught and ball opportunity. So not an easy, I must say, on his follow through to take the very quick catch, because that ball came into him very quickly, because Giant hit the ball pretty hard in the negation. And very little time to react for the bowler to take the catch. Ball just slipping out of his hand, and the Giant got a life here. With that drop catch, they got a single, 7 on the board. This time, lovely shot there from Ajay down to deep wicket region. Long chase here for the fielder, but I don't think the fielder will go into win the race. The ball winning the race against the fieldsman. That was a welcome boundary coming here for Sarvagni cricketers. And Ajay once again, look at the stroke, it was effortlessly played, just the wrist work comes into play. That ball is just shaping towards the leg of the batter, and this is a perfect timing in the negation there from Ajay. There is no protection has been given in the deep square leg and deep mid wicket, so that once it get past the infield, the lightning past outfield here in UCG ground, and ball travel very quickly down to mid wicket boundary for 4 runs. This time bowler's back drive, all on Mr. went for the single, chance of run out there in the stall strikers, and he tried to hit the stump just in number 100. Just missed that stumps here in the non-strikers, and they completed that single. So after that, with that single, scoreboard now moves on to 12 on the board for the loss of 1 wicket. That was a much required better over here for Sarvagni cricketers Surva. They got 1 boundary, even they lost a wicket here in that particular over. Now they got 12 in 2 overs, 6 runs per over. Now 4 overs remaining, 24 possible deliveries remaining. Out of 24 deliveries, they have to get another 27 runs. 27 runs required in remaining 24 deliveries. Equation looks to be very interesting. 27 means just 3 runs more than the ball. The delivery is remaining. I don't think it's going to be a big difference between run and ball if the batters bat sensibly. But Team Matrix certainly wanted 1 good over here if they wanted to win this match. That's why they brought Taslim back into attack, who bowled very quiet first over. He considered just first over. He considered just 4 runs. Now he bowled in the power play overs. And in the power play, considering 4 runs means it's a very really good effort from the bowler. Now he is getting some protection for in the deep, and wait and see how he will go into produce
The good over here for Team Matrix. Taslim from the far end. Right now over the wicket to Ajay. Ajay watching the ball till the last moment. Good leave there by Ajay, seeing that line which is going to be wide. Just is getting away from the direction of the ball. Lets his bat is in the air. Left the ball. Rightly so. Wide call by umpire. Two more to the total. 1+1. The gifted runs. Sarvagri cricketers will going to enjoy that extra run and extra deliveries. The 14 already on the board for the loss of 1 wicket. That brings Jayant into strike now. So far he's been very quiet. Rotating the strike. Got 3 runs from his bat. Deep long on, deep mid wicket. As the deep mid wicket, little bit interesting field there. There's no deep mid wicket, a deep backward square leg. Now that fielder in the deep backward square leg, little bit going across towards his left. Not orthodox mid wicket, I must say. Between the mid wicket and deep backward square leg, one fielder is situated for Jayant. Jayant this time looking for the big shot again. Not quite getting that one right from the middle of the bat. One more run is added to total. The intention of Jayant is to go over the top of that mid-on fielder. There is no long on at all. That's why he wanted to hit the ball towards the deep long on. But the timing is not perfection in the relegation, so that he picked up a single. 15 for the loss of 1 wicket in the over number third in progress. Taslim. Right arm over the wicket. Ajay drives that one right in the gap between bowler and extra cover. The huge gap. And whenever the ball is, the line is outside the run of off them. And the batter like Ajay will going to get the placement very easily to get that one down to deep long off. So with that single, scoreboard moves on to 16 for the loss of 1 wicket. Ajay looking pretty good in the middle, hitting the ball very well and giving very good support to his senior partner Jayant. This time again, oh, that was a really chance of run out there. I missed it. By call by umpire, rightly so, because Jayant is just getting away from the line. But it's not a good thinking, I must say, for Jayant, because he is looking for the reverse shape. And seeing that Taslim just cleverly changing the line, pitched outside the line of leg stump, but misjudgment Jayant, he thought that it might be a white, but as per the rules and regulation of cricket is concerned, the present rules and regulation is concerned, once you take your position to play the reverse sweep, the bowler can ball down the leg stump. So 17 on the board for the loss of 1 wicket. Taslim, right arm over the wicket. To Ajay, lovely shot, beautifully played that one, deep cover point position. Saurav the fieldsman there in the deep, so that he had to settle for the single. But that will give a lot of confidence, even though it's a single for Ajay. But that single will give a lot of confidence. That was because that was a lovely looking extra cover drive there from Ajay. 18 for the loss of 1 wicket. Runs are coming very freely in this over for Sarvagri cricketers. Taslim again, right arm over the wicket. Bowls Jayant. Jayant just once again went for the reverse save. Good fielding there by Saurav. Off stop, not clean collection, but he stopped the ball. That's very important, and batter have to settle for the single then. Scoreboard moves on to 19 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. The very good partnership is going on here. Still they have to get another 20 runs to win this match. They got 17 deliveries to spare. Taslim 19 deliveries to spare. 20 runs required. Ball him. Too much improvisation. Too much across the line of the delivery. Ajay not really bending as much as he wanted to do, but you're playing that improvising stroke towards the final leg region. You have to bend your front foot, and at the same time the bat have to come into the ground level. If the ball is the bat is off, so you can see that in a replay, the bat is really lifting here, and he's not really bending that bat. That's what's the problem what Ajay has got. Look at that one in the replay. See that where the bat is in the air. When you wanted to play the sweep shot, you have to put your bat into the ground level. Just allow the ball coming into his bat, then play for the improvising stroke. That was a wrong technique there from Ajay, and he pays the penalty for that. So wicket number 2 is back into pavilion. 3 overs completed, chasing 39 to win this match. Now they have to get another 20 runs in remaining 18 balls, excluding wides and no balls. That's very important in cricket. They're excluding wides and no balls. They have to get 20 runs in 18 balls. That means still Sarvagri cricketers looking there in a driver's seat of winning this match. But 40% still it's in the name in the team matrix. They got a chance here to win the match. And Gopi 19 for the loss of 2 wicket, 20 to get from 18 balls. And last delivery of the over number 3, they got the wicket of Ajay
And because of that wicket, I think Team Matrix slowly they are thinking that if they bowl on another one good over, they can be they can bounce back this match very strongly, isn't it? बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जो अजय का विकेट गिरा था तस्लीम की गेंद पर, तो वो विकेट गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव इस वक्त सर्वाग्नि उरुवा के ऊपर आ चुका है। और खासकर जयंत जिन्होंने पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, वो अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं एक और बेहतर पारी खेलते हुए। और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है सर्वाग्नि उरुवा का, तो जयंत की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है। और निस्संदेह जयंत इस वक्त सर्वाग्नि उरुवा के लिए उम्मीद की किरण नजर आते हुए, और देखना यह है कि वे अपने टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। फिलहाल गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज इस वक्त माजीम जयंत इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, और पहली गेंद अच्छी गेंद, और इस बार गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहता, इसकी आई थिंक इट्स गॉट आउटसाइड एज ऑन दैट। गेंद बाहरी किनारे पर टकराई थी, देखिए किस तरीके से हुआ था यहां पर, और आसान सा कैच। अब जयंत का विकेट यहां पर गिर चुका है, और मैं समझता हूं ये विकेट गिर जाने के बाद सर्वाग्नि उरुवा के ऊपर जो दबाव था अजय का विकेट गिर जाने के बाद, वो दबाव अब कुछ हद तक और बढ़ चुका है। यहां पर गेंदें बाकी हैं 17, रन से चाहिए 20, और यहां पर जरूरत है एक सेंसिबल क्रिकेट की। और धनराज जो कि लोकल हीरो यहां के इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और निस्संदेह जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो धनराज और कार्तिक जो क्रीज पर मौजूद हैं उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आन पड़ी है, एक साझेदारी पार्टनरशिप निभाने की। और देखना यह है कि वे अपनी टीम को सही राह पर ले जा पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज की गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद को छोड़ दिया, अंतिम क्षण में गेंद पहुंची सीधे शॉट फाइन लेग पर, विकेट पर निशाना दागा था लेकिन निशाना चूका, और एक रन बल्लेबाज बाई के रूप में पूर्ण कर चुके हैं। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर बराबर का संघर्ष जारी, द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। 20 रन बन चुके हैं और 19 रन और चाहिए विजय के लिए। 16 गेंदें बाकी, 19 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 16 बॉल्स, और कार्तिक इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए माजिल इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए टीम मैट्रिक्स के अन्य खिलाड़ी से फील्डिंग के सजेस्टमेंट्स के बारे में, और तैयार इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त इस बार गेंद ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ना चाहता, मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, पैरों पर टकराई, अपील नकार दिया। सर्टेनली इट वाज गोइंग डाउन द लेग साइड, इट्स ऑफ द बैट, बल्ले का कुछ निचली हिस्सा यहां पर टकराया था, और एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। माजिल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए धनराज के लिए, और धनराज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को इस वक्त मोड़ दिया, फुल टॉस गेंद थे, चाहे तो गेंद को डिस्पैच कर सकते थे डीप मिड विकेट या लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन पहले ही धनराज ने टान लिया था कि इस गेंद पर उन्हें स्ट्रोक्स खेलना है, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना है, तो इसकी वजह से अंतिम क्षण में गेंद को उन्होंने मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए। और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 22 रनों पर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला, फील्डर काफी पीछे, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। फील्डर मेरे ख्याल से तस्लीम गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और कुल मिलाकर 13 गेंदें बाकी है, 16 रन चाहिए। पारी की शुरुआत में जो रन्स और गेंद के बीच में जो 3 का फासला बरकरार था, वो फासला अभी भी बरकरार है। 13 गेंदों में बनाने हैं 16 रन, और इस बीच गेंदबाज माजिल तैयार। ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, धनराज दौड़ पड़े, बहुत ही तेज है, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रनों पर। 12 गेंदें बाकी, 15 रन चाहिए। 15 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 12 balls. And as far as the victory of this match is concerned, still I must say this match is now evenly poised. तो मैच इस वक्त प्रगति पर जहां तक सवाल है सर्वाग्नि उरुवा और टीम मैट्रिक्स के बीच। अगला मैच खेला जाएगा एनएफसी उरुवा और विनायका कापीकाड के बीच, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। और इस मैच में एनएफसी उरुवा ने टॉस जीत लिया है, और देखना यह है कि क्या निर्धार वो लेते हैं। फिलहाल फील्डिंग लेने का निर्णय उन्होंने लिया है, तो फिलहाल इस मैच में लौटते हैं। कशिश बाकी, 15 टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज। काफी लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई टीम मैट्रिक्स के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और
खेल है जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। स्ट्राइक इस वक्त धनराज के पास है। और जहां तक सवाल है इस ढलते हुए शाम का, तो शाम के लगभग 5 यहां पर बचते हुए धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व जरूर मौजूद है इस मैदान पर। और घने वृक्षों की परछाइयां इस गुजरते हुए वक्त के साथ साथ पिच की ओर पधारती हुई इस बात का संकेत देती हुई कि इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी इस मैदान पर कम हो रही है। और सूरज इस वक्त मैदान की ठीक दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ समंदर की ओर अपना सफर धीरे धीरे तय कर चुका है। और लगभग इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर रोशनी कम होती हुई इस मैदान पर, लेकिन खेल के लिए पर्याप्त रोशनी अभी भी मौजूद है। और इस ढलते हुए शाम में एक संघर्ष जारी है इस श्रृंखला के 7वें मैच में विजय के लिए। सर्वाग्नि उर्वा और टीम मैट्रिक्स के बीच में बराबर का टक्कर इस वक्त जारी। 15 रन चाहिए 2 ओवर में, यानी 12 गेंदों पर। अर्बन होम्स हैंड की ओर से शकीर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और वो इस वक्त सामना करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज धनराज इस वक्त सामना करेंगे शकीर की गेंदों का। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए धनराज के लिए। मैं समझता हूं वो तैयार नहीं थे वहां पर, शायद वहां पर कुछ जरूर हुआ है। हालांकि धनराज गेंद की लाइन से हट गए, वरना निश्चित रूप से ये वाइड होता था, क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकली थी। और इस बीच स्कोर रुक चुका है 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 15 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी। शकीर एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज धनराज के लिए ये गेंद इस बार के तौर पर धीमी गेंद थी, बिल्कुल जमीन के सहारे हल्के से गेंद को इस वक्त पैडल स्वीप कर दिया स्टंप्स को कवर करते हुए। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, शॉट्स को लेग पर स्वयं विकेट कीपर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। और शकीर एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद इस बार स्वीप किया है, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग पर 1 रन मिलेगा। फील्डर काफी पीछे तैरा, क्लीन कलेक्शन, दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज काफी तेज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, पहला रन काफी तेजी के साथ पूर्ण किए और कोई दिक्कत ही उन्हें महसूस नहीं हुई दूसरा रन यहां पर पूर्ण करने के लिए। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। 10 balls left and 12 more runs now they have to score for victory. What a match is now going on here. Still the match is equally balanced. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, अंपायर विकेटों को सही करते हुए इस बार शकीर गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज कार्तिक के लिए, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और शकीर दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए, इस बार बल्ले का भीतरी किनारा, इस गॉट इनसाइड एज ऑन दैट। गेंद लगभग स्टंप से ऊपर की ओर निकलते हुए सीधे पहुंची शॉर्ट फाइल लेग पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 28 3 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश करते हुए यहां पर सर्वाग्नि उर्वा के बल्लेबाज, जबकि हर गेंद पर रन रोकने की कोशिश करते हैं टीम मैट्रिक्स के खिलाड़ी। दाहिने हाथ राउंड के शकीर की गेंद, ये गेंद इस बार गेंद नहीं, बेटर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक शॉट। थर्ड मैन पर गेंद को इस वक्त अपने एक हाथ से फील्ड करते हुए तुरंत अपने हाथों से गेंद को रिलीज किया विकेट कीपर के हाथों में। और इस बीच वाइड का इशारा, 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। और 2 रनों के साथ 30 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। अब गेंदें बाकी हैं 9, रन्स बनाने हैं 9 टू गेट फ्रॉम 9 डिलीवरीज। और कुछ हद तक लक्ष्य इस वक्त आसान होता हुआ सर्वाग्नि उर्वा के लिए। और शकीर इस वक्त कुछ बातचीत करने के बाद टीम के अन्य खिलाड़ी से तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई धीमी गेंद थी, विकेट कीपर चुके, रन के लिए दौड़ पड़े, वाइड का इशारा। तो 2 लगातार वाइड, 4 रन प्रदान कर चुके हैं तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में। और नाउ द टारगेट सीम्स टू बी मच इजियर फॉर देम, 7 टू गेट फ्रॉम 9 डिलीवरीज। अब दबाव सीधा टीम मैट्रिक्स के खिलाड़ियों के ऊपर, डॉट गेंदों की उन्हें सख्त दरकार इस मैच में वापस आने के लिए। धनराज बैक ऑन स्ट्राइक, इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। शकीर 2 लगातार वाइड यहां पर फेंक चुके हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए।
दाहिने हाथ के बल्लेबाज धनराज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को स्टीयर करना चाहता, बेहतर गेंद, अंतिम क्षण में अपने बल्ले को क्रीज पर रखने में सफल, हालांकि विकेट कीपर गेंद को टटोलते रह गए और इस वजह से बल्लेबाज अपने क्रीज पर सुरक्षित वापस। एक गेंद व्यर्थ, 8 गेंदें बाकी, 7 रन चाहिए विजय के लिए। 7 to get from 8 deliveries. Still the equal battle is now on. और गेंदबाज शगीर दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए धनराज के लिए स्वीप करना चाहा, शॉट फाइनल की दिशा में गेंद पहुंची, काफी वाइड थ्रो, विकेट कीपर के पहुंच से बाहर, निशाने से चूकता हुआ 1 रन का इजाफा बाई के रूप में और स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। 6 to get now in 7 balls। और इस वक्त कार्तिक स्ट्राइक पर आ चुके हैं। लगभग 6 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, 4 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी हट चुके हैं मिड ऑन और मिड ऑफ से और गेंदबाज शकीर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, सिर्फ गेंदबाज शकीर ने अपील की थी लेकिन लेग बिफोर विकेट का कोई सवाल ही वहां पर नहीं पैदा होता, गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाई थी, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर में चाहिए 5 रन विजय के लिए। 5 रन स्कोर फ्रॉम लास्ट ओवर फॉर सर्वाग्नि उर्वा फॉर विक्ट्री। बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022-2022 के अंतर्गत इस श्रृंखला का 7वां मैच का द्वितीयार्ध यहां पर प्रगति पर। फ्रेंड्स बल्लाल बाग बिरुवर कुडला रजिस्टर्ड अशोक नगर वुमेन्स विंग ने इस शानदार श्रृंखला का आयोजन किया है और ये श्रृंखला जो कि एक शानदार प्रगति यहां पर करती हुई और जैसे कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, उर्वा क्रिकेट मैदान के इतिहास में पहली बार महिलाओं ने पुरुषों के लिए इस श्रृंखला का आयोजन किया है। अशोक नगर वुमेन्स विंग जो कि महिला संगठन है, उन्होंने इस श्रृंखला का आयोजन किया है पुरुषों के क्रिकेट के लिए और यहां पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला एक शानदार प्रगति करती हुई और अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ हवीम इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए कार्तिक का सामना करने के लिए तैयार। रनों की सख्त जरूरत सर्वाग्नि उर्वा को, जबकि डॉट गेंदों की सख्त दरकार टीम मैट्रिक्स को इस मैच में वापस आने के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज, फुल टॉस, चिप किया, फील्डर काफी पीछे, लंबॉल की दिशा में, 1 रन मिलेगा। धनराज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार खतरा हो सकता है, अपना बल्ला यहां पर खो चुके हैं लेकिन यहां पर स्ट्राइकर एंड पर मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। तो धनराज काफी तेज थे और रन पूरा करने के बाद, दूसरा रन पूरा करने के बाद अपने बल्ले को हवा में उछाला था, उन्होंने अपने बैट को बल्ले में उछाला था, लेकिन सवाल इस वक्त उठता है स्ट्राइकर एंड पर, क्या कार्तिक जब विकेट उखाड़े गए थे विकेट कीपर द्वारा तब कार्तिक क्या क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं? दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स एट दिस सिचुएशन। और यहां पर थर्ड अंपायर इस वक्त परामर्श करते हुए और देखते हैं इस वक्त क्या निर्धार हो लेते हैं। स्टिल द इंटरेस्टिंग मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर और यहां पर अभी भी निर्धार का परिशीलन करते हुए देखिए किस तरीके से पहला रन पूर्ण किया था। दूसरे रन के लिए इस वक्त फील्डर यहां पर थ्रो पहुंचा, विकेट कीपर ने विकेट चटका है और मेरे ख्याल से बल्लेबाज पहुंच चुके हैं अंतिम क्षण में। एक बार फिर से उसका परिशीलन किया जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। और यहां पर काफी नजदीकी मामला और एक बार फिर से अंतिम बार परिशीलन करते हुए इस निर्धार का तृतीय अंपायर देखिए किस तरीके से हुआ था यहां पर। द थ्रो इज नाउ स्ट्रेट अवे arriving into the hands of wicket keeper. First run completed and they come back for the second run. In fact, they starting to run for the second run. Just we have to look at this. थ्रो यहां पर पहुंच रहा है, विकेट कीपर थ्रो का इंतजार कर रहे हैं। थ्रो पहुंच चुका है।
मेरे ख्याल से अब थ्रो पहुंचा है और विकेटों पर इस बीच गेंद को लगाते हुए और इस बीच तो इस बार नॉट आउट, ही इज नॉट आउट। पहले प्रयत्न में गेंद उनके हाथों से छूटी थी, रनआउट नहीं कर पाए, लेकिन इस बीच बल्लेबाज बाल बाल बच चुके हैं और 2 रन इस बीच बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। इट्स 36 now for the loss of 3 wicket. Now just 3 to get now. 5 balls remaining and it's going to be so interesting at this situation. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, हवीम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, टीम मैट्रिक्स को चाहिए डॉट गेंदे इस मैच में वापस आने के लिए और गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं। ओह दैट इज एन स्पेक्ट्रल धनराज दौड़ पड़े और अपना विकेट भी खो चुके हैं, लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है, 1 रन उनके खाते में जुड़ेगा वाइड के रूप में। 1 more run added to their total in the face of extras and the scoreboard is now moving up to 37 now with that single. Just 2 to get now from 5 deliveries. Just 5 deliveries remaining and just couple of runs they have to score for victory. और जहां तक एक बार फिर से मैं यहां पर बताना चाहूंगा, the next match will be played between NFC Urva versus Vinayaka Kapikar and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहें और यहां पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। जस्ट 2 to get from 5 deliveries और हवीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस, गेंद को मोड़ दिया इस वक्त स्क्वायर लेग पर, फील्डर गेंद तक पहुंचे और इस एक रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। Just a single run they have to score for victory in remaining 4 balls and at this situation the target seems to be much easier for them now. और हवीम इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज के लिए, फुल टॉस, चूके अंतिम क्षण में अपने कदमों को खींच लिया, जैसे ही गेंद उनके हाथों से चूकी, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद, निचले हिस्सा लगने के बाद रन लेने की हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाना कि गेंद सीधे पहुंच चुकी है, पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस विकेट कीपर के हाथों में, उन्होंने अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए। लगभग सारे खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बल्लेबाज को घिरे हुए सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में। 1 to get from 3 deliveries और गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, हवीम ये गेंद इस बार चूके प्लम 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 एब्सोल्युटली प्लम एंड नाउ 1 more wicket fallen। तो यहां पर बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए वो कुछ कहते हुए अंपायर से, लेकिन उन्हें जाना होगा क्योंकि अंपायर का निर्धार अंतिम होता है और ये विकेट यहां पर गिर चुका है। नाउ इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, 2 balls remaining, 1 run they have to score for victory. So 1 to get now from 2 deliveries. मैच में कशिश अभी भी बरकरार, एक और डॉट गेंद और स्ट्रेट अवे सतीश दबाव इस वक्त आ जाएगा बल्लेबाज के ऊपर। क्यों, आप क्या कहना चाहेंगे? Exactly, Gopi, you cannot underestimate cricket, isn't it? He won the single runs to win this match, and at last the team matrix can tie the match here, isn't it? 2 balls remaining, 1 runs required for the victory, and interesting to see that a new batsman going to the striker's end, not the subtle batsman. Subtle batsman, of course, Karthik is in a non-striker's end. So I think it's a good chance here for team matrix ball. Another 2 good deliveries, at least they can tie the match. But just a single run required for the victory for Sarvagni cricketers. But sometime what happened in Gopi, even single is looking like a 3-figure 100. Some situation like this. Of course, 2 delivery remaining and 1 run get. When you are looking the field, it was a very closing field. It's not that much of easy. बिल्कुल सतीश, देखते हैं क्या होता है। डॉट गेंदों की दरकार मैट्रिक्स को और सर्वाग्नि उर्वा को चाहिए 1 रन विजय के लिए। 1 of 2, here we go, गेंदबाज तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, मिडल की दिशा में थ्रो पहुंचा और इस बार यहां पर रन पूर्ण हो चुका है। तो थ्रो को रिसीव नहीं कर पाया इस वक्त गेंदबाज और आखिरकार यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा, सर्वाग्नि उर्वा registered a thrilling victory by 5 wicket with just a single ball to spare in their innings and they won the match and with that victory they are through to the next round of this competition. लेकिन बेहतरीन यहां पर कोशिश की है, काबिल तारीफ कोशिश की है टीम मैट्रिक्स के खिलाड़ियों ने और आखिरकार सर्वाग्नि उर्वा emerged winners in this match. So the next match, NFC Urva will takes over Vinayaka Kapikar.
And two opening batters are came into middle for Vinayak Kapikad. Strikers jersey number please. Striker jersey number please. Please turn. Sean is going to be a striker here. So in the non-strikers, and Asha, more very talented cricketer for the side of Vinayak Kapikad, is in non-strikers, and Sean will going to take the strike. And from the committee box, and for NFC Urva, it's going to be Ranjit starts the proceeding. Oh, what a delivery! What a delivery! I watched so many bowlers, especially in the usage cricket, performing that bowling a leg cutter. But this man, I think, is quite a different tactics and technique. What he was getting that some turn, extra turn with that face, it's been outstanding. Again, lovely shot there from Sean. This time he got that one right from the middle of the bat, off the back foot in that one. Punch that one to the extra cover region for a single. The better line actually. When Karthik, the bowler bowled that line, which is moving from the good length spots, the leg cutter. And he getting some extra turn. It's unbelievable. The bowling a face, medium face delivery, getting that much of turn. I think it's been outstanding from this man. This time nicely turned that one down to mid wicket region there by Asha. Asha in the negation, very careful. You know exactly the kind of delivery this man is bowling. And this time he's just going back and just waiting for the turn of Ranjit. And nicely turns that one down to mid wicket region for a single. Two without loss of any wicket. Ranjit again away from us, right arm over the wicket. This time going for the reverse sweep. Ranjit is not interested for the appeal. You know exactly bowling a leg cutter, it's going to miss the off stump. And that going to miss the off stump in that occasion, so that no question of leg before wicket. One more addition, three without loss of any wicket in the over number first in progress. Ranjit again bowling with the short run off away from us. Right arm over the wicket, he bowls this time again. Sharp incoming delivery compared to the last previous three deliveries. This is the different one, wrong one from Ranjit. He bowled incoming delivery and negotiated very well by Arshad, pushing the ball down to mid deep long on region for an easy single. Four without loss of any wicket in the over number first in progress. Ranjit bowls this time, lofted at one over the head of mid off, but there is a protection in the deep long off, so that no need to worry about that. There is a protection has been given for Ranjit in the deep long off, so that just a single for Sean, but lovely looking off drive, lofted off drive, and first over completed, and Vinayak friends got 5 runs in the first over without losing any wicket. We are talking about outstanding cricket is going on here, but a lot of appreciation coming here for the V4 24/7 channel, because everywhere we are getting that feedback that they got a fantastic and very quality live telecast. Once again, thank you very much. Manik and his team done a great job, and Pawan, who is the main role architect behind this V4 channel. We having a technician. We have Nishan is a cameraman. It's a Nishan Shetty, and we have a technician here. Nagesh has been outstanding, and all teammates. Daryl, all that having experience. The team members of V4 24/7 done a great job, and they are the one responsible for the success of this cricket tournament. And lot of viewers are really enjoying this live telecast. It's a very good quality live coverage of this BK Trophy 2021. Ball him, clean him up. The first delivery itself, Vaishak is right on the money, right on the target, and he got a big wicket. The wicket of Sean is back into pavilion. Beaten with the face. Look at that one, nowhere near the pitch of the delivery.
So 5 for the loss of 1 wicket. Here is the next one. Left arm around the wicket, pushes that one down to extra cover region. There is a misfield there by the fielder. They're going for the second. This is excellent running between the wicket, especially the Ashok, who know exactly the kind of misfield there by the fielder. He is a little bit lazy to react to that one for the second attempt. Then he is calling his partner for the second run, and they made it quite easily in the end. Excellent running between the wicket there from Ashok, and then Pawan, and scoreboard moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. 7 did be correction. This time straight to the hands of fielder. Chance of run out. This time umpire Vivek asking for the third umpire. Arish Padil will going to be the third umpire here. Will going to get help from the technicians of V424/7 channel. So far it's been outstanding decision. That only because of their quality work. And it's going to be a close call. Will it going to be out or not out? It's very interesting to see that. So many times today having that kind of close callings for the decisions for the field umpires, because they doesn't want to take any risk in that occasion. Vivek in that occasion, of course, he's in a very good position. He can judge that one in a naked eye, but when you're having that much of provision, I think the umpires doesn't want to take any risk at all. They wanted to take help from a third umpire with the technicians of V424/7, the channels. What a great game of cricket is going on here. The BK Champions Trophy 2022 Ashok Nagar women's wing, the first time in the history of a UCG cricket ground organizing. The women's are organizing cricket tournament for the men's, and so far this tournament is running very successfully. And once again, I would like to give special thanks to our beloved MLA of South constituency, respected Shri Vidwas Kamath, and Ganesh Kulal, the corporator. Then all the hard work, given all the provision, the facilities in UCG cricket ground for the players and for the spectators and even for the officials. Special thanks to the young man of Biruver Kudla, Nishant, Nishu. He's really done a great job here in community box. Take care of all the officials, and he is a very busy customer today in community box, giving all facilities for officials here in commentary box. So here is a lot of hard work is going on here to get the judgment right. Judgment in the sense is a run out or not out. Heartbeats are going up, not from I think from the batsman's point of view. Will going to be out or not out? Very close call. That's why umpire asking for the third umpire. It's not that much of easy to judge. Of course, we can see the Vivek is in such a good position there, umpire. But here you have to see that the one fielder from mid-on is right in front of the camera, in front of that front camera. Now it's out is a signal coming from umpire, third umpire Arish Padil. So the batter Praveen has to go back to the pavilion. Is well short of his crease, no doubt at all. And one more wicket is back into pavilion of Vinayak Kapikad. Vinayak Kapikad, well reputed organization. Of course, I still remember they are organizing a prestigious cricket tournament in this UCG cricket ground for so many years. They are engaged in social work as well. The very reputed Vinayaka Friend Circle Kapikad. This man Asha, one of the important player for the side of Vinayak Friends Kapikad, Vinayak Kapikad. So from the far end, bowler will going to continue here. Vaishak bowls. Again, a little bit down the leg stamp, shuffled across the line of Reddy Russia, looking for the improvisation, missed the line completely from his bat, and a short third man, a short fine leg fielder fields the ball, and there is no chance of any run at all. Again, the single conceded in the form of leg by, signal by umpire Vivek, one more addition to totals. The slow progress here for Vinayak
Kabikard. Quite understandable because the line and length which is bowled by the both the bowlers of NFC Urva not really settling the batters for the big shots. The left hand batsman Harris came into middle. This time lofted that one, but a little bit out of the reach of that beat fielder in the deep mid wicket region. After two bounce, Prajwal, the fielder at the deep mid wicket, fields the ball. Ample time for the batters to complete the single. So 2 overs completed after completion of over number 2. It's 9 for the loss of 2 wicket. Vaishak has bowled a one more good over here for NFC Urva. NFC Urva, they got a formidable bowling department. They won their first match because of their bowling performance. Of course, they are a little bit struggled with this batting performance, but they bounced back with their bowling department in the first match. Prajvit is the bowler, not Vaishak. It's Prajvit is the bowler. Ranjit and Prajvit completes their 1 hour of their quota and they performed very well. Now, Neetu came into attack. Nitesh, famously known as Neetu, a very good performer from the ball who can turn the ball both way, incoming and outgoing deliveries. The master of bowling that line and length. Wait and see how Neetu will going to perform here. They represented Vishal Kodikal in the 30 overs format of games. And Neetu bowling from the commentary box end. The left-hander batter Harris is on strike. Deep cover point and deep long off the two fielders in the offside in the deep square leg, deep fine leg and deep mid wicket are the fielders in the deep in the onside region. Again that ball is outside the line of off stump and Harris wanted to hit the ball towards the deep mid wicket region. Didn't got that much of timing in that strokes. And then because of his mistimed that one, ball went towards a short mid wicket region and the possibility of single there. Very hard for 10 runs here for Vinayak Kabikar. Oh, what a delivery, what a leg cutter up. That was a fantastic one there from Neetu. Just like Ashwin of Young Friends Urva, the master class leg cutter. The same line and length is the deviation, the extra turn again for Neetu. And definitely it's going to be very difficult for the batters, the right-hand batsman, to pick that line. And this time he picked that one right from the middle of the bat. This has been outstanding strategy there from Asha there. So once he realizing that was an away going delivery, he just changing his position just like a left-hand batsman hitting that ball. That was exquisite footwork and the bat speed has been outstanding. Very impressive indeed there from Asha. Picking up the line and length quickly, taking his position very quickly and switch it comes into play to get the placement right. A lovely shot there from Asha and score jumped into 14 for the loss of 2 wicket. Neetu again, right arm over the wicket. Take a look at that. That's the one problem actually. If you wanted to play the orthodox cricketing stroke against a turning delivery, it definitely keep the batsman very, very difficult to play the shot. Once he got into the unorthodox position, try to play the reverse stroke, that ball becomes really very simple delivery to play. That's the beauty of cricket. This time again, he got that one top edge. Ball is going to land very safely between backward point and deep backward point region. Didn't got enough bat onto that Asha. He got a top edge, the full toss delivery in fact in that occasion. And he got a single for that. With that single, scoreboard now moves on to 15 on the board for the loss of 2 wicket. That brings Harris into strike now. Now the Neetu, wait and see what kind of delivery you going to ball to the left-hander batsman. This time leg cutter of course, but incoming delivery for the left-hander batter. And this time Nitesh in that occasion not really able to collect the ball. Ball is hitting his legs, so that create the opportunity for the batter to come back for the second as well. So one more over completed. Little bit productive over here for Vinayak Kabikar after completion of over number 3. They're searching for the right track. They got some runs in this particular over. So after completion of over number 3, it's 17 for the loss of 2 wicket. And wait and see how Vinayak Kabikar will going to accelerate the run rate in the remaining 3 overs. So before the next over will going to start from the far end, from Auburn Homes end, it's time to ask Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Welcome, Gopi.
धन्यवाद सतीश। और उससे भी पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्रीमान संदीप जी को, जो कि बोलूर के, जो कि इतनी बेहतरीन साउंड सिस्टम उन्होंने यहाँ पर इस श्रृंखला के लिए दिया है। निस्संदेह हम सर्व क्रीड़ा प्रेमी और संगठक और सब लोगों की ओर से, खुद हमको भी मिलाकर, हम पूरा अभिवादन आपका करते हैं। हार्टली वेलकम टू यू सर। क्योंकि प्रोप्राइटर है साई इलेक्ट्रिकल्स बोलूर के संदीप जिन्होंने इतनी बेहतरीन साउंड सिस्टम यहाँ पर इस श्रृंखला के लिए उन्होंने दी है। तो इस बार पहली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला, 1 रन का इजाफा, 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार धनुष गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त अंदर की ओर आती हुई गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद यहां पर पहुंची विकेट कीपर के हाथ में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। और अगली गेंद के लिए तैयार, 18 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा गली की दिशा में, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है यहाँ पर 19 रनों पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। रन हार्ड टू कम बाय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, काफी संघर्ष के साथ यहाँ पर रन बनाना पड़ रहा है बल्लेबाजों को विनायक का काफी काट के। और जहां तक सवाल है करारे स्ट्रोक्स का, चौके और छक्कों का, तो इस वक्त चंद चौके और छक्कों की उन्हें सख्त दरकार। इस बार नॉन सेकंड बल्लेबाज आगे निकला है, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित, और निशाना यहां पर चूकता हुआ। स्कोर रन रुक चुका है, 19 रन। इस बार बोल्ड आउट, तो एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। और 19 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है, 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से श्रीमान संदीप साई साउंड सिस्टम चैलेंज बोलूर, इनको हार्दिक अभिवादन करते हैं कि इतने बेहतरीन साउंड सिस्टम की व्यवस्था उन्होंने की है इस श्रृंखला के लिए। और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, तो पीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 फ्रेंड्स बल्लाल बाग बिरवेर कुडला रजिस्टर्ड अशोक नगर वुमेन्स विंग ने इस बेहतरीन श्रृंखला का आयोजन किया है। यहाँ पर आज और कल 2 दिन ये श्रृंखला चलेगी। कल मंगलूर के टॉप सीडेड टीमों के बीच मैच जो कि खेला जाएगा। पहला मैच कल सुबह होगा 8:30 बजे, 8:30 को चैलेंज बोलूर और मंगला देवी क्रिकेटर्स के बीच में। उसके बाद दूसरा मैच होगा गोरियंग बॉयज और केसीसीआर कद्री के बीच में 9:30 बजे। और तीसरा मैच, एक और बेहतर मैच, यंग फ्रेंड्स विल टेक्स ओवर केएफसी कोडिकल इन द थर्ड मैच ऑफ टुमारो। एंड फोर्थ एंड लास्ट मैच ऑफ फर्स्ट राउंड विल बी प्लेड बिटवीन एनएम जप्पू वर्सेस नया मलेमार। इस बार गेंद को ड्राइव किया था और गेंद सीधे पहुंची विकेट शॉर्ट कवर फील्डर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 4 ओवर की समाप्ति, अभी भी ऐसा करना पड़ेगा। विनायक कापी कार्ड अपनी सही राह को तराशता हुआ, जस्ट सेटिंग फॉर द राइट ट्रैक। 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। तो अगला मैच, the next match will be played between will be the first quarter final of this competition, will be played between Torpedoes Khana versus Team Rooftech, and that match is now coming up live exclusively right after the first quarter final match of this competition. And because of that, I request the both teams players to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो यहाँ पर संघर्ष जारी है। 5वां ओवर शुरू होता हुआ कसी हुई गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज इस वक्त एनएफसी उर्वा के पहली गेंद चिपके आसपास ऑफ द विकेट गेंद जाती है एक्स्ट्रा कवर पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। और अगला जो कि अगला पहला क्वार्टर फाइनल मैच टॉपर्स खाना और टीम रूफटेक के बीच में खेला जाएगा, और वो मैच 5 ओवर का खेला जाएगा। 5 ओवर प्रति पारी जो कि खेले जाएंगे अगले मैच में। कृपया खिलाड़ी ध्यान दें, यह गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा स्क्वायर ऑफ द विकेट चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 20 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है और 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करता है। ओह बेहतर, एब्सोल्युटली गुड लेग कटर डिलीवरी, बेहतरीन लेग कटर गेंद, टिप्पा खाकर
थोड़ी सी डिविएट होती हुई बाहर की ओर निकलते हुए गेंद तक पहुंचना चाहा था, चूंकि गेंद के टर्न को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ये गेंद अंदर की ओर आती हुई ऑफ द टॉस गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद पहुंची शॉट स्क्वायर लेग और शॉट में विकेट के दरमियान 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इट्स 21 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। रंजीत गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस रंजीत। अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई अंतिम क्षण में सही तरीके से अंपायर रोलैंड पिंटो ने इस अपील को नकार दिया। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। रन्स अभी भी सिंगल्स में बनते हुए विनायक कॉपी कार्ड के लिए, ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव विद अ ट्विस्टेड बैट, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली और गेंद सीधे पहुंची शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और इसी के साथ ओवर नंबर 5 has been came to an end. 5 overs completed. It's 22 for the loss of 3 wickets. Still the batsmen of Vinayaka Kapikard searching for the right track. और अंतिम ओवर का खेल यहाँ पर बाकी और देखना यह कि इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, अगला मैच 5 ओवर का खेला जाएगा, 5 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे। इस श्रृंखला का पहला क्वार्टर फाइनल मैच टॉर्पेडोस्काना और टीम रूफटेक के बीच में, जो कि अगला मैच होगा। और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ एक बार फिर से कि कृपया दोनों टीमों के सदस्य स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता होगा। पहली गेंद, इस बार गेंद को उछाल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में और वहां पर फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन थ्रो इससे पहले कि पहुंचे बल्लेबाज नहीं पहुंच पाएंगे और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है रनआउट के रूप में। पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, जो कि काफी जोखिम भरा साबित हो सकता था और साबित भी हुआ और यहां पर विकेट रनआउट के रूप में गिर चुका है। इट्स 4th विकेट डाउन, इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड द लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। नितेश गेंदबाज हैं और यहां पर 5 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। एक कसी हुई गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज एनएफसी उरुआ के फलस्वरूप रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए बल्लेबाज विनायका कपिकाड के। और नितेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार चिप किया है स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर ने इस कैच को लपका और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। विकेट नंबर 5, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को उछालना चाहा था, ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और गेंद टॉपिक पर टकराने के बाद हवा में उछली और आखिरकार स्वीपर डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की और एक और विकेट गिर चुका है। इट्स 23 for 5 नाउ एंड नाउ जस्ट 4 balls रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। सिर्फ 4 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी और यहां पर जहां तक का सवाल है, गेंदबाज नितेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, नितेश की गेंद, ये गेंद उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, परफेक्ट लेग कटर, जस्ट केप्ट लो इन द लास्ट मूवमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन। और जहां तक रनों का सवाल है तो रन से यहां पर नहीं मिलेंगे। Three balls now left in their innings. तो धनुष है गेंदबाज, माफ कीजिए, और गेंदबाजी वो आगे बढ़ाते हुए और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ड्राइव किया, गेंद को गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद निकली लॉन्ग ऑफ की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर 5 विकेट के नुकसान में। 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट विद जस्ट कपल ऑफ बॉल्स नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। और धनुष इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। रिफाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, सिर्फ 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और धनुष एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस अंतिम ओवर
में भी सिंगल्स के रूप में सिर्फ इस वक्त रन्स बनते हुए। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिडल गेट, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 25 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, धनुष ओपन होम्स एंड की ओर से दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद उछालना चाहा चूके और इस बार रन आउट होता 1 ऑन स्ट्राइकर एंड पर और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर Vinayaka Kapikat. They finished with 25 for the loss of 6 wickets in the stipulated 6 overs. And now they set a victory target of 26 for the 26 for NFC Urva. So NFC Urva have to get 26 runs to qualify for the quarterfinal of this competition in the stipulated 6 overs with the required run rate of exactly 4.33 runs per over. The present required run rate for them with the help of 10 wickets. They have to score for victory. The present equation shows for them. And let's see can they reach the target or not. 26 they have to score in 6 overs. And their innings starts now with the Ashok. While till then, we are taking a short break and we'll be back right after the short break in the second session when the innings of NFC Urva will going to begin. Thank you. So 26 the target for them and their innings now going to start. Exactly 4.33 the present required run rate for them at this situation with the help of 10 wicket. They have to score for victory and their innings now going to start. और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार दयाकर, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार तिलक और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। इट्स 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर और दयाकर एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तिलक के लिए स्वीप किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर एनएफसी उर्वा। 26 they have to score in the stipulated 6 overs with a required run rate of exactly 4.33 runs per over with the help of 10 wickets at this situation। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कमिंग टू ऑन टू हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट जिस अंग्रेजी में कहते हैं और इससे पहले की गेंद को मिड ऑन पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। इट्स 2 for none इन द फर्स्ट ओवर और अगली गेंद लेकर तैयार दयाकर, दाहिना तो ओवर द विकेट, चिप किया इस बार हवे में लेकिन फील्डर काफी पीछे मौजूद लॉन्ग ऑफ पर और after a couple of bounces the ball collected by the feeder at long off and before that बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और 3 रनों के साथ स्कोर बोर्ड अब रुक चुका है और अगली गेंद दयाकर की लेकर तैयार तिलक स्ट्राइक लेते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया बिल्कुल जमीन के सहारे अलोंग द कार्पेट, गेंद को फेंकी थी, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया, देखा कि गेंद मिड ऑन पर फील्ड हो चुकी है। एक बेहतर ओवर अब तक दयाकर का समाप्त हो चुका है। सिर्फ
3 रन अब तक वो पहले 4 गेंदों में प्रदान कर चुके हैं। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। गेंद को हल्के से मिड ऑन फील्डर जो खड़े हुए थे सीधे उनके दाईं ओर इस वक्त गेंद को ड्राइव कर दिया और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 4 रन बिना किसी नुकसान के। अंतिम 12 इस ओवर में दयाकर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन दिस टाइम, प्रीटी स्लो वन। और इस धीमेपन को, स्लोनेस को नहीं समझ पाए और गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज और विकेट कीपर को वंचित करते हुए सीधे शॉर्ट मैन फील्डर के हाथों में। और इसी के साथ एक बेहतर ओवर की समाप्ति। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर चेसिंग द विकेट टारगेट ऑफ 26 in 6 overs set by Vinayak Kapigad. Steady start for NFC Urva. Just 4 runs they scored after the completion of first over. 5 runs in fact it's a 5 without loss after completion of first over. Still 21 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs with a required run rate of exactly 4.20 runs per over. Still they got all 10 wickets kept intact, all 10 wickets they got in their hand. और देखते हैं इस दूसरे ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। अर्बन होम्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। द सेकेंड पावर प्ले ओवर नाउ गोइंग टू स्टार्ट। पहली गेंद नंबर 13 जर्सी पहने हुए गेंदबाज अजित इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और प्रज्वल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद दाहिना ओवर द विकेट, टॉप एज, गेंद हवा में उछल चुकी है लेकिन मैं समझता कोई फील्डर वहां पर नहीं। डीप मिड विकेट पर काफी लंबा दौड़ लगाते हैं फील्डर और जब तक गेंद को वो फील्ड करे काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद डीप मिड विकेट पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। गेंद को इस वक्त स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड पर, द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मिनट, गॉट स्टॉप एज, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं डीप मिड विकेट पर और इस बीच 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। It's 7 for none at the start of the second over in fact. गेंदबाज की गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है, नो नीड टू पैनिक एट ऑल जिस अंग्रेजी में कहते हैं। अगर हर गेंद पर सिंगल्स भी बटोरते हैं तो निस्संदेह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन गेंद के लाइन को भापते हुए गेंद को छोड़ दिया कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है। वाइड का इशारा इस बीच अंपायर विवेक का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 9 for none इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, इस बार गेंद को उछाला और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा, he just got that one right from the middle of the bat and lofted that one, clearing the infield, taking the advantage of the power play and he hit that one for a boundary or long on fence for a boundary for 4 runs. It's 13 now without loss in the over number 2 in progress. 13 more to get now for victory for them. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव, दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। गेंद को लगभग गोली की रफ्तार में डिस्पैच करने में सफल मिड ऑन फील्डर की दाईं ओर से एक और चौका यहां पर लग चुका है। It's 17 for none and they are now rushing towards to their victory. Just 9 to get now. और अजित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए 2 लगातार चौके यहां पर प्रज्वल झड़ चुके हैं और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 18 now, just a second over in progress. The target seems to be much easier now for them. Just 8 to get now. Second over in progress. And at this situation, NFC Urva are now looking right on top. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, अजित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार उछालना चाहा, शॉर्ट मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा काफी वाइड आउट ऑफ विकेट कीपर्स रीच और इससे पहले की गेंद को वहां पर बैकअप किया जाता। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। 19 for the loss, without loss in fact in the over number 2 in progress. इस बार शफल होते हुए गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। It's 20 for none and this is the second over in progress. Just 6 more to get now for victory and 4 overs to go after this one. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, अजित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फ्लाइट एट ऑफ कटर गेंद उछालना चाहा, चूके पूरी तरह और यहां पर मेरे ख्याल से विकेट नंबर 1 गिर चुका है। I think it's got an inside edge on that. शायद बल्ले का बीते किनारे टकराया होगा, हमें यहां से ठीक से दिखाई नहीं दिया और यहां पर ये पहला विकेट गिर चुका है। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। 2 overs completed and now they are looking in a commanding situation. Just 6 to get now in remaining 4 overs and the asking run rate is now coming down to exactly 1.5 runs per over. 6 रन चाहिए सिर्फ और
बचे हुए 4 ओवर में, और निसंदेह लक्ष्य इस वक्त काफी आसान एनएफसी उर्वा के लिए इस वक्त दिखाई देता हुआ। Next match will be the first quarterfinal match will be played between Torpedoes Khana versus Team Rooftech, and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. Next match will be the 5 overs per side to be played. Players please note. और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो तीसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त एनएफसी उर्वा की पारी में, और विनायक कापीकाड़ की ओर से हर्षा गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ऑफ से काफी बाहर, एंड ही स्टार्ट्स ऑफ विद अ वाइड सिंगल रन एड टू द टोटल 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सिर्फ 5 रन और चाहिए विजय के लिए। इस बार टॉप एज मौका गेंदबाज के लिए फॉलो थ्रू में, और इस कैच को लपकने में सफल, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। बल्लेबाज गेंद मैच को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते थे छक्के के जरिए, लेकिन इस बार गेंद एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए टॉप एज पर टकराई और फॉलो थ्रू में एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका यहां पर हर्षा ने, और 21 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड जस्ट 5 टू गेट नाउ, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द न्यू कमर, न्यू बैट्समैन इन फैक्ट। So number 4 batsman is now comes out to the middle. He is at the non striker end, और गेंदबाज के लिए गेंद हल्की गेंद थी इस वक्त, थोड़ी सी उछाल लेती हुई रक्षात्मक तरीके से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया एक्स्ट्रा कवर पर, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। It's 22 for the loss of 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद ऑफ कटर गेंद को इस वक्त खेलना चाहता स्क्वायर ऑफ द विकेट, बल्ले का भीतरी अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद गई बैक टू द बॉलर की दिशा में, इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 22 रनों पर। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद टिप किया, एक और विकेट हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इस बार दोनों फील्डर टकरा गए और कैच उनके हाथों से छूट चुकी है। हालांकि एक फील्डर गेंद तक लपके गए थे, लेकिन अंतिम क्षण में जैसे ही उन्होंने गेंद को लपका दूसरे फील्डर आकर टकरा गए। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, हैव अ लुक एट दिस, गेंद किस तरीके से, देखिए फील्डर गेंद के नीचे आए, लेकिन अंतिम क्षण में लपकते समय दूसरे फील्डर उनसे टकरा गए, और इस बार बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स, सफल होते हुए ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता, चूंकि गेंद सीधे मिडल और लेग स्टंप पर यहां पर टकराते हुए जस्ट 2 टू गेट नाउ, 2 रन सिर्फ चाहिए विजय के लिए, और कुल मिलाकर उनकी पारी का तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। जस्ट 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, और नए बल्लेबाज का इंतजार है, और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पधार चुके हैं, लेफ्टी बैट्समैन, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज हर्षा की गेंदों का प्रज्वलित, बल्लेबाज सिर्फ 2 रन अपने विजय से दूर एनएफसी उर्वा, और गेंदबाज इस वक्त फील्डिंग में जमावट करने के बाद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 6 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेग स्टंप से काफी बाहर, 1 रन मिलेगा, वाइड, 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल, सो दैट्स इट फॉर दिस मैच। 7 wickets comprehensive victory for NFC Urva with more than 3 overs to spare, and with that victory they are through to the quarter final of this competition. So the next match will be the first quarter final match. अगला मैच पहला क्वार्टर फाइनल मैच टोपेडोस खाना और टीम रूफटेक के बीच में खेला जाएगा, और ये मैच जो कि 5 ओवर का होगा, 5 overs per side to be play. प्लेयर्स प्लीज नोट। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो इस मैच में हम वापसी करेंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद, राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, जब पहला क्वार्टर फाइनल मैच एक छोटे से अंतराल के बाद यहां पर शुरू होगा। धन्यवाद, थैंक यू, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक, थैंक यू। Welcome back.
Welcome back for the day number 1 of Ashok Celebration BK Champions Trophy, proudly organized by Biruver Kudla Ashok Nagar Women's Wing. And match number 9 will be played between Team Roof Tech versus Torpedoes Khana. So 5 overs tried to be played and 1 over reduced as for the shortage of time. The organizer decided to reduce 1 hour, so that please cooperate with the organizer. Now Team Roof Tech takes on Torpedoes Khana. As one more good match is coming up. So Roof Tech captain, after winning the toss, they elected to field first, so that they're entering into the field along with the 2 umpires. Vivek of challenge bowler, along with him Arish Padil, walking towards the middle. So welcome back. Everything is ready here for the first quarter final of this most prestigious BK Champions Trophy. Yes, thank you very much for Kishan ji. So far, he's been fantastic in our commentary box as a scorer, done a great job, and he will just leaving here from the commentary box after completing his job here. Hand over his job to Hardik, one more very young, talented scorer here in commentary box. So thank you very much once again, Kishan ji, for your cooperation for the success of this cricket tournament. From the far end, Salman will going to start the proceedings, and Karthik will going to face a first delivery, and signal straight away coming from umpire Arish Padil. And right arm over the wicket, first out of the power play, mid off, short extra cover, short cover point, short third man. There is a short mid wicket, short mid on, short fine leg. One fielder stationed at deep mid, deep square leg. Again, the first ball, one at deep third man, in fact, deep backward point. The first run comes up here for Torpedoes Khana in the form of bye signal by umpire, one without loss of any wicket. A very, very interesting match. The Roof Tech and Torpedoes Khana, the teams from same region, that is Suratkal.
And definitely it's going to be a very interesting match between these two neighboring teams, Rooftech as well as Torpedoes Khana. One without loss of 1 wicket. Salman got a ball in his hand. Second time in this over. Bowling from the Harban Homes end. Right arm over the wicket. Balls to Sinan. Sinan went for the big shot. Appeal for leg before wicket. A half-hearted shot. Directly comes up here. The appeal for the run out. But umpire says the batsman is safe. Rightly so, because the batsman almost the Karthik is a very good runner between the wickets. So no question of run out there. Not only the bat, all his body is complete, is almost crossing that popping crease. So no question of run out here. Rightly so. Vivek is not really wanted to waste the time to ask for the third umpire. He can judge in a naked eye, so that the quick run has been taken by both the batters. So 2 on the board without loss of 1 wicket. Salman, right arm over the wicket. Again Flum, absolutely Flum in front of wicket. This is the beauty of this man. He is certainly is a man who is looking for in this particular cricket tournament. He's been very impressive throughout the tournament with his line and length, and more than anything else that he is getting some pace in his bowling. Again, more than anything else, I must talking about the way he is bowling with the pace. It's been outstanding. Even the batter like Karthik really surprised with seeing that ball, the quickness of the ball. That ball is coming into the bats very quickly, and he's just finding himself in front of middle stump, and he's back into pavilion. The first wicket is back into pavilion of Torpedoes Khana. Big blow, and again the batter Karthik couldn't manage to talk with his bat. Little bit disappointed. The previous match also, after hitting 1 boundary, is back into pavilion the next delivery. And in this match also, Karthik couldn't manage to perform from his bat, and that was only because of Sinan. The way he bowled that delivery, absolutely no doubt at all in the mind of umpire to raising his fingers. A Flum in front of wicket. Now all up to this man now. Akram came into bat. Akram will going to face our next delivery from Salman. Oh, again one more good delivery I must say, because again that was the same delivery, identical mirror display of the previous delivery, the same line and length, but batter is different. Akram quickly realizing that of course he have to play that one in the straight bat, and he played that one very well down to mid-off to pick the single. Score now moves on to 3 on the board for the loss of 1 wicket. Sarnal bowls again, appeal for leg before wicket, but this time the impact is outside the line of off stump, so that no question of leg before wicket. In fact, they got a single in the form of leg by. First over completed. Again the Salman produced a very good over, very economical and wicket taking over. The 1 ball remaining in this over, in fact the 5 balls he bowled, he picked up 1 wicket, the wicket of Karthik. 5 for the loss of 1 wicket. Salman so far is he bowled 5 deliveries, considered 4 runs, and he picked up 1 wicket, the wicket of Karthik. Now Akram is on strike now, the very experienced campaigner, facing last and final delivery. Driven, lack of placement, chance of run out in the non-striker's end, but the bowler is not in a good position to collect the throw from the fielder, and they got opportunity to come back for the second as well, and Akram completed that couple of runs. Very good piece of fielding there by the fielder, but I think the Salman of course not really able to collect the throw from that the fielder, and not a good throw as well, so that they completed that quick single. Ball went straight to the hands of that fielder. The sudden chance of run out is missed out by Rooftech, team Rooftech, so that just the 6 runs came from the first over. Good over there from Salman, and steady start coming from Torpedoes Khana. They lost the wicket of Karthik in that over, and they managed to get 6 runs in that power play over. The second over of the power play, as far as this match is concerned, it's going to be very interesting to see that Torpedoes Khana, how well they manage to get some good score. So Muhammad now, the new bowler is introduced from the commentary box, and for Ruptek to bowl that second over of the power play. Sinan
The batter in front of Muhammad. Lot of noises. Looks like everyone is setting a field here. That's really going to be a big problem, because a captain or a wicket keeper has to take a role of setting a field. If everybody talks in the field, then it's going to be very difficult to set a field. And maybe the discussion is about which place is going to be the fielder you have to set for in the long. One fielder going back to deep mid wicket, that is sure. Now deep mid wicket fielder coming a little bit across towards a deep backward square legs. There is no mid wicket at all. The long on is there. No one protection has been given in the offside region. Two protection in the onside region of the bowling of Muhammad. Bowlers back drive. Cotton ball chance. He won the chance here for the mid-off fielder to take the catch in the second attempt, but mid-off fielder not really reacting quickly to that. And Sinan survived from that delivery. The two opportunity in one ball. Once it's a cotton ball, difficult one for Muhammad, but he reacted very quickly. Got a ball in the palm of his hand. Ball just deflected from the palm. Then ball went towards the mid-off region. Mid-off fielder not really reacted quickly for that. He collected that one on bounce after one bounce, so that they got a single. 7 for the loss of 1 wicket here in over number 2 in progress. Muhammad. Right arm over the wicket to Akram. Akram again went for the reverse sweep. Didn't got enough bat onto that. Little bit bat onto that, so that he managed to complete the single here. 8 for the loss of 1 wicket. Both the teams really fighting hard to get the place in the semi-final of this most prestigious BK Champions Trophy. Wonderfully organized by Ashok Nagar women's wing, Biruver Kudla. This time lofted in the vacant area. The long chase here for the field. I don't think we'll go to chase that one. That ball going over the rough, one bounce for 4 runs. That was an excellent improvising cricketing stroke there from Sinan. This is an encouragement. The field set I already mentioned, there is no protection has been given in the offside region, so that Sinan know exactly if he is able to clear the infield, he will go and get the boundary for that. Excellent placement. Little bit inside out cricketing, so no exactly, there is no protection in the deep, and you get the placement right. Ball is just landing in front of the deep extra cover region boundary. One bounce over the row for 4 runs. So with that boundary, score now moves on to 12 on the board. A lot of dignitaries watching here in this commentary box, and warm welcome to Mr. Tilak Guru of Young Friends Rua. They came here, one of the best ambassador for underarm cricket, one who has successfully organized the Kudla Premier League in this UCG cricket ground, and is just enjoying the game of cricket. And on behalf of spectators, on behalf of cricket lovers, and on behalf of all the members of Ashok Nagar Women's Wings, Biruver Kudla would like to welcome Tilak Guru for this cricket tournament. So 12 for the loss of 1 wicket in the over number, the 2nd in progress. Muhammad, right arm over the wicket, try to repeat that shot. This time he's got a protection in the extra cover. That's why he's bowled that line. That's all happening. When the protection has been given for you, the bowler can be very freedom to bowl that outside the line of off stump, so that he bowled that good line. It beats the bat of Sinan. And that's very important. The field set is a unique part of cricket. And Muhammad again now went for the appeal for leg before wicket, and certainly that ball definitely going to miss the off stump in the negation. Went for the reverse stroke, and this ball is getting a deviation and going to miss the off stump. One more addition to total. 13 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Muhammad, so far he bowled 5 deliveries, conceded 6 runs, 1 leg by, together 7 runs. Lofted over the top, but landed very safely down to long off region. Not more than a single. Good collection from the field and the deep. So with the addition of that single, scoreboard now moves on to 14 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2 completed. So 14 for the loss of 1 wicket, over number 2 completed. The run rate is almost exactly the 7 runs per over. I think it's a good comeback in the second over by the batters of Torpedoes Khana. They got some runs on the board. Now 4 overs remaining in the innings of Torpedoes Khana, and wait and see how Torpedoes Khana will go and get some big score. But Rupek
Team Rooftech have to restrict the opposition less than 45 if they wanted to win this match. Little bit correction, 5 overs game. I already mentioned, little bit correction, not a 6 overs, a 5 overs game. So that it's going to be a 3 overs remaining in the innings of so no change in the number of power play overs. Of course, they completed 2 overs power play. Now fielding spreading out here. So many fielders out there in the deep. You can see that deep long on is there, deep long off is there. Now mid wicket going back to deep mid wicket. One fielder from cover point region going back deep cover point region. Inside the ring, short mid wicket, short fine leg, short third man, and short extra cover. And Akram will go into face Salman. Right arm over the wicket, looking for the reverse sweep. Missed it completely. That was the beauty of Sinan. So far, he's been very impressive. Very maturity is coming to his bowling. I think he's getting maturity. Each and every matches, each and every tournament, he's looking pretty good. And he producing some important over for his team. Again, went for the reverse sweep. Didn't got enough bat onto that. Akram missed the ball completely from his bat. So that leg by call by umpire. One more addition to total scoreboard moves on to 15 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Salman with the short run up. Bowling with the wide of the crease is bowling. Coming here again, a lovely delivery. Absolutely perfect one, but ball just missing the off stump. The impact of the line outside the line of off stump. That's why Arish Padil just signaling the leg by. Rightly so. One more addition to total 16 on the board for the loss of 1 wicket. The great bowling performance here from Salman so far in this particular cricket tournament. 3 magnificent deliveries from the far end. Now we're bowling 4 times in this over. Right up over the wicket to Akram. Akram quickly realizing that hitting the ball is very important, very difficult against Salman's face. So that he's just changing his technique this time. Just pushing the ball down to cover point region to rotate the strike. 17 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Slowly, the duck taken place here in UCG cricket ground. Outside run off stamp, wicket keeper behind the stamp, chance here for the run out, but the throw is not good enough. Just a backhand throw, just a flick of the wrist in the negation there from wicket keeper behind the stump to stop the single, to make the run out, but ball is gone very high, so that the batters completed a single quite easily. 18 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Salman with a short run up. Right arm over the wicket, he bowls. Akram went for the reverse sweep. Chance of cotton ball in the negation. He missed it. And little bit quick reaction from Salman, because ball came very late to him. He quickly reacted for that catch. That's why he missed it completely from his hand. But he bowled a very good over. No problem whatsoever as far as the run rate is concerned. Particularly in this over, he bowled very good line and length. So 3 overs completed after completion of over number 3. Torpedoes Khana searching for the right track. They are 19 for the loss of 1 wicket. 6.33 runs per over. The run rate progressing here for Torpedoes Khana. Change in bowling. One more very young emerging star for Rooftech is none other than Safwan. So far, just like Salman, he's also got a very good bowling action, and even the line and length is so impressed throughout the tournament. And wait and see how Safwan will go into produce here. And 2 very important batters are in the middle, especially Akram is a very experienced campaigner. Wait and see how well he will go into get some runs in the remaining 2 overs. 5 overs game. From the commentary box end, Safwan with a short run up. Right arm over the wicket to Akram. Akram drives that run powerfully down to deep long off region, but they're calling his partner for the second. In comes the chance of run out in the last seconds, and direct hit, and umpire Vivek will going to call for the third umpire. Roland Pinto sir will go into examine here, along with the technician of V4 24/7 channel will get here the result.
The very close call. Whenever the direct hit, it's going to be very close. The most of the time, the result is going in favor of fielding team whenever it's a direct hit. But sometime it's going in favor of the batsman. And wait to see who will going to be the winner. Will it going to be the fielding team or it's a batting team will go ahead to get the advantage here? So umpire has to see in a different angles. We cannot judge in a single view. We have to get angles from different angles. We have to see. We have to see it 4 times because especially in under-arm cricket, it's not that much of easy compared to the international cricket third umpiring. The technology is very much forward. But here, with the limited technology, we have to get the right decision. So once again, thank you very much, V4 24/7 channel. All technicians, the cameramans did a great job for the success of this cricket tournament. We are getting as much as possible the good result and the wait and see what could be the result of this run out. So far, the battle is on for the place in the semi-final of this prestigious BK Champions Trophy 2022. The winner of this match will go into enter the semi-final. Now, decision coming from umpire, third umpire. The out is a signal from Roland Pinto, sir, so that batsmen have to walk back to pavilion. I'm mentioning about just before the 95% of result. Whenever the direct hit comes up, then result always going in favor of fielding team. Only 5 to 6% batsmen are safe when it's a direct hit. And that's why umpire doesn't want to take any risk. Even immediately after that direct hit, they wanted to take help from third umpire to see whether out or not out. 20 for the loss. 20 for the loss of 2 wickets. A new batter, the hero of the previous match, Sharif came into middle. He is the one who takes the match away from the opposition. In the under pressure situation, hit 1-6, massive 6 down to mid wicket against Friends Kutar and register victory for Torpedoes Khana. That time went for the reverse sweep. They picked up a single. Now the floodlights are on here, UCG cricket ground. We can see UCG cricket ground under floodlight. It's more beautiful. Once again, thanks to our beloved MLA of South Constituency, respected D. Vedavas Kamath, the behind this floodlight, and definitely it's going to be a fantastic view of this cricket ground, UCG. Lots of underarm cricket, famously known as lots of underarm cricket. Again, the next ball, Safwan bowls Sharif and for the reverse sweep, didn't got bat, leg by call by umpire. One more addition to total. Scoreboard moves on to 22 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. So far, Akram is very quiet, cool and calm. You know exactly the condition of the game. You know exactly if they are able to get 35 to 40 runs, is going to be a very good total to depend in this condition. And again, Safwan balls going for the off drive, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump, have to do a lot of hard work to make that run out, but it's not an impressive work, I must say, from wicketkeeper behind the stump. It's a golden opportunity he missed out because that's the wicket of Sharif. He's a danger man as far as roof tech is concerned. He's a danger man. And here you have to pick the ball. Then instead of throwing the ball, you can himself take the ball into the stumps and make the run out. That's what really not happening in that attempt from the wicketkeeper behind the stump. And Sharif is just survived from that run out. 23 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. So far, it's a very good battle is on here between bat and ball of Rooftech and Torpedoes Khana. Safwan bowling away from us. Right arm over the wicket to Sharif. Sharif this time across the line, swinging his bat, missed the line completely around the legs. That ball hits the stumps. That's the wicket what Rooftech wanted to get. The danger man departs here. Safwan picked up a wicket of Sharif of Torpedoes Khana. Lost one more big wicket here. 23 for the loss of 3 wicket.
much across the line of the delivery. He wanted to swing that one, shuffled across. Once you shuffled across the line, almost he's coming in the off stump. Then bowler Safwan can see the leg stump of the batter, so that he bowled that line. That was a great change of line there by Safwan, seeing that is the batter going for the big slog sweep shot. He just bowled that line. Great change of line. Great thinking there by the youngster Safwan. He's been outstanding today. And 23 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Now Nihal came into middle. Left hand batter. Batted really very well in the previous match for Torpedoes Khana. He is the one responsible for the victory in the previous match with this excellent batting performance. Now he is in front of Safwan. It's a very good competition between two young stars. What a shot, what a shot. He's a clinical striker of the ball. Look at the stroke that coming from the blade of Sinan. They're running for the second. They made it quite easily, looking for the third, but difficult to get. He is a really future of underarm cricket, I must say. By watching his cricketing strokes, Sinan, he's got a very good high-hand coordination, hitting the ball very well. It's not an easy, I will tell you. But one more good over is completed here by Rooftech. The bowlers through Safwan, the 25 on the board of completion of over number 4. Now last over remaining in the innings of Torpedoes Khana. Wait and see how many runs they will going to score here. 6 point, just above the 6 runs per over, the run rate progressing here. But Torpedoes Khana knows that that's less than 30, less than 32. It's difficult for them to depend, so that they wanted to get some runs in this last and final over. But Rooftech, they also knows that if they consider some run over 34 to 35 runs, then it's very difficult to chase down, especially you are playing under the light. They're not playing in the daylight, but they're playing in the artificial light, the floodlight they have to perform from the bat. Khadar brought into attack. The first hat-trick getter of this cricket tournament brought into attack from the Urban Ohms end. Now, more than the hat-trick, his team wanted some restriction of runs in the final over. Wait and see how Khadar will go into produce. Akram is on strike now, facing Khadar. Balls, this time looking for the big shot, chance of run out there, and both the batsmen are in the same end. Sinan have to sacrifice his wicket for his partner. The wicket number 4 is back into pavilion. Sinan a little bit unfortunately looking pretty good, and he's back into pavilion because Akram thought that I think I am the best man to face another 5 deliveries rather than the Sinan. So wait and see how Akram will going to justify his presence in this last over. So Sinan is back into pavilion after scoring 2 valuable runs, and is back into pavilion. Rilwan, the new batter, is slowly walking towards the middle. Quite surprisingly, he coming down in the order. Lot of surgeries in the batting order of Torpedoes Khana. In the previous match, Rilwan came into bat as an opener. Now he's coming to bat as a number 6 batsman. Wait and see how Rilwan will go into bat here. 5 deliveries remaining in the innings of Torpedoes Khana. Team Ruptek so far looks very good in the bowling department, but job is not yet over. They have to bowl another 5 good deliveries. Khadar from the far end, bowling left arm, round the wicket, improvisation over the head of the backward point region. Long chase here for the fielder. Just ball is looks like the fielder will go into winning the race against the fieldsman. Before the throw coming from the fielder, these 2 batsmen are completed 3 valuable runs. It's a fantastic improvisation there from Akram. That's why he's justifying, I want to face the remaining deliveries. Look at the way he's just got that one right from the middle of the bat in the replay. By playing the reverse stroke, going over the head of the infield. There's no protection has been given in the deep in the backward point region. Just inside the boundary line, the fielder managed to cut it off, and they managed to complete the 3 valuable runs. Akram for his team. Score jumped into 28 now for the loss of 4 wicket. Khadar from the Urban Ohms end, bowling with a short run up, having one fielder in the deep cover point and one at deep long off. There is a deep long on and deep mid wicket. The fielders are on the deep, one at deep backward square leg for Rilwan. Khadar
Right arm over the wicket. Top edge. Ball bellowing high up in there, but straight to the hands of Isham. They are in the deep long on, making no mistake at all. One more wicket is back into pavilion of Torpedoes Khana, and the real one little bit shuffled across the line of the delivery. Tried to whip it down to mid wicket region, but he got a top edge and ball straight away gone into the hands of Isham. Then in the deep long on region, the wicket number 5 is back into pavilion. 28 for the loss of 5 wicket in the over number last in progress. Looks like Jalal is walking towards the middle here. One more promising young cricketer for the side of Torpedoes Khana. Slowly walking towards the middle. So Jalal is walking towards the middle. One more tremendous striker of the ball. Usually he is open the batting. But in this, I already mentioned a lot of surgeries in the batting order of Torpedoes Khana. The only reason that they're playing 5 overs format of the games, needed some runs. And so far Kadar bowled 3 deliveries. Out of that 3 deliveries, he conceded 3 runs. And wait and see how will manage to complete this last and final over. Kadar from the far end, hat-trick getter of this cricket tournament. Right arm, left arm, round the wicket he balls. This time Akram again went for the reverse paper, finds a gap, chases off for the fielder, looking for the second. In comes the throw. This is a suicider. This is absolutely a suicider because Safwan is running back very quickly to back to collect the ball. Youngsters always having a very quickness and very athletic as well. Runs back very quickly to his behind, denying the second from Akram. Returns the ball into the hands of wicketkeeper. Look at that one in the replay. The throw rightly coming into the hands of and the wicketkeeper and making no mistake at all. He completes the formalities of making a run out. So one more wicket is back into pavilion. 29 for the loss of 6 wicket. Torpedoes Khana, after lost the toss, asked by the opposition to bat first. They're trying hard to get some runs on the board. Now they are 29 for the loss of 6 wicket. 5 overs game. So that last 2 deliveries left in the innings of Torpedoes Khana. The new batter, Taif, came into middle with the jersey number 14. Lot of all-rounders for Torpedoes Khana. Kadar from the far end, bowling with a short runner. Pass on by Arish Padil. This time again improvisation down to short fine leg region. Not more than a single, just a single for the new batter. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 30 on the board. On the board. Now last delivery of the innings is coming up. Jalal is on strike. He's a very good striker of the ball. The very useful left-hand batter. Kadar will go into ball the last and final over. So far he's been very impressive in the last over. And he now bowling the last delivery of the innings of Torpedoes Khana. Jalal is on strike. Went for the big shot. Missed it completely. Wicketkeeper missed it. Chance of run out in non-strikers and umpire Arish Padil is not given any signal. Now it's a chance of run out in the non-strikers end. Here is out is a signal coming from Vivek, but we have to wait for their umpire whether ask for the third umpire or not. If you're not really asking for the third umpire, the 1 run conceded, but 1 run out has been taken place. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೇಫ್ ಬಂದದ್ದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದು ಅಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತೀರ ಡೌಟ್ ಬಾಲ್ ಕೈಟ್ ಇತ್ತು ಜಾನ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಅದು ಇದು ನಕ್ಕುಲ್ಲದಲ್ಲ ಮಂತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೊಡಿ 32 target. 31 is the total. Is the total score. 32 going to be.
32 target for Rooftech to win the match. So wait and see how well they will go into get this 32 runs in a stipulated 5 overs. 30 ball and 32 runs required for the victory. So very interesting match is going on here as a team matrix at last managed to restrict the opposition for just 31 runs and they set a target of 32 to win the match for Rooftech to win the match. Torpedoes Khan I'm able to get only 31. I request for the next match those who are not signed the official chart, I request NF Sirwa as well as Sarvak Nirwa, all the team players, please go there and sign the official chart as soon as possible. Meanwhile, I would like to call upon Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Gopi, please come here. A very interesting match, isn't it? And 31 seems to be, it's a very little total, but in this condition, I think it's a big total. The 32 we cannot underestimate because the team Rooftech have to bat under the floodlight, not in the daylight, and that's why it's going to be a very interesting match. And 32 to win this match. I think the bowlers of Rooftech did the job. Now all up to the batters of team Rooftech, how well they managed to get that 32 runs in stipulated 5 overs game. And what do you think? It's definitely going to be a very good bowling performance here from Rooftech. And if Torpedoes Khan, both the teams are from the same region, the Suratkal. So both the team players know each other very well. What is their strong point? What could be the weak point of their opposition team as well? So it seems to be this match looks to be very interesting and might be going to be a high voltage match because the 32 is definitely in this condition going to be a very good total to depend. No, you cannot underestimate this total, isn't it? बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा अंडर दिस कंडीशन इन दिस ग्राउंड इट्स गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव टोटल। और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का, तो रूफटेक को इस वक्त जरूरी है एक मजबूत शुरुआत किया। और हालांकि दोनों टीमें एक ही इलाके की टीम है, कृष्णापुर के, एक दूसरे के खेल को वो अच्छी तरह जानते हैं। तो यहां पर देखना है कि इन हालातों में अंडर दिस कंडीशन से शाम के वक्त है, हवा का रुख काफी हद तक कम हो चुका है, धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है और यहां पर शाम के वक्त में बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं होता। रूफटेक को इस वक्त उनके बल्लेबाजों में क्षमता एबिलिटी है कि वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और एक बेहतर शुरुआत उन्हें इस वक्त देनी है। और जहां तक टॉर्पेडोज खाना का सवाल है, इस वक्त उनके पास जो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है, सशक्त गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार उन्हें गेंदबाजी करना है अगर उन्हें रूफटेक के बल्लेबाजों को रोकना होगा। देखते हैं क्या होता है। मैच इट्स गोइंग टू बी 50-50 और देखते हैं इस वक्त पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार रिलवान, और रिलवान को इस वक्त शामिल किया गया है टॉर्पेडोज खाना में और दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार दिस इज एन मिसजजमेंट, दिस इज एन एब्सोल्युटली मिसजजमेंट। ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा था और जैसे ही गेंद मिड और लेग स्टंप पर आई, शॉर्ट फाइन लेके फील्डर ने दाहिनी ओर दौड़ा और आखिरी मौके पर गेंद निकली उनकी बाईं ओर से बल्लेबाज के अंदरूनी किनारे पर टकराने के बाद। और इस बीच 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर और रिलवान इस वक्त गेंदबाजी में शुरुआत कर चुके। इशाम सामना करते हुए, नकीज नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद और यहां पर रिलवान एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। नकीज माफ कीजिए इशाम के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया है खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड्स को लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद और बल्लेबाज के पास समय था कि गेंद की लाइन को पहचानते हुए, गेंद की उछाल को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त मोने डीप बैकवर्ड स्कोर लेग पर और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर। निस्संदेह जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है टीम रूफटेक का, तो पहले 2 पावर प्ले ओवर्स का फायदा उठाना उनके लिए बेहद जरूरी यहां पर बन चुका है। और यहां पर उस बात को जानते हैं दोनों सलामी बल्लेबाज इशाम और नकीज की एक बेहतर बल्लेबाजी यहां पर उन्हें, बेहतर शुरुआत उन्हें देनी है, पावर प्ले का फायदा उठाना है और अपने इस योजना को इस पहले ओवर में कार्यगत करने की पूरी कोशिश यहां पर वो करते हुए। और जहां तक टॉर्पेडोज खाना का सवाल है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें एक घातक गेंदबाजी करनी है
अगर उन्हें रूफ टैप के बल्लेबाजों को 31 रनों के अंदर रोक कर रखना है तो। और पहले ओवर में अब तक 6 रन बन चुके हैं और देखना यह है कि अपने अगली गेंदों में रिलवान कौन सा अस्त्र यहां पर प्रयोग करते हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिलवान दाहिने हाथ के बल्लेबाज इशाम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। लेग स्टंप से बाहर स्ट्राइट अवे दबाव प्रेशर इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर गेंदबाज के ऊपर लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंकी थी और एक रन इस वक्त जुड़ता हुआ टीम रूफटेक के खाते में। 7 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज इस बीच इस गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में, मत स्ट्रेट लाइन ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो इस बेहतर लाइन के साथ लेंथर लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करनी है गेंदबाज को, रिलवान को, अगर उन्हें बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना है तो। और इस बीच तैयार दाहिना हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार हल्के से पैडल स्वीप किया, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइनल की दिशा में, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर यहां पर प्रगति पर 32 रन उन्हें बनाने हैं विजय के लिए, जबकि इस वक्त 8 रन बन चुके हैं उनके पारी के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। रिलवान इस बार गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज नकीस के लिए ठीक उसी तरह का क्षेत्र रक्षण, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन तैनात सीमा रेखा के पास, मिड ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, गली, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ इस वक्त तैनात 7 खिलाड़ी कुल मिलाकर 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। दाहिना हाथ ओवर विकेट टॉप है जिस वक्त होते हुए शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची है और आखिरकार यहां पर यह विकेट गिर चुका है। नकीस ने गेंद को उछालना चाहा, एक्स्ट्रा बाउंस, टॉप एज पर गेंद टकराई, शॉर्ट फाइन लेग पर पहुंची और पहले ओवर में यह विकेट यहां पर गिर चुका है टीम रूफटेक के लिए। कुल मिलाकर इस ओवर में 8 रन प्रदान किए रिलवान ने, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद में यह विकेट प्राप्त करने में सफल। तो 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर और 1 बॉल लेफ्ट स्टिल इन दिस ओवर। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर, एक गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर में और नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए। इमरान एज अ नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल टू जॉइनिंग इशाम और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इमरान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार इस ओवर की अंतिम गेंद का। धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है, लगभग अंधेरा सा छाता हुआ मैदान के फ्लड लाइट्स इस वक्त जल चुके हैं और यहां पर एक खूबसूरत सा नजारा हमें यहां पर देखने को मिल रहा है सुंदर से उर्वा क्रिकेट मैदान पर, द लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट पर। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज, ये गेंद अच्छी गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, लेकिन 1 रन उन्हें यहां पर जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड। जहां तक सवाल है बचे हुए 4 ओवर का, तो लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 32 minus 9, 23 more runs now they have to score for victory in remaining 18 balls and the asking run rate is now coming down to exactly 7.66 runs per over। तो यहां पर सतीश है, ये पहला ओवर बेहतर रहा, इट्स 9 रन, 1 विकेट खोने के बावजूद 9 रन बनाने में सफल है और मैं समझता हूं यहां पर एक बेहतर शुरुआत 1 विकेट खोने के बावजूद टीम रूफटेक कर चुका है। Exactly, Gopi. I think once again it was a little bit surgery in the batting department, in the batting order, just like what team matrix for Torpedoes Khanais did. Same thing is needed here, the team matrix. They are sending very experienced Isam to open the batting, and that was really working out. He got 1 boundary from that over. So that was a big difference, Gopi. When you are having a boundary in a power play overs, all in sudden when you are chasing a small total like 32 to win the match, the pressure is straight away coming down, isn't it? And these 2 batters, they're very, very important for team Rooftech. These 2 experienced batsmen in the sense Imran and then Isam, both the batters, the experience for playing for representing some top teams like Young Friends Urva. Both the players, they're representing Young Friends Urva. So that's the very important here for Torpedoes Khana. If they wanted to back into this game, they have to get these 2 wickets. Otherwise, definitely the team Rooftech, they are a driver's seat of winning this match because they got 9 runs in first over. No need to worry about it at all. No need to panic at all. Just a sensible batting required to win this match. बिल्कुल सतीश,
और यहाँ पर मैच में वापस आने के लिए जैसा कि आपने फरमाया टॉर्पेडोज काना को इस वक्त विकेट उखाड़ने होंगे। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, इस वक्त शॉट कवर की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूकता हुआ अंतिम क्षण में, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। जोखिम भरा रन यशस्वीतम पूर्ण करते हुए हल्के से गेंद को इस वक्त पुश किया था बैकफुट पर जाने के बाद शॉर्ट कवर पर, और तेजी के साथ एक रन इस बीच दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके। 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अगली गेंद लेकर तईफ इस वक्त तैयार, जबकि दाहिने हाथ के बल्लेबाज इशाम इस वक्त सामना करते हुए। तईफ दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार इशाम के लिए नॉट क्वाइट मिडलिंग एज, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बिफोर 24/7 चैनल पर आप लाइव टेलीकास्ट इस श्रृंखला का देख सकते हैं, बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022, जो कि एक शानदार प्रगति करती हुई इस ढलते हुए शाम में भी। और यहां पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाजी, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, बेहतर गेंदबाजी थोड़ी सी अंदर की ओर आती हुई बैक टू द बॉलर की दिशा में, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेने में असफल। दूसरे खिलाड़ियों ने उनकी काफी तारीफ की इस वक्त ताली बजाते हुए, और यहां पर रन्स इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। और एक बार फिर से गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद टॉप एज, मौका लेकिन नहीं, फील्डर वहां पर पीछे मौजूद, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। और अंतिम क्षण में गेंद के साथ साथ फील्डर दौड़ कर आ गए, और इस बीच 1 रन के साथ 12 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका तईफ का, जिसमें सिर्फ 3 रन वो प्रदान कर चुके हैं। स्ट्राइक इस वक्त इशाम स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट तईफ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इशाम के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट, लेकिन गेंद सीधे पहुंची मिड ऑफ पर। गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, अगर करेक्ट मिडल ऑफ द बैट वो कनेक्ट करते तो शायद गेंद डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर होती, लेकिन यहां पर गेंद लगभग बल्ले के बॉटम एज पर टकराई और सीधे पहुंची मिड ऑफ फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ इशाम का विकेट यहां पर गिर चुका है। और 12 रनों के ऊपर दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है टीम रूफटेक का। तो पहले ओवर में 9 रन बने थे, लेकिन इस ओवर में तईफ ने एक बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए टॉर्पेडोज काना को वापस यहां पर फाइट बैक के लिए तैयार कर दिया है। और अंतिम गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में इकबाल क्रीज पर बढ़ते हुए, और इस वक्त तो सामना ऑफ द स्ट्राइक मेरे ख्याल से हो चुके हैं, और बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो तईफ गेंदबाज सिर्फ 3 रन इस ओवर में प्रदान कर चुके, एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए, और अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद तईफ की इस वक्त गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा, प्लम्ब इन फ्रंट, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। लाइन पर गेंद टिप्पा खाई और पैर पर गेंद टकराई, उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 यहां पर गिर चुका है। 2 विकेट इस ओवर में गिरे, सिर्फ 3 रन इस ओवर में तईफ ने प्रदान किए, और मैं समझता हूं सतीश ये ओवर जो था टॉर्पेडोज काना के लिए कमबैक ओवर रहा, जिसमें तईफ ने बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए 2 विकेट उखाड़े और 3 रन सिर्फ उन्होंने प्रदान किए। Exactly, Gopi. More than the bowler picked up a wicket, I think the batsers sacrificing their wicket, because no need to do that such things in the middle, isn't it? The 1 wicket is fallen the same style. The batter going for the reverse strokes, and whenever you making the premeditated switch it attempt, Gopi, the bowler quickly realizing that I want to change the line of the delivery, and that's what's really happening in this. So Taif is good thinking in that point of view. He got 2 wickets because the premeditated switch it attempt by both the batters, so that he is cleverly changing the line. Once he changes the line, it's very difficult for the batter to get out from that switch it. You have to play that shot. That was the result of that 2 wickets, Gopi. That was an excellent comeback there by the bowlers of Torpedoes Kana. I've already mentioned, Gopi, if they wanted to back into this game, they have to pick that wickets. And they got 2 wickets, and more than the clever piece of bowling as well, but at the same time, equal the points goes to the mistakes of the batter as well of Rooftech. बिल्कुल सतीश, और जैसा कि आपने बिल्कुल सही बात फरमाया, गेंदबाज तईफ ने पहले ही बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ लिया था। जैसे ही बल्लेबाज ने तिरछा रिवर्स शॉट खेलना चाहा, उन्होंने अपने लाइन को तुरंत बदलते ही बल्लेबाज को विचलित कर दिया, और दोनों गेंदों में 2 विकेट यहां पर प्राप्त करने में सफल है। और यहां पर अब चाहिए रन 20, गेंदे बाकी हैं 18,
20 रन टू स्कोर इन रिमेनिंग 18 बॉल्स। और मैच का जहां तक सवाल है, अभी भी मैं कहूंगा मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। गेंदबाज अनीश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। बल्लेबाज इकबाल, ओवर की पहली गेंद अर्बन होम्स एंड की ओर से गेंदबाज अनीश दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद हल्के से गेंद को खेलना चाहा, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची, थोड़े से चूके फील्डर, और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 19 टू गेट नाउ एंड 17 बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग। 17 गेंदें बाकी, 19 रन चाहिए विजय के लिए। और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुनैद इस वक्त सामना करते हुए गेंद को इस वक्त खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ रन इस बीच पूर्ण कर चुके हैं। खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, गेंद गई ऑन साइड पर, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। व्हाट अ फैंटास्टिक फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच इज नाउ गोइंग ऑन हियर ऑफ बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022। और यहां पर अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद हल्के से गेंद को पैडल स्वीप किया, गेंद पहुंची इस वक्त स्क्वायर लेग पर, शॉर्ट मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर आए और गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया और एक रन का इजाफा हो चुका है। यहां पर कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, जैसे मेरे काबिल दोस्त ने कहा, इस वक्त हर गेंद पर सिंगल्स भी बटोरते हैं तो लक्ष्य के अति करीब पहुंच सकते हैं। अगर बीच में कोई ढीली गेंद मिलती है तो ज्यादा रन बटोरने की संभावना जरूर उनके लिए होती है। और जहां तक टॉर्पेडोस काला का सवाल है, इस वक्त उन्हें न सिर्फ डॉट गेंदे फेंकने होंगे बल्कि चंद विकेट भी उखाड़ने होंगे इस मैच में अपने पकड़ मजबूत करने के लिए। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक रन बल्लेबाज को फिर से मिलेगा। अपील इस वक्त करते हुए लेकिन नहीं, गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और रन्स चाहिए इस वक्त 16 रन बन चुके हैं 16 और कुल मिलाकर अब तीसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर और 14 गेंदें अब बाकी है उनकी पारी में कुल मिलाकर। गेंदबाज इस वक्त अनीश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश करना चाहा, लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, विकेट कीपर के कंधों पर थ्रो किया गया था शॉर्ट फाइन लेग फील्डर द्वारा और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और 15 रन चाहिए, 13 गेंदें अब यहां पर बाकी हैं और इस बीच गेंदबाज इस ओवर में अंतिम बार अनीश गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए जुनैद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, इस वक्त गेंद जाती है मिड विकेट पर, इनफील्ड क्लियर करते हुए इस वक्त गेंद को गैप पर चिप किया था और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके, तीसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति, 3 overs gone, it's 19 for the loss of 3 wicket, chasing the victory target of 32 in 5 overs. They have scored 19 for 3, 13 to get now in remaining 12 balls. और कुल मिलाकर इस ओवर में 7 रन बने और 7 विकेट सुरक्षित है और मैं समझता हूं सतीश अभी भी 13 रन चाहिए 12 गेंदों पर और निस्संदेह मैच ऐसा कहना पड़ेगा inching towards to a nail biting finish. Absolutely, no doubt at all, Gopi, because Torpedoes Khan has got some different bowlers, just like Anish is bowled the previous over. Of course, the 7 runs came from that over, but 2 byes in that over. You just imagine 2 byes. Wicketkeeper fails to collect the ball 2 times when he was able to beat the bat. That's not that much of easy for the wicketkeeper, Gopi, because he is not a regular keeper. Especially the bowling of Anish is very difficult to judge for the wicketkeeper. They doesn't know which way the ball is going to turn. That's why that ball, the 2 times the wicketkeeper behind the stump missed the ball. And still, Gopi, 13 to get from 12 balls. It's going to be a very interesting game of cricket because the new ball, I think. Toif in the previous over is bowled very well, and if he manages to contain the batsman for just 4 to 5 runs in this over, final over 7 to 8 runs is definitely going to be a very interesting game of cricket. And you're right, Gopi, this match is really inching towards a nail-biting finish. It's going to be anybody's game, but those who are able to handle the pressure, that team will going to win the match. बिल्कुल सतीश, दबाव को जो झेलेगा वही इस मैच में विजय दर्ज करेगा। 12 गेंदें बाकी, 13 रन चाहिए और इस बीच तईफ गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार इकबाल, पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा, 1+1, 2 runs now added to the total and now 12 balls remaining and 11 runs more now they have to score for victory. और मैं समझता हूं इन वाइड के 2 रनों के साथ
टीम रूफटेक लगभग इस मैच में वापस आ चुका है। अब टॉर्पेडोज खाना को डॉट गेंद यहां पर फेंकने ही होंगे अगर बल्लेबाजों पर उन्हें दबाव क्रिएट करना है। तो यहां पर देखते हैं क्या होता है। और तईफ जिन्होंने पहला ओवर बेहतर फेंका था, 3 रन सिर्फ प्रदान किए थे, 2 विकेट प्राप्त किए थे। दूसरे ओवर की पहली गेंद में लेग स्टंप से काफी बार दिशा से भटकती हुई गेंद उन्होंने फेंकी और आखिरकार 2 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में वो प्राप्त करने में सफल। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाईनाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाईनाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया फाइनल की दिशा में और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। बाई का इशारा, कोई संपर्क नहीं, गेंद और बल्ले का स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। बराबर का संघर्ष, बराबर का टक्कर यहां पर जारी है। दोनों टीमों के लिए अभी भी मैं कहूंगा समान अवकाश है और निस्संदेह यहां पर जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, दबाव को यहां पर मैच के अंतिम क्षणों में जो झेलेगा वही इस मैच में विजय दर्ज कर पाएगा। देखते हैं इस मैच में कौन विजय दर्ज करता है। गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाईनाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, लेग स्टंप से कुछ बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है लेग बाय के रूप में और स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और 9 रन अब कुल मिलाकर बनाने हैं। गेंदें बाकी हैं 10 और अगली गेंद के लिए इस वक्त तैयार गेंदबाज और जुनैद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाईनाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तईफ डॉट गेंदों की तलाश में, अगली गेंद लेकर तैयार। दाईनाथ ओवर द विकेट, दाईनाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार चिप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर। कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। सेंसिबल क्रिकेट, गेंद की उछाल को भागते हुए स्टंप्स को कवर किया, ऑफ द टॉस गेंद को स्कूप कर दिया, इनफील्ड क्लियर करते हुए, खाली क्षेत्र चुनते हुए, खाली गैप चुनते हुए, वाइड इस लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। अब लक्ष्य कुछ हद तक, काफी हद तक कहना पड़ेगा आसान, 7 रन चाहिए, 9 गेंदें बाकी, 7 टू गेट फ्रॉम 9 डिलीवरीज और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाईनाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तईफ इस ओवर में कुछ हद तक महंगे साबित हो चुके हैं। अगर पहले ओवर को तुलना कंपेयर करके देखा जाए, वापसी करनी है उन्हें इस ओवर में। देखते हैं वो किस तरीके की गेंदबाज यहां पर करते हैं। गेंद ड्राइव कर दिया, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, फील्डर काफी पीछे, 1 रन मिलेगा, दूसरे के दौड़ पर थ्रो पहुंचा, डायरेक्ट हिट एंड इज गॉन। निशाना सीधे स्टंप्स पर टकराया, शरीफ थे फील्डर लॉन्ग ऑफ पर। अगर ये निशाना टकराता नहीं, अगर गेंदबाज भी गेंद को गैदर करके विकेटों पर चटकाते तो मैं समझता हूं बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर लिए होते, लेकिन यहां पर डायरेक्ट हिट लगा और इसकी वजह से ये विकेट यहां पर गिर चुका है और आउट होने वाले बल्लेबाज इकबाल आउट होकर पवेलियन वापस। लेकिन यहां पर चिंता की कुछ ज्यादा बात नहीं है, 6 रन चाहिए और गेंदें इस वक्त बाकी हैं 8। 6 टू गेट फ्रॉम 8 डिलीवरीज और यहां पर विकेट गिर चुका है और मैं समझता हूं यहां पर एक कमबैक करने का मौका जरूर है टॉर्पेडोज खाना के लिए। लेकिन ना वहां पर जो बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतर रहे हैं वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त मौजूद जुनैद और नए बल्लेबाज मोहम्मद का आगमन यहां पर होता हुआ। जुनैद स्ट्राइकर एंड पर तैयार और देखना यह है कि जो 2 गेंदें इस ओवर में बाकी है, इन 2 गेंदों में गेंदबाज तईफ किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। जुनैद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ, द प्रेशर इज नॉट बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स और विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। दाईनाथ ओवर द विकेट गेंदबाज तईफ अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद जुनैद के लिए हल्के से गेंद को इस बार मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, बेहतरीन तरीके से, चतुर सोच, चतुर क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए और इससे पहले की गेंद को मिड विकेट पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 27 4 विकेट के नुकसान पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 5 टू गेट नाउ, 7 बॉल्स रिमाइनिंग और नए बल्लेबाज द न्यू कमर इज नाउ ऑन स्ट्राइक, मोहम्मद सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज तईफ की गेंद का ये गेंद ड्राइव कर दिया मोहम्मद ने खूबसूरती के साथ, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ पर और 1 रन दौड़कर बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। तो सतीश ये ओवर तो का उतना बेहतर नहीं रहा जितना एक्सपेक्टेशन पूर्वानुमान लगाया गया था कि तौहीफ पहली कसी हुई ओवर फेंकने के बाद दूसरे ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी करेंगे, लेकिन यहां पर उन्होंने काफी रन प्रदान किए। अब 9 रन मेरे ख्याल से शायद उन्होंने इस ओवर में प्रदान किए और इस ओवर की बदौलत अब मैं समझता हूं टीम रूफटेक इस मैच में पूरी तरह वापस आ चुका है। और जहां तक टॉर्पेडोज खाना का सवाल है, इस वक्त मैं कहूंगा इस अंतिम ओवर में घातक गेंदबाजी उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है।
Exactly, Gopi. And the previous over, coming back to this, is not a good start from the bowler. First ball itself, he bowled a wide +1. Once he got the 2 runs, the level of confidence really going to be very high for the batters because they got cheaply, they got 2 runs very cheaply. So that's the result of afterwards. Both the batters are really batted very well. They got 9 runs. Now 4 to get. Job is not yet over. But interesting move to see that whether the captain asking. Anish took ball. I think Anish is not coming here. Akram has got a ball in his hand. Maybe the experiences comes into play here. And Akram is a kind of bowler who can bowl very slowly. And in this condition, under played light, bowling a leg spin delivery might be that it was a gamble. But the gamble is part of cricket. Without taking a risk, it definitely get the success here. You have to take the risk, not only in cricket, but any department, any field, you have to take the risk. And that's what Akram wanted to come and bowl here. And wait and see how Akram will going to justify himself. It looks like he himself went there. He just taken a ball from his captain. He wanted to bowl that last over, and that's the level of confidence required when you're bowling the last over. The level of confidence is going to be very key, not only from the batter but even for the bowler as well. Wait and see how Akram will going to contribute. But 4 runs required, sensible batting required here for Roof Tech. बिल्कुल सतीश और इस ओवर में अक्रम की पहली गेंद हल्के से गेंद को चिप किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ फील्ड और काफी पीछे गेंद जाती हुई दूसरा रन नहीं मिलेगा, 1 रन मिलेगा। और जैसा कि बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, अक्रम को इस वक्त खुद अपने आप पर विश्वास है कि उन्होंने कप्तान से कहा कि जी अंतिम ओवर में गेंदबाजी करूंगा और यहां पर देखना यह है कि इस अंतिम ओवर में वो कप्तान की उम्मीदों को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। 3 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी और बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट B4 24/7 चैनल के जरिए, बेहतरीन वातावरण और बेहतरीन क्रिकेट हमें यहां पर देखने को इस वक्त मिल रहा है। और गेंदबाज अक्रम तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई 9 सेकंड बल्लेबाज काफी आगे दौड़ाए, रन इस वक्त आखिरी मौके पर ये रन आउट हो चुका है। 9 सेकंड पर वाइड का इशारा, तो वाइड इस वक्त जुड़ चुका है, एक विकेट भी गिर चुका है, लेकिन चिंता का इस वक्त कोई विषय नहीं है, एक रन भी जुड़ चुका है। अब 2 रन सिर्फ चाहिए और यहां पर गेंदें बाकी हैं 5 और लक्ष्य इस वक्त काफी आसान यहां पर दिखाई देता हुआ। तो अब ऐसा कहना पड़ेगा टॉर्पेडोज काना को के गेंदबाज को इस अंतिम ओवर में डॉट गेंदे ही फेंकने होंगे अगर उन्हें इस मैच को बचाना है। तो यहां पर 2 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए मंसूर अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, लगभग 6 से 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, बल्लेबाज को घेरे हुए सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में और अक्रम गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, 4 गेंदों में 5 गेंदों में 2 रन चाहिए। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी बॉलिंग परफॉर्मेंस और इस रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड, 1 to get फ्रॉम 5 डिलीवरीज। और अगली गेंद और इस बार चूंकि गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहते थे, शफल होते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 4 गेंदें बाकी हैं, सिर्फ 1 रन चाहिए विजय के लिए। टीम रूफ टेक इस श्रृंखला के सेमीफाइनल पहुंचने के अति निकट आकर इस वक्त खड़ा हो गया है और इस वक्त गेंदबाज तैयार। ये गेंद फुल टॉस, पुल किया, मौका लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे और इसी के साथ रूफ टेक entered into the semi-final of this competition, defeating Torpedoes Kana in the first quarter final and in the first semi-final he will going to face the winners of NFC Urua and Sarvagni Urua. तो सतीश कृष्णापुर के दोनों टीमों के बीच का मैच हो गया, अब उरुआ के बीच के दोनों टीमों का मैच यहां पर होने वाला है। देखते हैं कौन सी टीम यहां पर सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, लेकिन एक बेहतरीन मैच समाप्त हो चुका है, क्यों सतीश? Exactly, Gopi. It's a very good match, but I think it's going to be more interesting if Anish going to bowl that last over, isn't it? Because the previous over, because of the mistake from the wicket keeper, they got 7 runs, and that was a really a little bit of presence of mind required in the situation. Of course, the level of confidence is different, but you have to see the which bowler is going to bowl the last over. I think Anish is a better choice to bowl the last over for Torpedoes Kana because he can be the better option because he's got a variety in his bowling. He can bowl both in and outgoing deliveries. But Akram is bowled that last over, but not that much of effective in that final over. So Roof Tech has got a victory here, just like you mentioned, Gopi. The team from Krishnapura, they're battled hard for the semi-final, and at last one team is qualified. That's the Roof Tech is qualified for the semi-final. Now, one more
close match, and locals are fighting for the place in the semi-final, and both the teams from the same locality, NFC Urva as well as Sarvagni Urva, and wait and see which team will going to get the place in the big semi-final of this most prestigious BK Champions Trophy 2022. Hello. Looks like captain of Sarvagni Urva won the toss, and they elected to field first against NFC Urva. It's a very good match, and one more very good match, and wait and see which team will going to get the place in the semi-final. And Team Roof Tech already they are entering into the semi-final, defeating the big contender of this tournament, Torpedoes Khana, in a very close encounter. And at last Roof Tech has managed to win this match. So opener walking towards the middle, with the Prajwal is came into middle in the non-striker's end. Imran and Prajwal, the two opening batters for NFC Urva. Right arm over the wicket, bounce. Driven that one firmly down to deep long off region for an easy single. And Imran is off the mark with the single. NFC Urva off the mark. The big quarter final. The two teams from same locality, Urva. And its competition, level of confidence going to be a very high between these two teams. Wait and see. And from the commentary box end, second time in this over. Right arm over the wicket, he bowls. This time, clean him up. Big wicket. The big wicket here for Sarvagni. They know exactly the wicket of Prajwal is so important in this condition. But again, Prajwal making a mistake. In his first ball he is facing, he tried to play across the line of the delivery. Shuffled across the line of the delivery and tried to hit the ball. And without coming into the line, a slog sweep shot is attempted, and is exposing his all stems and giving a perfect direction for the bowler to bowl that line. And he bowled around his legs, hit the leg stump of the wicket number first is back into pavilion. Shackling start here for NFC Urva. Both the team has got a very good bowling department. More than both the teams believe with the batting department. They are believed with their bowling department. So Imran, a little correction, Prajwal is back into pavilion,
And replacing him is Shashi, slowly walking towards the middle. The very experienced campaigner for the side of NFC Urva. Shishant bowling with a short run up. Away from us. Right arm over the wicket, ball Shashi drives her beautifully, but lack of placement, straight to the hands of Cow Point region. Misfield by the fielder in the Cow Point region. Vijay, I think the fielder than the Cow Point region, the opportunity of run out if it is a clean collection from the fielder. And because of that fumble, they managed to complete the single. With that single, Shashi is off the mark. Total score now moves on to 2 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Shishant away from us. Right arm over the wicket, going for the off drive, missed it completely, beaten by the face. And that was a good delivery there from bowler. The extra phase in his bowling. And because of that extra phase, the batter completely missed out that delivery. Imran. Again, this time away from the batter. Definitely it's going to be wide. No question at all in the mind of umpire Arish Patil. Right call from him. That ball going away from the right-hander batsman Imran. 3 on the board for the loss of 1 wicket. Again Imran, right arm over the wicket, going to be 1 more wide. This is not a good bowling there from Shishant. You have to stick with his line and length. Each and every run is going to be very, very important in this particular match, the 5 overs game. And the extra run will going to play a big role in the result of this match. That's why straight away Sujit coming from the deep long off. Then Dhanraj coming from the deep long on, just having some word with his their partner Shishant, not to bowl extra deliveries. And here is again Imran, right arm over the wicket. No ball call by umpire, and once again indisciplined bowling performance there from the Shishant. No ball signal by umpire Arish Patil. It's overstepping. It's a very, very disappointment, disaster, I must say. The no ball means it's a free hit delivery for the batters. That's what's happening, isn't it? When you're bowling the wide delivery, all in sudden the concentration of the bowler is just want to avoid the wide balls. By giving that lot of concentration for that line and length, they lost the concentration of their follow through. And that's what really happening as Shishant overstepping that one. So that umpire Arish Patil rightly so called that as a no ball. So scoreboard now 6 on the board for the loss of 1 wicket. I request the players, please respect the umpire decision. Cricket is gentleman's game. Six for the loss of 1 wicket. The 25 to 26 years of experience umpire Arish Patil. And you cannot argue with umpires because umpire is in such a good position. He can watch rather than the bowler. Bowler only is noticing his line and length. He's not really noticing the front foot. And that's what really happening. So 6 for the loss of 1 wicket. Shishant back to his bowling mark. Free hit delivery. And wait and see how Shashi will going to take advantage of that. He's bowled right arm over the wicket. Going for the big shot and missed it completely. Good bowling there from Shishant once again. Just denying the big shot from Shashi. That's the line he wanted to bowl. Around midland off stump he has to target. And so far he's got a very good start. But all in sudden he considered some extra runs in this over. This time lofted that one over the deep long off region. Will it go into a chance here for the fielder? Yes it does. Imran tried to go for the big shot towards the deep long off region. Nothing much wrong with the stroke, but there's something wrong with this placement, I must say. He went with the stroke, got that one right from the middle of the bat, but under the floodlight, there's no wind at all. I think clearing this ground is not that easy. As Imran pays the penalty, as he attempting for the big shot, but the placement is not right. And Shishant has got a very, very important breakthrough here for Sarvagni Ruwa. 7 for the loss of 2 wicket. 7 for the loss of 2 wickets. A very good start for both the teams. As far as the run is concerned, NFC Ruwa, they got 7 runs. And as far as the wicket taking is concerned, Sarvagni cricketers, they got 2 valuable wickets. So equal battle is on between these two teams. Both the teams has got a start
As far as run is concerned, NFC got 7 runs. As far as the wicket taking is concerned, Sarvagni got 2 valuable wickets. Ajay brought into attack from the far end, from the urban homes end, bowling with a short run off. So far in this tournament, he is very impressive in his line and length. I think more than his bowling in the daylight, he is more effective in the bowling in the underplayed light. Wait and see how well we are going to take advantage of this condition. Ajay. Tilak is a new batter, just came into middle. We're going to face Ajay from the far end. Second over of the power play. Bowls. This time, lovely shot. Good improvisation. Down to deep square leg boundary. No need to run for that. Ball running down to deep square leg boundary. I think just inside the fence, the fielder is managed to cut it off. It was excellent chasing there by the fielder, I must say. But we have to wait for the umpire signal. Have to see that where the ball is touched the wall or not. That ball touched the dog. And that hit the wall, I think so. That was the four signal by third umpire. After that ball is hitting the dog, then ball touch that wall. So that right decision from a third umpire, that's a boundary. Of course, that was a certain boundary. Because that ball hits a dog, that the speed of that stroke is stopped. Then ball slowly hits a wall. I already mentioned even in my commentary, you can see that when the ball is beats the infield, I already said that there's no need to run for that. Because that ball travels very quickly. Because that the ball is hitting the dog, which is sitting inside the boundary line, then ball stops there and slowly that ball hits the wall. The boundary signal by umpire, right call, and Ajay from the commentary. Oh my goodness, what really happening here for Ajay? And now umpire is just seeing that line of the delivery is saying that that was a wide ball that's going far outside the half temper. So white signal umpire, one more addition to total scoreboard, now moves on to 12 on the board for the loss of 2 wicket. Ajay from the far end, Urban Omsan, right arm over the wicket, he bows this time again the ball. That was a really, the white signal by umpire. The batsmen are walking. The batsmen are walking here. There's something is going in the middle. It's a very good sportsman spirit shown there by the batter. That was the big round of applause is required for this man. This has been outstanding. This is a true spirit of cricket, I must say. This is what I want to see, because it's a very difficult for the umpires, I must say. Very difficult for the umpires to hear the sound of the bat involving connecting with the ball. Sometimes it's a little bit part of the bat is involving, then very difficult for the umpires to judge the caught behind. But that time, that was a batsman have to decide. You know exactly, I am hit that ball, so I want to go back. This is a really true spirit of cricket. Again, big round of applause here for Tilak showing the sportsman spirit in this game, and that was really lift the spirit of game as well.
and 13 for the loss of 3 wicket. Twelve on the board. 12. So 12 for the loss of 3 wicket. It's really a gifted wicket, I must say, because that was a delivery, loose delivery down the leg stump, short pitch delivery. Tilak not quite able to take the advantage of that one. Tried to hit the ball, got an inside part of the bat, and wicketkeeper behind the stump, Jayant, got that catch. And oh, beautifully ball. That was a line Ajay has the ball. In the last two matches, is very effective, but something is going here for him in this particular match, and so far it's a little bit expensive. 12 for the loss of 3 wicket. Quicker one there from Ajay. Driven that one down to deep long off region. Both the batters are really running hard between the wicket, but not more than a single. Captain came into middle himself as Ranjit off the strike by picking up the single. Ajay bows this and lofted, high up in the air. Fielder is not there in that region. One bounce collected by the fielder, and ample time for the batter to complete that couple of runs. Shashi looks like didn't time it properly. He lofted that one, but not having enough timing with that lofted stroke. And that's why that ball is collected by the deep whitish long off fielder to running across, and couple of runs for Shashi. Shashi this time went for the big shot again, not really getting the placement right. He picked up a single. Strikes are rotating. Expensive over there from Ajay. 16 for the loss of a 3 wicket. And in that over he considered one no ball and boundary as well. So altogether NF Sirwa, they really back very strongly in this particular over. Got some runs in the runs from the bat as well as from the extra. 16 for the loss of a 3 wicket. The run rate is exactly 8 runs per over. Of course, NF Sirwa, they're not really bothered about that 3 wickets. They know exactly in the power play overs they wanted the runs. This is a part of the cricket. When you're playing a small format of games, the intention, the game plan, the strategy is from the each and every teams is that they have to get some runs in the first 2 over power play. And they got that 16 valuable runs NF Sirwa against Sarvagni. So from the commentary box end, sudden change in bowling. Vijay brought into attack from the commentary box end. Vijay, wait and see, after his brother is expensive. Of course, Ajay and Vijay, the brothers. Wait and see how Vijay will going to contribute, how well he is going to restrict the batsman of NF Sirwa from the big runs. So for Vijay, there is a fielder in the short fine leg, one at deep backward square leg, one at deep mid wicket and one at deep whitish long on. Inside the ring, short mid on short fine leg, short backward point and short extra cover. Deep long off and deep extra cover. Shashi improvising that one down to fine leg region, not more than a single. With that single, scoreboard now moves on to 17 on the board. Now Shashi is quickly realizing that power play is on, power play is off, so fielding restriction is removed, so that he's just looking for some rotation of strike. After getting 16 runs in 2 hours, he's very confident that if they manage to rotate the strike, this team will going to get the runs around 40 to 45 runs in the 5 overs. If they able to continue that same run rate, able to get the runs in the same run rate, the projected score is certainly will go into 40 plus runs on the board. Wait and see. And as far as Sarvagni cricket is concerned, if they wanted to restrict their opposition for the less than 40, they have to work hard from the bowling department and even in the fielding department. Vijay from the commentary box end. Right arm over the wicket to Ranjit. Ranjit pushes that one. Quite loose stroke, but quite deliberately played there by Ranjit. You know exactly the fielder is in cover point. It's an unorthodox cover point. So that he chipped that one quite deliberately and down to deep extra cover region for an easy single. So with that single, scoreboard now moves on to 18 on the board for the loss of a 3 wicket in the over number 3 in progress. Shashi back on strike now. Very good striker of the ball. Facing Vijay. Bowling away from us. Right arm over the wicket. Improvisation is looking for ball is beat. The wicket keeper. Wait for the umpire signal. It's from the bat. So that short third man fielder fields the ball. One more addition to total. One more addition means the scoreboard now moves on to 19 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. So far in this over, Vijay bowled very good line and length, but both the batters are very much focused on the rotation of strike. Vijay bows Ranjit. Ranjit drives and across the line off the delivery ball, went towards a square leg region, looking for the second. Ranjit running hard for the second. Oh, what a poor throw coming from the fielder.
I think the fielder Karthik is not really returns the ball with an orthodox throw. It was really unorthodox throw there coming from the fielder. And that's why they complete that couple of runs. Excellent running between the wicket there from Ranjit. Once again, running hard between the wicket, converting single into two. And with that couple of runs, score now moves on to 21 for the loss of 3 wicket. Vijay, again bowling away from us. Right arm over the wicket. Appeal for leg before wicket. Vijay coming right in front of umpires. So that very difficult to give the decision. He is so confident. He's almost begging for umpire to give the decision. But umpire says, how can I? How can I? I've already told you to not come to in front of me. Then how can I give the decision for you? So it's very important. I don't know why the bowlers are not really learning. The follow through is so important for each and every bowler. After delivering the ball, you have to come to your left, not right. If you come to your right means you are coming right in front of umpire. At the same time, it was a protected zone for you. As Vijay again bowling away from us. Right arm over the wicket. Balls Shashi full toss delivery, but he couldn't manage to take advantage of that one. If premeditated, he wanted to push the ball down in the backward front region to get the placement to convert single into two, but he got the outside edge of the bat. The good over there from Vijay. Not a bad over, just 7 runs came from that over. So over number 3 completed. After completion of over number 3, NFC Urva looking pretty good in the middle, and 23 runs for the loss of 3 wicket, just under 8 runs per over run rate progressing here. Sensible batting by the NFC Urva. Now, Sarvagni cricketers have to think a little bit here. 2 overs remaining, 12 balls remaining. Out of that 12 balls, if NFC Urva managed to get another 15 runs, they were coming very close to the 40. Once they get that 40 runs in 5 overs, then Sarvagni cricketers might be thinking about that total little bit difficult one. And because NFC Urva, they got fantastic bowling department. And so important here for us Sarvagni cricketers, they have to bowl very well remaining 2 overs. They have to restrict the opposition less than 10 runs in 2 overs. And from the far end, it's going to be a start of the fresh over. Right arm over the wicket balls, and this time paddle shot comes into play. They're coming back for the second. Shashi running out, has of run out in the strikers end, but he completed. Look at the running between the wicket. Shashi has been a very impressive between the wicket. Picking up the first run very quickly, and pressure for the outfielder. Once he run quickly in between the wicket, pressure is on for the outfielder, and the very easy for Shashi to come back for the second once he complete the first run very quickly. Excellent running between the wicket. 25 comes up here for NFC. Oh, that was a good one. Absolutely good one there from the bowler Sushant. Is coming from the far end. He bowled his first over from the community box end. He's now bowling from the urban homes end, and he's now bowling to Shashi. The much required dotted delivery from Sushant. Shashi taking his a little bit time. This time, look at the stroke, that one absolutely perfect. Sweep shot, oh look at that one, poor piece of fielding there. Shashi coming back for a second. This is not a good cricket there from the fielders of Sarvagni. This is excellent cricket there from Shashi, I must say. Cricket is not all about hitting the boundaries and sixes, but this kind of intelligent cricket is much required in this condition. Shashi knows that hitting the boundaries and sixes in this condition is not easy. So he's just placing the ball cleverly and running hard between the wicket, and scoreboard now moves on to 27 for the loss of 3 wicket. Sushant back to his bowling mark. Right arm over the wicket. Shashi this time in the wrong hand played that reverse sweep. Vijay the fieldsman there in the short third man, not really able to stop the single from this to batter. One more addition to total scoreboard moves on to 28 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. So very good cricket is going on. Both the teams know exactly this is the do or die situation. This is a knockout. If they wanted to get into the semi-final, have to put your 100% in this game. But so far NFC are looking pretty good. And Sarvagni cricketers might be lacking in the fielding department. Again, a lovely delivery, but that ball definitely going down the leg stump, going to miss the leg stump in fact, and leg by call by umpire. One more addition total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 29 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress.
Shashi back to strike now. Right arm over the wicket. Shashank bows, went for the big shot. Wicket keeper behind the stump. Jayant completely missed out. Frustration time for the bowler as well as the captain of Sarvagni cricketers. What could be a certain dotted delivery? The wicket keeper missed it completely. Not an easy job for the wicket keeper under floodlight. It's very difficult to sight the ball, sight the line of the delivery as well. So 4 overs completed. After completion of 4 overs, NF Sirva. Looking pretty good. 30 for the loss of 3 wicket now. Last over remaining in the innings of NF Sirva. 24 deliveries. They got 30 runs. And 8.25 runs per over. 7.25 runs per over. The run rate progressing here. And wait and see how many runs they will go into score in the last over, the final over of the innings of Sarvagni. Little correction for NF Sirva, and Sarvagni cricketers have to bowl one good over. The over of just 4 to 5 runs is better for Sarvagni cricketers because they are batting second. They are the chasing the total, so that they doesn't want to chase the big total here. And more than 25,000 viewers already witnessed this BK Champions Trophy through YouTube by V424x7. Once again, thank you very much, viewers, for supporting this BK Champions Trophy 2022. And tomorrow, definitely it's going to be more viewers will going to witness, because tomorrow is the final day of cricket, and more than anything else, most excitement day of cricket, because 9 top teams will go into clash in that last and final day of this cricket tournament. This time went for the reverse stroke, missed it completely there by Shashi, and it's going to be a bye called by umpire. Wicketkeeper behind the stump. Jayant missed it completely. One more addition to total. Now 5 deliveries remaining of the innings of NF Sirva. Ranjit back on strike. The fantastic all-rounder for NF Sirva, Ranjit. Now lot of changes in the field set as well. Now deep third man fielder coming inside the ring, and deep cow point fielder going back to between deep backward point, and the bowler Pradeep wanted one fielder at cow point region, but he wanted a protection in the deep third man region for the reverse stroke for Ranjit. That means he's wanted to call one fielder from deep long off to mid off. And here is Pradeep. Ball to Ranjit. Ranjit drives that one by playing the switch it down to deep third man region. That's what he wanted, that fielder in that region. Good thinking by Pradeep, seeing that the potential of the batter, he can play some good reverse strokes, so that he kept the fielder in that region. Now, no fielder in the deep in the backward point, because Shashi is a very good striker of the ball in front of wicket. That's why he's sending mid off into long off. Pradeep bows. This time, high up in that. That was a really gone very high indeed. The deep long on fielder takes. Oh my goodness, he drops the catch. Dhanraj, known to be one of the safest pair of hands, he's dropped the catch. It's not a question of dropping the catch, Gopi, but 2 runs. That's very important in this match. They considered 2 valuable runs, and look at the Dhanraj. Looks like he's got in a good position to take the catch, but at the last moment he just removes the eye on from the ball, and ball just slipping out of his hand. Look at that one replay again. That was high up in there. When there is a ball is very high, it's not an easy, I must say, for the fielder to judge the catch. He have to wait for the ball. He have to take his own time to get a very good position. Of course, he's got a very good position, but the technique of taking the catch is wrong here, and he's just missed that from his hand. And 2 runs, valuable runs here for Shashi. Frustration here for Pradeep. What could be a wicket taking delivery? The opposition has got 2 valuable runs, 34 for the loss of 3 wickets. Pradeep, right arm over the wicket, exposing his leg stump by moving towards offside, looking for some improvisation cricketing stroke. By call by umpire, rightly so. One more addition to total. So far, it's been outstanding umpiring by Arish Padil and Roland Pinto, and then Vivek. Definitely, it's a really mind-blowing umpiring job in this day number 1 for BK Champions Trophy. And again, right arm. Balls beautifully bowled, excellent delivery. Wicketkeeper behind the stump. Looks like that ball is a dotted one. Whether it's out or not, out. Bowled out.
So one more wicket is back into pavilion. Ranjit looking for expansive reverse stroke and he missed it completely and ball hits the stumps. So 35 for the loss of 4 wicket. Shailesh is the new batter walking towards the middle. Not much delivery is remaining, but here is a standing ovation for Shashi for his wonderful innings. Once again he is just played a sheet ankle roll for NF Sirva to get some big score. The last delivery coming down the track, appeal for leg before wicket. Umpire says not. Wicketkeeper Giant missed it completely. 1 run for the last delivery. Frustration for the bowler because what could be a certain dotted delivery is got inside edge of the bat, and 1 more run is added to total. 36 for the loss of 4 wicket. Now 37 required. 37 going to be a target for Sarvagni cricketers in the stipulated 30 deliveries. 37, I think Sarvagni cricketers and they managed very well because one stage NF Sirva they are cruising towards a total like 40 to 45 runs, but in the last 2 overs they managed very well. Especially Sushant bowled the 4th over and the last over bowled by Pradeep has been a really excellent, and because of that 2 very good overs, Sarvagni cricketers now they can fight back in this match because the difference between run and ball exactly the 7, and if you get 1 big over they can back into this game, and against NF Sirva's bowling department might be a little bit difficult one but not impossible in cricket, and believing in their own strength is so important. Self-confidence is so important here for Sarvagni cricketers. They have to believe that they can win the match if they bat well, and as far as winning perspective of NF Sirva. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर लक्ष्य इस वक्त है 37 रनों का और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई, तो एक वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया 40 का आंकड़ा पार कर जाएगा NF Sirva, लेकिन अंतिम चंद ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी सर्वाग्नि उर्वा के गेंदबाजों ने की और 36 रनों पर उन्हें रोक कर रखा। अब 37 रन उनकी टीम को बनाने हैं और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई। रिक्वायर्ड रन रेट 7.40 रन प्रति ओवर 10 विकेटों की मदद से, और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रंजीत, जबकि सुजीत स्ट्राइक लेते हुए, जयंत नॉन स्ट्राइक रेंज पर और पहली गेंद लेकर तैयार अंडर फ्लड लाइट। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार अंदर की ओर आती हुई गेंद को ढकेला, इस वक्त मिड विकेट पर गेंद पहुंची और रन इस वक्त बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बिल्कुल
एक सतर्क शुरुआत की यहाँ पर जरूरत, अगर जहां तक उन्हें 37 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है। तो गेंदबाज रंजीत एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंद को इस वक्त एक बार फिर से खेला जस्ट स्क्वायर ली शॉर्ट मिड विकेट फीडर की बाईं ओर और दाईं ओर, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन न प्राप्त करने का। पावर प्ले यहाँ पर जारी और अंडर फ्लडलाइट, अगर आपको 37 रनों के लक्ष्य को 5 ओवर के फॉर्मेट में पीछा करना है तो निस्संदेह आपको कुछ विशेष रणतंत्र के अनुसार बल्लेबाजी करनी होगी, शुरुआत करनी होगी। और देखना यह है कि ये सलामी बल्लेबाज सर्वाग्नि उर्वा के सुजीत और जयंत किस रणनीति के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं गेंदबाजों के खिलाफ। गेंदबाज रंजीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रंजीत ये गेंद इस वक्त रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद सीधे सबसे पर टकराई और इसी के साथ पहली ही गेंद पर यह विकेट गिर चुका है जयंत का गोल्डन डक के रूप में, और अपनी पहली गेंद पर विकेट यहां पर गवा चुके हैं। रिवर्स शॉट खेलना चाहता, गेंद लगभग ब्लॉक होल पर टिप्पा खाई, देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, आखिरी मौके पर गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और बल्लेबाज गेंदबाज ने कुछ हद तक गेंद को टॉस किया था, इस वक्त लगभग ब्लॉक होल पर गेंद टिप्पा खाई और आखिरकार गेंद सीधे स्टंप्सों पर टकराई। देखिए स्टंप्सों पर किस तरीके से टकराई थी और इसी के साथ यह विकेट नंबर 1 गिर चुका। जयंत जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, यहां पर पहली गेंद पर उनका विकेट गिर जाने के बाद अब सर्टेनली प्रेशर निश्चित रूप से उनके ऊपर नजर आता हुआ और नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रंजीत की गेंदों का। और रंजीत इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए, पावर प्ले अभी भी जारी और मिड ऑफ कवर पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट और मिड ऑन इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और निस्संदेह यहां पर देखना है कि नए बल्लेबाज जिनका आगमन यहां पर हुआ है श्रवण बाएं हाथ के बल्लेबाज, वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर करते हैं रंजीत के खिलाफ। तो यहां पर रंजीत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद गॉन फॉर अ ब्लाइंड स्विंग, गॉन फॉर अ ब्लाइंड स्विंग, इस बार चूके पूरी तरह और गेंद इस वक्त पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज को वंचित करने के बाद बेहतर गेंदबाजी रंजीत एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद को स्विंग किया, इस वक्त डीप विकेट पर लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर इस बीच बल्लेबाज के पास मौका है 2 रन प्राप्त करने का और 2 रन के साथ बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं। गेंद को इस वक्त स्विंग किया था, ये जस्ट लीडिंग फॉर दैट, गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को डीप मिड विकेट पर खेला था और मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे काफी स्क्वायर होता है, थोड़ा सा दौड़ उन्हें लगाना पड़ा लेकिन गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल। 2 रन 3 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर और रंजीत एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस पुल किया है एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस, यस इट डज, 1 बाउंस इनटू द फेंस फॉर अ बाउंड्री। और फुल टॉस गेंद पर जो इस वक्त काम करना चाहिए था, जिस तरीके का स्ट्रोक लगाना चाहिए था उसी तरीके का स्ट्रोक इस वक्त लगाया, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज श्रवण ने और डीप मिड विकेट पर फील्डर जो खड़े हुए थे उन्होंने दौड़ जरूर लगाए लगभग 12 से 15 कदम, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 7 रन बन चुके हैं पहले ओवर में। पारी की शुरुआत में रिक्वायर्ड रन रेट था 7.40 रन प्रति ओवर, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन जोड़ चुका है सर्वाग्नि उर्वा। अब बचे हुए 4 ओवर में बनाने हैं 30 रन और रिक्वायर्ड रन रेट कुछ हद तक ऊपर इस वक्त जा चुका है 7.40 से 7.50 रन प्रति ओवर और 24 गेंदें कुल मिलाकर बाकी हैं, 30 रन चाहिए। और जहां तक मैच के विजय का सवाल है अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा स्टिल द मैच इज इन बैलेंस। और गेंदबाज इस वक्त अर्बन होम्स एंड की ओर से गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए फ्लडलाइट्स की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है। निस्संदेह रात के 7:40 यहां पर बच चुके हैं, दर्शक कुछ मात्रा में जरूर मौजूद है लेकिन सुबह से ज्यादा दर्शक इस वक्त नजर आते हुए। जब कभी भी उर्वा क्रिकेट मैदान पर लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, कोई भी श्रृंखला अंडर फ्लडलाइट होती है तो निस्संदेह दर्शक ज्यादा से ज्यादा इस मैदान पर उपस्थित होते हैं। और कल रविवार का दिन मंगलुरु के टॉप सीडेड टीमों का मुकाबला यहां पर होगा और हम उम्मीद करते हैं सुबह से ही दर्शकों की संख्या में काफी हद तक वृद्धि हो जाएगी और समय के साथ साथ दर्शकों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। तो आज ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाता हुआ और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए प्रज्वलित दाहिने हाथ बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद पहले गेंद उछालना चाहा, गेंद पहुंची पैरों पर टकराने के बाद शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन का इजाफा
और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक विकेट पहली गेंद पर उनके पारी के तीसरी गेंद पर गिरा था और पहली गेंद पर यहाँ पर आउट हुए थे जयंत गोल्डन डक के रूप में 0 पर बोल्ड आउट होते हुए रंजीत की गेंदों पर। और यहाँ पर एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं श्रवण पिछले ओवर में एक चौका झटने के बाद इस वक्त आक्रामक बल्लेबाजी की मुनसूचना वो दे चुके हैं और यहाँ पर उनके लिए फील्डिंग में सजावट की जा रही है। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट इस वक्त तैनात ठीक सीमा रेखा के पास इस पावर प्ले ओवर में और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार बाएं हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा और अब धीमी गेंद थी परिवर्तन के तौर पर और आखिरी मौके पर गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे पर टकराने के बाद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर द्वारा फील्ड कर दी गई। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 8 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर शुरू हो चुका है कहना पड़ेगा और इस बीच प्रज्वलित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त श्रवण सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा अपील और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। प्लम्ब इन फ्रंट घोषित और यहां पर श्रवण का विकेट गिर चुका है। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद उनके फ्रंट लेग पर टकराई और उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। दूसरा विकेट गिर चुका है। हालत काफी हद तक नाजुक सी इस वक्त दिखाई देती हुई सर्वाग्नि उर्वा की। निस्संदेह दोनों चोटी के बल्लेबाजों को वो खो चुका, सिर्फ 8 रन स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ और इस मोड पर न सिर्फ उन्हें एक सांसदारी चाहिए बल्कि एक लंबी सांसदारी चाहिए जो कि सर्वाग्नि उर्वा की भटकी हुई गाड़ी को सही पटरी पर ऑन द राइट ट्रैक ला सके और उस कोशिश में इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरते हुए नए बल्लेबाज के रूप में अजय जिनका आगमन यहां पर हो चुका है। और जहां तक अजय का सवाल है, आमतौर पर हनुमान क्रिकेटर्स का प्रतिनिधित्व वो किया करते हैं, यहां पर सर्वाग्नि उर्वा की ओर से वो खेलते हुए एक बेहतर स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, एक बेहतर ऑलराउंडर के रूप में वो जाने जाते हैं और यहां पर देखना यह है कि बल्लेबाजी में वो क्या करते हैं। गेंदबाज इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद अजय के लिए उछालना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, इस बार रन आउट का खतरा होता हुआ लेकिन एन मौके पर बल्लेबाज बच चुके हैं और शॉर्ट फाइनल के फील्डर ने अपने सिर पर हाथ धर लिए कि निशाना स्टंप्सों पर क्यों नहीं टकराया। 1 रन का इजाफा। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन और गेंदबाज इस वक्त तैयार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए प्रज्वलित बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, गेंद को उछालना चाहता, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद, वाइड का इशारा। रन्स चाहिए इस वक्त सर्वाग्नि उर्वा को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है और इस बीच प्रज्वलित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। स्टिल द बैटल इज नाउ ऑन और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो अर्बन होम्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त प्रज्वलित आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड के फुल टॉस पुल किया इस वक्त गेंद को डीप मिड विकेट सीमा रेखा से गेंद इस वक्त बाहर हो चुकी है और ये गेंद पर ये छक्का यहां पर लग चुका है। इट्स अ बिग तो फुल टॉस गेंद पर मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया, थोड़े से सफल होते हुए और डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद को डिस्पैच कर दिया खूबसूरती के साथ, काफी उम्दा, काफी ऊंचा और इस छक्के के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट और इस छक्के के साथ मैं समझता हूं सर्वाग्नि उर्वा कुछ हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। अब 2 ओवर की समाप्ति, 2 overs completed, 17 on the board, 2 wicket loss and let's straight away coming back to the equation. रन्स बनाने हैं 37, उनमें से 17 अगर डिडक्ट कर दिया जाए, 17 अगर माइनस कर दिया जाए तो 20 रन और बनाने हैं। 3 ओवर का खेल बाकी है यानी 18 गेंदें बाकी और यहां पर जहां तक मैं समझता हूं 18 गेंदों में 20 रन बनाना उतना मुश्किल नहीं है लेकिन उतना आसान भी नहीं है क्योंकि एनएफसी उर्वा के पास जो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है, सशक्त गेंदबाजी का डिपार्टमेंट, उसके खिलाफ रन्स बनाने हैं तो सर्वाग्नि उर्वा को कुछ डिफरेंट टैक्टिक्स, विशेष रणनीति के साथ बल्लेबाजी करनी होगी लेकिन एक दिलेर भरी बल्लेबाजी यहां पर सर्वाग्नि उर्वा को अपने मकाम तक पहुंचा सकती है। और जहां तक एनएफसी उर्वा का सवाल है, इस वक्त उन्हें कमबैक करना है, 1 या 2 कसे हुए ओवर्स फेंकने हैं, विकेटें उखाड़ना है, चंद विकेटें उखाड़ने होंगे अगर उन्हें बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखना है। तो फिलहाल मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है और इस वक्त नितेश
गेंदबाजी शुरू करते हुए स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार है सुजीत, जो कि आरंभकार के तौर से मैदान पर उतरे थे, अभी तक मैदान पर डटे हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार नितेश इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाती हुई एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। थ्रो पहुंचा इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 19 टू गेट नाउ फ्रॉम 17 डिलीवरीज, 8 विकेट्स दे गॉट केप्ट इंटैक्ट। और नितेश एक बार फिर से, इस बार अजय सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त नितेश गेंदबाजी करते हुए। गेंद अजय के लिए, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराए, कुछ हद तक ऑप्शन से बाहर की ओर निकलते हुए और अंतिम क्षण में इस अपील को नकार दिया अंपायर ने। एक रन का इजाफा, इट्स ऑफ द बैट, बल्ले का निचला किनारा टकराया था और स्कोर एक रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। नितेश की गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाहा और लॉस्ट स्टंप, गेंद उनके टांगों के बीच से निकली। इस वक्त टिप्पा खाने के बाद धीमी नीची रहती हुई कहना पड़ेगा। It kept lower after pitching and passed between his legs and stuck to his middle of stump and that is the wicket number 3rd। और यहाँ पर सुजीत का विकेट गिर चुका है, तो सुजीत, जयंत और श्रवण पेविलियन वापस लौट चुके हैं। 19 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर और गेंदे बाकी हैं 15, गेंदे फेंके गए हैं 15, रन से चाहिए 18, रन बन चुके हैं 19, तो यहाँ पर बराबर का टक्कर जारी है। और नए बल्लेबाज के रूप में धनराज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। और जहां तक धनराज का सवाल है, लोकल बॉय धनराज यहां पर एक बेहतर बल्लेबाजी के रूप में जाने जाते हैं और उनमें क्षमता, काबिलियत है कि क्रीज पर जम सके और अपनी टीम को मंजिल की ओर अग्रसर कर सकते हैं अगर वो दिलेर भरी बल्लेबाजी यहां पर दिखाते हैं। देखते हैं क्या होता है। और इस बीच नितेश फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए और धनराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद अजय और गेंदबाज नितेश फील्डिंग में जमावट अभी भी करते हुए। विकेट कीपर स्क्वायर लेग पर एक फील्डर मौजूद, मिड विकेट एक्स्ट्रा कवर पॉइंट तैनात, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर तैनात, लॉन्ग ऑफ फील्डर को कुछ हद तक आगे बुला लिया गया है। मिड ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान नहीं, लॉन्ग ऑफ फील्डर को वापस से पीछे भेज दिया गया। डीप मिड विकेट तैनात, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और इस बीच नितेश गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट धनराज सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद नितेश की धनराज के लिए। ये गेंद इस बार गेंद को हल्के से पैडल स्वीप किया, खूबसूरती के साथ स्क्वायर मौजूद, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक रन मिलेगा। लेग कटर गेंद थी, लेग कटर के उछाल को भापते हुए, टर्न को पहचानते हुए गेंद को अंतिम क्षण में स्कूप कर दिया, थोड़ी सी सफल होते हुए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक रन के लिए बल्लेबाज धनराज ने ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड दिस इज द 3rd ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार नितेश गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजय इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए। ये गेंद इस बार straight down the ground and it's good to go all the way, just we have to wait and see and it's a biggie। 6 number 2 in the innings of Sarvagni Urva came from the bat of Ajay। इस बार उनका पहला छक्का और इस छक्के के साथ मैं कहूंगा सर्वाग्नि उर्वा आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द गेम। सिर्फ और सिर्फ 11 रन चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदे बाकी हैं इस वक्त 13। और अब ऐसा कहना पड़ेगा सर्वाग्नि उर्वा लुकिंग राइट ऑन टॉप। अब एनएफसी उर्वा के गेंदबाजों को कुछ घातक गेंदबाजी यहां पर करनी होगी इस मैच में वापस आने के लिए। तो इस वक्त इस ओवर की अंतिम गेंद नितेश इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। गेंद एक्स्ट्रा विकेट, बेहतर गेंद थी, परफेक्ट लेग कटर, ऑफ से बाहर की ओर निकलती हुई, गेंद पर छेड़ता नहीं करना चाहा, स्क्वायर कट करना चाहा, क्योंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। 3 ओवर की समाप्ति, 26 रन बच चुके हैं। तो जहां तक सवाल है, यहां पर पहले ओवर में मेरे ख्याल से रन बने थे 7, दूसरे ओवर में रन बने 11, तीसरे ओवर में रन बने 9। और मैं समझता हूं सतीश, ये 3 ओवर में 26 रन इस वक्त जोड़ चुका है सर्वाग्नि उर्वा। 3 विकेट खोले के बावजूद एक बेहतरीन प्रगति करता हुआ। और अब सर्वाग्नि उर्वा को कमबैक करने के लिए यहां पर कुछ विकेट जरूर उखाड़ने होंगे, चंद डॉट गेंदे जरूर यहां पर फेंकने होंगे। Exactly, Gopi. Especially the wicket of Ajay. What an mesmerized innings he's playing here. Absolutely magnificent, isn't it? Audacious batting performance, no doubt at all. Under this condition, where it was hitting a ball is very difficult, and in this condition, clearing the ground, it means definitely it was outstanding innings what Ajay is playing here, and that was the innings is required for Sarvagni cricketers, because NF0 everybody is thinking of 37 is quite enough for NF0 to defend, because they got a fantastic bowling department, but they are not really noticing that
Sarvagni cricketers has got some good players like Ajay who can handle the pressure very well. And but job is not at all, Gopi. Still NFC Ruwa, they can bounce back into this because 11 runs getting from 12 balls is not I think not an easy job. They have to bat really very well in the remaining 2 hours as well. But who are going to win the match, because the one team from Urva definitely will going to play at the place in the semi-final, and nothing much bother about that. बिल्कुल सतीश, कोई भी जीते इस मैच में, लेकिन एक लोकल टीम उरुआ से इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में जरूर प्रवेश करेगी और उरुआ के क्रीडा प्रेमियों के लिए निस्संदेह यह एक बहुत ही खुशी की बात है। और देखते हैं क्या होता है इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में, कौन प्रवेश करता है। और 11 रन चाहिए 12 गेंदों पर, 11 टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज। धनुष गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए धनराज के लिए यह गेंद अजीब और गरीब ढंग से गेंद को खेला, अंतिम क्षण में गेंद की उछाल को पहचानते हुए गेंद पहुंची गली पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। स्ट्राइक रोटेट करते हुए, और यही करनी चाहिए इस वक्त धनराज को, और इस बीच वहां पर विकेट उखाड़े गए हैं। और इस बार now it's going to be third umpire. तो धनराज 1 रन पूर्ण कर चुके थे, दूसरा रन की कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने इस वक्त फील्डर को विचलित करना चाहा, नचाना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो थ्रो वहां पर पहुंचा और विकेट चटकाए गेंदबाज ने। लेकिन देखना यह कि इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर लैंड कर चुके थे, रख चुके थे या नहीं। तो थर्ड अंपायर द्वारा परामर्श हो रहा है। एंड लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू दैट 6 फ्रॉम अजय। और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, अंडर दिस कंडीशन, इन हालातों में छक्का लगाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आमतौर पर उर्वा इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन हालातों में हवा का रुख रात के बाद कम हो जाता है। तो अगर गेंद को साइड करना है तो बिल्कुल तीखी नजरें होना जरूरी है। और इस बार लेग कटर गेंद को पूरी तरह गेंद को साइड करते हुए मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया और एफर्टलेसली गेंद को उछाला था लॉन्ग ऑफ पर। और इस मुश्किल से काम को आसान कर दिखाया अजय ने, क्योंकि आमतौर पर यहां पर छक्का अंडर फ्लड लगाना उतना आसान नहीं होता है। और यहां पर अजय का छक्का पूरी तरह मैं समझता हूं सर्वाग्नि उरुवा को इस मैच में वापस ला चुका है। एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट 6। और यहां पर थर्ड अंपायर इस वक्त देखते हुए कि क्या हुआ है, खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। और निस्संदेह ये मैच, पहला क्वार्टर फाइनल मैच बेहतर था कृष्णापुर के दोनों टीमों के बीच में, टीम रूफटेक कृष्णापुर और टोरपेडोस काना के बीच में। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच उरुवा के दोनों टीमों के बीच में, हमारे उरुवा के दोनों टीमों के बीच में हो रहा है, एनएफसी उरुवा और सर्वाग्नि उरुवा के बीच में। और निस्संदेह एक टीम कृष्णापुर की सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। देखना यह है कि इस मैच में कौन सी उरुवा की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी टीम रूफटेक का सामना करने के लिए। तो यहां पर अभी भी निर्धार का परिशीलन न किया जा रहा है और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। तो अगर 1 रन तो पूरा हो चुका है, 10 रन और चाहिए और गेंदें बाकी है 11। और यहां पर देखने वाली बात यह है कि धनराज का विकेट गिरता है या नहीं, तो काफी नजदीकी मामला लगता है इस वक्त। और यहां पर परिशीलन जारी है और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। तो यहां पर नॉट आउट करार दिया गया। धनराज मेरे ख्याल से बल्ला रख चुके थे जब गेंदबाज ने विकेट चटकाए थे, तो धनराज इस गेंद पर बच चुके हैं। 10 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी, 10 रन टू गेट फ्रॉम 11 डिलीवरीज। और मैच के विजय का जहां तक सवाल है, मैं कहूंगा अभी भी मैच बराबरी पर रख चुका है। डॉट गेंदों की सख्त दरकार एनएफसी उरुवा को इस मैच में वापस आने के लिए, और रनों की सख्त जरूरत इस वक्त सर्वाग्नि उरुवा को अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होने के लिए। देखते हैं बचे हुए गेंदों में क्या होता है। गेंदबाज इस वक्त तैयार, धनुष दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। धनुष की गेंदों का ये गेंद इस वक्त इसे उछाला, इस वक्त गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, इनटू द गैप गेंद जाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। गेंद दोनों फील्डरों के बीच टिप्पा खाई थी और मेरे ख्याल से फील्डरों ने उस टिप्पे का इंतजार किया, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद, पिच होने के बाद काफी ज्यादा उछाल लेती हुई उनके सिर के ऊपर से निकल गई उन दोनों फील्डरों के बीच में। और चौका यहां पर अजय प्राप्त कर चुका है और इस चौके के साथ अपना पलड़ा और भारी कर चुका है सर्वाग्नि उरुवा। 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, जस्ट 6 टू गेट नाउ एंड द बॉल रिमेनिंग इज 10। Just look at the stroke, Gopi. He's near not middle that one, but he has got a muscles power. He's just using his muscle power, Gopi. You look at that one. He's not really timed that one properly. We wanted to hit the ball towards the deep long. Because of his went with the stroke, he got a power behind the stroke. He got that boundary towards the deep extra cover region. बिल्कुल अपने बाजुओं के दम पर ये चौके को उन्होंने खेला था इस वक्त। और इस बार ये गेंद स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, इंटेलिजेंटली प्लेड ऑफ द बैक फुट। 1 रन मिलेगा। 32 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, जस्ट 5 टू गेट नाउ। एंड
9 बॉल्स रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। धनराज बैक ऑन स्ट्राइक, इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं, कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है, हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी बटोरते हैं तो निस्संदेह अपने मंजिल की ओर पहुंच सकते हैं। और जहां तक एनएफसी उर्वा का सवाल है, इस वक्त डॉट गेंदें उन्हें चाहिए इस मैच में वापसी करने के लिए। इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला था, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। और सिर्फ 4 रन अब चाहिए, बचे हुए गेंद है 8। अजय बैक ऑन स्ट्राइक, इस वक्त एक बेहतरीन बल्लेबाजी, 2 छक्के अब तक झड़ चुके हैं, 2 छक्के और 1 चौका वो झड़ चुके हैं, और एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर और 1 रन का इजाफा लेग बाय अंपायर द्वारा। अजय इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 19 रनों पर, ही इज बैटिंग ऑन 19 विद इंक्लूडिंग 2 मैसिव सिक्सेस एंड 1 बाउंड्री, और अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद धनराज के लिए बोल्ड ऑफ हिज लेग्स, पूरी तरह सफल होते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि गेंद कुछ उछाल लेते हुए उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे लेग स्टंप पर जा टकराए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, और ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है धनराज का, लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है। और 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, अंतिम ओवर बाकी, 3 रन चाहिए विजय के लिए। और मैं समझता हूँ सतीश, अब एनएफसी उर्वा को मिरेकल बॉलिंग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं चमत्कारी गेंदबाजी, ही इस मैच में वापस ला सकती है। Exactly, Gopi. It can be it is really happened in the UCG cricket ground as well. There are a lot of example. They even 2 runs is depended in this UCG cricket ground. And the NFC Urva, they have to see that which bowler is going to be going to the better to bowl the last over. I think the bowler who can turn the ball around either way is a better option. Just like the mistake what Torpedoes Kanas did in this previous quarter-final, when 4 required for the victory, instead of asking their spin bowler, the Akram himself came into ball and they paid the penalty for that. Now, they doesn't want to take any risk. Now, Neetu, I think, is a better option. And wait and see. And Sarvagni cricketers who are definitely, they're not really bothered because the striker is Ajay. And so far he's been outstanding from the bat. So that having him in the middle, I think they would definitely not really bother about that 3 runs. But here, NFC will have to bother about that 6 deliveries. बिल्कुल, यहाँ पर अजय स्ट्राइक पर हैं तो इसलिए कुछ ज्यादा चिंता का विषय नहीं है इस वक्त। सर्वाग्नि के अजय का विकेट यहाँ पर गिर चुका है, एक्स्ट्रा विकेट गेंद, सेंसिबल डेलिकेटली गेंद को इस वक्त टर्न करना चाहता, चूंकि क्रीज से आगे निकला है और यहाँ पर विकेट गिर चुका है। और शायद प्रोबेबली सतीश ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है या नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? Why not, Gopi? That's what I'm mentioning about. This is the thinking actually. The cricket is not all about the physical game. Sometimes it's a mind game, isn't it? So see that getting 3 runs in 6 ball, all of a sudden the batter like Ajay started to feel the pressure. When it's asking run, it's more than 7 or 8 runs per over. He batted very freely. This is the beauty of cricket, Gopi. Handling the pressures, even 3 runs in the final overs, it's definitely going to be very difficult. That's all about the mind game. How we all going to take? Actually, Ajay have to play his natural game. He's just changed his game. He wanted to push the ball. That's what the problem here. They didn't reach the ball, but that was a fantastic leg cutter there from Neetu. बिल्कुल, नितेश ने बेहतरीन तरीके की गेंदबाजी की थी, परफेक्ट लेग कटर उन्होंने फेंका था, गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाया, उनका विकेट गिर चुका है। अब चंदा और डॉट गेंद एनएफसी उर्वा को चाहिए कमबैक करने के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार 2 लगातार डॉट गेंदे, एक और विकेट का पतन यहां पर होता हुआ रनआउट के रूप में, और 2 बेहतर गेंदे नितेश यहां पर फेंक चुके हैं। अब 4 गेंदे बाकी, 3 रन चाहिए। द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग, और जहां तक सवाल है, अब मैं कहूंगा एक और डॉट गेंद निस्संदेह सर्वाग्नि उर्वा के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव को और बढ़ा देगा। Absolutely, Gopi. I think it's now the NFC Urva slowly thinking about that 4 deliveries. So far, I think it's the bowler winning the race. The 2 fantastic deliveries bowled, and is bowled as per the condition. Look at the 2 deliveries, the deviation. Ball is almost moving from the Goodland spot. The leg cutter, whenever you're bowling that line to that right-hander batsman, Gopi, it's very effective indeed. And so far, it's a fantastic 2 deliveries. But this man, Tilak, is on strike. I think he's a very clever cricketer, good cricketer. He can take that 3 runs out of 4 deliveries. But question raising here is the incoming batsman, the Vijay, can he able to handle the pressure or not? बिल्कुल, यहाँ पर तिलक के बारे में जहां तक सवाल है, बेहतर क्रिकेट के रूप में जाने जाता है। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेल दिया, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा इस बीच, सिर्फ 22, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। अब गेंदे बाकी हैं 3, रन से चाहिए 2, 35 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, 4 विकेटें सुरक्षित, 3 गेंदे बाकी, 2 रन चाहिए। और यहां पर
नितेश का जहां तक सवाल है तो मैं समझता हूं सतीश तीनों गेंदें उन्होंने बेहतर फेंकी थी. Exactly, Gopi. That's the previous delivery also. That was almost a dotted delivery. But gathering the ball around the legs of the batter is very difficult for wicketkeeper behind the stump because batter almost shuffled across the line of the delivery. That's why he is asking umpire to give the wide. But he shuffled across. The good decision coming from umpire Harish Padil. बिल्कुल. और यहाँ पर विजय स्ट्राइक पर आ चुके हैं. 3 गेंदों में चाहिए 2 रन. नितेश की गेंद, ये गेंद इस बार एक बार फिर से विकेट कीपर चूके. दोनों गेंदों में विकेट कीपर चूके और दोनों गेंदों में विकेट कीपर की गलती की वजह से यहाँ पर 2 रन प्राप्त हुआ. वरना ये ओवर बेहतरीन ओवर यहां पर साबित होता हुआ नितेश का. Exactly, Gopi. The previous delivery, you can see that is the extra bounce. This is because of extra bounce, the wicketkeeper fails to collect the ball. But this is a part of cricket. You have to tackle that. Being the wicketkeeper of your team, and in this condition, you have to put your 100% in this game. Of course, even that was very difficult for tackle with the bounce, but they got a very important run. बिल्कुल बिल्कुल सतीश. और देखते हैं क्या होता है इस गेंद पर. यह गेंद इस बार चिप किया और इसी के साथ यह मैच रोमांचक तरीके से यहां पर जीत चुका है सर्वाग्नि उरुवा. 4 विकेटों से सिर्फ 1 गेंद बाकी रखते हुए और इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है. तो दोनों क्वार्टर फाइनल मैच बेहतरीन मैचेस रहे. क्यों सतीश? Absolutely fantastic. It's a nail-biting finish, isn't it? And that was what that crowd wanted to see here. And even those who are watching through YouTube in the live telecast of V424x7, definitely they will going to enjoy this cricket because this is a nail-biting finish. And Sarvagni cricketers, I think they deserve this place. The way they bowled, the way they batted, I think they are a better team than NFC Urva. So they deserve this place because the way they all that is teamwork, isn't it? This is all the teamwork, we can see that. But Ajay, I think, is a key player. He is the one. He's played a sheet ankle role and he just released the pressure from for the other batters by hitting some big strokes in this condition. I think he's the man who really played a match-winning innings, and it's definitely going to be one of the best innings for Ajay of his career. And Sarvagni cricketers, congratulations, they are into the semi-final of this prestigious BK Champions Trophy 2022. Hard luck, NFC Urva, because they tried their level best to win this match, but unfortunately they couldn't manage to do that. So, and you have to respect the opposition team victory because they deserve this place by brave and gutsy batting. They're chasing that 27 runs against the formidable bowling department of NFC Urva. Now, big semi-final coming up.
Welcome back for the semi-final, and all set now for the big match, the big moment of this cricket tournament. Day number one is almost inching towards last and final match of the day number one, and the semi-final between Sarvagni Cricketers Suruva versus team Roof Tech. It's going to be a very good match. Both the teams has got potential of getting into the finals of this prestigious BK Champions Trophy. So after winning the toss, selected to field first year ago, the first over of the semi-final. Right arm over the wicket, Shishant bowls, going for the off drive, missed it completely. The good ball from Shishant, the first delivery outside the line of off stump. Tanveer looking for the off drive, and he missed it completely. Shishant again back to his bowling mark with a short run off. Right arm over the wicket. Bowls this time going for the off drive, not quite getting hold of that one properly. Vijay the fieldsman then the score point region quickly moving towards his friend, but not really able to stop the single from the batsman. The batter is off the mark. Tanveer is off the mark with a single, and that brings Nakis into strike now. Nakis will going to face a next delivery of Shishant. Umpire Roland Pinto having a conversation with the Tanveer, and this is a power play is going on. The short third man, short fine leg, short score leg, short mid wicket, short mid on, short third man, backward point, little bit cover point, and extra cover. This time Nakis lofted that one down to deep long off region, protection there in the deep. Sujit the fieldsman there in the deep long off, so that Nakis completed a single. With that single score now moves on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Shishant, right arm over the wicket, going for the off drive. Wicket keeper behind the stump. Jayant missed the ball completely from his hand, and by call by umpire. And with that addition of that single scoreboard now moves on to 3 on the board. Both the teams really played a magnificent game of cricket in the quarterfinal, because the Torpedoes Khana, one of the big contender of this cricket tournament, and Roof Tech defeated Torpedoes Khana. This time lofted. Now fielder there in the deep long off. Oh, valiant effort there from Sujit, trying his level best to take the catch. But of course he's got a good position. But while he's trying to take that catch, ball just slipping out of his hand. Look at that one in replay. Lofted that one. The fielder have to run front from the deep long coverage. Look at the effort there from the fielder, and he couldn't manage to judge the catch properly. And they got a single of 5 without loss of any wicket. Shanda bowls this time again. They're looking for the quick single. Ajay pick up and try to return the ball, but quickly realizing that the batter is very quick to complete the single. So no question of hitting the stumps here, and rightly so. So first over completed. After completion of first over, team Roof Tech 5 on the board, 5 without loss of any wicket in the first over is completed. A steady start from the opening batter of Roof Tech. I think it's a good start given there by Shishant in the first over. Just a 5 runs is conceded. Just coming back to the journey of these two teams. I think they played a very good game of cricket, and they deserve this place in the semi-final. First we are coming back to the Roof Tech team. Roof Tech, they played a very good game of cricket. And the first they defeated SFC Sankolige, and they qualified, and then they defeated one of the big contender of this tournament as well. They defeated then they defeated Torpedoes Khana, one of the big contender of this cricket tournament, and they qualify for the semi-final. This time lofted that one over the head of the mid wicket. Didn't got enough bat onto that as he was like to play, but still he managed to get a couple of runs. Little bit hesitation for the second run. Looks like both the batters are running in the same line, so that might be the chance of mix up, but fortunately just they getting away from the line, so that they managed to complete that couple of runs. Not quite getting hold of that one properly, Tanveer, but he got 2 valuable runs. Ajay from the far end, right arm over the wicket, bowls this time again. Didn't got that much of timing again, missed time that one. He wanted to play that one down to deep long off region, but ball went towards a short mid on. But the strikes are rotated, that's very important. Scoreboard moves on to 8 on the board without loss of any wicket. Ajay from the far end, right arm over the wicket again. Naki is just waiting for the ball, the slower one. And Naki is almost, that was definitely going to be a wide ball. He was just reaching for the delivery, attempting the stroke,
and push the ball down to mid long off region for an easy single. 9 without loss of any wicket. Ajay from the far end. Bowls again down the leg side. Going to be a wide chance of run out. And this is not a good end to return. There is probably the chance here in the striker's end for the fielder to return Tilak, but he couldn't manage to return the ball, and in the right direction he wanted to return the ball towards the non-striker's end. This time, oh my goodness, Jayanta, he is, this time directed. This time directed, but umpire says the batter is safe. No question of asking for the third umpire, because the batsman really completed that single quickly, and he's really crossed that line, we can see quite easily. And the good decision again coming from umpire Roland Pinto, and no question of asking for the third umpire. They completed that run quite easily. So 12 on the board. Really bad miss there by wicketkeeper behind the stump. What could be a certain chance of stump out? Then wicketkeeper Jahant fails to collect the ball of Ajay. So far it's a good over actually from Ajay, but some extras is conceded in that over. This time again a quicker one. Again wicketkeeper fails to collect the ball. This is not a good going here for Sarvagni cricketers. And this sometimes it's very difficult, isn't it? Because Ajay sometimes balls very quick deliveries. So very difficult for wicketkeeper to judge which delivery he going to ball, and that's why he missed it completely. Especially under the applied light, it's not easy. Again, a lovely leg cutter in the occasion. Again, Vijay this time trying for the run out. Again, he fails to stop the single from these two batters. Tanvir so good in the occasion to complete the single. So after completion of over number 2, it's 14 on the board without loss of any wicket. A good start given by these two opening batters, Nakis and Tanvir. Tanvir, everybody knows that he is the one who represents young friend Surava. He not really played any game in this particular tournament, but he is just joining team Rooftech in the big semi-final, and that will definitely going to lift the spirit of team Rooftech as well as the batting department of Rooftech, and wait and see how Tanvir will going to contribute from his bat. So far the 7 runs per hour, good going here for Rooftech, and here is a change in bowling as well. Vijay brought into attack for Sarvagni cricketers. Vijay so far he bowled very well for his team in this tournament. Sarvagni cricketers once again defeating NFC Urva. One more big contender of this tournament is back into pavilion, back to home after they faced a defeat against Sarvagni cricketers. That was a fantastic performance by Sarvagni cricketers, and now they desperately wanted to be in the final. For that they have to again repeat that performance what they did in the previous match against NFC Urva. Here is Vijay bowls, beautifully bowled again. Not a neat collection from wicketkeeper behind the stump, but ball is not really far from wicketkeeper, so that both the batters are not interested for any run. Score remains on 14 without loss of any wicket in the over number 3rd in progress. Vijay back to his bowling mark with a short run up, bowling away from us. Pass umpire Roland Pinto, right arm over the wicket. Naki is using his feet, lofted at one. The fielder then the deep long off will not going to take the catch, but certainly they going to cut it off. Eagle going to cut it off, and before that the batter has completed a couple of runs. Lovely looking lofted right there from Naki is using his feet in the negation, reaching to the pitch of the delivery, and placement is perfection in the negation, so that they got a couple of runs. 16 on the board without loss of any wicket. Team Rooftech, after even though they lost the toss, asked by the opposition to bat first, they're trying their level best to get some big score. Again, a lovely cricket there from Nakesh, just rotating the strike. That's what really required in this situation. You know exactly the Tanvir is there in the other end, and if you rotate the strike and give the strike as much as possible to Tanvir, then he can hit some big shot. He can accelerate the run rate as well. But so far, it's an equal battle is on between these two teams. Both the teams has got a potential of winning this big semi-final of this BK Champions Trophy. Wonderfully organized by Ashok Nagar Women's Wings, Biruver Kudla. Vijay, right arm over the wicket. Lovely delivery there from Tanvir. Again, the ball is not too far from a wicketkeeper behind the stump, but no question of stopping single here. And a warning has been given for Tanvir here as he was running in the protected zone. So scoreboard now 18 on the board without loss of any wicket. No change in the number of overs. It's going to be a 5 overs game. 5 overs game, so that this is over number 3 in progress. Using his feet again.
Nucky's a lovely placement. Again, they're looking for the second. In comes the throw. Chance of run out. And no chance in that occasion because Nucky is quickly back. Because Tanvir knows that if he went for the second run, it's going to be a chance of run out. So Nucky is looking pretty good today in this semi-final. He's abusing his feet very well. Every time when he uses the feet, he's coming very close to the line of the delivery, pitch of the delivery. And he's getting some runs in the offside region, especially the extra cover. And long off, he got some runs for his team. The big semi-final, he know exactly the role what he wanted to play in this big semi-final, being the captain of the side. He has to play captain's knock. Score now 19 on the board without loss of any wicket in the over number 3 in progress. Vijay once again back to his bowling mark. Bowling away from us. Right arm over the wicket. He bowls to Tanvir. Tanvir drives the run beautifully down to deep long off region. The runs are coming very freely. No question of playing any dot-dead deliveries in this over. So one more over completed after completion of over number 3. After losing a toss asked by the opposition to bat first. Team Roof Tech are looking in such a good position. They got 20 runs in 3 overs. And wait and see how many runs they will going to score in the remaining 2 overs. It's going to be a very interesting game of cricket. It's coming up in the remaining 2 overs. Wait and see. Having all 10 wickets in hand, Gopi. It looks like the Roof Tech are really looking towards some big score. Around 40 plus runs they wanted to get. And so far, there's 3 overs which belongs to team Roof Tech. Both the batters are definitely batted very well. Especially the enter of involvement of Tanvir in this special match. He is a key player for Roof Tech. And because of his appearance, looks like the body language of even look at the captain from the other end. He batted really very well. Now 2 overs definitely going to be testing time for the bowlers of सर्वज्ञ क्रिकेटर शुरू हुआ. बिल्कुल सतीश आपने फरमाया और जो तनवीर को शामिल इस वक्त किया गया है टीम रूफ टेक में और निस्संदेह वो उनके लिए एक बिग बूस्ट यहां पर साबित होता हुआ और तनवीर नकीज के साथ मिलकर एक बेहतर आरंभिक शुरुआत पहले 3 ओवर में वो दे चुके हैं और जैसा कि आपने फरमाया अंतिम 2 ओवर रियली द टेस्टिंग टाइम फॉर द बॉलर्स ऑफ सर्वज्ञ और जहां तक कम से कम स्कोर में रोक कर रखने का सवाल है तो कम से कम 35 रनों के अंदर रोक कर रखना होगा सर्वज्ञ क्रिकेटर्स के गेंदबाजों को अगर उन्हें लक्ष्य कुछ हद तक आसान करना चाहिए. गेंद इस बार गेंद को उछाला लंबे से मारेगा जवाब 6 रनों के लिए. सो तनवीर लुकिंग ऑन फायर. गेंद मिडल लेग स्टंप पर थी और गेंद को इस वक्त मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट किया और देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था लॉन्ग और सीमा रेखा से बाहर और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 26 रनों पर. तनवीर अपने बाजुओं को यहां पर खोलते हुए और स्ट्रेट अवे इस बार सीधा दबाव गेंदबाज सुशांत के ऊपर और एक बार फिर से वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तनवीर के लिए एक बार फिर से गेंद को इस बार स्ट्राइकर वर्जन वन मोर बिग ऑल अबाउट इट जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी और अंपायर यहां पर पूछते हुए और इस बार मैं समझता हूं द बॉल फेल जस्ट शॉर्ट ऑफ ऑफेंस और छक्का और चौका और तनवीर इस वक्त पारी की भागदौड़ को पूरी तरह संभाल चुके हैं. 30 रन बिना किसी नुकसान के और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का माफ कीजिए एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का तो तनवीर की उपस्थिति उनके लिए यहां पर बेहद जरूरी है और सुशांत के ऊपर दबाव इस वक्त साफ दिखाई देता हुआ और देखना है कि अगले गेंद में वो किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर करते हैं. दाहिना तो ऊपर द विकेट ये गेंद तनवीर के लिए गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई हल्के से गेंद को ढकेला इस वक्त पॉइंट पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 31 रनों पर बिना किसी नुकसान के. चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर 9 गेंदें अभी भी बाकी और निस्संदेह एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त टीम रूफ टेक का. सुशांत की गेंद नकीज के लिए चिप किया इस वक्त एनफील्ड क्लियर करते हुए 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े नफीस थोड़ी सी धीमे और मैं समझता हूं अंतिम क्षण में एंड इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर. तो काफी नजदीकी मामला था. तो यहां पर इस वक्त देखते हुए देखिए किस तरीके से यहां पर थ्रो पहुंचा था और मैं समझता हूं एक बार फिर से उसे देखा जाए. सवाल यहां यह उठता है कि जब विकेट चटकाए गए थे विकेट कीपर द्वारा जब बल्लेबाज का बल्ला बैट हवा में था या क्रीज पर लैंड हो चुका था. दैट इज द मेन क्वेश्चन मार्क एट दिस सिचुएशन और देखते हैं यहां पर थर्ड अंपायर क्या निर्धार लेते हैं. तो
एक बेहतर शुरुआत यहां पर नकीज और तनवीर दे चुके हैं टीम रूफटेक के लिए। और यहां पर ये आउट घोषित यहां पर किया गया है। और मैं समझता हूं जब विकेट उखाड़े गए थे, जब बल्लेबाज का बल्ला बैट क्रीज से कुछ हद तक बाहर था और यहां पर ये आउट घोषित किया गया है और नकीज की पारी समाप्त है। लेकिन एक बेहतरीन सपोर्टिंग रोल का किरदार उन्होंने निभाया और आखिरकार आउट होने के बाद एक बेहतर पारी खेलने के बाद वो पेविलियन वापस लौटते हुए और पहला विकेट गिर चुका है टीम रूफटेक का 32 रनों के ऊपर। 9 रन नकीज ने बनाए और नए बल्लेबाज के रूप में अब मैदान पर उतरते हुए एज ए नंबर 3 बैट्समैन इमरान इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर तैयार। तो 32 रनों की बेहतरीन आरंभिक विकेट की साझेदारी इस वक्त दी नकीज और तनवीर ने और आखिरकार उनकी जोड़ी यहां पर टूट चुकी है। नकीज पेविलियन वापस लौट चुका है। नए बल्लेबाज इमरान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज सुशांत अगली गेंद के लिए दाहिना तो ओवर द विकेट, बेहतर गेंद थी, नॉट क्वाइट मिड, लेकिन रन के लिए दौड़ पड़े। एक रन मिलेगा इस बीच, इससे पहले कि सीली पे ऑन फील्डर गेंद को फील्ड करे और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। इट्स 33 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज 4 इन प्रोग्रेस इन फैक्ट और गेंदबाज सुशांत एक बार फिर से यहां पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार, इस बार तनवीर के लिए आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा, इमरान दौड़ा है दूसरे छोर पर, फलस्वरूप यहां पर रन आउट होता हुआ। तो बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को फेंकी थी। आक्रामक स्ट्रोक लगाने के प्रयास में चूके एक्स्ट्रा क्विकर गेंद मत स्ट्रेट लाइन और आखिरकार नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज इमरान ने रन चुराने की हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाई। फलस्वरूप उनका विकेट नॉन स्ट्राइकर पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। हैव अ लुक एट दिस, किस तरीके से देखिए यहां पर हुआ था और 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 33 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स स्कोर्ड बाय टीम रूफटेक लुकिंग इन अ कमांडिंग सिचुएशन। और जहां तक सर्वाग्नि उर्वा का सवाल है, इस वक्त इस अंतिम ओवर में उन्हें एक कसी हुई गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी यहां पर करनी होगी। चंद विकेट उखाड़ने होंगे। अगर 40 के आंकड़े के अंदर उन्हें टीम रूफटेक के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है, अगर 40 के आंकड़े के अंदर वो टीम रूफटेक के बल्लेबाजों को रोक कर रखते हैं तो शायद उनको भी मौका है, क्योंकि पिछले मैच में 37 रनों का लक्ष्य उन्होंने पीछा किया था यशस्वी तम्मा और यहां पर एनएफसी उर्वा के सामने। और यहां पर 40 रनों के अंदर अगर वो रोक कर रखने में सफल होते हैं तो निस्संदेह उन्हें भी मौका है इस लक्ष्य का पीछा करने का। तो यहां पर जहां तक रूफटेक का सवाल है, इस वक्त 40 के आंकड़े को उन्हें पार करना होगा, कम से कम 40 के आंकड़े को पार करना होगा अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है। तो ये गेंद, पहली गेंद स्वीप करना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, दूसरे प्रयत्न में एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। तो विकेट नंबर 3, 33 for the loss of 3 wicket at the start of the 5th over. In fact, just 5 balls now remaining in their rings. 5 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में। रात के 8:40 बज चुके हैं। फ्लडलाइट की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान पर गिरती हुई और जो घना अंधेरा है उस अंधेरे को यहां पर चीरती हुई ये रोशनी इस मैदान को चकाचौंध यहां पर कर चुकी है। और निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 इस सुंदर से लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान पर खेला जाता हुआ और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया फ्रेंड्स बल्लाल बाग बिरवेर कुडला रजिस्टर्ड अशोक नगर वुमेन्स विंग ने। और निस्संदेह आज का सफल पहला दिन का 11वां मैच, द 11th मैच ऑफ द सक्सेसफुल डे नंबर 1 ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। पहला सेमीफाइनल मैच प्रगति पर, फर्स्ट सेमीफाइनल मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर बिटवीन टीम रूफटेक वर्सेस सर्वाग्नि उर्वा। और यहां पर अंपायर बल्ले को वापस ले जाने के लिए इस वक्त उन्होंने कहा बल्लेबाज से शायद बल्ला कुछ हद तक चौड़ा है और अंडरआर्म क्रिकेट के नियमानुसार बल्ला इस वक्त लिमिटेड विड्थ होना जरूरी होता है। और यहां पर इन्हें वापस भेजा गया है अपना बल्ला बदलने के लिए, बैट बदलने के लिए। खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए इस मैदान पर रुक चुका है। कल टॉप सीडेड मैचेस यहां पर खेले जाएंगे। पहला मैच सुबह होगा चैलेंज बोलूर और मंगला देवी क्रिकेटर्स के बीच में और निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट कल हमें यहां पर
देखने को मिलेगा। गोरी यंग बॉयज का मुकाबला होगा केसीसीआर कतरी के साथ और यंग फ्रेंड्स का मुकाबला होगा केएफसी कोडिकल के साथ, जबकि एनएम मैंगलोर का मुकाबला होगा स्नेहा मलेमार के साथ और चैलेंज बोलूर और मंगला देवी क्रिकेटर्स के विनर्स विजेता का मुकाबला होगा दूसरे दौर में टीम एलिगेंट के साथ। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई गेंद और इस बार ओवर थ्रो हो चुका है और दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। थ्रो को कलेक्ट करने के हड़बड़ाहट में और इस बार टटोल दे रह गए। And this is an absolutely fantastic piece of running between the wicket. जहां पर सिर्फ एक रन बनना चाहिए था, वहां पर फील्डर्स की गलती की वजह से 3 रन बने और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 36 रनों पर, 36 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और इस बार गेंदबाज एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है इस ओवर में, 4 गेंदें और फेंके जाने बाकी। और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से प्रदीप इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद सीधे टकराई स्टंप्सों पर, बल्ले को वंचित करने के बाद गिल्लियां बिल्स ऑफ होते हुए और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। तो मैं समझता हूं अंतिम चंद गेंदों में एक बेहतर कमबैक यहां पर कर चुके हैं सर्वाग्नि उर्वा के गेंदबाज। जब तनवीर बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था टीम रूफटेक का आंकड़ा 40 के पार कर जाएगा, शायद 50 तक पहुंच जाएगा, लेकिन उनका विकेट जैसे ही गिरा, विकेट उसके बाद 2-3 विकेट गिरे और अब नियंत्रण प्राप्त, कुछ हद तक नियंत्रण प्राप्त करने में सफल गेंदबाज सर्वाग्नि उर्वा के। और अब कुल मिलाकर टीम रूफटेक की पारी में 3 गेंदें बाकी और देखना यह कि इन बचे हुए 3 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। विकेट गिरे हैं सिर्फ 4, स्कोर है 36 रन और नए बल्लेबाज इरशाद का आगमन यहां पर होता हुआ और वो इस वक्त सामना करेंगे प्रदीप की गेंदों का। ठीक उसी तरह का क्षेत्र रक्षण इस वक्त सजाया गया है इरशाद के लिए। एक्स्ट्रा कवर, गली, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग तैनात और प्रदीप तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट इरशाद के लिए ऑफ द टॉस, खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया। इस वक्त डीप बैक स्क्वायर लेग पर एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें बाकी, 2 balls left in their innings now in overall calculation। और प्रदीप 5वीं बार इस ओवर में दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की और काफी लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर, कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे, इससे पहले कि थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद वाइड लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाता और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद उनकी पारी का लेकर तैयार प्रदीप। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और प्रदीप दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर काफी पीछे मौजूद, एक बार फिर से दूसरे के दौड़ पड़े, बल्लेबाज थ्रो पहुंचा लेकिन इस बार बल्लेबाज बच नहीं पाएंगे और इसी के साथ पारी के अंतिम गेंद पर 5वां विकेट गिर चुका है और इसी के साथ उनके निर्धारित ओवर समाप्त हो चुके हैं, निर्धारित 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं इसी के साथ। सो द इनिंग्स इज अप फॉर टीम रूफटेक and they started well and finished very well with 40 for the loss of 5 wickets in the stipulated 5 overs and they set a victory target of 41 for Sarvagni Urva and 41 runs. Sarvagni Urva have to score with the required run rate of exactly 8.20 runs per over in their stipulated 5 overs with the help of 10 wickets. They have to score for victory to qualify for the mega final of this competition। 41 रन बनाने, 41 the target for them और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद। तो आइए सतीश, आपको आज दूसरी अंतिम बार बुलाते हैं फॉर द सेकंड लास्ट टाइम और 41 रनों का लक्ष्य। और मैं समझता हूँ पिछले मैच में सर्वाग्नि उर्वा ने 37 रनों का लक्ष्य का पीछा किया था और यहाँ पर 4 रन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर टीम रूफटेक के पास गेंदबाजी का लाइनअप उतना ही सशक्त है जितना एनएफसी उर्वा का था और मैं समझता हूँ कुछ विशेष रणनीति के साथ उन्हें इस वक्त बल्लेबाजी करनी होगी, खासकर आरंभिक बल्लेबाज तो यहां पर जयंत
खासकर जयंत का जहां तक सवाल है, उन्हें इस मैच में एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन देना होगा, क्योंकि जयंत ने पहले 2 मैचेस में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था। उसके बाद पिछले मैच में पहली गेंद पर उनका विकेट गिरा था बोल्ड आउट के रूप में। तो यहां पर उनको रुकना जरूरी है और उनके साथ जो भी सलामी बल्लेबाज उतरेंगे उनको भी यहां पर उनका साथ देना होगा और एक बेहतर शुरुआत में समझता हूं सतीश उनको मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है। और जहां तक टीम रूफटेक का सवाल है, मैं समझता हूं राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देना होगा अगर उन्हें 40 रनों के अंदर अगर रोक कर रखना है सर्वाग्नि उरुआ के बल्लेबाजों को। फिर कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा द्वितीय सत्र, द्वितीय इस पहले सेमीफाइनल मैच का बहुत ही रोचक होगा। क्यों सतीश? Exactly, Gopi. And just you are mentioning about the situation and the condition what Sarvangi cricketer has got in the in the quarter final. And in the quarter final, of course, they're chasing 37 to win the match. And one stage it looks like it's going to be very difficult when they lost the wicket of Jayan. But Ajay has played a sheet ankle role in that particular match and they won the match. So this cricket is all about Gopi, not an individual performance. It's all about the teamwork, isn't it? One and two, three players have to perform from the top order batsman is concerned, because the 6 or 5 overs format a game, there is not much of opportunity for the batters to perform. Only top orders bats getting that performance. That's very important here for top orders of Sarvangi cricketers have to perform. Just like you're mentioning about Jayant is out for duck in the previous match. So you have to talk with this bat because he started very well this tournament from the bat, and his appearance is so important. The experience is really counting here, and wait and see how these two opening batters will going to lay the foundation for Sarvangi cricketers. As far as winning perspective of this roof tech is concerned, I think his batter did the job. Now all up to the bowlers have to do the big job here for the victory. The first ball quite nicely played by Sujit. He's very cool and calm. That's the kind of the presence of mind is required here for Sarvangi cricketers. As Sujit, everybody knows is a very good striker of the ball, but sometimes the situation when the line of the delivery is too good, very difficult to hit the big shot, you have to deal with the singles, and Sujit did a fantastic job as he picked up a single. He rotated the strike, one without loss of any wicket. Coming back to this man, Salman. So far he's been outstanding in the bowling performance. He is the one responsible for roof tech in the semi-final, because every time he got a very good start from his bowling. And once again, as a condition, ask him to bowl very well, because they are in the semi-final, do or die situation here for both the teams, and both the teams desperately wanted to be in the finals of this prestigious BK Champions Trophy 2022. From the far end, Salman right above the wicket. Jayant, oh, lovely shot! No need to run for that. Ball is went like a bullet. No time for that fielder at square leg to react that stroke from Jayant, because the line is outside the line of leg stump, Gopi, but the flow of the bat, and I think the bat speed is so important, because Salman bowling very quicker delivery, so batsman having a little bit time to react to that delivery, and I think the flow of the bat comes into play in this particular cricketing stroke there from Jayant. A fantastic slog sweep coming into play, and he got that one right from the bat, right from the middle of the bat, and there is no protection has been given in the deep backward square leg and fine leg, and he got that one over the top, and he got a very important boundary here for Sarvangi cricketers. 5 without loss of any wicket. This time single-handed reverse sweep comes into play. Good piece of fielding, absolutely good piece of fielding there by the fielder. Little bit fumble, they're going for the second, chance of run out, and umpire Roland Pinto says that is a not out. So Sujit wanted a second run at once. Looks like it's going to be very dangerous, because Jayant is not interested. Might be a little bit fumble from the fielder, encouraging Sujit to come back for the second. But at last they're going against that one. Right, so good call from Jayant. There is no possibility of second run at all, and they just survive from that run out. Altogether, we are having a lovely competition between these two teams. They played a very good game of cricket in their first round, second round, and quarter final matches, and now they wanted to be in the final. They wanted to be in the final, and wait and see how Sarvangi cricketers will going to get that 40 runs in their stipulated 5 overs. So Salman from the far end, right arm over the wicket. So that lovely shot, beautifully driven, down to volley, long on boundary for 4 runs. You can't keep this man as a quiet for a long time, Gopi. He's a very good striker of the ball. Look at the way he's hitting the ball. Absolutely nothing much wrong with the line of the delivery. The line of the delivery outside the line of off time, but Sujit know exactly where he wanted to hit. There is a long on, but he hits that one wide of that long on, and he got the boundary there. That was a fantastic cricketing stroke indeed there from Sujit. Both the batter has got a very good positive start, and Salman first time looking in this tournament is very expensive.
This is a big difference, Gopi. Playing in first round, second round, quarter final, but in the semi-final, the handling the pressure is so important, and that's what Salman is really not effective in this particular match. So again, this is a frustration. This is a pressure straight away. It's very difficult to tackle in this under pressure situation against. The big crowd here in UCG ground. Actually, the Salman is a very young, talented bowler. You can understand what the kind of the emotion is going in his mind, and they are 11 already on the board without loss of 1 wicket. Sarvagni cricketers has got a flyer. They got a flying start here in the first over itself. They got 11 runs already. The time Sujit going for the big shot. They wanted a single chance of run out. This is not required. This is not required here for Sarvagni cricketers, but required for Rooftech cricketers. They wanted to back into this game strongly, but Sujit really not a good judgment of the run. He thought that Giant will going to respond for that single, but it's too late, seeing that Giant is not really moving at all in that particular delivery, and it is definitely must be very, very unhappy with himself, because he's looking pretty good, Gopi, and hit one boundary. After hitting one boundary, looks like the batsman a little bit desperation here is disappointed, because no one wanted to be back into pavilion, especially in the form of run out. It's definitely going to be a disaster for Sarvagni. बिल्कुल सतीश, चौका लगाने के बाद अगली गेंद पर जल्दबाजी कर बैठे, जैसा कि मैंने कहा था, और निस्संदेह रनआउट के रूप में आउट होना और अलग तरीके से आउट होने में काफी फर्क होता है। रनआउट के रूप में विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अलग तरीके के डिसमिसल अगर होता है तो बल्लेबाज की गलती की वजह से हो सकता है, और यहाँ पर रनआउट होने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन बल्लेबाज को होता है वो दूसरे तरीके से आउट होने में उतना फ्रस्ट्रेशन उनके लिए नहीं होता। तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है और मैं समझता हूँ यहाँ पर बाउंस बैक करने का मौका जरूर है गेंदबाज को। Absolutely, and Salman definitely wanted to bowl one good delivery in this over so that keep the batsman quiet. It's a lovely shot there from Ajay. He's a man in form. He's defending the ball right on the middle of the bat. Look at the fielding there from the fielder there, the deep long on. Outstanding fielding. What could be a certain couple of runs, and fielder there in the deep long off region quickly running across and denying the second from these two batters. The first over completed. After completion of first over, chasing 40 to win the match. They got 12 runs, Gopi. It's a good start. Absolutely good start. Even they lost the wicket of Sujit, but not really bothered about that, because they got to what they wanted in the first over. 12 runs. That means they have to get another 28 runs to win this match. 41 is the target, 29 to get in remaining 24 deliveries. Now difference Gopi coming down because of that first over. They got 12 runs. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर पहले ओवर में 12 रन बनाने के बाद हालांकि एक विकेट उनका जरूर गिरा है, लेकिन 12 रन बनाने में सफल, और जो दबाव यहाँ पर था 8.20 रन प्रति ओवर के औसत से बनाने के, उस दबाव को काफी हद तक कम हो चुका है। अब कंपैरिजन पर आया जाए तो 29 रन बनाने 4 ओवर में, और आस्किंग रन रेट कुछ हद तक उतर कर आ चुका है 7.75 रन पर ओवर, और एक बेहतर ओवर अगर इस ओवर में 8 या 10 रन अगर बटोरते हैं सर्वग्नि उरुआ के बल्लेबाज, तो मैं समझता हूं सर्वग्नि उरुआ इस मैच में पूरी तरह आ सकता है। Exactly, Gopi, but at the same time, Rooftech wanted to back into this game very quickly, because this is the second over of the power play. In this power play over, they wanted to restrict the batsman from the big strokes. Even they doesn't want to concede some big runs in the second over of the power play. Wait and see. 12 runs from the first over. That means Sarvagni cricketers, they got a positive start from the opening batter. Now, Ajay, hero of the previous match. What an innings he played in this previous match. It's been he's played out of his skin, and one of the best innings he played of his life. And now, once again, he has to perform from his bat if his team wanted to be in the final of this BK Champions Trophy. Here is the first ball, right arm over the wicket, beautifully bowled. And this time, Ajay not quite able to get the timing behind that one, but he's well behind the line of the delivery. Pushes that one down to point region for a mid-off region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 13 on the board. 13 for the loss of 1 wicket. Mohammad so far is really got a good tournament from his bowling, and now every time when he is coming in the power play overs, is very effective. Especially that the Safwan is a bowler who's coming as an opening bowler for the side in the first 1 or 2 matches, but afterwards the Mohammad has been introduced to bowl that power play overs from the commentary box, and right arm over the wicket, bowls this Giant. Look at that one, beautifully played on right in the gap towards the deep backward square like this. Lot of work here has to be done by the deep fine leg fielder before he's run across towards the deep mid wicket region. The ample time for the batters to complete that couple of runs. Giant once again he quickly realizing that his appearance is so important for Sarvagni cricketers. How much as much as time he will going to spend in the middle,
the opportunity of winning chances here for working cricketers is more, and that's why both the batters realizing and they're playing as per the condition required. 15 for the loss of 1 wicket. Mohammad from the commentary box end. Right up over the wicket with a short run up. Jayant this time appeal for leg before wicket, but ball is definitely going down the leg stump. No question at all in that occasion. Leg by called by umpire. But this time a really clever thinking by Mohammad, seeing that Jayant looking for the premeditated switch it. Then he's just bowled a slower off cutter. And that ball is doing too much. That's why umpire not interested to raise his finger. Rightly so. Good decision coming from umpire Roland Pinto. 16 without loss. 16 for the loss of 1 wicket. The over number 2 in progress. 41 is going to be a target. That means they have to get another 25 runs to win this match. This is the over number 2 in progress. Mohammad from the commentary box and right arm over the wicket to Ajay. Ajay went for the big shot. What a delivery. This is a peach of the delivery. This is the one of the best delivery I must say in this tournament. That ball is nicked back from long way. This is a sharp incoming delivery, I must say. The wickets of Ajay looks like he himself dragged the ball into the stumps or not. I want to see in the replay whether the ball is taken that much of turn or a batter himself dragged the ball into his stump. No, I don't think the bat is not involved, but this is a turn. This is a beautiful delivery, Gopi, and this is a big wicket for Roof Tech, isn't it? The danger man, Ajay, the hero of the previous match, is back into payment. That wicket definitely will go into galvanize the level of confidence of Roof Tech. बिल्कुल सतीश, और निस्संदेह बेहतरीन ऑफ कटर गेंद थी. गेंद टिप्पा खाने के बाद इतनी ज्यादा घुमाव टर्न ली कि अजय इस टर्न को समझ नहीं पाए और उनका विकेट गिर चुका. और निस्संदेह ये विकेट उनके लिए बिग बूस्ट साबित हो सकता है, क्योंकि अजय ने पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था और यहां पर उनका विकेट जल्दी उखड़ने की वजह से यहां पर सर्टेनली निश्चित रूप से दबाव इस वक्त कुछ हद तक सहवाग ने उर्वा के बल्लेबाजों पर आ चुका है और इस दबाव को इस वक्त उन्हें बढ़ाना है और डॉट गेंदे फेंकने हैं और चंद विकेटें उखाड़ने हैं और देखना यह है कि वे अगले गेंदों में क्या करते हैं. फिलहाल इस वक्त जरूरत है सर्वाग्नि उर्वा को एक पार्टनरशिप की. अजय का विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव इस वक्त क्रिएट हो चुका है उस दबाव को मिटाना है, खासकर क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों को. Absolutely, Gopi. The left-hand batter came into middle. Shawan came into middle. This is handy for any team when you're having a left and right combination. Not as much of easy for the bowler to change the line every time the strikes are rotating. So that wait and see how this. Oh, one more wicket! One more wicket here for Mohammad. What a game he's having in this big semi-final. What a great 2 deliveries. This is a quite different one, Gopi, compared to the previous delivery. This is a half cutter, isn't it, for the right-handed batsman. This time he bowled a leg cutter. Certainly it's a off cutter for the left-handed batsman because he's a left-hander. So 2 different deliveries and 2 different batters back into pavilion, left and right, and 2 magnificent delivery for Mohammad. बिल्कुल परिवर्तन के तौर पर लेग कटर गेंद फेंकी थी और जैसा कि आपने फरमाया सतीश, लेफ्ट हैंड के लिए ये ऑफ कटर गेंद थी और पिछले गेंद के मुकाबले पिछली गेंद टिप्पा खाने के बाद ज्यादा रेस होती हुई अंदर की ओर आई थी. ये गेंद कुछ हद तक धीमी गेंद थी लेग कटर और बल्लेबाज इस गेंद पर पहले ही स्ट्रोक खेलना चाहते थे. ऐसा कहना भाई जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली और गेंद आई कुछ देर से, फलस्वरूप गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद कुछ हद तक घुमाव लेती सीधे मिडल और ऑफ स्टंप पर टकराई. तो 2 विकेटें यहां पर गिर चुके हैं अजय और श्रवण के लगातार 2 गेंदों में और इन 2 गेंदों की बदौलत अब मैं समझता हूं रूफ टेक इस मैच में आ चुका है और गेंदबाज इस अपने टीम को इस मैच में वापस ला चुके हैं. Absolutely, Gopi, that is a 2 magnificent deliveries which is really jagging back into the batsman. One is the right-handed batsman, Ajay cleaned him up, and next delivery itself the left-handed batter Shawan back into pebble. Now he's on hat-trick. Now he's on hat-trick. If you're able to get the hat-trick, he will going to get 1,000 cash prize from Roof Tech. Sharik of Roof Tech announced that 1,000 rupees for Mohammad for the hat-trick. Now, Dhanraj is on strike now. Can he able to deny this hat-trick? Mohammad, right up over the wicket. Beautifully bowled. Excellent delivery. But in fact, under of the line of the delivery is outside the line of off-stamp. Fantastic over there for Mohammad. Absolutely great over, Gopi. Just I think it's 4 runs coming from that over. And they got 2 valuable wickets. The wicket of Ajay and the wicket of Shawan, I think, because of 2 wickets, even though they got a flying start in the first over, and Roof Tech, the second over, which is belongs to Roof Tech, Mohammad really opened the gate here for Roof Tech in this particular over. बिल्कुल सतीश, इस ओवर में बेहतरीन कमबैक मोहम्मद ने की है. इस वक्त 2 विकेटें सिर्फ 4 रन प्रदान करते हुए 2 बहुमूल्य विकेटों को लगातार 2 गेंदों में प्राप्त करने में सफल अजय और श्रवण का और इस ओवर की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा इस मैच में रूफ टेक वापस आ चुका है. और अगर इक्वेशन पर नजर फिराया जाए तो 25 रन चाहिए, 18 गेंदें बाकी. आस्किंग रन रेट अब जा पहुंचा है 8.33 रन प्रति ओवर. द आस्किंग रन रेट इज नाउ गॉन अप एग्जैक्टली 8.33 रन पर ओवर. 25 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज
और 7 विकेटें यहाँ पर सुरक्षित। और तख्ता कुछ हद तक इस मैच में भारी हो चुका है मोहम्मद की बेहतरीन गेंदबाजी के बदौलत, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है। खासकर जयंत इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और जयंत जितना ज्यादा यहाँ पर टिकेंगे उतना उनके लिए, उनके टीम के लिए बेहतर होगा, सर्वाग्नि उर्वा के लिए बेहतर होगा। और मैं समझता हूँ जयंत की उपस्थिति पिछले अगले 2 ओवर में उनके लिए बेहद जरूरी है और देखते हैं क्या होता है। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, सफवान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अर्बन होम्स एंड की ओर से, और फील्डिंग में यहां पर जमावट चलती हुई और निस्संदेह अंडर फ्लडलाइट एक सुंदर सा नजारा हमें यहां पर दिखाई देता हुआ और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2022 अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ मिस्टर उदय पुजारी, फ्रेंड्स बिरुवेर, प्रेसिडेंट फ्रेंड्स बल्लाल बाग, बिरुवेर कुडला रजिस्टर्ड अशोक नगर वुमेन्स विंग ने इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया और एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट B4 24x7 चैनल पर यह श्रृंखला एक्सक्विजिट लाइव का टेलीकास्ट इस वक्त की जा रही है यूट्यूब के जरिए। और कुल मिलाकर एक बेहतरीन सेमीफाइनल मैच हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत। इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत ये पहला सेमीफाइनल मैच और विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। तो गेंदबाज इस वक्त सफवान, और गेंदबाजी पर सफवान को इस वक्त हटाया गया है, खादर को बुलाया गया है, सफवान को यहां पर गेंदबाजी से हटा दिया गया है। खादर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और जयंत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 25 टू गेट नाउ फ्रॉम 18 बॉल्स और ओवर की पहली गेंद लेकर खादर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज यहां पर सामना करने के लिए तैयार। तो 4 फील्डर एज यूजुअल इस श्रृंखला के नियमानुसार 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और ओवर की पहली गेंद लेकर खादर की गेंद जयंत के लिए, इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। और 17 गेंदें बाकी, 24 रन चाहिए विजय के लिए। निस्संदेह जहां तक विजय तक पहुंचने का सवाल है, ये जोड़ी को यहां पर टिकना होगा, धनराज और जयंत की जोड़ी को, अगर उन्हें मंजिल तक पहुंचना है तो। लेकिन अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी और न सिर्फ उन्हें साझेदारी निभानी है बल्कि कुछ हद तक तेज साझेदारी निभानी होगी, सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाना होगा और स्ट्राइक रोटेट करने होंगे। और देखते हैं अपने इस जो कमी यहां पर नजर आ रही है उस कमी को क्रीज पर मौजूद हुए दोनों बल्लेबाज किस तरह यहां पर पूर्ण कर पाते हैं। गेंदबाज खादर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए धनराज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। धनराज ने गेंद को स्वीप कर दिया, इस वक्त रिवर्स शॉट के जरिए गली की दिशा में गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी था, इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। और जयंत काफी सोच विचार इस वक्त करते हुए क्रीज पर कि किस तरीके की रणनीति इस वक्त अपनानी चाहिए बल्लेबाजी पर। वो जानते हैं उनकी उपस्थिति उनके टीम के लिए इस वक्त बेहद जरूरी है और यहां पर वो सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के गेंदबाज खादर की ओवर की अगली गेंद का, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज जयंत के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। जयंत के लिए ये गेंद उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, धनराज वहीं पर रुके रहे। और यहां पर देखना यह है कि कौन से बल्लेबाज पेविलियन वापस लौटेंगे। तो धनराज को इस वक्त लौटना होगा, रन के लिए इस वक्त दौड़ पड़े थे जयंत, लेकिन धनराज 2 कदम आगे आए, वहीं पर टिके रहे। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था और आसान सा रन आउट स्ट्राइक करंट पर होता हुआ और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। और यहां पर 3 विकेटें 7 या 8 गेंदों के अंतराल में गिर जाने के बाद अब सीधा दबाव यहाँ पर सर्वाग्नि क्रिकेटर्स उर्वा के ऊपर दिखाई देता हुआ और धीरे धीरे रूफ टेक के गेंदबाज इस मैच में वापस आते हुए। पहले ओवर में 12 रन बने थे 1 विकेट खोने के बाद प्रदीप के रूप में, तब ऐसा लग रहा था सर्वाग्नि उर्वा के बल्लेबाज यहां पर छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में बेहतरीन कमबैक करते हुए मोहम्मद ने सिर्फ 4 रन प्रदान करते हुए 2 विकेटें प्राप्त किए और उसकी बदौलत दबाव कुछ हद तक बढ़ गया सर्वाग्नि उर्वा के ऊपर। अब तीसरे ओवर में यहां पर धनराज का विकेट रनआउट के रूप में गिर चुका है, तो निश्चित रूप से इस वक्त दबाव और उनके ऊपर बढ़ चुका है। नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद प्रदीप और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं जयंत और इस वक्त प्रदीप सामना करने के लिए तैयार। खादर 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं। अर्बन
होम सेंट की ओर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रदीप के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद खादर की गेंद को इस वक्त उछालना चाह चूके बेहतरीन गेंदबाजी कुछ हद तक उछाल लेती हुई और स्वयं यहाँ पर बल्लेबाज गेंद को समझ नहीं पाए कि कुछ हद तक टर्न कैसी ली गेंद अंतिम क्षण में और आखिरकार इस बीच रन नहीं मिला। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता नजर आता हुआ उनके ऊपर। 23 रन अभी भी चाहिए, स्टिल 23 टू गेट नाउ फॉर विक्ट्री एंड 2 ओवर्स टू गो आफ्टर दिस वन। गेंदबाज खादर की गेंद बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर रहा। हालांकि गेंद को जमीन के सहारे जरूर फेंका था उन्होंने लेकिन दिशाहीन गेंद और इस बीच वाइड का इशारा यहां पर हो चुका है और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और निस्संदेह एक बेहतरीन माहौल यहां पर छा चुका है, क्रिकेट के लिए पर्याप्त माहौल। दर्शकों की संख्या अब काफी हद तक बढ़ चुकी है, मैदान के चारों ओर दर्शक इस वक्त नजर आते हुए। पहला सेमीफाइनल मैच इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ और खादर इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाल दिया है, डीप मिड विकेट पर गेंद जाती हुई, थोड़ी सी वहां पर क्लीन कलेक्शन जरूर हुई, थोड़ा सा दौड़ लगाना पड़ा लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। गेंद को थोड़ी सी सफल होते हुए ऑन साइड पर उछाल दिया था। डीप मिड विकेट पर जो फील्डर थे उन्हें बाईं ओर दौड़ जरूर लगाना पड़ा लेकिन सही तरीके से गेंद को वो रोकने में सफल। और इससे पहले कि वो गेंद को लौटाएं स्टंप सेंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ 21 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन और खादर एक बार फिर से तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए और इसी के साथ मैं अब कहूंगा दे आर बैक इन द मैच। स्कोरबोर्ड इज नाउ जंपिंग अप टू 27 विद दैट 6 और किस तरीके से इस स्ट्रोक को खेला था, शफल होते हुए गेंद की लाइन को भापते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ उछाला। देखिए किस तरीके से उछाला था, डीप मिड विकेट के सीढ़ियों पर गेंद टकराती हुई और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। अब मैं इक्वेशन देखना चाहूंगा, 12 गेंदें बाकी हैं, 14 रन और चाहिए और सतीश निस्संदेह ये छक्का प्रदीप का अंतिम गेंद पर जो लगा है लगभग मैं कहूंगा इस सर्वाग्नि उर्वा को इस मैच में वापस ला चुका है। Exactly, Gopi. What a fantastic struck that from the blade of Pradeep, then shuffled across the line of the delivery and he got that one right from the middle of the bat and just clearing the fielder in the mid-wicket division, and that was outstanding cricketing stroke, Gopi. And that is the benefit of playing your home condition, Gopi. There know exactly the kind of cricket is required in this condition, know exactly how the pitch will go into react and what kind of cricket you have to play, and that was the benefit here for Sarvagni cricketers. They're playing with the home condition and with the support from of course the local they're the local teams, they're getting a lot of support as well. But still, Gopi, 14 to get 12 balls, the job is not yet over. Of course the pressure is almost coming down here. 14 to get from 12 balls, now all up to these 2 batters, how well they manage to play remaining 2 overs for Sarvagni cricketers. As coming back to Roof Tech cricketers, after conceding that 6 in the last delivery, looks like this match now evenly poised. And the Roof Tech also got a chance here to win the match, and even Sarvagni cricketers definitely wanted to win the match as well. But we want to see this match once again going to be a nail-biting finish. Exactly, सतीश। 2 क्वार्टर फाइनल मैच, बेहतरीन मैच हमें देखने को मिले जो अंतिम ओवर तक आए और ये मैच भी लगभग अंतिम ओवर तक आएगा ऐसी संभावनीयता यहाँ पर लगती है। और पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को सफल होते हुए ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। 13 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी, 13 टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स। और प्रदीप नाउ बैक ऑन स्ट्राइक और मोहम्मद को गेंदबाजी पर लगाया गया है। मोहम्मद पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था, सिर्फ 4 रन प्रदान करते हुए 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए थे। मैच को रूफ टेक की ओर पलटा था। एक बार फिर से मैच रूफ टेक के हाथों से फिसल चुका है और इस ओवर में देखना है कि एक बार फिर से यहां पर मोहम्मद मैच को उनके टीम की ओर पलट पाते हैं या नहीं। और इस बीच गेंदबाज मोहम्मद इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए, गली कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद, मिड विकेट शॉट फाइनल है और प्रदीप स्ट्राइक पर आ चुके हैं, अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार प्रदीप के लिए विद अ परफेक्ट ऑफ कटर एंड ही गॉट द रीड ऑफ प्रदीप। और इसी के साथ मैं कहूंगा एक बड़ी सफलता वो हासिल कर चुके हैं।
परफेक्ट ऑफ कटर गेंद थी, प्रदीप गेंद को उछालना चाहते थे, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए। हैव अ लुक एट दिस, किस तरीके से देखिए ये यहां पर हुआ था, क्रॉस एंगल पर दिखाया जा रहा है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि गेंद कितनी टर्न ली थी। देखिए यहां पर गेंद सीधे टकराए और इस विकेट की बदौलत मैं कहूंगा रूफ टेक एक राहत भरी सांस उनके कप्तान यहां पर लेते हुए। प्रदीप का विकेट गिर चुका है और एक बार फिर से दबाव क्रिएट हो चुका है सर्वाग्नि उर्वा के ऊपर। सतीश Exactly, Gopi. Once again, they're exploiting the condition very well, Mohammad. Because of the bowling under the floodlight, especially the bowler like Mohammad, definitely they will going to get a lot of advantage. Because the ball is really skidding out here. A lot of dust we can see in the pitch, and they're getting that benefit. Look at the turn that is getting from that delivery. The 3 wickets he got a massive turn in the ball, and that's why very, very difficult for the batter to judge the turn of Mohammad. Now this man is going to be very key here. How well he managed to handle the pressure. बिल्कुल सतीश, अंडर फ्लडलाइट के हालातों का यहाँ पर फायदा उठाते हुए मोहम्मद एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, गेंद को काफी हद तक टर्न करते हुए इन अंडर फ्लडलाइट्स में पिच में जो कुछ हद तक इस वक्त पिच पूरी तरह मैं समझता हूं काफी हद तक इस वक्त चूर हो चुका है और उस क्रैक से कुछ हद तक दरार पड़ चुके हैं, उस दरार का इस वक्त फायदा उठाते हुए ऑन द राइट स्पॉट गेंद को पिच कराते हुए, टर्न कराते हुए और यहाँ पर 3 बहुमूल्य सफलताएं वो अर्जित कर चुके हैं और इस पिच का भरपूर फायदा उठाते हुए अंडर फ्लडलाइट्स हालातों में। और इस बीच 1 रन बन चुका है, 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 3 गेंदे फेंके गए, 9 गेंदे बाकी हैं और रन से चाहिए 12। 12 to get from 9 deliveries. The pressure is now building up on both sides. विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। जयंत इस वक्त उम्मीद की किरण नजर आते हुए सर्वाग्नि उर्वा के लिए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और मोहम्मद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 3 बहुमूल्य सफलताएं वो अब तक अर्जित कर चुके 1.3 ओवर में। अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जयंत के लिए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, चूंकि पूरी तरह गेंद को स्विंग करना चाहते थे और आखिरकार बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बचते हुए बेहतरीन गेंदबाजी, हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता नजर आता हुआ। 8 गेंदे बाकी और रन चाहिए अब 12। 12 to get now from 8 deliveries. मोहम्मद अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, विकेट कीपर चुके, हालांकि गेंद उनके पास ही था लेकिन उन्होंने बाबा की गेंद शायद कुछ दूर गई है और जब तक उनकी नजरें गेंद पर पड़ी बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। It's 30 for the loss of 5 wicket. 7 balls now remaining in their innings and 11 runs more now they have to score for victory. What a fantastic over progressing here from Mohammad. एक बार फिर से वो साबित कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि वो बेहतरीन गेंदबाज क्यों है इन हालातों में। सिर्फ 3 रन अब तक इस ओवर में वो प्रदान कर चुके हैं, एक विकेट भी उन्होंने प्रदीप का प्राप्त किया है और देखना यह है कि उनके कोटे की अंतिम गेंद पर वो क्या करते हैं। और जहां तक सवाल है सर्वाग्नि उर्वा का, यहां पर बंधनों को तोड़ना है उन्हें, कम से कम एक करारा स्ट्रोक लगाना होगा चौके या छक्के के रूप में। अगर वो स्ट्रोक चौके या छक्के के रूप में परिवर्तित होता है तो निस्संदेह सर्वाग्नि उर्वा इस मैच में वापस आ सकता है, लेकिन मौका जरूर है उन्हें इस मैच में वापसी करने का। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई रात के 9:15 यहां पर बच चुके हैं। संघर्ष की तीव्रता अभी भी इस देर रात में उसी हद में बरकरार और इस ओवर में अंतिम बार मोहम्मद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद को उछालना चाहा, विकेट कीपर चुके, गेंद पहुंची इस बार थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन इस बीच मिलेगा और 31 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड 4 ओवर्स कंप्लीटेड। 4 ओवर की समाप्ति सतीश, 31 रन बन चुके हैं, 10 रन टू स्कोर फ्रॉम लास्ट ओवर। और मैं समझता हूं 12 गेंदों पर जब 14 रन बनाने थे तब तख्ता यहां पर भारी लग रहा था सर्वाग्नि उर्वा का, लेकिन उसके बाद इस ओवर में जो कमबैक किया है मोहम्मद ने उसकी बदौलत इस ओवर की समाप्ति के बाद तख्ता इस वक्त रूफ टेक का भारी लगता हुआ। 10 रन चाहिए अंतिम ओवर में, तख्ता जरूर भारी लग रहा है रूफ टेक का, लेकिन मैं समझता हूं अंतिम ओवर में बाउंस बैक करने का मौका पूरी तरह है। Both opening batters hit 1 boundary each and now all up to this man Safwan. He need to handle the pressure. Of course he's not depending a 10. I think it's a too lot. Depending a 10 runs in the final overs, a bowler like Safwan, he can defend his 10 runs because he's got a potential. He got a variety. He got a pace in his bowling as well. But
At the same time, look at the batters are in the middle. Both the batsmen has got a potential of hitting even good deliveries. They can hit the ball a big shot, and especially when batting in this end, Gopi, it's for a better chance hitting the clearing ground, especially in UCG ground. And wait and see the 10 runs required from the last over. The ball is in the hands of Safwan, and Karthik will going to take the strike. What an interesting game is going on here. Safwan, right arm over the wicket, using his feet. Wicket-keeper not really up to the mark. Wicket-keeper is not really up to the mark. The frustration here for the bowler and the captain of Rooftech, because Jayant back into strike, Gopi. It's going to be a big mistake, I must say, because they wanted to keep this man Jayant out of the strike as much as possible in the final over. But one mistake there from the wicketkeeper behind the stump. Jayant back on the strike now. 10 required from 5 balls. Because 9 required from 5 balls. Anything can be happen. Anything can be possible in this particular over, because Jayant is a kind of batter who is known to be the finisher. He's a very good finisher of the match as well, and he's a very clinical striker of the ball. Once he hits the ball, he hits the ball as clean as a whistle. So that is very important for Safwan to keep the line and length. You need to bowl very good line and length here for Jayant, and wait and see how Jayant will going to contribute from this remaining 5 overs. All eye in the eye, of course, goes into the 2 players. They're not really watching anyone. The spectators, even those who are viewers watching here, they are having a high with the batters, and supporters of Rooftech, they got a high on the bowler, the Safwan. And will it going to be a bowler? Will it going to be a batter? It's going to be more interesting, and lot of changes in fielding as well. The bowler is not satisfied with the field. The wicketkeeper and captain is not satisfied with it. They're taking a lot of time. That's the part of cricket, Gopi. It's a high voltage game. They know exactly one bad delivery can change the complexion of this match. That's why taking there's a lot of time to bowl that last 5 deliveries. Safwan back is the bowling mark. Jayant is on strike. 9 required for the victory for Sarvangiri to enter into the final, and 5 good deliveries required for Rooftech to enter into the final. Who will going to enter the final? Wait and see. Safwan, right arm over wicket. Jayant went for the improvisation, but not really get that one right from the middle of the bat. Just a single. Now little bit relaxed. Now it's a little bit relaxed here for the captain of Rooftech, because Jayant is out of the strike. But Tilak is back on strike. Can Tilak able to deliver? It's going to be up to the mind game of both the batters. Tilak, will it go in for the big shot himself? Will it going to pick the single and give the strike to Jayant? It's definitely the question raising here. But I think Tilak certainly wanted to go for the big shot. No other option at all. 8 to get from 4 balls. From the far end. Right arm over the wicket. Safwan. So far is so good. Right arm over the wicket. Using his feet. Wicketkeeper once again fails to collect the ball. They got a single. Now, 3 very good deliveries, 2 mistakes from wicketkeeper behind the stump. So far, I think Safwan is being the young player, but he's definitely handled the pressure here. He bowled 3 fantastic deliveries. Now, job is not yet over. He has to bowl another 3 good deliveries. But here is Jayant. He's just waiting for the bad delivery. He just wanted to clear the ground. And now 3 balls remaining. They have to get 7 runs to win the match. One big shot can change the complexion of this match. Look at the crowd here. Absolutely lot of whoos and goes around the field. The supporters of Sarvagni suddenly wanted their team into the final. Even the supporter of Rooftech wanted their team into the finals. But job is not at all from the batsman. Job is not at all from the bowler. The 3 balls remaining and 8 runs required for the victory. Just like what we watched yesterday's T20 match against West Indies, when 24 required from 4 balls, 2 consecutive 6 from the bat of Powell, and now it's a 1-6 must required here for the bat of Jayant if they wanted to win the match. So Safwan. Right arm over the wicket to Jayant. Once again he trying for the reverse save. Right in the gap. Ball running down to deep. Ball backward point revision ball. The long chase here for the fielder. And just inside the boundary they are able to stop that one. But here the batter is going for the 3rd run as well. They completed. They completed 3 valuable runs. Now score jumped into 37. Now 4 runs required from 2 balls. 3 for tie. What a great match, Gopi. Absolutely magnificent. Now look at the Jayant. The 2 times he failed to make a contact when he was trying for the reverse sweep, didn't got enough bat on, but still he was trying for the reverse stroke. This time he got that 3 valuable runs. It's really valuable, isn't it, in this situation? बिल्कुल सतीश, और किस तरीके से बेहतरीन तरीके से गेंद को रिवर्स शॉट खेला था। हालांकि काफी थके मांदे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और गेंद को खाली क्षेत्र चुनते हुए बैकवर्ड 3rd मैन और कवर पॉइंट के बीच से निकाला था, और निस्संदेह अंडर प्रेशर यहाँ पर एक बेहतरीन पारी जयंत खेलते हुए। अब 2 गेंदें बाकी है, 4 रन। जयंत ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, और ऐसा कहना पड़ेगा अब स्ट्राइक बल्लेबाज के हाथों में आ चुका है। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त बल्लेबाज मौजूद कार्तिक, और सफवान के हाथों में गेंद, और ऐसा कहना पड़ेगा अब 2 गेंदों में 4 रन बनाने ही है। 3 रन बनाते हैं तो टाई होगा।
और निस्संदेह अगर मैच टाई होता है तो टॉस के जरिए विजेता को निर्धारित यहाँ पर किया जाएगा। तो निस्संदेह एक बेहतरीन स्ट्रोक जयंत का विद ट्विस्टेड बैट, पानी का ग्रहण यहाँ पर करते हुए सतीश, और मैच के विजय का जहां तक सवाल है अभी भी मैं कहूंगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 at this situation. Exactly, Gopi. The match is evenly poised. Look at the crowd here. They're all there in the field. They want to see which team will going to win this match. But so far they're waited. But they have to wait for another 2 deliveries to see who will going to become the first team to enter into the finals of this Champions Trophy 2022. Fantastic day of cricket here. Now, 4 runs required, 2 balls remaining. So far, Safwan did a great job. No doubt at all. But the job is not yet over. Now, Karthik is on strike. Jayant is out of the strike. 2 balls remaining. 4 runs badly required here for Sarvagni cricketers to win this match. Safwan from the urban home stand. Right arm over the wicket, using his feet to the running hard, looking for the second. Jayant going for the second. In comes a throw, and ball missed the stumps. 2 runs in that ball. Now, what a game we are having here. 1 ball remaining, Gopi. 2 runs required. And what are you talking about? What your opinion about the effort from that fielder in that long off? It is not a really good throw, isn't it? Underarm throw. Actually, they have to put their 100% in this particular delivery. When it was, they have to restrict the batsman from the second run. But because of that poor piece of thinking by the fielder, they got a couple of runs. बिल्कुल, वो फील्डर जो लॉन्ग ऑफ पर थे सतीश, दौड़ कर आए जरूर तेजी के साथ, लेकिन थ्रो उन्होंने किया अंडरआर्म के जरिए। और यहाँ पर आपका 100% एफर्ट आपको देना जरूरी होता है जब अंतिम ओवर चल रहा हो और सामने वाली टीम को 2 गेंदों में 4 रन की जरूरत होती है। और यहाँ पर तो अगर इस मैच को टाई होता है, इस मैच टाई होता है तो सुपर ओवर यहां पर खेला जाएगा। इट्स गोइंग टू बी सुपर ओवर इफ द मैच नाउ एंडेड इन अ टाई। तो 2 रन अंतिम गेंद पर चाहिए। और यहां पर इस गेंद पर मैं कहूंगा सतीश एक बेहतरीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों ने दिखाई है। और खासकर जयंत जो कि डेंजर एंड पर दौड़े थे, इतने थके मांदे नजर आते हुए, लेकिन एक बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट इस गेंद पर उन्होंने किया है। फलस्वरूप अब उनकी टीम यहां पर विजय के द्वार पर खड़ा हुआ और निस्संदेह इस अंतिम गेंद को रूफ टेक को डॉट करना ही होगा अगर उन्हें इस मैच पे विजय दर्ज करना है। तो 2 रन अंतिम गेंद है और मैं अभी भी कहूंगा सतीश मैच बराबरी पर रुक चुका है। क्या होगा वक्त बताएगा और वक्त के साथ साथ आप आगे बढ़िए। Exactly, Gopind, especially in this particularly for the semi-final, this super over, because this is a very interesting game, isn't it? They doesn't want to go for the luck here. They wanted to play here cricket and play a fair cricket and go to the final. That's what they're good thinking. As 2 runs required. Last ball remaining, and Safwan of Roof Tech wanted to ball a dotted delivery, but Karthik wanted to get to 2 runs for his team so that they may be entering into the finals of this prestigious tournament. Here is the final delivery of the semi-final. Safwan got a ball in his hand. Karthik got a bat in his hand. He wanted a couple of runs. Safwan wanted to dotted deliveries. Pedal that one. They're going for the second. In comes a throw. Chance of run out. And the match is ended in a tie. Match is ended in a tie. And that was a fantastic performance from both the teams. The equal battle for the place in the final. And at last this match is ended in a tie. Now super over will go into play to choose the finalist of this prestigious BK Champions Trophy. We have to take the break, Gopi, because that much of pressure not only for the players but for you in the commentary box also. We've got a lot of pressure and we have to take a little bit short break. बिल्कुल सतीश, ना सिर्फ खिलाड़ी थके बल्कि हम भी काफी हद तक थक चुके हैं इस मैच में आंखों देखल सुनाने के लिए। तो खिलाड़ी के साथ हम भी ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे। विल बी बैक राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक व्हेन सुपर ओवर विल गोइंग टू बिगिन। थैंक यू, धन्यवाद।
ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ 3 ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 2 ಆಟಗಾರರು ಔಟ್ ಆದರೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. Welcome back for the super over. What a great match is going on here. Still the result is pending here as both the teams are battling hard for the place in the big final of this VK Champions Trophy 2022. So two batters came into middle. Very interesting to see that Sujit and Ajay came into bat to play the super over. Now the question raising here, one of the wicket taking bowler of Roof Tech, Mohammad, he's got a ball in his hand. Only 2 wickets. If the opposition team lose 2 wickets, it becomes all out. So we're very important to see that the Sarvagri cricketers not to lose 2 wickets, they becomes all out. They wanted to get some runs in 6 deliveries, and wait and see how Masood will go into ball here, and wait and see how 2 opening batter will go into bat here for Sarvagri cricketers. All are interesting here, and all there in the field. Here is a super over, first delivery. Right above the wicket, ball Sujeta, lovely shot down to long off region for an easy single. Just a single from the first delivery. 1 ball and 1 run. Now, the batter is rotated, strikes are rotated. Ajay came into strike now. Mahmood is the bowler. I want to see the fielding set here for Ajay. There is no protection has been given in the deep in the backward point. There is a fielder in the deep extra cover and long off in front of the wicket. And at square leg, one fielder at deep mid wicket, 1 fielder at deep long on, and 1 fielder at deep long off. Here is Mahmood. Right above the wicket. Ajay lofted that one. That is a high and handsome. Looks like that will going to be a 6. Oh, what a shot there from Ajay. That 6 definitely takes the match. This 6 will definitely going to take the match away from Roof Tech cricketers, because the super over hitting a 6, I think is a massive one. Absolutely massive one for Sarvagri cricketers. So what a game is having Ajay in this particular tournament. This is not an easy stroke to play in the book, I must say. He's a powerful striker of the ball, I must say. Hitting against the spin of Mahmood. Absolutely magnificent struck there from Ajay. Here is Masood, right arm over the wicket. Balls beautifully balled. Clean him up, Ajay. That was a big problem, Gopi. The previous delivery, he's in an aggressive frame of mind. Hit that one down to deep, wide is long on for a 6. And very next delivery, maybe he's changing his technique again. He wanted to push the ball. If you see that, Mahmood is a kind of bowler. When you wanted to play that one in a straight bat, it's a very difficult to judge because of his turn of the delivery. And that's what really happening. And the previous delivery, when he hit the ball, he played that one across the line of the delivery. When you try to play the ball off on the straight bat, he missed the ball completely, and Mahmood got a very important wicket. बिल्कुल पिछले गेंद पर छक्का लगाने के बाद इस वक्त रक्षात्मक तरीके की बल्लेबाजी अपनाई चाहिए थी. स्ट्राइक रोटेट करना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल से मैं समझता हूं सतीश अगली गेंद पर उसी तरीके का स्ट्रोक इस वक्त खेलना चाहता, क्योंकि गेंदें बाकी है सिर्फ 6 हैं, उसके बाद 4 गेंदें बचते हैं, तो आक्रामक स्ट्रोक ही वहां पर खेलना चाहता. लेकिन अजय के दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करना चाहा और एक बेहतरीन गेंद के जरिए मोहम्मद यहां पर विकेट उखाड़ चुके हैं. अब अंतिम विकेट बाकी, अगर ये विकेट गिरता है तो यहां पर ऑल आउट हो जाएगा. Exactly, Gopi. That's what Sarvagri cricketers have to think about here, and that's a sensible cricket. That was a sensible cricket there from Karthiki. You know exactly if he lose the wicket, then they were losing 2-3 deliveries of this super over, and it is going to be a big blow, and that doesn't want to see. Now, last 2 deliveries remaining of this super over, and Mahmood will go into ball that last 2 delivery. Right arm over the wicket. Shujit is the batter. Oh, what that one! Absolutely is a spectra wide. This is a spectra wide. 1+1, 2 valuable runs here for Sarvagri cricket. The first time watching that, the bowler started to feel the pressure, Gopi. This is the beauty of cricket. This is a super over, different ball game,
and after that one big hit came from the bat of Ajay, the level of confidence is really decreasing here from the bowler Mehmood. 10 for the loss of 1 wicket. The good score, the 10 from 4 deliveries. Still they have to play another 2 deliveries, but Mehmood wanted to bundle out. He wanted to bundle out, appeal for leg before wicket. There are a little bit shuffled across the line of the delivery, but ball is little bit going down the leg stage. At the same time, the bat is involved, so no question of leg before wicket. One more addition to total 11 for the loss of 1 wicket. The final delivery of the super over. Now wait and see what Sujit will going to do here. Wait and see what Mohammad will going to do here. Right over the wicket, top edge, ball will going to land very safely. They're coming back to the second. They made it quite easily in the end. Looking for the third as well, but very difficult to get. Now 13 is the total score of Sarvagni cricketers in the super over, and they set a target of 14 runs to win the match. Will it going to be a big one, Gopi? What do you think about this? The 13 runs or 14 to get from super overs, and just want to see that who will going to bowl that super over for Sarvagni cricketers. This is a really will tells the result of this particular super over match, because the bowler is going to be very key here for Sarvagni cricketers. They have to chase one good bowler who can restrict the opposition not to get that 14 runs. But do or die situation here for Rooftech, because they wanted to do. Of course, they failed to contribute from the ball, Masood, but batter have to adjust that one, that the failure of that bowler. They have to get 14 runs desperately if they wanted to win the match, and they wanted to become the first finalist of this PK Champions Trophy. बिल्कुल सतीश, छक्का अंतिम ओवर में लगाया था सुपर ओवर में अजय ने, और जहां तक आपने फरमाया 14 रन बनाने हैं तो किस तरीके की रणनीति यहां पर अपनानी चाहिए। मैं समझता हूं राइट फ्रॉम दी फर्स्ट बॉल ब्लाइंड स्ट्रोक इस वक्त खेलने होंगे उन्हें, और मैं समझता हूं जिस तरीके का अजय का छक्का लगा था उसी तरीके का स्ट्रोक अगर उनके बल्लेबाज लगाते हैं, और उनके कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो काबिलियत क्षमता रखते हैं कि ऐसे तरीके के करारे स्ट्रोक्स वो लगा सकते हैं, और 14 रन बनाना उतना मुश्किल नहीं है लेकिन उतना आसान भी नहीं है। और game. He is the key player, Gopi, for Rooftech. He wanted to talk with his bat. He wanted to desperately, one stroke, he wanted to clear the ground. Then only the chance here for Rooftech to enter into the final. But question raising here, Gopi, who will going to be the bowler for Rooftech? I think for Sarvagni cricketers, they have to thinking about the one bowler who can bowl along the carpet rather than going for picking up the wickets. I think they wanted to see the economical bowler who can be very, very effective in this particular super over. And wait and see. The lot of discussion is going on here. The two batters came into middle, Tanveer and Isam. Both the players, Gopi, they are very experienced. They got experience playing in big teams like Young Friends Surva. They are representing regularly for Young Friends Surva. So that it might be, I think, is a very good contest between bat and ball. And Sushant has got a ball in his hand. They are not asking Ajay to bowl. They are not asking some bowlers in their side. They are bowling along the carpet. But they are asking the bowler like Sushant to bowl that the super over. And I think it's going to be a little bit gamble. But I think the captain must be knows that what is the strong point of Sushant here. And wait and see how Tanveer will go into bat here. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर सुशांत को गेंदबाजी पर उतारकर कुछ हद तक गैम्बल जरूर खेला है, लेकिन ये गैम्बल अगर रंग लाता है तो निस्संदेह यहाँ पर सर्वग्नि क्रिकेटर्स उर्वा विजय रहेगा। और जहाँ तक रूफटेक का सवाल है, मैं कहूंगा तनवीर के हाथों में इस वक्त रूफटेक का भविष्य, और तनवीर के हाथों में वो काबिलियत, वो क्षमता मौजूद है कि वो गेंद को सीमा रेखा के पार भेज सकते हैं। और देखते हैं क्या होता है। 14 टू गेट फ्रॉम सुपर ओवर, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई। पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सुशांत, गेंदबाजी करते हुए तनवीर के लिए दाहिना तो ऊपर विकेट, ये गेंद लक्ष्य पर आती हुई गेंद इस वक्त निकल चुकी है फाइनल की दिशा में काफी लंबा दौड़ लगाते हुए, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। मेरे ख्याल से डिफ्लेक्ट किया था लेग पर आती हुई गेंद को, और खूबसूरती के साथ गेंद को फाइन निकालने में सफल तनवीर चौके के लिए। और जहां तक का सवाल है, इस वक्त चौका तनवीर लगाकर अपने टीम के उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं। अगर इस मैच को रूफटेक जीतता है तो 2000 रुपए का नकद पुरस्कार यहां पर घोषित किया गया है। और मैं समझता हूं पहली गेंद पर तनवीर ने चौका लगाया तो सहज रूप से इस वक्त दबाव गेंदबाज के ऊपर आ चुका है। क्यों सतीश? Exactly, Gopi. Look at the stroke there from Tanveer. You know exactly where the fielder is. Fine leg inside the ring. So he just deliberately shuffled across the line of the delivery. If you get a little bat onto that, that ball is going to travel because it was a lightning fast outfield and usage kick out, and he got a very important boundary.
बिल्कुल देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। सुशांत इस वक्त तैयार, तनवीर के लिए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए तनवीर के लिए यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था और इस बीच बाई का इशारा अंपायर द्वारा डेलिकेट गेंदबाजी करते हुए पूरी तरह सफल होते हुए इस वक्त देख लिया था सुशांत ने तनवीर को और गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर उन्होंने फेंकी। अब 2 गेंदें हो चुके हैं, 5 रन बन चुके हैं, 9 रन चाहिए, 4 गेंदें बाकी और निस्संदेह यहां पर मैं कहूंगा सतीश मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं ईशान, लंबे कद के खिलाड़ी। लेकिन मैं समझता हूं ईशान के पास वो काबिलियत, क्षमता, एबिलिटी है कि वो चौका या छक्का लगा सकते हैं और यहां पर सुशांत का जहां तक सवाल है मैं कहूंगा सुशांत के पास भी वो एबिलिटी है कि बल्लेबाजों को रोक कर रखने की क्षमता वो रखते हैं और देखना यह है कि यहां पर बचे हुए 4 गेंदों में उनकी पारी में क्या होता है। 2 गेंदों पर 5 रन बन चुके हैं, 4 गेंदें बाकी, 9 रन चाहिए, 8 फॉर टाई, 9 फॉर विन। ईशान इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और ईशान के दिमाग में इस बार ये कश्मकश चल रही है कि किस तरीके की स्ट्रोक इस वक्त अपनाई जाए। गेंदबाज सुशांत के हाथों में सिर पर एक कश्मकश चल रही है कि किस तरीके की गेंदबाजी इस वक्त की जाए और देखते हैं क्या होता है। अगली गेंद पर दाहिने हाथों पर विकेट सुशांत के लिए, गेंद को इस वक्त मोड़ दिया है बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, वहां पर फील्डर दर रहा थोप हो जाए, दूसरा रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मात्र रन, ओनली ए सिंगल एडेड, 6 विदाउट लॉस और गेंद बाकी है 3, रन से चाहिए 8 और मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है और सबसे अहम बात यह है सतीश की तनवीर बैक ऑन स्ट्राइक और यहां पर सुशांत को एक ऐसा प्रबल अस्त्र इस्तेमाल करना होगा गेंदबाजी में तनवीर को खामोश रखने के लिए और देखना यह है कि तनवीर किस तरीके का अस्त्र बल्लेबाजी में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इस अगली गेंद पर 3 गेंदें बाकी है, 8 रन चाहिए और इस वक्त सुशांत तैयार, तीनों गेंदें लेग स्टंप पर फेंकी थी सुशांत ने और अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए तनवीर के लिए यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन नहीं लेना चाहते तनवीर, स्ट्राइक खुद अपने पास रखना चाहते हैं, उनको खुद के ऊपर आत्मविश्वास है कि वो अपने टीम को सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। अब लक्ष्य कुछ हद तक कठिन, 8 रन चाहिए, 2 गेंदें बाकी और मैं समझता अब छक्के या चौके ही टीम रूफटेक की नैया को सही तट तक पहुंचा सकते हैं और देखते हैं क्या होता है उनकी पारी में। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सुशांत, तनवीर इस वक्त छक्के और चौके की तलाश में, सुशांत गेंदबाज डॉट गेंद की तलाश में, दर्शकों की दिल की धड़कनें यहां पर तेज होती हुई, दबाव यहां पर दोनों टीम के ऊपर साफ पड़ता हुआ और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, यह गेंद सुशांत की, गेंद गोल साइड पर इस वक्त निकाला बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। What a fantastic stroke, क्यों सतीश? And this is an absolutely effortless, एक्सक्विजिट फुटवर्क और जिस तरीके से उन्होंने गेंद को खेला काबिले तारीफ है और इस चौके के साथ अंतिम गेंद पर वो कशिश बरकरार रख चुके हैं। And now 4 required in the last ball, it could be anybody's game at this situation. Absolutely, Gopi. It's a brave and gutsy batting there from Tanvir because he's in the previous delivery. You can see that there was a certain single, but he's denying that single because he know exactly my appearance is very important. I want to take the strike. I got opportunity. I got a potential of hitting the ball. And look at that stroke. Nothing wrong with the delivery, Gopi. That was right on the middle stump, but he shuffled across the line of delivery. Even we are not really sighting the ball where the ball is went. And I'm just searching where the ball is went. This is the beauty of cricket, Gopi. Now here, if the match is tied, then a number of boundaries will go into count to pick the winner of this match. But here, 4 runs will go into win the match here for Rooftech. They desperately wanted 4. 3 will go into tie the match. I don't think that the possibility of 3 runs, but certainly there will be a chances of 3 runs as well. But Tanvir wanted 1 boundary here desperately. At the same time, Sushant wanted 1 dotted delivery desperately. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया और पिछले गेंद पर जब तनवीर डॉट हुए थे तब मैंने भी फरमाया था कि तनवीर को खुद को अपने ऊपर विश्वास है कि वो टीम को सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं और अगली गेंद पर उन्होंने चौका झड़कर उनके इरादों को यहां पर बयान किया। अब अंतिम गेंद पर 4 रन चाहिए विजय के लिए और तनवीर इस वक्त रूफटेक के लिए आशा की किरण यहां पर बन चुके हैं और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त रूफटेक का भविष्य तनवीर के हाथों में, जबकि सर्वाग्नि उर्वा का भविष्य गेंदबाज सुशांत के हाथों में। और पिछला स्ट्रोक जो था एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड, लगभग गेंद गोली की रफ्तार में निकली और हमें नजर फिराने तक का मौका नहीं दिया कि गेंद कहां पर गई है। गेंद सीमा रेखा को पार करने के बाद ही पता लगा कि गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। और यहां पर अंतिम
गेंद इस वक्त बाकी, 4 रन चाहिए विजय के लिए। अंपायर इस वक्त चरण जो संगठकों में से एक है उनसे कुछ बातचीत करते हुए, और अंतिम गेंद पर चौका चाहिए। 3 रन बनाते हैं तो मैच टाई होगा, और देखते हैं क्या होता है। और एक बार फिर से दर्शकों की दिल की धड़कनें यहां पर तेज होते हुए, अंतिम गेंद बाकी, और निस्संदेह एक बेहतरीन मैच यहां पर प्रगति पर। बेहतरीन सुपर ओवर कहना पड़ेगा मैच टाई होने के बाद यहां पर प्रगति पर। दर्शक इस वक्त सन्नाटे भरा माहौल मैदान पर छा चुका है, पिन ड्रॉप साइलेंस, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, और जहां तक सवाल है अंपायर से कुछ इस वक्त समझाते हुए नियमों के बारे में। और इस वक्त फील्डर को तैनात किया गया है। तनवीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, सुशांत गेंदबाजी करने के लिए तैयार, जमीन पर गेंद को टिप्पा खिलाते हुए। और इस वक्त अंतिम गेंद, इस मैच की अंतिम गेंद लेकर तैयार। और जहां तक सवाल है इस अंतिम गेंद का, तो इस अंतिम गेंद में यह कहना मुश्किल है कि इस मैच का विजेता कौन होगा। बराबरी इस वक्त हो चुकी है, और पॉसिबिलिटीज मैच के संभावनीयता के बारे में अगर कहा जाए तो यहां पर मैच मैं कहूंगा अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। और अंतिम गेंद में 4 रन और चाहिए विजय के लिए। तो अगर मैच टाई होगा तो मैच में जो ज्यादा चौका लगाया हुआ टीम रहेगा वो इस मैच में विजेता कहलाएगा। तो यहां पर देखा जाएगा कि मैच टाई होगा या नहीं। चौका चाहिए अंतिम गेंद पर। ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜಯಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು। So 4 required in the last ball, और यहां पर अंपायर कुछ बातचीत करते हुए, और गेंदबाज बल्लेबाज और दोनों अंपायर यहां पर कुछ बातचीत करते हुए। सुशांत इस वक्त सामना गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और तनवीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो अंपायर एक बार फिर से संगठक को बुलाते हुए कुछ कहने के लिए, और गेंद यहां पर खेल जो कि यहां पर कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜಯಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬಹುದು। So 4 required of last ball.